of the day. And so we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the first match of the day number 2 of BK Champions Trophy 2022 will going to begin right after the short break. Thank you. Hello, mic check. Hello, mic check. One, two, three. So, good morning, cricket lovers. Once again, welcome back for the most excitement day of this BK Champions Trophy 2022. Of course, after that successful day number 1 yesterday, we are heading towards the day number 2 and the decider day of cricket. And in this particular day, we are expecting some more entertainment and more thrilling games we can expect from this day number 2. And probably the day number 1, it's going to be 9 top ranking teams will going to clash for the day number 2 to get the place in the finals of this prestigious BK Champions Trophy, proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings. And what a fantastic day we had yesterday. Absolutely, it was a day number 1. It's really entertainment, and what a great game we had. From the ball, from the bat, even some fantastic piece of fielding by the fielders. Altogether, the complete cricket we witnessed yesterday, and the same thing we are going to expect from day number 2 as well. The wait and see how well today the match will go into progress here. But certainly, we are definitely will go give 100% surety that today is definitely going to be one more fantastic day for cricket here in most prestigious UCG cricket ground here in Hurwa.
So all set now for the first match of the day number 2. Mangala Devi cricketers, they started their journey, and even challenge cricketers bowler also they're going to start their journey. And these two teams has got a fantastic history as far as underarm cricket is concerned. The Mangala Devi cricketers, everybody knows that more than 25 to 30 years of history they got. One of the most disciplined team as far as underarm cricket history is concerned. The Mangala Devi cricketers will going to play against challenge cricketers bowler, and even challenge cricketers bowler. They are also one of the best performer as far as the UCG cricket ground is concerned. They got a fantastic record in this particular cricket ground, and they got some good players in the side as well. Altogether, we were expecting the very good cricket and very good cricket from these two teams. Challenge cricketers bowler as well as challenge Mangala Devi cricketers. Challenge cricketers bowler, definitely the team which is from same locality, Urva and Boluru. The Mangala Devi cricketers, one more well-reputed cricket team in South Kent district. Umpire, please stop. So all set now for the first over, and everything is ready. Yatiraj is on strike. Danu is in non-striker's end, and Sharfraz will go into start the proceedings. Here is the first delivery of the day number 2. Right up over the wicket, watching the ball till the last moment. Yatiraj little bit misjudgment, seeing that he thought it might be a wide, but ball is not really going away a lot from outside the line of off stump, well within the reach of the batter, and rightly umpire is not interested to call that wide. That was a fair delivery this time, high up in there. Two fielders going back, and it's a total misunderstanding. Oh my goodness, can you believe this? Just number 33 and 11. The both are in a good position, but that's what I'm talking about. When you are taking the catch, when the ball is high up in there, the communication is so important. You have to talk loudly. It's my catch. You have to tell another fielder that it's my catch. Don't come near to me. It's just he wanted to say, leave. That's very important in cricket. When you are taking the catch, high catches. But both the fielders, they're not having any communication. Even both the fielders doesn't know. Both the fielders coming to take the catch. They got a little bit collision, and ball just slipped out of the hands. Yatiraj has got a very, very lucky morning. What could be a certain wicket for Sarfraz is a little bit disappointed that he didn't got a wicket for that ball. Beautifully ball, excellent delivery. Look at the delivery, that was the deviation, the line, and ball is almost coming along the carpet. And again the batter Danu misjudgment in the occasion, thought it might be a wide, but rightly so, that was a fair delivery. One without loss of any wicket. Bangladesh cricketers right above the wicket, bounce this time again, beautifully ball, excellent delivery. It's not an easy morning, I must say, especially in the UCG cricket ground. You can see the pitch, little bit wetness in the pitch, because yesterday the little bit late night till 10 o'clock the matches, so that the watering, and after 10 o'clock you can see the little bit wetness in the pitch, and the bowler definitely will go into exploit the condition in the morning. Ball is not really coming to the bat. One more fantastic delivery in there. That was a really impressive line and length there by the very young talented bowler Sarfraz. Really the very, very good line indeed. Again the misjudgment there by Danu, and he just left the ball, thought it might be a wide, but well within the reach of him, and there is no chance of any run. So far Sarfraz is looking pretty good in this first over of the power play, and the Mangala Devi cricketers, they got only one on the board. This time again a lovely delivery. This time batsman going for the off dry, not quite got that one right from the middle of the bat. Sandeep, the fieldsman there in the cover point region, fields the ball. Good over there from Sarfraz. Once again he's justifying. He's a very young talented bowler for challenge cricketers bowler. What could be a wicket taking over? Because of misjudgment by the fielders, two fielders, and he's not really having the wicket in his account. But certainly it's a very good start there from a very young bowler Sarfraz. Just 2 runs, and especially in the power play overs, when you concede just 2 runs, definitely it was a great effort from Sarfraz. So good start there from challenge cricketers bowler. After winning the toss, they elected to field first, and Sarfraz justifying the addition of his captain,
And coming back to the condition of morning UCG cricket ground, of course, the very bright and sunny morning. You can see that blue sky, and the birds are flying around, and that was a perfect condition today here in UCG cricket ground. And of course, so first 1 or 2 matches, the bowler will going to dominate in this condition. So that's why very important is here for Mangaladevi cricketers. They have to see that how many runs they wanted to get in stipulated 6 overs. And 35 to 40 runs, I think, in this condition is a very good score to depend. And for that, I think Mangaladevi cricketers have to bat very well. From the far end, it's going to be a start of over number 2, the last over of the power play. From the Urban Homes, and Manish brought into attack. One more talented young cricketer for the side of Challenge Cricketers bowler. Right arm over the wicket, he balls. This time, bowler's back drive. Powerfully driven back. Appeal for the run out. Chance of run out in the striker's end. And Yatiraj, I think, is safe. Might be the opportunity for the bowler, Manish, in the non-strikers end, because the 1 wicket is still in a position. He can uproot the stumps. He can get the result in the form of run out. That's why it's very important to to know the rules and regulation of the cricket is very important for the players. He thought that the wicket is uprooted, 2 wickets fell, so he thought that it had no chance for run out. But there is a chance of run out. He can uproot 1 wicket also. Look at that one in the replay. Direct that ball, that stroke is driven straight back, as straight as an arrow, and ball hits the stump. Look at that one. And bowler tried to stop the ball from his legs. Look at that one. 2 wickets uprooted. The opportunity of run out. But thinking about the run out in the non-strikers, in the strikers end. He can make the run out in the non-strikers end, because still there's a 1 wicket in the position. And just missed the opportunity here. 3 without loss of any wicket. Mangaladevi cricketers. Powerfully driven back there by Danu in that the previous delivery, where ball hits the stump. If the ball is missed the stump, definitely we will going to get the boundary for that, because that ball really hit powerfully back by Danu. Manish from the far end. Right arm over the wicket, he balls. This time, Yatiraj almost drags that one from outside the line of off stump. The intention of Yatiraj is to pick that one down to mid-wicket or square leg region, but the line is so difficult for right-hander batter to drag the ball from outside the line of off stump. Still, he got that one right from the middle of the bat, and he picked up a single down to wide-ish long on. With the addition of that single, scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Umpire Roland Pinto and Arish Padil, they got some conversation. And now umpire just changing his position. Usually the square leg umpire standing in that square leg region, but now is standing at backward point region. Might be wanted to see the bowling action of the bowler, and whether it was a suspicious bowling action or not. And that's why umpire is standing at backward point region. Here is again Manish. Right arm over the wicket, he bowls. This time beautifully bowled. Excellent delivery indeed. Almost targeting in the midland leg stump. Danu tried to flick that one off his legs, off the back foot, but he got only single from the bat, inside edge of the bat, and the scoreboard now moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the our first in progress. Now umpire Roland Pinto coming to the position of Arish Padil. Arish Padil going to that backward point region, and Manish will go into ball from the far end, Urban Homes end, bowling with a short run up. Right arm over the wicket to Yatiraj. Yatiraj drives that one beautifully down to deep long on, straight deep long on boundary for 4 runs. When batters hit that one straight down the ground, especially in the power play overs, it's definitely going to be off boundary there. One of the most delightful stroke to watch whenever the batters are playing that one uppishly and over the head of the bowler as straight as an arrow. Then no chance at all for the fielder. Even deep long off and long on is there, but fails to go near to that delivery. That was beautifully driven there by Yatiraj. One of his favorite strokes, and he's very strong in front of wicket, and it's a very good looking stroke there from Yatiraj. Score jumped into 9 on the board without loss of any wicket. Again Manish from the far end, right arm over the wicket, bowls Yatiraj. This time frustration and the pressure straight away now for the Manish. With that was all happening whenever the batter hitting some big shot, all in sudden the bowler thinking about to ball that one outside the line of off stump. By doing that, ball is going further away,
and one more addition to the total in the form of extra. 10 on the board. This time, upishly played, but not quite getting hold of that one properly. But still, that is able to clear the infield. And before the fielder from deep cow point, short cow point to field the ball down into deep cow point region. Ample time for Yatiraj to complete that couple of runs. Of course, he's not really bothered about that. Yatiraj, you know exactly there is no protection in the deep, so he was freely hitting that ball, even though it was officially, but quite deliberately played that one to get a couple of runs for Mangaladevi cricketers. Productive over here for Mangaladevi. 12 without loss of any wicket. Again, one more wide. One more frustration here for the wicket keeper and for the captain of Challenge Cricketers Bowl, because the very good start given there by the bowler. The opening bowler Sarfraz, just 2 runs he conceded in the first over. Now already 11 runs conceded in that over of Manish. Bowling from the home Urban Homes end. Right arm over the wicket. Bowls to Yatiraj and whip that one just over that of that square leg fielder. Square leg and mid wicket in the relegation, and he got a couple of runs quite easily. Excellent cricket there from Yatiraj in this particular over. He managed to bounce back because of 1 boundary and 2 couple of runs, and altogether the 13 runs came from that over of Manish. It's a big over, absolutely big over here for Mangaladevi cricketers. Now they're looking pretty. Special thanks to our beloved MLA of South Constituency, Mangalore, Vedavas Kamath, and founder, president of Biruver Kudla, Uday Pujari, Ganesh Kulal, corporator, Radhakrishna, nominated corporator of Mangalore City Corporation, Tilak Guru of Young Friends Urva, Sampath Shetty of Lotus Builders, Kadri Manohar Shetty, corporator of Kadri Manohar Shetty, my classmate as well, Anil Kumar, corporator of Kulur, Kiran Pai, Saukar M. Baba Pai, Petrol Pump, Lady Hill, and special thanks to Karnataka Bank Limited. So they are all really supported for the success of this first year prestigious BK Champions Trophy 2022, proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla, Balalbag. Friends Balalbag. So 15 on the board. Mangaladevi cricketers, after they got a very slow start in the first over, the second over they got some runs, especially Yatiraj leading from the front, being the experienced campaigner for the side of Mangaladevi cricketers. He got some runs in the second over. Now third over going to start from the commentary box hand. Right arm over the wicket, beautifully bowled, different bowling action. This time there's not that much of turn here for Latish. That was straighter one. And Dhanush thought that it might be incoming delivery, so he tried to cut that one, missed it completely, and there is no chance of any run. Yatish balls, beautifully bowled, a quicker one compared to the previous delivery. This ball is just on the off volley outside the line of off time, but Dhanush is a little bit late to react to that off drive, missed it completely, and there is no chance of any run. Yatiraj balls, what a delivery there from Yatish. Now Dhanu little bit struggling, especially to see the line and length of the bowler, and look at the bowling action of Latish. It's a different bowling action. Before he is delivering the ball 3-4 times, he is using his wrist, different action from his bowling. Now couple of runs, and before the fielder from deep Sarfraz to collect that one, ample time for Dhanu to complete that couple of runs. New face Dhanu for Mangaladevi cricketers, 17 on the board. And now he's just getting ready to face the next delivery from Latish. Right arm over the wicket to Dhanu. This time far outside the off stamp. It's going to be disaster, absolutely disaster. Not only the wide, but extra run as well. Altogether 1 + 1, 2 more runs is added to total with the addition of that couple of runs. Go now moves on to 18 on the board without loss of any wicket in the over number. Third in progress. Again Latish. This time across the line of the delivery, tried to swing that one. Didn't quite getting hold of that one properly by Yatiraj. But he picked up a single. That's important. And with the addition of that single, scoreboard moves on to 19 on the board. 20 on the board. 20 little correction in the score. 20 on the board. Using his feet, and wicketkeeper Charan missed it completely. What could be a certain opportunity, I must say, because Dhanu little bit down the track to get that one into the offside region. But he missed it completely. Ball kept a little bit low. That's why Charan couldn't manage to gather the ball. And 3 overs completed. Completion of over.
They got all the wickets in hand, and Gopi, it looks like it's both the opening batters are there, laid the foundation. And what a fantastic cricket tournament! And three pillars of this cricket tournament done a great job. Charani SK, and then Trishant Ashok Nagar, and then of course Sunil Kumar. All have done a fantastic job to make this possible, the 2 days of cricket. And yesterday is a very good day for cricket, isn't it? A lot of excitement as well. And today also, we're expecting the same kind of performance from the top teams of the South Kenda district. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता। तो जैसा कि फरमाया, पहला दिन इस श्रृंखला का काफी बेहतरीन रहा और अंतिम 3 मैचेस, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल मैच जो टाई में समाप्त हुआ था। सुपर ओवर में सर्वाग्नि उर्वा ने विजय दर्ज की थी और सेमीफाइनल से इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में वो प्रवेश कर गया था। टीम रूफटेक के खिलाफ उन्होंने विजय दर्ज की थी सुपर ओवर में। और जहां तक सवाल है आज के मैच का, तो टॉप सीडेड मैचेस आज होंगे। इस बार पहली गेंद को डाला, इस बार क्या छूट चुका है, कैच छूट चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस, गॉन इन वेन। और यहां पर बल्लेबाज जीवदान प्राप्त करते हुए संदीप जो फील्डर थे लॉन्ग ऑफ पर, और संदीप सेफ हैंड्स के रूप में जाने जाते हैं और यहां पर काफी कम बार देखा गया है कि वो कैच को छोड़े हैं। और यहां पर मैं समझता हूं अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद से अपनी नजरें हटा ली थी और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज जीवदान यहां पर प्राप्त करते हुए 23 रन बन चुके हैं, 23 विदाउट लॉस। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, इस श्रृंखला के बारे में, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 और इस श्रृंखला के मुख्य 3 पिलर्स के बारे में आपने जिक्र किया था। श्रीमान चरण, श्रीमान त्रिशांत और श्रीमान सुनील, 3 मुख्य आधार स्तंभ इस श्रृंखला के सफलता के रुवारी हैं और उनकी बदौलत ये श्रृंखला यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए और एक यशस्वी पथ पर यहाँ पर बढ़ते हुए। और हम इस मौके पर उनका नाम भी लेना चाहेंगे, श्रीमान उदय पुजारी, जो कि स्थापक अध्यक्ष बिरुवर कुडला के। इस बार दिस कुड बी गॉन ऑल द वे, इन फैक्ट जस्ट वेट एंड सी, यस इट डज। यतिराज के बल्ले से जब कोई गेंद निकलती है मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन, तो वहां पर सवाल ही नहीं पैदा होता है कि गेंद सीमा रेखा के अंदर लपक ली जाए। और यहां पर यतिराज के बल्ले से जो स्ट्रोक निकला था, इससे तुरंत ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 यतिराज और धनु एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर दे चुके हैं मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए। दाहिना तो ओवर द विकेट, गेंदबाज किया गया यतिराज के लिए, स्क्वायर ऑफ द विकेट मौका, और इस बार यतिराज नहीं बच पाएंगे। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट गलत और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर खड़े हुए थे, उन्होंने कोई गलती नहीं किया और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है। एक बेहतरीन पारी पर यतिराज का पर्दा गिर चुका है। 17 रन उन्होंने बनाई, स्कोर्ड 17 runs into his credit, including 1 6 and a boundary each. And after that, he playing a fantastic knock for their side. He is backing to pavilion, and Mangala Devi cricketers lose their first wicket. It's 31-1, and Yatiraj departs. तो निस्संदेह यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे बिरुवर कुडला के स्थापक अध्यक्ष श्रीमान उदय पुजारी, इनके सारथ्य में यह श्रृंखला यहां पर एक न सिर्फ 3 मुख्य पिलर्स बल्कि कई सदस्यों ने भी इस श्रृंखला के सफलता के लिए जीतोड़ मेहनत यहां पर की है और निस्संदेह हम उनका हृदयपूर्वक अभिवादन यहां पर करना चाहेंगे। तो यहां पर पहला विकेट गिर चुका है और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह चिप किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद निकली स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। नए बल्लेबाज रफीक का आगमन यहां पर हो चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक, जो कि एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज दिनराज की ओवर की अगली गेंद का, और दिनराज इस वक्त तैयार। विकेट कीपर चरण फील्ड में कुछ जमावट यहां पर करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता है। और धनराज अर्बन होम्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, लेग स्टंप से बाहर स्विंग किया, इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग से बाहर 4 रनों के लिए।
काफी ढीली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर, और जो यहाँ पर उसका इलाज करना चाहिए था वो इलाज उन्होंने इस वक्त किया। रफीक ने गेंद को लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते देखकर स्विंग कर दिया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बीच, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस बीच धनराज की गेंद, ये गेंद ड्राइव किया बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त मंगला देवी क्रिकेटर्स बुलंदियों पर नजर आता हुआ, और पहले ओवर में जो यतिराज का कैच छूटा था वो उनके लिए काफी महंगा साबित हो चुका है। और यहाँ पर एक सुस्थिति में मंगला देवी क्रिकेटर्स नजर आती हुई 37 रन जोड़ चुकी है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs फॉर 3 which proudly organized by Friends Ballal Bagh. और जहां तक अशोक नगर वुमेन्स विंग का सवाल है तो कई महिला सदस्य ने इस श्रृंखला के सफलता के लिए अपना योगदान दिया है। खासकर मैं नाम इस वक्त लेना चाहूंगा सुमंगला एस कोटियान, जिन्होंने सुमंगला श्री कोटियान जो कि इस श्रृंखला के सफलता के लिए उन्होंने जितोड़ मेहनत मुशक्कत की है, जो कि चैलेंज बोलोर के प्रमुख सदस्य और इस श्रृंखला के मेन पिलरों में से एक श्रीमान चरण इनकी धर्मपत्नी है। और निस्संदेह यहाँ पर उनकी इस सफलता की बदौलत ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई, उनकी इस मेहनत की बदौलत कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है वाइड के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। और 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर, गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एक बार चिप किया है गेंद को, लॉन्ग ऑफ पर मौका हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। धनु की पारी समाप्त, गेंद को उछालना चाहता लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर टकराई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ, काफी उम्दा काफी ऊंचा उछाला था और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है 39 रनों के ऊपर। इट्स 39 for 2 एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, Gori Young Boys will take over KCCR Kadri in the next encounter, and that match is now coming up live and exclusively right in front of you. One more big match is now coming up right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ऑफिशियल ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು। और यहाँ पर 2 विकेट गिर चुके हैं और 2 रनों के अंतराल में 2 विकेट गिर चुके हैं। एक वक्त स्कोर था 37 रन बिना किसी नुकसान के, अब स्कोर है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लतीश दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। पिछले ओवर की अंतिम गेंद में भी उसी तरह का स्ट्रोक खेला था, लेकिन इस बार गेंद को उन्होंने मोड़ा था काफी स्क्वायरली। देखिए किस तरीके से हुआ, हैव अ लुक एट दिस वन। गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग काफी स्क्वायर निकली थी, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच नहीं पाए और लगभग गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। चौका नंबर 2 इस वक्त रफीक के बल्ले से लगता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। रफीक का इस वक्त काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए 2 चौके अब तक वो झड़ चुके हैं और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। लतीश इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में जमावट करने के बाद विकेट कीपर चरण इस वक्त तैयार और लतीश गेंदबाजी करेंगे दाहिने बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार रफीक के लिए, इस बार दिस कुड बी गॉन ऑल द वे, यस इट डज, इट्स अ मैसिव वन। और ऐसा कहना पड़ेगा
गेंद की लाइन को पहले ही भांप लिया था। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था विद अ ट्विस्टेड बैट, रिवर्स शॉट, और गेंद इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। फील्डर वहां पर खड़े हुए थे लेकिन सिर्फ देखते रह गए और गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई सीधे रास्ते पर जा गिरी है डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। छक्का इस वक्त जुड़ चुका है रफीक के बल्ले से और रफीक के खाते में। और इस वक्त अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, लेग स्टंप से बाहर, स्ट्राइट अवे, द प्रेशर ऑन द बॉलर, दबाव इस वक्त नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर। और इस वाइड के रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर मंगलादेवी क्रिकेटर्स। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं सिर्फ 5वां ओवर प्रगति पर और एक शानदार प्रगति यहां पर करता हुआ मंगलादेवी क्रिकेटर्स। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, क्या छूट चुका है और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। न सिर्फ फील्डर ने कैच छोड़ा बल्कि चौका भी उन्होंने प्रदान किया और भाग्य यहां पर रफीक का साथ देता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 54 रनों पर। रफीक अब पहुंच चुके हैं 19 रनों पर, सिर्फ 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एग्जैक्टली 380 स्ट्राइक रेट, 19 रन, 19 runs he scored in just 5 deliveries with a strike rate of exactly 380. This is an outstanding progressing year for Rafiq. और इस बीच गेंदबाज काफी महंगे साबित हो चुके हैं। लतीश अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद अंदर की ओर आती हुई बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर ऑफ कटर गेंद और अंतिम क्षण में गेंद को खेलना चाहा, चूंकि विकेट कीपर चरण भी गेंद को समझ नहीं पाए और जब तक दोबारा वो खुद अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 55 लास्ट बॉल, अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और लतीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज किरण राज जिनका आगमन अभी अभी हुआ है और वो सामना करेंगे इस वक्त गेंदबाज लतीश की गेंदों का। लतीश दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। किरण राज के लिए ये गेंद इस बार फुल टॉस, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इससे पहले डीप मिड विकेट फील्डर दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे, इससे पहले बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दोनों बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। फील्डर्स पर दबाव डालने का प्रयास और 100% 100% यश प्राप्त करते हुए इस गेंद पर 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 57 रनों पर। इट्स 57 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स लुकिंग इन ए कमांडिंग सिचुएशन। तो यहां पर परेशानियों के बादल धीरे धीरे छाते हुए चैलेंज बॉलर के कप्तान के ऊपर निस्संदेह इस वक्त चैलेंज बॉलर के कप्तान चिंताक्रांत होंगे कि किस तरह मंगला देवी क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों की रन के बहाव को यहां पर किस तरह रोका जाए। और यहां पर अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ अर्बन होम्स एंड की ओर से सरफराज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और अंतिम ओवर श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स की पारी में यहां पर शुरू होता हुआ। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव कवरेज V424/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब के जरिए और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022-22 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई इस श्रृंखला के दूसरे दिन के पहले मैच में यहां पर मुकाबला इस वक्त जारी है चैलेंज बॉलर और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में। आज टॉप सीडेड मैच टीमों के मैचेस यहां पर खेले जाएंगे बी पूल के। इस मैच के बाद गोरी यंग बॉयज का मुकाबला होगा KCCR कदरी के साथ और नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, लेग स्टंप से बाहर, फाइन, गेंद को निकाला लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, 1 रन मिलेगा। शफल होते हुए जैसे ही गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकले अंतिम क्षण में गेंद पर बल्ला अड़ा दिया, हल्के से गेंद को इस वक्त टॉप स्वीप कर दिया था शॉर्ट लेग पर 1 रन के 58 रन स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इनफैक्ट। और गेंदबाज इस बीच सरफराज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, किरण राज सरफराज की गेंदों का और सरफराज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इन, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मिड विकेट पर फील्डर द्वारा 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 2 विकेट के नुकसान पर। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए और निस्संदेह एक लंबे स्कोर की ओर वो अग्रसर यहां पर होता हुआ। और सरफराज इस वक्त
रफी का सामना करने के लिए तैयार, 7 गेंदों पर 20 रन अब तक वो जोड़ चुके हैं। अगली गेंद का सामना करते हुए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, चूंकि शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर गेंद को टटोलते रह गए वहां पर, और इस बीच एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। श्रीनिवास थे फील्डर वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 60 रनों पर। It's 60 for the loss of 2 wicket and now just 3 balls remaining in their innings. सिर्फ 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। किरण राज सामना करते हुए इस वक्त सरफराज की गेंदों का, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात ठीक सीमा रेखा के पास। लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में सरफराज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार किरण राज। सरफराज की गेंदों का ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए शफल होते हुए साइड पर उछालना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े हुए चरण पहुंचे, निशाना दागा, और इस बार किरण राज बच नहीं पाएंगे। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास, और भुगतान उन्हें करना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद, और किरण राज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है रन आउट के रूप में। तीसरा विकेट गिर चुका है 60 रनों के योग पर। इट्स 60 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, आज टॉप सीडेड टीमों के मैचेस खेले जाएंगे। अगला मैच होगा गोरी यंग बॉयज और केसीसीआर कदरी के बीच। उसके बाद मैच नंबर 3 होगा, वन मोर बिग मैच, यंग फ्रेंड्स उर्वा विल टेक्स ओवर केएफसी कोडिकल इन द मैच नंबर 3 ऑफ टुडे। आफ्टर दैट इन द मैच नंबर 4 एनएम जप्पू एंड स्नेहा मालेमार विल क्लैश ईच अदर, और उसके बाद दूसरे दौर के मैचेस खेले जाएंगे। इस मैच की विजेता टीम का सामना होगा मैच अगले दूसरे दौर के मैच में टीम एलिगेंट के साथ। तो 9 टॉप सीडेड टीमें इस पूल बी में हिस्सा ले रही हैं। टीम एलिगेंट, चैलेंज बोलर श्री मंगला देवी, गोरी यंग बॉयज, केसीसीआर कदरी, यंग फ्रेंड्स उर्वा, केएफसी कोडिकल, एनएम जप्पू और स्नेहा मालेमार। तो निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं कि यहाँ पर आज हमें इस श्रृंखला के दूसरे दिन में एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। कल पहले दिन में एक शानदार क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिला था, उसी तरह आज भी हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये गेंद इस बार विकेट सेट है, गेंद को उछाला, मौका हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल, और रफी की धमाकेदार पारी पर पर्दा यहाँ पर गिर चुका है। तो रफीक ने बनाए 20 रन, सामना किया उन्होंने 8 गेंदों का, स्ट्राइक रेट 250, 250 स्ट्राइक रेट, और 20 runs he scored in just 8 deliveries with the strike rate of exactly 250, and he'll be back into pavilion after being playing a quick firing knock। और सिर्फ इस वक्त गेंदें बाकी हैं एक, और स्ट्राइक इस वक्त लेंगे उस अंतिम गेंद का दामू, और इस वक्त वो स्ट्राइक रेट पर मौजूद, जबकि सरफराज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, 60 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स फॉर मंगला देवी क्रिकेटर्स। और इस वक्त सरफराज फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए, कुल मिलाकर अभी भी उसी तरह का क्षेत्र रक्षण, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सरफराज की गेंद जमीन के सहारे, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तो रिवर्स शॉट खेलना चाहा था चूंकि, और यहां पर यह विकेट उनकी पारी की अंतिम गेंद पर गिर चुका है, 5वां विकेट, और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं। सो द इनिंग्स इज अप फॉर श्री मंगला देवी cricketers. They started well, progressed well, and finished well with 60 for the loss of 5 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 61 now for challenge bowler. Shows for them, and let's see can they reach the target or not. 61 the target, और क्या होगा उनके पारी में देखते हैं। तो उनके पारी के
So thank you very much, Gopi. So high scoring game, and day number 2 looks like it's going to be a different day compared to yesterday. There's no that much of a high scoring game yesterday. It's even very difficult to get 40 runs and 45 runs in the all throughout the day. But today we can see that the Mangaladevi cricketers are really dominating in the first morning session. It's not very easy to bat first of all, but I think challenge cricketers bowler, they're not really bowled well. They not really field well. That's why the opposition has got a 60 plus runs. 61 they got. Dinraj and Srinivas are the two opening batters for the side of challenge cricketers bowler. Of course, even though the target is looks to be a little bit tougher, but not impossible in cricket because challenge cricketers bowler, they got some good players in the side. They got some the talents, some destructive batters who can chase this 61 runs if they bat as per their reputation. Wait and see how Dinraj and Srinivas will going to give. Dinraj and Srinivas will going to give the start here for challenge cricketers bowler. Of course, the first 2 overs is going to be very key for challenge to get some good start. This time, first ball itself, right on the money, pitching outside the line of leg stump. That was a problem, I must say, because that ball definitely, if you see in the naked eye, that ball all definitely going to be the middle stump. The fact that ball pitched little bit outside the line of a leg stump, so that Kiran not interested, and you know exact just is asking umpire from the eye, and contact with the umpire and then the bowler. And the bowler knows that the ball pitching outside the line of leg stump. That's why he's not appealing hardly for that. That nice looking drive there from Dilraj. Dilraj got a couple of runs here. With that couple of runs, the challenge cricketers bowler, they started their journey, and wait and see how difficult this journey is going to be. And Dinraj and Srinivas knows that how important to get some good start here for challenge bowler if they wanted to win this match against Mangaladevi cricketers. 2 without loss of any wicket. Kiran bowling away from us, left arm over the wicket, beautifully bowled. That was angling. That was a good line ball when they were bowling around the wicket, and left-hand bowler bowling that line. It's definitely going to be a very good line to bowl the right-hander batter. Just leaving from the right-hander batsman outside the line of off-stump, and there's no chance of any run. Kiran again away from us, right arm over the wicket, beautifully bowled. One more fantastic delivery indeed. Kiran, one of the most experienced campaigner for the Mangaladevi cricketers, very useful cricketer, a very useful commentator as well. Even is a very good scorer as well. He's a perfect all-rounder, I must say, and not only in cricket but even in commentary box as well. 2 without loss of any wicket. There's a ball, him, clean him up. He's celebrating his own way. He knows that after bowling 2 dotted deliveries, this is the right time for me to bowl 1 good delivery right on the middle stump. This is the strategy. This is the technique. This is what you call the experience. He knows that after 2 dotted deliveries, the batter suddenly will go for the big shot. And that time bowler have to bowl that kind of line. This is a fantastic delivery. Look at that one in replay. That was a delivery which pitched in on the middle end of stump. Little bit deviation. And the batter looking for the big stroke in the relegation. Missed the line completely. And ball hits the stumps. So wicket number 1 is back into pavilion. 2 for the loss of 1 wicket. Challenge cricketer bowlers. So highlight of the innings of Mangaladevi cricketers. Quick fire to 20 runs from Rafiq. Really, it's quite a different innings today is played. The 20 valuable runs in just 9 deliveries. At strike rate of more than 200 plus strike rate. Outstanding batting performance. C1 Yatiraj came to bat as an opener and got some runs from his bat. 17 valuable runs. Altogether, it was a teamwork from Mangaladevi cricketers. They got some good score against the challenge cricketer bowler. Darshan is a new batter. Came to middle with a lot of responsibility. Kiran is on fire. Looks like he's enjoying his bowling performance in this condition. This time quite a different looking stroke there from the batter Darshan, because it's surprising. See, that ball is nipped back into him, but he went with the strokes. That's important. Even he played that uppishly, but quite safely down to deep mid wicket region for an easy single. So good over. Just like what challenge cricketers bowler has got, the first over which is a quiet over, and the comparison is concerned. At the same time, after a completion of 1 over, Mangaladevi cricketers are 2 without loss of any wicket,
and challenge cricketer bowler, they got 3 for the loss of 1 wicket. But after that, first over, then Mangaladevi cricketers, they got 13 runs in the second over. So same kind of the number of runs is required in the second over for challenge cricketers bowler if they wanted to win the match, because they are chasing the total. Whenever chasing the total, little bit of pressure situation, because each and every economical over, then target is looking a little bit tougher and stiffer for challenge cricketers bowlers. So the very important here for both the batters have to bat very well in this second over of the power play. Coming back to Rafiq, who played a very good game of cricket in this particular match, scored 20 valuable runs. He is not only the cricketer, but even is a very good commentator as well. He is a Kannada commentator and a very good social worker as well, and is a proud member of Dakshina Kannada commentators group. So 3 for the loss of 1 wicket. Munna from the far end, bowling with a short run up. Right arm over the wicket, balls beautifully bowled. That was excellent delivery indeed. Ball again, that line is so good in the negation. Little bit outside the line of off stump, and the Darshan looking for some expansive drive towards a deep long off. We know exactly mid off is inside. There is no long off at all. So he wanted to get that one over the head of that mid off, but missed it completely. Munna from the far end, balls far outside not off stamp. They're looking for the extra run, but against Ashwin Raj is one of the very quick fielder in the side. Doesn't want to take any risk to go for the run. That Shin was quickly realizing that and sending his partner not to run. And wide call by umpire. One more addition to total. 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Again, Munna bowls one more wide. Challenge cricketers bowlers knows that they want the run. They not really mind about how the runs are coming for challenge bowler. Definitely they're going to enjoy each and every extra deliveries and extra runs considered by this. Again, that ball is a line outside the line of off stump. He's just reaching for the delivery. Then Darshan in the negation, not quite able to get the timing behind that stroke. One more addition. With the addition of that single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Those who are late tuned to your mobile YouTube channel, V4/24/7, I would like to give special welcome and good morning all viewers here in V4/24/7 channel for this second day of this BK Champions Trophy 2022, and proudly organized by Ashok Nagar Women's Wing, Biruver Kudla, Friends Ballalbagh, Mangalore. Munna from the far end. Right arm over the wicket, balls. Srinivas chipped the helicopter shot, but straight to the hands of Rafiq. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with that placement, I must say. But it is a very good thinking dive by the Mangaladevi cricketers captain. You can see that for Darshan there is no long off. For Darshan there is a deep extra cover. And when Srinivas came into bat, when he came into strike, he kept that deep extra cover into straight deep long off region. Seeing that Srinivas is so good in that particular cricketing stroke. That's what is so important in cricket. You should know the strong point of each and every players. That was a good thinking. That's a good captaincy there by Bangladesh cricketers. Keeping Rafiq before he is in the deep extra cover region. When Srinivas came into strike, he coming very straight version towards a deep long off. Otherwise, that might be the 6th run. No question at all. And that's what I'm mentioning about nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. And wicket number 2 of challenge cricketers bowler is back into pavilion. 6 for the loss of 2 wicket. Now, this man, very, very important player for the side of challenge cricketers bowler. And this man can change the complexion of the match. Dheeraj, the very good striker of the ball, I must say. One of the best striker of tennis ball cricket. And he has to play some innings of his life if they wanted to win the match for challenge cricketers bowler. From the far end, Munna bowling from the Urban Homes hand. Right arm over the wicket, he bowls. This time, lovely shot, beautifully dead on, just up and over, down to deep cover point region. Long chase here for the fielder, just a yard inside the boundary line. Kiran able to pick the ball, and ample time for Dheeraj to complete that couple of runs. That's what I'm talking about. He's a really positive player. He's never really thinking about the condition of the game, but he will going to play his natural hitting strokes. That's so important in cricket. Even challenge cricketers bowlers chasing a big total needed such kind of cricketing strokes.
Especially this is the last over of the power play. They have to get some runs, isn't it? They have to get runs because without getting runs in the power play overs, it's very difficult for challenge cricketers bowler to win the match. I still remember the innings of Dheeraj in the pre-quarter final match in UFC RRP Memorial Trophy against Friends Kutar. He played a magnificent innings. Of course, the one side wickets are tumbling, but this man who played a single-handedly and two unbelievable struck came from the bat of Dheeraj. So that I am mentioning about is a key player for challenge from the far end. Munna, right arm over wicket, drives that one powerfully right off that short mid fielder. This time deep extra fielder Rafiq run across towards his right, fields the ball, direct it comes into play, but no question of any result for that. The batter completed a single. With that single, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. 61 is going to be a target. Still they have to get another 52 runs to win this match. They got not that much of deliveries left. This is over number 2 in progress. And last over of the power play. And desperately required one big over. 1 or 2 big overs badly required for challenge cricketers bowler. They wanted to win the match. Munna from the far end. Right arm over wicket going for the off try again. Little bit struggling here, Darshan, especially when he was trying to hit the ball outside the line of off stump. He couldn't manage to make a contact with the batter. One more good over is completed. So over number 2 completed, chasing 61 to win the match. Challenge cricketers bowler little bit struggling in the middle. They're 9 for the loss of 2 wicket. We are talking about this successful cricket tournament. Of course, maybe that was a 2 days of cricket, but more than 2 months of effort is required to make this possible in this most beautiful venue, UCG Cricket Ground. Once again, special thanks to the 4 pillars of this cricket tournament. Trishant, Ashok, Nagar, Charan, SK, Sunil Kumar, Biruver, Kudla, and of course, Sumangala, C. Kotian. All are done a great hard work along with the and all the members of Ashok Nagar Women's Wings. They are really behind this successful cricket tournament. Once again, I would like to give special thanks to all members of Ashok Nagar Women's Wings for giving this opportunity for wonderful cricket tournament in the name of BK Champions Trophy 2022. 9 for the loss of 2 wicket now. Now, fielding restriction is over. That means power play is completed. Power play over is going in favor of challenge cricketers bowler. But it's not mandatory. It's not necessary that you have to get runs in the power play overs. But you can get after the power play as well. Of course, some protection has been given in the deep after that power play. The 5 fielders outside the circle saving the boundaries. But still you can get some runs. This time, lovely shot there from Dheeraj right in the gaps towards the deep mid wicket region. They're running hard, looking for the second. And they made it quite easily in the end. Because Dheeraj suddenly is running towards his safest end, striker's end, and this man, Darshan, have to run towards a non-striker's end. That means it was a little bit risky one, and that's why he runs very quickly. The first run he completed very quickly, and is running for the danger end, and he completed a couple of runs. The scoreboard now 11 on the board for the loss of 2 wicket. Yaju, the bowler, one more young talented bowler for the side, left arm around the wicket, just some lofted, he will going to clear the boundary or not, wait and see, he takes a catch. What a fantastic catch has been taken there by the fielder. Sumit, one of the tallest fielder I must say. Look at that one in replay, hoisted it over, ball is in there, oh what a good catch that one. Oh my goodness, the balance is so important in the negation, the timing of the jump is perfection. The timing of the jump is perfection. At the right time, when you need to jump, when you need to take the catch, look at that one. The fielder almost in the edge in the boundary line, and you have to see that he cannot touch that wall. That's very important in cricket. That was a fantastic catch taken there by Sumit. He's a tall player, so for him it's so easy. And also, he's not only the cricket player, but he's a volleyball player as well. You know how to smash. When you want to smash that, you have to jump a little bit. That was a little bit advantage in that occasion there for Sumit to take that catch. If you see that in a volleyball, in the technique of smashing the ball, the timing is very perfect. Needed a timing over the smashing the ball. And here is also, timing is perfect when you takes a catch here. And one of the best catch, I must say. Yesterday also one good catch has been taken, the catch of the day, number 1. Samit, who took one magnificent catch, spectacular catch. And today,
Sumit taken one good catch here. There's some chance of cotton ball, but just falling far off the fielder. Again, look at that one. I really impressed with that Yaju, even though he's not able to take the catch, but quickly realizing there's opportunities there in the non-strikers and for the run out, he just turns back and try to hit the stumps in the non-strikers and ball just missed the stumps. Excellent effort there from Yaju. That's what is so important in cricket. You have to, not only the bowling and fielding, bowling and batting is important, but even the fielding is so important in cricket. And even yesterday, Tilak of NFC cricketers taken a one spectacular catch down at a deep extra cover region. This time lofted, going to have a chance here for one more catch and one more wicket, and the fielder is underneath it. Net making no mistake at all. Danu takes the catch, just in number 44, just going back, taken a very good position. It looks to be it was a simple catch, but he made it very simple by picking up the position very quickly by running back. And wicket number 4 is back into pavilion. The wickets of challenge bowlers are tumbling here. And out of 4 wicket, I must say, the wicket of Dheeraj, it's a very costly one. Because if it is a 6, then I think it might be the chance for a challenge cricketers bowler to bounce back, because he can dismantle the bowling department of the opposition. That's all happening when you're chasing a big total, isn't it? When you're chasing a big total, there is no other option at all, second option at all for the batters. They have to look for some big shot. They have to get some boundaries and sixes. By doing that, the wickets are tumbling. The 4 wickets back into pavilion of challenge. From the commentary box, and left arm round the wicket bounce. This time a little bit extra bounce in the negation there for Yaju, but batter this time is in such a good position, just going back and lofted that one down to deep long on for a easy single. With the single, scoreboard was on to 13 now for the loss of 4 wickets. Sandeep, most experienced campaigner for the side of challenge cricketers bowler, and wait to see what kind of what kind of batting he will going to do here, because the run rate required is more, and along with his partner Darshan, wait and see how well he going to build the partnership. This time a lovely lovely change of line there from Yaju, seeing that free meditated switch it is attempted by the batters now, just changing the line cleverly and ball a little bit down the leg stump, beats the batsman. Wicketkeeper behind the stump missed the ball. By call by umpire Roland Pinto. So over number 3 completed, chasing a big total 61 to win this match. Still struggling challenge cricketers bowler. They are 14 for the loss of 4 wicket. Meanwhile, I would like to call upon Gori young boys as well as KCCR Kadri. Please complete the formalities of signature as soon as possible. Dayamadali Gori young. Gopi struggling time is continuous here for challenge cricketers bowler, because that's all happening when you're chasing a big total like 61 to in this match. Not only the runs are very hard to combine, but even the wickets are tumbling as well. Altogether, I must say, the Mangaladevi cricketers are there in the top. They are defeating in all department, fielding, batting, and bowling. And fielding is, I think, is much better than the challenge cricketers bowler, because challenge cricketers bowler, they dropped too many catches and they pay the penalty for that. But he just catching of Bangladesh cricketers looks to be more better than the challenge bowler. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, और हर डिपार्टमेंट में मंगला देवी क्रिकेटर्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और उसकी बदौलत यहाँ पर उनका पलड़ा भारी लगता हुआ। और जहाँ तक सवाल है कमबैक करने का चैलेंज बॉलर का, तो मैं समझता हूँ इस वक्त कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। 47 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल बाकी, और आस्किंग रन रेट अब जा पहुंचा 16.33, 47 टू गेट फ्रॉम 3 ओवर्स with the required run rate of exactly 16.33 runs per over. पहली गेंद इस वक्त संदीप के लिए, और इस बार दौड़े, रुके, दौड़े और रन पूर्ण करने में सफल। संदीप दौड़े 3-4 कदम, वहां पर रुक गए, देखा कि नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अपने दौड़ को थोड़े से धीमे कर चुके हैं, वापस दौड़े, लेकिन अंतिम क्षण में 1 रन वो पूर्ण करने में सफल, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर चैलेंज बॉलर निस्संदेह
उनके बल्लेबाजों के लिए एक परीक्षार्थ समय यहाँ पर गुजरता हुआ, और यहाँ पर चौके और छक्कों की उन्हें सख्त दरकार इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर बोलना चाहा, चूके ऑफ स्टंप पर टकराई और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। दर्शन की पारी समाप्त, थोड़ी सी सफल होते वन साइड पर उछालना चाहा, लेकिन गेंद ऑफ कटर गेंद थी, निप बैक अंदर की ओर आते हुए और बल्ले और पैर को चीरते हुए सीधे जा टकराए ऑफ स्टंप पर। पांचवा विकेट गिर चुका है 15 रनों पर। अब मैं कहूंगा चैलेंज बॉलर काफी संकट की स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ। रन्स अभी भी 46 रन और चाहिए, और कुल मिलाकर इस ओवर में 4 गेंदे यानी कुल मिलाकर 16 गेंदे अब उनकी पारी में बाकी। और निस्संदेह अब जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, चौके या छक्के ही इस वक्त चैलेंज बॉलर का भविष्य बदल सकते हैं। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है रंजीत, जो कि एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं, विकेट कीपर गेंदबाज चूके रफीक बैकअप करते हुए, और यहाँ पर एक और विकेट गिर चुका है। बैकअप कर चुके थे रफीक, विकेटों पर निशाना दागा, उनका निशाना सही बैठता हुआ, और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 6, विकेटों के ऊपर विकेट यहां पर गिरते हुए और परेशानियों के बादल और घने होते हुए चैलेंज बॉलर के बल्लेबाजों के ऊपर। अगला मैच एक और बेहतर मैच यहां पर खेला जाएगा। गोरी यंग बॉयज का मुकाबला होगा केसीसीआर कतरी के साथ अगले मैच में, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। सिर्फ 4 विकेट यहां पर बाकी, और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स यहाँ पर बुलंदियों पर नजर आता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त मुन्ना गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और संदीप जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज चैलेंज बॉलर की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद संदीप के लिए, गेंद को ड्राइव किया, और सरफराज जो फील्डर नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज थे, उन्होंने अपने सिर को झुकाते हुए अपने सिर के ऊपर से गेंद को जाने दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 16 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और सरफराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज मुन्ना गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, थोड़ी सी मिसफील्ड, और दूसरा रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट B424x7 चैनल द्वारा, और एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये गेंद सरफराज की गेंद को ड्राइव किया इस वक्त, लेकिन नॉट क्वाइट गेट द प्लेसमेंट राइट, और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। चौथा ओवर समाप्त हो चुका है 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs, नाउ 42 to get in remaining 2 overs, and the asking run rate is now going up to exactly 21 runs per over. 42 to get from 2 overs, और ऐसा कहना पड़ेगा चमत्कारी बल्लेबाजी ही इस वक्त चैलेंज बॉलर को इस मैच में विजय दिला सकती है। सिर्फ 4 विकेटें सुरक्षित, और लंबी बातचीत के बाद इस बार कमेंटेटर बॉक्स इनकी ओर से गेंदबाजी सौंपी गई है बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के अत्यंत अनुभवी गेंदबाज किरण के हाथों में, और किरण जो कि अपना पहला ओवर काफी बेहतर फेंक चुके हैं। सिर्फ 3 रन प्रदान करते हुए उन्होंने एक बेहतरीन गेंद के जरिए आरंभिक बल्लेबाज दिनराज का विकेट प्राप्त किया था, और यहाँ पर वो नया ओवर प्रारंभ करते हुए 42 रन चाहिए 12 गेंदों पर। 42 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 12 डिलीवरीज। ओवर की पहली गेंद किरण इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट, 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनाती श्रृंखला के नियमानुसार, और ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद चिप किया सरफराज ने, गेंद लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं गेंद फील्डर गेंद तक पहुंच पाएंगे, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद टॉपेज पर जरूर टकराई थी, लेकिन मेरे ख्याल से कोई रक्षण प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद नहीं था लॉन्ग ऑफ पर, और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। देखिए किस तरह से गेंद को उछाला था इस वक्त, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थे लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, और 4 रन 23 नाउ। ऐसे ही चंद और करारे स्ट्रोक्स की जरूरत इस वक्त वापसी करने के लिए चैलेंज बॉलर को,
और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 38 टू गेट नाउ फ्रॉम 11 बॉल्स। किरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला है गेंद को मिड विकेट पर। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, बेहतर फील्डिंग, लेकिन 2 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। 2 गेंदों पर 6 रन सरफराज बटोर चुके हैं और कुछ हद तक अपने लय को यहाँ पर वो प्राप्त करते हुए। और किरण एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सरफराज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अंदर की ओर आती हुई ऑफ कटर गेंद थी, गेंद की लाइन को भापते हुए हल्के से गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त खेल दिया और पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 6 विकेट के नुकसान पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। सिर्फ 9 गेंदें अब बाकी और रन से चाहिए 35 रन। लगभग 9 चौकों की जरूरत अंतिम 9 गेंदों पर। 35 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 9 डिलीवरीज। और किरण इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए संदीप के लिए। ये गेंद संदीप ने गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। ऑफ द टोज गेंद को खूबसूरती के साथ फ्लिक कर दिया था और प्लेसमेंट बिल्कुल सही, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान और गेंद सीधे सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है। तो 9 गेंदों पर 9 चौके बनाने थे, अब 8 गेंदों पर 8 चौके लगाने हैं। तो पहला पड़ाव यहाँ पर संदीप पार कर चुके हैं 9 पड़ावों में से और अगली गेंद लेकर किरण इस वक्त तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार मिड विकेट पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। रफीक गेंद तक नहीं पहुंच पाए और 2 गेंदें 2 चौके, अब 7 गेंदों में चाहिए 7 चौके। तो दूसरा पड़ाव भी यहां पर संदीप पार कर चुके हैं। तो यहां पर ये 34 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 27 रन और चाहिए बचे हुए 7 गेंदों में और ये गेंद इस बार चूके 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। अब 26 रन चाहिए अंतिम ओवर में और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 5 चौके और 1 छक्के की जरूरत है और संदीप स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं और देखना यह है कि वो अंतिम ओवर में यहाँ पर क्या करते हैं। तो स्कोर है इस वक्त 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर और 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ अर्बन होम्स एंड की ओर से और तो यहाँ पर अंतिम ओवर में चाहिए 26। जो उदाहरण मेरे काबिल दोस्त सतीश ने दिया, वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेले गए चंद दिन पहले गए 20 मैच में 26 रन बनाने थे। पहले 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स बने थे, लेकिन उसके बाद हर्षद पटेल की गेंद पर वहां पर पॉवेल ने 2 छक्के लगातार लगाए थे। तो यहाँ पर संदीप को पॉवेल बनना है और देखते हैं इस अंतिम ओवर में वो क्या करते हैं। 5 गेंदें बाकी हैं, 26 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार चूके उछालना चाहा ऑफ द स्ट्राइक होते हुए और हो चुके हैं ऑफ द स्ट्राइक। 25 रन, 4 छक्कों की जरूरत टाई के लिए अंतिम 4 गेंदों में। अब सरफराज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सुमित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। 25 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 4 डिलीवरीज। 4 सिक्सेस रिक्वायर्ड फॉर टाई इन द लास्ट 4 डिलीवरीज। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, 1 रन मिलेगा वाइड। 23 टू गेट नाउ फ्रॉम 4 डिलीवरीज, ऑलमोस्ट 4 सिक्सेस रिक्वायर्ड और संदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के गेंदबाज सुमित गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, चूंकि लेग कटर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, लेकिन गेंद पर पहुंचने में असफल
और एक गेंद व्यर्थ, 3 गेंदों में अब 23 रन चाहिए। 23 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज। रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अब लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है चैलेंज बॉलर के लिए, अगर बचे हुए 2 गेंदों पे गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। 23 टू गेट फ्रॉम 2 बॉल्स नाउ। बल्ले का भीतरी किनारा, जस्ट अ सिंगल। 39 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 22 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल। और सरफराज स्ट्राइक पर आ चुके सुमित की गेंदों का सामना करने के लिए। सिर्फ औपचारिकता है अब इस मैच में बच गई है। अंतिम गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, 1 रन मिलेगा। 40 for the loss of 6 wickets. Still 1 ball left in this match. और सुमित संदीप के लिए अंतिम गेंद लेकर तैयार। सामना करते हुए lofted and taken. That's it for this match. 20 runs comprehensive victory for Bangladesh cricketers against Challenge Bowler in the match number 1 of the day 2 of BK Champions Trophy 2022. And with that 20 runs comprehensive victory, they are through to the next round of this competition. In the next round, they will meet Team Elegant, and that match will be played at 1 o'clock at afternoon. The match number 5 of the day. So the next match, one more good match is now coming up. Gori Young Boys will take over KCCR Kadri, और वो मैच यहाँ पर
So welcome back for the match number 2 of the day number 2, the final day of this prestigious BK Champions Trophy 2022, and wonderfully organized by Ashok Nagar Women's Wing, Biruver Kudla, Friends Bag Mangalore. So all we can see that the day number 1 already started. The first match, which is on by Mangalore cricketers, very comprehensive victory against the challenge cricketers bowler, and the victory of 25 runs. The margin, the big victory for Mangalore cricketers. And now we are coming to the second match of the day, number 2. Two top teams, KCCR Kadri registered, will going to face one more top performer of the South Kent district, Gori Young Boys. And Gori Young Boys certainly, even they lost the task asked by the opposition KCCR Kadri to bat first, so that opener for Gori Young Boys came into middle. And promising left-hand batter, the very good striker of the ball, Deepak is in strikers end and in the non-strikers end. Naufal, one more very talented, very experienced cricketer for the side of Gori Young Boys, and a fantastic all-rounder as well. Naufal is in non-strikers end. And on behalf of KCCR Kadri, and one more very economical and wicket-taking bowler, Dilip, brought into attack, and Arish Padil, the umpire, along with him, Wake at square leg. So all set now for the match number 2. The power play over number 1 will go into start. There is no change in the format of the games. 6 overs side to be played between these two teams, and a short third man, short one leg that is coming to the fielding set here. One at backward point region. There is short cover point, short mid off, short mid on, short mid wicket, deep backward square leg, and one fielder looks like they're in the deep whitish long on. So the field set that we're talking about in the power play overs, where you can keep only 2 fielders outside the circle, and Dilip will go in to start the first over, the first delivery of the match from the commentary box, and right arm around the wicket. Dilip, this is a lovely shot, just up and over, beautifully played that one, down to deep cover point region. 2 fielder chasing the ball, and 1 fielder able to collect the ball, but here is the batters really running hard, and they completed 3 valuable runs. Lovely looking lofted off right there from Deepak. Quite deliberately he played that one. You know exactly there is no protection has been given in the deep, in the cover point and the backward point, and just up and over. And width is offered outside the line of off stump, and Deepak quite easily got that placement. Got a valuable 3 runs. Positive start there from Deepak. They got 3 valuable runs for Gori Young Boys. Gori Young Boys, of course, in particular season they started well. They got won one prestigious title, and now they're eyeing towards this BK Champions Trophy. And they started their journey by facing KCCR Kadri, registered in their first match. Outside line of off stump, going to be a wide. Dilip tried to beat the batter by bowling that outside the line of off stump, but the line is once again far away outside the line of off stump, and left there by the batter, white call vampire Arish Padil. This time, what a shot! That was a really very good stroke in the dead ball. Travel 1 bounce over the row for 4 runs. Such a dangerous batsman, I must say, Naufal, especially in the power play overs. Look at the stroke, that one. I want to see that one. Look at that. How much that ball is far outside the line of off stump. Still, he managed to drag that one from outside the line of off stump, and he got that one right from the middle of the bat. 1 bounce over the row for 4 runs. 8 without loss of any wicket. Now, the fielder from the deep wicket region now coming a little bit towards his right, almost between deep backward square leg and mid wicket. And that's one reason because of the previous stroke. Dilip Bowles, what a delivery, fantastic delivery in there, and with the fraction, Sandeep behind the stump did the job, but now falls back foot, of course, very safe and inside the line. So that no question of stump out there, but a very good comeback there by Dilip. After seeing Naufal is playing that stroke across the line of the delivery, now he's bowled that one, almost the moving from the good land spot, midland off, little bit deviation, and that ball just missed the off stump as well. 8 for the loss of without loss of any wicket. 2 fantastic performer in the South Kent district are fighting hard to get the place in the second round of this prestigious BK Champions Trophy 2022. Yesterday already Sarvagni Urva, they came into the finals of this prestigious cricket tournament. Right over the wicket, beautiful one, and once again up and over the head of the extra region. Fielder behind the ball, chasing the ball. Again, the batter has got an opportunity to come back for the second before the fielder run back and fields that one down at deep extra region. Positive start from both the opener batter of Gori Young Boys, and Naufal got 1 boundary and 1 couple of runs in this particular
over, and scoreboard moves on to quickly double figure 10 without loss of any wicket. Slow over one, change of face, nice change of face there from Dilip, lovely delivery indeed. And Naufal, once he's looking for the slow sweep shot, but you have to wait for the ball, and because that was a slow over one, and that was really a good weapon by the bowler, each and every bowler using that weapon, the bowling a slow ball in the middle and confusing the batsman. Bowler's back draw, chance of cotton ball, must be chance of cotton ball, I must say. Dilip tried his level best, extending his right hander to take the catch, but ball is not really coming to his hand, right hand, and just ball is having to his forearm, ball hitting his forearm, and dropped that by Dilip. But very hard chance here for Dilip to take the cotton ball in dedication. So over number first completed after completion of first over. Gori Young Boys, even they lost the toss, asked by the opposition to bat first, they got a positive start, 10 without loss of any wicket. Coming back to this cricket tournament, BK Champions Trophy, which is proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla, Friends Balbak, with the motive of raising funds for the needies. Of course, they want to help, financial help for those who are suffering. Of course, some 2 to 3 people. They want to help, financial help. Those are suffering, the patients, the cancer patients. They're raising the funds by organizing this cricket tournament, BK Champions Trophy here in 2020-22. Everybody knows that Biruver Kudla, one of the very popular and reputed organization, those who are engaged in social work and even in the field of education, they're helping the poor children for their education as well. Even they're encouraging some. This time, what a shot! What a shot! That is a mighty blow, absolutely mighty blow there from Deepak. That ball is really sailing and hitting that stage right off our commentary box. One of the biggest six, I must say, especially when Deepak is hitting such kind of cricketing stroke, is really entertainment for the crowds. Now, the supporter of Gori Young Boys, Nandan Kulshekar, announcing rupees 200 for Deepak for that six. So 16 on the board. What a great shot. One of the biggest six I must say, in this particular cricket tournament. That came from the bat of Deepak. Nicely driven. Lack of placement. Straight to the hands of backward point region. Good written by Dilip in the delegation. No question of any run. Score remains on 16 on the board. 16 without loss of any wicket. Dixit from the far end. Urban Homes hand, right arm over the wicket. Again, chip that one over the head of back cover point fielder. He got a single for that. Deepak so good in today, looking pretty good. He's batting very freely, not really looking like he is in under pressure, and he is really batting freely today. Whatever he want to do, he wanted with the full heart. That was really required. When he going for the big shot, he have to go hardly. And that's why Deepak is got a success today, and hitting the ball quite neatly from the middle of the bat. This time again, appeal for leg before wicket. Naufal lost his bat from his hand. Try to hit the big slog sweep shot in the negation. By doing that, even he lost the bat, but he continues his run. Between the wicket, he completes the runs as well. So one more addition to total in the form of leg by scoreboard now moves on to 18 on the board, without loss of any wicket. What a good start given there by the two opener batter of Gori Young Boys. Left and right combination always going to be very useful, and especially when opener comes into play, left and right combination is going to be very handy. Far outside and on the off stamp. Now quickly Dikshit realizing that bowling around the slot, it's going to be punishable. That's why he would try to bowl outside the off stamp, but he's just lost his concentration over the line. Again, around the legs, flicks that one off his legs down to short square leg region for an easy single. Shailesh, the fieldsman there in the square leg, fields the ball. One more addition to total scoreboard now moves on to 20 on the board. Power play. Looks like Gori Young Boys are really dominated that 2 hours power play. They got already 20 runs on the board without losing any wicket. Dikshit coming over the wicket. This time again that ball is went towards the deep backward square leg. Fielder chasing that one, and ball winning the race against that two fielders. One more boundary.
The Naufal really enjoying that particular cricketing stroke. One of the best player as far as the slog sweep is concerned in underarm cricket. You cannot get a better player than this man in underarm cricket as Naufal. As far as the slog sweep is concerned, even the ball is outside the line of off, line is outside the line of off stump. Still, he managed to hit that one right from the middle of the bat. You know exactly this is a power play. There is no protection has been given in the deep. Once he got enough bat onto that, then ball traveled very quickly because lightning speed outfield out here in UCG kick down. Very difficult once that ball beats the infield. Very difficult for the fielder to chase. Look at that boundary, and that was a fantastic cricketing stroke there from Naufal. 24 runs came in just 2 overs. That means that was an explosive start given by the both opening batter of Gori Young Boys. 24 means that they got 12 runs per over run rate. And that was an excellent run rate against the teams like KCCR Kadri. And now KCCR Kadri just have to look for some breakthrough if they wanted to back into this game. If they wanted to restrict Gori Young Boys from big score. Of course, the first match already the challenge cricketers bowler lost the match because they considered 60 plus runs. And so important here for KCCR Kadri. They have to restrict from that big score. And then only they can win the match. So far, both the batters, opening batters, are dominated here. Raghu brought into attack. Raghu brought into attack from the commentary box end. Meanwhile, match number 3 will be played between Young Friends Surva versus KFC Kodikal. One more good match is coming up after this. Oh, quite interesting kind of reversing stroke. Chance of run out as well, and both occasion Deepak really dealing with some luck. Tried to play the reverse stroke and Raghu changing his line, but still Deepak wanted to complete that strokes. By doing that, ball is in the air. Shailesh tried to take the catch. Ball just slipping out of his hand. But once again, the opportunity is created in non-strikers and to make the run out. Again, Shailesh missed that opportunity. There are 2 chances in 1 ball for Deepak in that particular delivery. Need to grab the opportunity in 2 hands because if they're playing against the Gori Young Boys, giving chance to the batter like Deepak, I think they have to play the penalty for that. 25 without loss of any wicket. Raghu from the commentary box end. Right arm over the wicket balls. This time tried to play the switch it into the occasion, but of course he might be a little bit unlucky. The very good position he took. The line and length is perfect for play the switch it, but he's a little bit early into the stroke and he missed it completely. Raghu again bowling away from us with the short run up. Right arm over the wicket. Beautifully bowled around the legs. That ball did the tricks. The off stamp. Hitting the off stamp. Naufal departs. The wicket number first is back into pavilion of Gori Young Boys. 25-run partnership comes to an end between Naufal and Deepak. I think Naufal, he played his innings. He must be pleased and satisfied with this performance because he did the job what his team is wanted in the first 2 overs of the power play. Got some runs from his bat, hit 2 boundaries, and he scored a valuable 10 runs for his team. So important breakthrough here for KCCR Kadri. Because I already mentioned before the start of this over, I already mentioned the breakthrough is very important. And Raghu, one of the wicket-taking bowler for the side of KCCR Kadri, strikes with a beauty of delivery. The leg cutter, the slow leg cutter, Naufal early into the stroke, looking for the slog sweep, one of his favorite, but a ball is not really coming to his bat. And between his 2 legs, that ball passed. It's a half stamp of Naufal. 25 for the loss of 1 wicket. New batter, Sawad came into middle. Sawad. For him, 1 is a deep backward point. Little bit correction, not deep backward point, deep third man. Between deep third man and deep backward point, 1 fielder. 1 at a deep extra coverage, a deep long off in fact. And this time he went for the reverse sweep, missed it completely. So far it's a good over, quiet over, just a single run and 1 wicket in this particular over of Raghu. The much required quiet over here for KCCR Kadri. Raghu once again back to his bowling mark. 5th time is over, bowling away from us. Right arm over the wicket to Arish, Sawad. And once again a lovely delivery. Sawad looking for a reverse stroke. Of course, I really not understand. Even they're having a protection in the deep in the backward point and third man. They're still trying for the reverse stroke. And fails to make a contact with the bat. Now, so far it's a fantastic over. Just a single run. The 5 deliveries. The much required quiet over here for KCCR Kadri. One stage is 12 runs per hour, the run rate.
Now because of that quiet over from Raghu, the run rate is coming down here for Gori Young Boys. Sawat. The final time in this over, Raghu bowling away from us. So far, is very good in his line and length. Again away from his chance of run out in the zone. Strikers and disaster, absolutely disaster. Well settled batsman, destructive batter. Deepak back into pavilion. Good piece of fielding there by short cow point fielder. I think Dilip, the fieldsman there, the short cow point region, fields the ball. Look at that one. That was a cover drive, but ball went very quickly to the fielder. No question of any run at all. No question at all. But by seeing that his partner Sawad is coming towards the non-strikers and Deepak looks like he's sacrificing his wicket. I don't know why he sacrificed wicket, because his wicket is more important. He is the one who is settled down in the middle, hitting the ball very well. But he just sacrificed wicket. I think it's going to be a big blow here for Gori Young Boys. Two opener batter are back into pavilion of Gori Young Boys. And now it's the right time for KCCR Kadri to back into this game with some good overs. 25 for the loss of 2 wickets. And Raghu bowled a magnificent over. Just 1 run and 2 wickets. And because of that, they are strongly back into this game. And wait and see how well they will going to continue in remaining 3 overs. And we can see how Gori Young Boys will going to come out from that 2 wickets. So before the next over going to commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone. Gopi, first 2 overs, which belongs to Gori Young Boys, they got 24 runs at the rate of exactly 12 runs per over. And what a fantastic over, the last over from Raghu. Just is justifying why he's one of the best bowler in the side of KCCR Kadri. 2 settled batsmen are back into pavilion, Gopi, and 1 run and 2 wicket. Excellent over by Raghu. And because of that, I think now KCCR Kadri can restrict the Gori Young Boys from the big runs. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 2 ओवर में 24 रन जोड़ चुके थे दोनों आरंभिक बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज के, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन ओवर रघु ने फेंकी जिसमें सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किया, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया, 1 रनआउट भी हुआ और अंडर प्रेशर मैं कहूँगा ये बेहतरीन ओवर था रघु का, सिर्फ 1 रन जिसमें उन्होंने प्रदान किए और 1 विकेट भी प्राप्त किया। 2 विकेटें गिर चुके हैं और अब जैसा कि आपने फरमाया कम से कम स्कोर में रोक कर रखने का मौका जरूर है इस वक्त कतरी क्रिकेटर्स के गेंदबाजों को, गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों को। और जहां तक सवाल है इस वक्त चौथे ओवर की पहली गेंद का, तो इस वक्त स्वीप करना चाहा और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर पहुंच चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगर गोरी यंग बॉयज को 40 या 45 रनों के आंकड़े के अंदर रोक कर रखते हैं कतरी क्रिकेटर्स के गेंदबाज, तो निस्संदेह इस मैच में उन्हें भी विजय दर्ज करने का मौका है। अगर गोरी यंग बॉयज का आंकड़ा 45 से ऊपर या फिर 50 के ऊपर चला जाता है तो निस्संदेह यहाँ पर गोरी यंग बॉयज का तख्ता भारी हो जाएगा। तो कतरी क्रिकेटर्स के गेंदबाज इस बात से वाकिफ और इस वक्त सही गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइकर का, तो मोहसिन यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और नॉन स्ट्राइक रन पर सवाद और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दिलीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार मोहसिन के लिए, ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहाँ पर पहुँच चुका 27 रन। मोहसिन एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर वो इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। सवाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सवाद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और रन्स विकेट कीपर के हाथों में और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर यहाँ पर रुक चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज दिलीप एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन पर। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पर संतुष्ट हो चुके हैं। 28 रन स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर और मोहसिन एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं मोहसिन। एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता वो रखते हैं। इस बार ऑन साइड पर देखिए किस तरीके से गेंद को खेला है, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
गेंद इस वक्त मिडल और लेग स्टंप पर थी, हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराया था, लेकिन गेंद गई थी इस वक्त फाइन डीप मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 32 रनों पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक का सवाल है इस वक्त अगली गेंद के स्ट्राइक का, तो मोहसिन स्ट्राइक एक बार फिर से लेते हुए ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद, और इस धीमेपन पर चकमा गा गए मोहसिन, और गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे, उसी तरीके का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद लगभग जमीन के सहारे आती हुई और अंतिम क्षण में गेंद बल्ले के निचले हिस्से से होकर सीधे निकले ऑफ स्टंप पर, और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर मोहसिन की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है 5 रनों पर। इट्स मोहसिन आउट फॉर 5 and now it's 32 for the loss of 3 wickets in the over number 5 in progress. Next match, one more good match is now coming up. Young Friends Urva will take over KFC Kodikal in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. आज टॉप सीडेड टीमों के मैचेस खेले जाएंगे, और अगला मैच के बाद चौथा मैच खेला जाएगा एनएम जप्पू और स्नेहा मालेमार के बीच, पहले दौर का अंतिम मैच। और निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट कल की तरह हमें देखने को मिलेगा। तो एक और अनुभवी बल्लेबाज करना का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 रन। एक और बेहतर ओवर जिसमें कुछ ज्यादा रन नहीं बने, मेरे ख्याल से 7 रन बने इस ओवर में, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन इस वक्त बन चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर, 2 ओवर बाकी इस वक्त उनकी पारी में, और 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। गेंदबाज रघु गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए। दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ, सुबह के 11:05 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप मैदान पर कायम, और आज इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का मैच नंबर 2 दूसरे दिन का यहाँ पर खेला जाता हुआ। पहले गेंद पर लेकर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है या नहीं देखना पड़ेगा। 3 रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं, 2 रन मेरे ख्याल से बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया था, और निस्संदेह आउटस्टैंडिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस। देखिए किस तरीके से गेंद को उन्होंने रोका था। अंतिम क्षण में जैसे ही गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करे, देखिए गेंद को ढकेला था उन्होंने, और फिर से वो दूसरे फील्डर वहां पर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया सीमा रेखा के अंदर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का, और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो 5वां ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है, और करना, और इस वक्त करना कहते हुए कि गेंद शायद सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराई है, तो वो इस वक्त मांग करते हुए, तो देखना यह है, अंपायर इशारा कर रहे हैं कि जब गेंद को रोका गया था, तब फील्डर का पैर सीमा रेखा के ऊपर था या नहीं। तो यहाँ पर स्कोर 3 रन तो जुड़ चुके हैं उनके खाते में, और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त थर्ड अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त वहां पर देखते हुए कि क्या सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकते समय बल्लेबाज का पैर सीमा रेखा को टकराया था, सीमा रेखा के सीढ़ियों को टकराया था या नहीं। और काफी नजदीकी मामला था अंतिम क्षण में, और बेहतरीन फील्डिंग जरूर, लेकिन यहाँ पर अगर उनका पैर सीमा रेखा को पार कर चुका है तो निस्संदेह चौका कहलाएगा। और देखते हैं क्या हुआ है वहां पर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेंद पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया था अंतिम क्षण में, और रोका, और आखिरकार गेंद इस बार यहाँ से सही पिक्चर शायद हमें मिल सकता है। देखिए रिवर्स शॉट किस तरीके से खेला था, बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ रही है, और गेंद को ढकेला गया है। हालांकि खुद सीमा रेखा के सीढ़ियों पर चढ़ गए थे, लेकिन गेंद को उन्होंने ढकेला, और दूसरे फील्डर ने गेंद को वहां पर फील्ड कर चुके हैं। और जहां तक सवाल है रनों का, तो कितने रन मिलते हैं ये देखने वाली बात है। तो अगला मैच यंग फ्रेंड्स रुवा और केएफसी कोडिकल के बीच में यहाँ पर खेला जाएगा।
और एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना साइन दर्ज करके कृपया अगले मैच के लिए तैयार है। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। तो अभी भी थर्ड अंपायर उस फील्डिंग का मुआयना यहां पर करते हुए तो 3 रन घोषित यहां पर और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर की थी डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के फील्डर ने और सिर्फ 3 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। तो करना इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, दिलीप इस वक्त गेंदबाजी रघु माफ कीजिए गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए करना बैक ऑन स्ट्राइक और करना इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, एक रन मिलेगा बल्लेबाज को। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अंतिम 2 या 3 ओवर में एक अच्छा कमबैक यहां पर कर चुके हैं कदरी क्रिकेटर्स के गेंदबाज पहले 2 ओवर में 24 रन प्रदान करने के बाद और धीरे धीरे अपने रिदम लय को प्राप्त करते हुए गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, इन कम्स द थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ the bowler from the deep extra cover fielder and because of that the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single. It's 37 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress। और रघु पहले 3 गेंदों में 5 रन वो अब तक प्रदान कर चुके हैं। एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल गेट, गेंद पहुंची स्पिन होती हुई विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि विकेट कीपर को कुछ आगे आना पड़ा गेंद तक फील्ड पहुंचने के लिए, लेकिन एक रन इस बीच बल्लेबाज लेने में सफल और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। रन इस वक्त आसानी के साथ गोरी अंगबाज के लिए बनते हुए और ये दोनों बल्लेबाज करना और सवाद क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए। दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाज तैयार, रघु गेंदबाजी करते हुए दाहिना हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद स्वीप किया इस वक्त टॉप पे होती हुई गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी है। रघु एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार करना गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद गई ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर, हवे में जरूर थी लेकिन एक्स्ट्रा कवर फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर रहता है। एक रन बल्लेबाज को मिला और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 40 रनों पर। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs and now just a last over remaining in their innings। And just talking about the next match, young friends Urva will takes over KFC Kodikala. I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। और जहां तक इस मैच का सवाल है, अंतिम ओवर का खेल बाकी और वो अंतिम ओवर इस वक्त अर्बन होम्स एंड की ओर से शुरू करते हुए गेंदबाज और करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह अंतिम ओवर में गोरियंग बॉस अपने आंकड़े को, टीम के कुल आंकड़े को 50 के आसपास या फिर 50 के पार पहुंचाना चाहेगा और निस्संदेह इस अंतिम ओवर में कदरी क्रिकेटर्स के गेंदबाज जो अभी गेंदबाजी शुरू करने जा रहे हैं वो गोरियंगबाज के बल्लेबाजों को 50 रनों के आंकड़े के अंदर रोक कर रखना चाहेंगे। सफवान जो कि इस वक्त मोर्चे पर लगाए गए हैं ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार करना के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना के लिए। ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती है। ओह दिस कॉल फाइन, इट्स कॉल फाइन। गेंद में इतना क्विकनेस था, इतनी रफ्तार थी कि गेंद न सिर्फ विकेट कीपर को बीट कर गई बल्कि थर्ड मैन फील्डर को भी वंचित करते हुए निकल गई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वाइड का इशारा, 5 रन 5 वाइड्स उनके खाते में जोड़े जाएंगे और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर और यहां पर 5 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में जुड़ चुके हैं गोरियंग बॉयज के खाते में। करना
एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार सफान की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना के लिए सफान अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद करना के लिए गन्ना ने गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से अंदर गेंद को फील्ड कर ली गई है बेहतरीन फील्डिंग के जरिए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। विकेट से हटते हुए गेंद को इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और बेहतरीन फील्डिंग कहना पड़ेगा वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के फील्डर ने की इस वक्त डीप मिड विकेट पर। और इस बीच 2 रनों का इजाफा 47 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर उनकी पारी में अब गेंदें बाकी है 5 और सफान एक बार फिर से गेंदबाजी करते हैं। और इस बीच शंकास्पद शैली सस्पिशियस बॉलिंग एक्शन सफान का इस वक्त। और अंपायर्स इस वक्त उनसे कुछ कहते हैं कि कुछ हद तक वो अपनी शैली को बदले और अपने एक्शन को बदले। और यहाँ पर देखते हैं अगली गेंद पर गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। तो स्कोर बोर्ड रुक चुका है 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 5 balls remaining and Safan once again comes bowling to करना दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए करना के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। 6 से 7 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद करना के लिए ये गेंद करना ने गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल गेट, गेंद पहुंची सिली मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड जस्ट 4 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज सफान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सवाद स्ट्राइक पर आ चुके। एक बेहतर साझेदारी सवाद और करना के बीच में यहाँ पर बनती हुई और गोरी यंग बॉयज ऐसा करना पड़ेगा एक बेहतर स्कोर की ओर यहाँ पर अग्रसर होता हुआ। अब तक 8 रन इस ओवर में बन चुके हैं। 8 runs ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड स्टिल 4 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज सफान गेंदबाजी इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सफान अगली गेंद लेकर तैयार संवाद के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद संवाद के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त इनटू द गैप, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर नहीं अंदर रोकी गई है। निस्संदेह बेहतरीन फील्डिंग यहां पर गेंद को उछलते हुए सीमा रेखा के अंदर ढकेला, हालांकि खुद सीमा रेखा के बाहर चले गए लेकिन गेंद को ढकेलने में सफल। और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत बल्लेबाज को इस वक्त इस गेंद पर मिले। यहाँ पर देखना पड़ेगा कितने रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से गेंद को रोका गया था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ब्रिलियंट। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 3 रन इस वक्त दौड़ चुके हैं लेकिन अंपायर इस वक्त परामर्श करते हुए कि चौका शायद हो सकता है क्योंकि गेंद को जब रोका गया था तो बल्लेबाज शायद सीमा रेखा के दीवार को छू चुके थे या नहीं। तो यहाँ पर चेक करना जरूरी है तीसरे अंपायर के लिए। और तीसरे अंपायर इस वक्त देखना चाहेंगे कि गेंद को रोकते समय शायद फील्डर छलांग लगाते वक्त सीमा रेखा को छू चुके थे या नहीं। तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस अंतिम ओवर में करना और संवाद यहां पर देते हुए निस्संदेह यहां पर 50 के आंकड़े को छू चुका है इस वक्त गोरी यंग बॉयज। पहले 2 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी दीपक और नौफल ने 24 रन उन्होंने जोड़े थे और आखिरकार और अंतिम इस बार बेहतरीन सेव, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव, 3 रन सिर्फ उनके खाते में जोड़े जाएंगे। ओनली 3 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। छलांग लगाकर गेंद को ढकेला था सीमा रेखा के अंदर फील्डर ने और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत सिर्फ 3 मात्र रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। इट्स 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और 3 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी। सफान एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सफान की गेंदों का निस्संदेह करना इन बचे हुए 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन से बटोरना चाहेंगे। उनके दिमाग में यहाँ पर ये बात चल रही है, 3 गेंदें बाकी, 3 balls लेफ्ट। और यहाँ पर उनके दिमाग में ये सोच चल रही है कि किस तरीके की रणनीति इस वक्त अपनाई जाए ज्यादा से ज्यादा रन से बटोरने के लिए इन बचे हुए 3 गेंदों में। और गेंदबाज सफान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए करना के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, फील्डर काफी पीछे मौजूद है, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, करना काफी तेज और इस बीच दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं।
ऐसा कहना पड़ेगा. Not quite mid wicket, but at the last moment he gets in a couple for that. Again पहुंची थी इस वक्त गैप पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर, और 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 53 रनों पर. 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और सिर्फ 2 गेंदें यहाँ पर बाकी. और सफवान इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर यहाँ पर इस दूसरी अंतिम गेंद लेकर इस ओवर की वो तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना के लिए. अगली गेंद, ये गेंद इस बार चिप ऑन. दिस इज एन गॉन ऑल द वे. दैट इज अ बिग ए. तो करना इस वक्त जो करना चाहिए उन्हें अंतिम ओवर में, वो इस वक्त वो करते हुए. और इस बीच गेंद को उछाला था किस तरीके से, देखिए लॉन्ग ऑन पर मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड डिस्पैच्ड इट इन स्टाइल. 200 रुपए का नगद पुरस्कार नंदन कुलशेखर इस वक्त घोषणा कर चुके हैं करना के लिए, उस छक्के के लिए. और अंतिम ओवर इस वक्त, अंतिम गेंद इस वक्त बाकी. और इस अंतिम गेंद में देखना यह है कि करना और कितने रन बटोरते हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट अगेन, इस बार नॉट क्वाइट मिड विकेट. 1 रन मिलेगा. मिड ऑन पर फील्डर चुके, लॉन्ग ऑन पर बैकअप होता हुआ करना डोले डेंजर एंड पर, लेकिन बच नहीं पाएंगे. और इसी के साथ the innings is up for Goryang boys. They finished well with 60, exactly 60 runs they scored. जैसे पहले मैच में मंगला देवी क्रिकेटर्स ने 60 रन बनाए थे, उसी तरह दूसरे मैच में भी गोरियंग बॉयज ने 60 रन बनाए निर्धारित 6 ओवर में. और 61 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है कदरी क्रिकेटर्स के सामने, केसीसीआर कदरी के सामने. 61 रन बनाने हैं पहले मैच की तरह, जहां पर पहले मैच में चैलेंज बॉलर को 61 रन बनाने थे जो मंगला देवी ने जोड़े थे 60 रन. और यहाँ पर गोरियंग बॉयज ने भी 60 रन जोड़े हैं. 61 रनों का लक्ष्य केसीसीआर कदरी को. और एज फार एज द रिक्वायर्ड रन रेट इज कंसर्न्ड, एक्जैक्टली 10.17 रन पर ओवर इस वक्त उन्हें बनाने. 10. कदरी के बैटिंग बल्लेबाजों के तुलना को के अनुसार लगभग बराबरी पर यह मैच है. और देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में जब उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी पर उतरेंगे. माइक्रोफोन पर आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू. So thank you very much, Gopi. Exactly, you're mentioning about 60 runs, just like in the first match of the day number 2. Challenge cricketers bowler against Mangaladevi cricketers, and Mangaladevi cricketers scored 60 runs. The same total here in front of KCCR Kadri as well. And Gori Young boys, they got a 60. It's altogether the team effort from the batters of Gori Young boys. So everyone is contributed, especially the Deepak in the beginning. Naufal scored some runs, and in the end, slog overs. Karna talked with his bat, and he got some good score with a very good strike rate. He got some runs for his team, the 17 valuable runs. So altogether, it's a contribution from the top order batters of Gori Young boys. Takes the runs into 60 runs, and they set a target of 61 to win the match for KCCR Kadri. Manjunath and Ravi are the two opening batters came into bat here in the middle, and from far end, Urban Homes and Vidensi will go into ball the first over for Gori Young boys.
Fayaz brought into attack. Just coming back to the chances, winning chances for KCR Kadri, Gopi. They got some excellent batters in the side. Just like we can see that two destructive opening batters came into middle. Ravi, everybody knows his strength because one of his favorite ground as well. He played some excellent knocks, the match-winning knocks for KCR Kadri, and of course he's a key player. And Manjunath, of course, is a very good striker of the ball. He got a very good tournament in the KPL. The player one who was the most underestimated in the auction. He talked with his bat, and now he is a man in a form, Manjunath, and Ravi is also a man in form. And certainly these two players going to be very key for KCR Kadri. They have to get some good start. They need to lay the foundation. They need to take the advantage of the power play if they want to win the match. From the far end, Fayaz, right up over the wicket. Oh, straight to that. Oh, looks like once that ball is in the air, looks like it was a straightforward catch for the short cover point fielder. But ball is really going away from that fielder. And just checking the stroke in the last moment. Just checking the stroke in the last moment in the negation by Ravi, and luckily that ball didn't carry to the fielder. And just going away from that fielder, they got a couple of runs here. Two without loss of any wicket. And look at the crowd here. Everybody knows today is a holiday, the Sunday, and more than anything else, they definitely going to witness some good matches. The two top teams are having a battle for the next round. And we can see that the crowds are really gathering in the big number here in UCG ground. Meanwhile, one more wide delivery, 1+1. The fielder trying for the run out. Ashwin trying his level best to hit the stumps in the Striker's end. But this time, I think the batter Manjunath safe in the negation so that they complete that single as well. So 2 runs, 1+1. And already that means one delivery, just like a batter hit one boundary. Just one ball completed, they got 4 runs. That means they got a positive start. And Ravi, what we're talking about, its potential. And he's a very good striker of the ball. The same start for KCR Kadri as like Gori Young Boys has got in the first ball. They got a 4 runs outside and off stamp. One more dotted delivery. One more dotted delivery. Each and every dot ball definitely going to be not a good sign for KCR Kadri because they're not chasing not chasing a small total. They're chasing a 61 to win the match. Again outside, lot of off time, lot of indisciplined bowling performance, I must say, from Payas. 1+1 at the second time in this over, and 4 extra runs already conceded in this particular over, and scoreboard now moves on to 6 on the board. So next match, I once again request Young Friends Suruva as well as KFC Kodikal. Some players are not signed yet, so I request all the players of both the teams, please sign the official chart as soon as possible. Please cooperate with the organizers. Payaz from the Urban Homes and right arm over the wicket. Get ready bowling to Ravi. Ravi Padayuru will go into face next delivery. Right arm over the wicket and Ravi lofted. Luckily that ball didn't carry to the fielder. The second time in this particular over, Ravi is dealing with some luck. Luck is a fundamental ingredient in the success. He's just having a luck here. He's just hoisting it over. Didn't got enough bat onto that. Fielder there in the deep. Whitish long on. Deepak charging in from the deep, tried to take the catch, ball just falling short of him, and Ravi survives. 7 without loss of no wicket. Fayaz from the far end, right arm over the wicket. This time Manjunath lofted, fielder Karna not really going to reach that, and before the fielder from the deep short cover point region to run back to field the ball, ample time for Manjunath to come back for the second. Again the ball is in the air for a long time, up and over. Just clearing the infield, didn't got enough bat onto that. Timing is not perfection in the negation there from Manjunath, but still he got a very valuable couple of runs. 9 without loss of any wicket. Manjunath going for the big shot again. Not really, timing is not really coming here for Manjunath because that was a very good line. The quicker one there from Fayaz nip back into the batsman in the negation, and Manjunath played that one down to short, deep mid-down region for a easy single. Double figure, 10 without loss of any wicket. Gori Young Boys got 12 runs in the first over. Now they already got 10 runs in the first over. Still the last delivery is remaining in this over. And now Ravi going for some delicate stroke, stroke towards a short tournament region, but didn't got that much of enough bat onto that. Ball not really came to his bat, and good comeback by Fayaz. Even though you considered some extra, 4 extra he considered in that over, but still he managed to restrict
the batter from the big shots like boundaries and sixes, and chasing 61 to win this match. The run rate required is just over 10 runs per over. They got 10 in the first over of the power play, and wait and see how well they managed to get some runs in the second over of the power play. Both the teams has got a good start for the season 21-22. Both the teams clinches some titles, reputed tournaments, so that they are in a winning runs. That's why they're taking this tournament as very seriously. They wanted to, of course, any tournament which is played in UCG cricket ground, this is a special. Very special for each and every teams, because for forming and lifting the titles in UCG cricket ground, I think it's going to be very important for each and every teams, because there's lots of under-arm cricket, and especially when a tournament organized by the big reputed organizations like Biruver, Kudla, each and every team wanted to become the champion for this cricket tournament. And what a fantastic organizing by Ashok Nagar Women's Wings in this most beautiful venue, UCG cricket ground. And the battle is on here for the place in the next round of this prestigious cricket tournament. 10 runs already won the boards. Another 51 more runs required for the victory in remaining 5 overs. Ansar bowling away from us with a 2-fielder in the deep. Right arm over the wicket. Outside the run off from too much. Manjunath seeing the line of the delivery. First he wanted to reach the pitch of the delivery. Quickly realizing that going to be a wide. So that's he left the bat and allow the ball to go into the hands of wicketkeeper. White call by umpire, 11 on the board. Answer, right above the wicket. This time, straight to the hands of a fielder down at a backward point, making no mistake at all. That was a sharp catch taken there by the backward point. Manjunath, he got right from the middle of the bat. Look at that one in replay. He got it right from the middle of the bat. The placement is not correct. If he beats the infield, definitely going to be a boundary. And quick reflected catch taken there by the fielder Sawad, I think so. Down at backward point, taken a very good catch. That's why it's so important in cricket. This is all other unique part of the fielding places. The backward point, the cover point. You have to be a very good player who can react very quickly, because ball coming very quickly when you're standing inside the 20-yard circle. There is a little time to react. One good fielder can react very quickly. That's why they're keeping some of the good fielders inside the ring. And that was a very good reflection catch taken there by Sawad at backward point, and sending very danger man Manjunath back into pavilion. 11 for the loss of 1 wicket. Now Shailesh came into middle. One more very good striker of the ball. Get ready to face the bowling of Ansar. Right arm over the wicket, he bowls to Shailesh. Shailesh drives that one right in the gap between extra cover and mid-off. There is a protection in the deep extra cover region, so that Shailesh have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. KCCR Kadri, even though they didn't got that much of good record in UCG cricket ground, but they got a record of defeating big teams. And wait and see how well they give competition here for Gori Young boys. Ansar from the commentary box, and right arm over the wicket, beautifully bowled. Excellent delivery there from Ansar. Ravi looking for the helicopter shot, one of his favorite. Try to flick that one of his legs in the occasion, but line is outside the line of off time. Very difficult to go for that such kind of cricketing stroke. Missed it completely, and there is no possibility of any run. So impressive Ansar. The line and length is so good in the occasion, and very difficult for the batter like Ravi to get some big shot against that line. Ansar, right arm over the wicket. This time top edge, but I think the fielder is going back, take the catch, and he drops it. Ashwin, I think so, is running back, try to take the catch, but very difficult when you are taking catch running in front. It's going to be very easy, but when you try to take the catch running back, it's very difficult, because ball is almost deviating with the direction of the wind, and you have to keep the eye on the ball at the same time. Judging the catch is very difficult in the occasion. Of course, that ball just going away from that fielder, and they got a valuable couple of runs. KCCR Kadri, Ravi dealing with some luck in this particular match. Third time he's got a luck. Outside the run of off time, too far, second wide of this over. Just like what his partner did in the previous over. He bowled 2 wide balls, Fayaz. Here also Ansar bowled 2 wide balls, and scoreboard now moves on to 15 on the board for the loss of 1 wicket. Ansar right arm over the wicket. Ravi try to force that one, because it's very difficult, isn't it? When that line, which is bowled by Ansar, even
very good striker like Ravi is finding difficult to get the timing behind the stroke. That ball went straight to the hands of Karna at mid-off, and there is no possibility of any run. So far, it's a quiet over. Beautifully bowled. Excellent delivery to finish the over number 2. That was a perfect over here for Gori Young Boys. Just 5 runs in that over of Ansar, and he sent a very dangerous batsman Manjunath back into pavilion. So chasing 61 to this match. Struggling time continues here for KCCR Kadri. They're struggling in the middle. 15 for the loss of 1 wicket. Straight away coming back to the equation. 61 is the target. That means another 46 runs required for the victory in 4 overs. 12 runs per hour, just under 12 runs per hour. The required run rate, 11.5 runs per hour. In fact, the perfect calculation is concerned, the required run rate here for KCCR Kadri if they wanted to win this match. Now, power play looks like the Gori Young Boys not really bother about that 15 runs in the 2 overs, 7.5 runs per hour because run rate is over 10 runs per hour in the beginning. And each and every economical over, the required run rate is climbing up here for KCCR Kadri. The needed one big over very quickly for KCCR Kadri. There is no need to, I think, there's no time to thinking about. They have to get one big over if they wanted to back into this game. 46 to get from 24 deliveries. No change in bowling. 5 hours to continue from Harban Homesand. This time Sailesh went for the reverse paper, but not more than a single here for Sailesh. Sailesh quickly realizing that rotation of strike very important. They have to give strike as much as possible to Ravi. So far Ravi is very quiet. Yet to combine some big shot from the blade of Ravi. He's batting on 5 with 2 lives. And 5 hours right arm over the wicket balls. Again outside the run of off time. 1 plus 1, 2 more to the total. More than the contribution from the bat. Out of that 17 runs, the big contribution of extras, 18 runs in fact, the big contribution of in the extra. 3 wides ball from Payas, 2 wide ball from Ansar, and 1 plus 1 tries in this 3 over of Payas. Altogether 11 extras conceded. There's some driven beautifully down to mid wicket region, but protection there in the deep. After that power play, the fielding restriction is up so that we can see that so many bodies out there in the deep. 1 at deep cover point, 1 at deep long off and deep long on, deep mid wicket and deep backward square leg, saving the boundaries. 19 on the board. Fayaz from the far end. Right arm over the wicket. Ravi once again got a top edge. This time Karna is underneath it. He takes a comfortable catch. At last the struggled innings of Ravi's comes to an end. He got a life. The previous 2-3 times when it is ball is short, falling short of the fielder. Sometime one difficult catch dropped by the Ashwin. Now this time he tried to hit a big shot towards a deep long off region. Got a top edge and Karna making no mistake at all. So Ravi is back into pavilion. Fails to contribute from the bat. Got just 5 runs, and for that 5 runs he took 7 deliveries. So quite unusual, I must say. Always his strikes rate is more than 100, but in this particular match, when it looks like the strike rate required more than 100, he fails to contribute from the bat. Santosh. Santosh came into bat here. This time Shailesh cleverly played that one down to deep backward point region before the fielder from deep cover point region to Karna little correction. The fielder ran across to field the ball. Ample time for the batter to come back for the 3. Excellent running between the wicket between Santosh and then Shailesh. Scoreboard now moves on to 23 now for the loss of 2 wicket. So far Gori Young Boys has really strengthened their grip over this match by picking up 2 valuable wickets. The danger batter Ravi and then Manjunath. Manjunath out for 3, then Ravi out for 5. Now Shailesh and Santosh. Ball him, clean him up. Excellent delivery. The quicker one there from Ansar. Little bit late reaction coming, little bit correction from Fayaz.
And late reaction coming from the batter Santosh. Ball did the trick before he went for the strokes. They were beaten by the pace, and wicket number 3 is back into pavilion. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ KCCR ಕದ್ರಿ, KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಟು ಸೈನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 23 for the loss of 3 wickets. Sandeep is a new batter. One more very good striker of the ball. The brothers are in the middle, Shailesh and Sandeep. And straight away, Sandeep swept that one down to square leg region for easy single. With that single, one more fantastic over is completed. Chasing 61 to win this match. KCCR Kadri 24 for the loss of 3 wickets. Now coming back to the equation, 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get another 37 runs to win this match. 37 required from 18 balls. That means almost 12 and more than 12 runs per over is the required run rate now for KCCR Kadri. Wait and see how well they manage to climb this mountain of runs. Meanwhile, time to change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language Hindi. And Gopi, nothing much change about what we are talking about the previous match when challenge cricketers bowler chasing 61 to win this match. They're struggling to catch the required run rate. But here KCCR Kadri also, they're struggling to catch the run rate, but not impossible, Gopi, because KCCR Kadri still they got some strength in the batting department. Shailesh there in the middle. Sandeep is a very good striker of the ball, and 12.33 runs per record. And I don't think that much of tough enough if Sandeep and Shailesh manage to get some their natural hittings. They can win the match as well. बिल्कुल सतीश, लक्ष्य कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. और इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल. और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है. और यहाँ पर कद्री क्रिकेटर्स के पास, KCCR कद्री के पास अभी भी कुछ ऐसे घटानुघटी बल्लेबाज मौजूद है जो एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं. और यहाँ पर देखते हैं वो किस तरह से लक्ष्य का पीछा करते हैं. गेंद को चिप किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से. 2 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर. और जहाँ तक सवाल है गोरियंग बॉयज के गेंदबाजों का, तो अब तक उन्होंने एक बेहतर गेंदबाजी की है जहाँ तक उनके क्षमता के अनुसार. अगर अगेंस्ट कद्री क्रिकेट KCCR कद्री के बल्लेबाजी के लाइनअप को नाप तोल कर अगर देखा जाए, और यहाँ पर अगली गेंद लेकर अंसार तैयार था. इन्हें तो ओवर द विकेट रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा. गेंद पहुंची सीधे जमीन के सहारे विकेट कीपर के हाथों में और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं. अभी भी एक लंबा सफर यहाँ पर तय करना बाकी है और कुल मिलाकर 34 रन और चाहिए विजय के लिए. और अंसार इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ ओवर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद रिवर्स शॉट. गेंद को इस वक्त हवा में उछाला है और इस कैच को फिसलते हुए लपकने में सफल फील्डर. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. स्लो गेंद इस वक्त फेंकी थी और देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था. इस धीमेपन को समझ नहीं पाए. गेंद को उछाला जरूर रहा लेकिन ठीक तरह से कनेक्शन नहीं है और कवर पॉइंट पर इस कैच को लपका आगे की ओर आते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ फील्डर ने. और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है. 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. KCCR कद्री नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल. और अब कुल मिलाकर उनकी पारी में 14 गेंदें बाकी और रन से चाहिए 34. 34 runs to get in remaining 14 deliveries. And as far as the big strokes are concerned, at this situation they badly required couple of big strokes at this stage to get back into this match. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाईना तो ओवर द विकेट. अंसार की गेंद ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड. गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. मैच नंबर 2 आज के इस श्रृंखला के दूसरे दिन का बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ. दाईना तो ओवर द विकेट रिवर्स शॉट. गेंद को खेलना चाहा. गेंद पहुंची इस वक्त ऑन साइड पर स्क्वायर की दिशा में. 1 रन मिलेगा. फील्डर पीछे मौजूद लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदलते हुए 1 रन के साथ यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं. तो कुल मिलाकर
29 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर 29 for the loss of 4 wicket 4 overs had been bowled 2 overs left and 32 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs with the required run rate of exactly 16 runs per over 16 रन प्रति ओवर के औसत से रन्स बनाने हैं 32 और ऐसा कहना पड़ेगा केसीसीआर कदरी को अब करारे स्ट्रोक्स मतलब छक्के या चौके ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। और जहां तक अगले मैच का सवाल है यंग फ्रेंड्स उरुवा का मुकाबला होगा केएफसी कोडिकल के साथ। तो एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही दर्ज करने के लिए। 32 required in the last 2 overs and the bowler brought into the attack from Urban Homes and is नौफल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अशोक का और ओवर की पहली गेंद लेकर नौफल तैयार रहा। कम से कम 15 से 20 रन इस ओवर में बटोरना होगा कदरी को इस मैच में वापस आने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद एक्स्ट्रा भी कर रहा और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक गेंद व्यर्थ डॉट गेंद के साथ हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ केसीसीआर कदरी के ऊपर। गेंदबाज नौफल दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि एक बार फिर से डॉट गेंद जस्ट चेंज ऑफ पेस धीमी गति की गेंद की थी पिछले गेंद के मुकाबले और गेंद लगभग बल्लेबाज के हाथ से टकराने के बाद वहीं पर गिर गई और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर और नौफल की ओर की गेंद इस बार गेंद को खेला ऑफ साइड पर गेंद गई ऑन साइड पर और रनआउट का खतरा चूक चुका है। यहाँ पर निशाना दागा था लेकिन निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 31 टू गेट 9 बॉल्स टू गो इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज इस बीच तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट नौफल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची रन्स नहीं मिलेंगे। बेहतरीन ओवर नौफल का साबित होता हुआ जिसमें सिर्फ 1 रन यहां पर प्रदान कर चुके हैं। अब तक नौफल एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर पैरों पर टकराने के बाद जस्ट चेंज ऑफ पेस है द लास्ट मोमेंट मेड बाय द बॉलर नौफल और रन इस गेंद पर नहीं मिला। 29 इनफैक्ट 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया है लॉन्ग ऑन पर और गेंद लपक ली गई है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिड विकेट एंड द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी। ओवर की समाप्ति एक गेंद बाकी है माफ की तो ओवर की समाप्ति और कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन ओवर नौफल का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किए थे और कम से इस ओवर में उन्होंने एक विकेट भी प्राप्त किया और यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा केसीसीआर कदरी को छक्के ही इस मैच में विजय दिला सकते हैं। 6 गेंदों पर 32 रनों की दरकार 32 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ केसीसीआर कदरी की पारी में। सुशांत गेंदबाज रघु इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अंतिम ओवर द लास्ट ओवर बिगिन इन केसीसीआर कदरी इनिंग्स। निस्संदेह पहले 5 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक दे चुके हैं गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज। फलस्वरूप इस वक्त गोरी यंग बॉयज बुलंदियों पर नजर आता हुआ अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली गेट रिड ऑफ हिम और पहली गेंद पर यह विकेट गिर चुका है और इसी के साथ ऐसा कहना पड़ेगा केसीसीआर कदरी की विजय की उम्मीदें काफी हद तक कम हो चुकी है। 32 रन चाहिए 5 गेंदों में, अगर 5 गेंदों में 5 छक्का भी लगाते हैं तो भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकेंगे और ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर गोरी यंग बॉयज की विजय निश्चित है अगर इन बचे हुए 5 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। 6 विकेट गिर चुके हैं 29 रनों के ऊपर और एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ यंग फ्रेंड्स और केएफसी कोडिकल के कप्तानों से और सदस्यों से कि अगले मैच के लिए वो तैयार है। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। दिलीप का आगमन यहां पर होता हुआ 32 रन चाहिए 32 टू गेट फ्रॉम 5 डिलीवरीज और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सुशांत गेंदबाजी इस वक्त
आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता सफल होते हुए, चूंकि गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन्स नहीं मिलेंगे। नाउ 32 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज, और गेंदबाज सुशांत एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दिलीप के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, क्रीज के कोने से ये गेंद इस बार एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और डॉट गेंद। अब लगभग 99% तक कहना पड़ेगा गोरियंग बॉयज की विजय निश्चित है। यहां पर 32 रन चाहिए 3 गेंदों में, जस्ट 32 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 3 डिलीवरीज। गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद चूंकि पैरों पर टकराई इस बार रन आउट हो चुका है। 29 for 7 and 32 to get from 2 balls. So 32 runs to get from 2 deliveries. Only and only just formalities remaining in this match. और नंबर 9 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, तो 2 गेंदे यहां पर बाकी हैं, और गेंदबाज सुशांत इस वक्त तैयार, गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बेहतरीन गेंदबाजी, और यहां पर रन्स मिलेंगे एक। 30 now for the loss of 7 wickets, and the last ball now remaining, and 31 to get from last delivery. Absolutely impossible task. सुशांत मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर, विकेट कीपर ने दूसरे प्रयत्न में गेंद को कलेक्ट कर लिया, और इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर गोरियंग बॉयज by 30 runs, defeating KCCR Kadri, and with that 30 runs victory, they are through to the next round of this competition. So the next match, one more good match is now coming up. Young Friends Urva will take over KFC Kodikal, and that match starts within just a short while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Mr. Satish in English, when the next match will going to begin within a just short while between Young Friends Urva and versus KFC Kodikal. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
So welcome back for the match number 3, and the match number 3 will going to start here between KFC Kodikal versus Young Friends Surua. After winning the toss, captain of Young Friends Surua elected to field first. And before the start of the match, I once again would like to give special thanks to the supporters who are really supported for the success of this cricket tournament. I would like to give special thanks on behalf of organizers to our beloved MLA D. Vedavas Kamath for the cooperation of the success of this cricket tournament, and special thanks to the founder president of Biruver Kudla, Uday Pujari, and special thanks to Ganesh Kulal, the corporator, Radhakrishna nominated corporator, Tilak Guru of Young Friends Surua, Sampath Shetty of Pranav Builders, Khadri, the corporator of Kadri, Manohar Shetty, and Anil Kumar, corporator from Kulur, Kiran Pai, Saukar M. Baba Pai, Petrol Pump, Lady Hill, Karnataka Bank Limited. So once again, on behalf of organizers, Ashok Nagar Women Wings, I would like to give special thanks to all the supporters and those who are sending best wishes for the success of this cricket tournament, BK Champions Trophy 2022. Meanwhile, we are heading towards match number 3. Looks like the Young Friends Surua as well as KFC Kodikal, though they are not having their regular playing 11. That's why the player like Naushad has got a big smile in his face, got opportunity to open the innings for KFC Kodikal after a long time. Jersey number please, striker jersey number please, turn 88. Vijesh will going to take the strike, and on behalf of Young Friends Surua, Zubair will going to start the proceedings. First ball, right arm over the wicket, balls, lovely, just pushing the ball down to point region, Ajmal, one of the best fielder in the side, fix the ball in his right hand, try to hit the stumps in the non-strikers, and ball misses stumps, and Vijesh survives from the run out. That brings Naushad into strike now. Right arm over the wicket, balls, full toss delivery, slashing that one, didn't got enough timing, but he got singled down to backward point region, and with that single scoreboard moves on to 2 on the board. Looks like Young Friends, they're not having a full strength here. They got only 10 players playing with the 10 players, just like KFC Kodikal as well. This time appeal for leg before wicket, umpire says not out. The impact is outside the line of off stump when ball hits front foot of the batter, the line which is outside the line of off stump, so that umpire not interested. Leg by call, 3 without loss of any wicket. Good shot anyhow there from Zubair. It's a good bowling. Right arm over the wicket, he bowls beautifully. Oh, chance of caught behind here, and then Manohar behind the stump. He's got a 2 attempt. Ball just had deflected from his right hand. Second attempt he could manage to hold the catch, and the batter has got a life. 4 without loss of any wicket. Zubair bowls a slower one. That was one of the best weapon of Zubair, especially in this particular season. He got lot of wickets from particular line, and a slower one. When he was bowling a slower one, he get lot of turn. The beautifully bowled there by Zubair, and wicket number first is back into pavilion of KFC Kodikal. Maybe most of the players of KFC Kodikal, they are playing at Surinje cricket tournament. It's going on, so that they are missing this tournament here in UCG cricket ground. KFC Kodikal, they are the champions of UFC trophy, RRP Memorial Trophy, defeating same Young Friends Surua in the final. This time lofted, chip that one, and down to deep long on region, and before the fielder from wideish long on to cut it off. Ample time for the new batter to complete a couple of runs. Jersey number 4, the most of the players of KFC Kodikal has a new pace, but still they managed to get 6 valuable runs in the first over of Zubair. 6 for the loss of 1 wicket.
little bit disappointment for the cricket lovers because by watching the pictures, everybody thought that it might be the match of the day number two top teams because both the teams are really battle hard for the victory in the 3 weeks back. RRP Memorial Trophy, one of the best final ever seen in the history of UFC RRP Memorial Trophy. The 45th RRP Memorial Trophy, one of the best final, I must say. The match is ended in a tie, and this time Ashwin brought in the attack, and straight away there a chance of run out here in the non-strikers end. And the wicket number second is back into pavilion. Coming back to that match, the final match played between Young Friends Urva versus KFC Kodikal, and the match is won by KFC Kodikal in a tiebreaker. Now the new batter is a backbone. Is a backbone of KFC Kodikal. Is just came into middle. Pawan, the owner of KFC Kodikal as well, one of the bestest, this ambassador for cricket as well, I must say, as he was just came into middle to bat against Ashwin. Beautifully bowled. Of course, he is a very good player, no doubt at all. Pawan, even he was not representing his team, but he was regularly practicing. He is in a touch, in a good touch. The very good right-handed batter facing Ashwin, going for the off drive again, little bit away from his body. The quicker one there from Ashwin. Ashwin not really looking for the big turn in this particular over, as he bowls some quicker deliveries outside the line of off stump, and there is no chance of any run. Ashwin from the far end, Urban Ohm's end. Right over the ball, him, cleaned him up. Ashwin picked up a wicket here, as Pawan just let the gap between bat and pad, looking for the big shot. And it's always going to be not that much easy when you face against and batting against Ashwin, the bowler like Ashwin. If you go in for the big shot, you have to play with the penalty for that. Wicket number 3 is back into pavilion. Just coming back to this match, I just mentioning about a lot of disappointment for the cricket lovers, because we can see in the YouTube channel as well, lot of comments coming here. Everybody is waiting for this match, but seeing that they are not having a regular players for KFC Kodikal, a little bit disappointment here, and that's why we are just missing one big contest, big match between these two top performer of the South Kenda district. Six for the loss of 3 wickets as Ashwin bowls. Beautiful delivery indeed. The new batter completely misjudging the line of the delivery. Akshu. From the far end, Ashwin, Urban Ohm's end, right arm over the wicket, balls, went for the big shot, appeal for leg before he could raising his finger. Ashwin picked up his second of this over. So KFC Kodikal are deep in trouble, lost their 4th wicket for just 6 runs. And Ashwin got a good start from his bowling, and altogether after winning the toss, Young Friends Urva and KFC Kodikal are 6 for the loss of 4 wickets, really struggling in the middle. And coming back to that tiebreaker, what a great tournament we had, and one of the best match I ever seen in this UCG cricket ground between these two teams. Top performer, even Young Friends Urva, they lost the match against KFC Kodikal, but they were on the heart of cricket lovers, and even everybody's really, that will going to be the big memory for the cricket lovers. That match ended in a tie and decided in a tiebreaker of 2 overs. Outside the line of off stump, going for the off drive, mistiming it, and there is no chance of any run. Zubair brought into attack. He becomes the man of the series of that UFC RRP Memorial Trophy for his wonderful bowling and batting performance. Top edge, straight to the hands of Ajmal. The wicket number 5 is back into pavilion of KFC Kodikal. Now competition between run and ball. Run and wicket. In fact, the 6 runs, they got 5 wickets back into pavilion. And Young Friends certainly they wanted to finish things off very quickly. And winner of this match will going to play against the winner of NM Japo versus Sneha Malamar.
So new batter, one more very senior most player for the KFC Kodikal walking towards the middle. Sandeep. Some players has got a chance here to perform against top teams like Young Friends Urva. Zubair balls outside and off stamp. A wide call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard was on to 7 on the board for the loss of a 5 wicket. Sandeep facing Zubair with the jersey number 777, one of his favorite number. Bowler's back drive, not for run. Score still remains at 7 on the board for the loss of 5 wicket. I request to all the players of NM Jaipur as well as Sneha Malamar, please report here and complete the formalities of signature. One more beautiful delivery there from Zubair, and Sandeep tried to reach the pitch of the delivery, got outside edge of the bat. Imtiaz, the fieldsman, then the short fine leg, is moving towards the short third man region and denying runs for KFC Kodikal. 7 for the loss of 5 wickets. Zubair again. Ball single-handed stroke from Sandeep, and Zubair has got a smile in his face because the kind of stroke which is attempted by Sandeep in that occasion lost his grip from the top hand, and he got a single. 8 for the loss of 5 wicket in the over number 3 in progress. Zubair again away from us. Right arm over the wicket balls. Beautifully bowled. Excellent delivery in the 8. So 3 overs completed after completion of over number 3. And KFC Kodikal are struggling a bit, and 8 for the loss of 5 wickets. Ashwin brought on the attack from the far end. Right arm over the wicket to Sandeep. Oh, copybook style of defensive stroke, blocking the ball. And maybe KFC Kodikal thinking about this man for the next year, for the 30 over match. The way that he is blocking the ball. Wanted him to be in the playing 11, Sandeep. Oh, nicely played, beautifully played that one off the back foot. Sandeep certainly the man is looking for in this match, as he was implementing a right strategy to play the deliveries of Ashwin off the back foot. Quite beautifully played that one mid wicket for a single. 9 for the loss of 5 wicket. Across the line, swinging his bat, Pradeep in the occasion is a regular player of KFC Kodikal. Pradeep, the very good fielder as well, and good bowler as well for KFC Kodikal. Not getting regular chances in the playing 11 for KFC Kodikal. Pradeep after the off stamp, one more dotted delivery here, and score remains on 10 for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress. Lovely piece of fielding there by the youngster of Young Friends Urva. Some players has got a chance here for Young Friends Urva as well. Not a regular player, but they got opportunity to perform for Young Friends. So one more young talented boy coming from the deep long off to fields the ball. So over number 4 completed. Completion of over number 4. KFC Kodikal struggling in the middle. 11 for the loss of 5 wicket. Coming back to that cricket tournament, I just want to take all cricket lovers to that day, which is one of the fantastic day of cricket. RRP Memorial Trophy, 45th RRP Memorial Trophy. When Young Friends has got 132 runs in the first innings, everybody thought that it might be a one-sided game, because the KFC Kodikal lost 3 wickets for just 6 runs. Then Shakir came in and he played one of the best innings of his life, and no one thought that it might be they're coming that much up close to the first innings, and 1 run lead for Young Friends Urva. That was one of the best innings, I must say, what Shakir has played. They got a 50 runs single-handedly and takes the first innings very close to the Young Friends Urva. Then Young Friends Urva got a 1 run lead. That second innings, KFC Kodikal, they bounce back very strongly with the bowling, restrict the opposition. 62 runs and 63 is the target in the second innings. Lovely shot, beautifully played that one. Again,
down to mid-wicket region. And that second innings, everybody thought that when it was a 63 is a target for KFC Kodigal, and it's going to be easy for KFC Kodigal. They're going to win the match. In that match, young friends, they bounced back with the bowling. Especially the Harshad picked up 2 wickets in the last 2 deliveries and makes the match a tie. Takes the match into tie. And afterwards, the tiebreaker of 2 overs rematch. And I think KFC Kodigal got 8 runs. They got a 9 target. And KFC won that match quite comprehensively in that tiebreaker. What a great match that was. Absolutely fantastic match. This time Pradeep, lovely shot. Driven down to mid-wicket region for a couple of runs here. With that couple of runs scored, almost out to 16 on the board for the loss of 5 wicket. A warning has been given for the batter Pradeep. He is a very experienced, but still not really learning. As in, you need to see that, not run in that protected zone. And right arm over the wicket, Shafiq balls, beautifully bowled. One more emerging star for young friends as far as his bowling line and length is concerned. He's got a very good bowling action, Shafiq. The line and length is very impressive. Bowling away from us. Right arm over the wicket to Pradeep, beautifully bowled, and wicketkeeper Manohar fails to collect the ball. By call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 17 on the board for the loss of a 5 wicket. Last ball remaining in this over of Shafiq. 17 for the loss of 5 wicket. And from the commentary box end, again, Shafiq right arm over the wicket. Balls went for the big shot, mistimed it. It's coming back to that match, and young friends, even that lost the match, but that was one of the best match, I must say. And KFC Kodigal will going to remember that victory for a long time. Defeating young friends was not easy, but even young friends Urva, they fought hard, and might be the little bit of reason behind that they are not that much of 100% fit in that particular match, because they won the match the day before. They won the match, the Gladiator Trophy, which the tournament played in Uppala cricket ground. Might be a little bit tired by playing that tournament. They becomes the winners, and the very next day they have to play 120 overs match. It's not so easy for young friends Urva. And but still, both the teams has really played a magnificent game of cricket, and that was the beauty of the long format of the games, 30 overs format of the games. And once again, I would like to give special thanks to organizer Urva Friends Cultural Association. It's not easy to organize that the long time, the 45 years of long time, 30 overs format of the games, more than 25 to 30 days of cricket, continuous cricket in usage cricket ground. And they made it successfully, the 45 years of UFC RRP Memorial Trophy. Meanwhile, runs are coming here in the form of extras. 21 on the board for the loss of 5 wicket. Imtiaz bowls. Pradeep went for the big shot. Flum, absolutely flum in front of wicket. Pradeep, after seeing that ball hits his legs, he's just watching where my back foot is. But seeing that my back foot is right in front of middle stump, then he's saying, yes, Vivek is judged very well. And it's a good decision. And he's just going back to pavilion now. 21 for the loss of 6 wicket. The Manohar has got a very good tournament in that 30-over format of the games. He is the one is responsible for the team to coming into the semi-final. Of course, he fails to contribute in the final, but till semi-final he played a very good game of cricket. Zubair played really very well. Ashwin also contributed, but this time chipped that one down to deep long on for an easy single. But I think the drawback for young friends Urva is bowling performance of Ashwin. He didn't pick the wickets because of he's got a little bit injury for his the bowling hand, right fingers, so that he couldn't manage to turn the ball a lot, and that's why he did not really bowl that 2 overs game. But Shakir and Akim, both played an excellent game of cricket for KFC Kodigal to win this title.
23 for the loss of 8 wicket. Wide outside run of off time. Ashwin chasing the ball down to deep third man region. They're coming back for the second chance of run out there. Probably that was a chance of run out in the non-Zegas end. Sandeep is still there in the middle. For KFC Kodikal, Sandeep went for the fixed shot. Just maybe was not impressed with my commentary because I just told that Sandeep is still there in the middle. The very next ball is back into pavilion. So that's it. 25 is the total score. 26 to win the match here for young friend Surua. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 26 the target in 6 overs and their innings now going to begin. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार नौशाद जो कि प्रमुख गेंदबाज केएफसी कोडिकल की ओर से इस वक्त गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक लेते हुए बासीत, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर मुबारिश इस वक्त क्रीज पर मौजूद है. और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त नौशाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत कोडिकल फेंसर करियर ने केएफसी कट्टे को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए. लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का. धीरे से अपने बाजुओं को खोलते हुए इस वक्त हवे में लहराते हुए अंपायर रोलैंड पिंटो ने इसे वाइड घोषित किया. रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. नौशाद की गेंद ऑन साइड पर बासीत के लिए. गेंद हवे में फीडर गेंद के नीचे आते हुए बच गए और यहां पर 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा. तो हवे में काफी देर तक गेंद थी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद यहां पर हवे में उछली टॉप एज पर टकराने के बाद, लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं.
और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाज नौशद गेंदबाजी करते हुए, और अगली गेंद, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम, मच स्ट्रेट लाइन, वांटेड टू प्रिंट दैट वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए गेंद को इस वक्त ड्राइव किया बासित ने, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। डिस्पैच्ड इट इन स्टाइल ऑफ द टोज, स्कूप किया था इनफील्ड क्लियर करते हुए, और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज बासित 7 रन बन चुके हैं। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। अंपायर रोलन पिंटो इस वक्त पेविलियन की ओर इशारा करते हुए, शायद कोई सीमा रेखा के अंदर दाखिल हुआ होगा, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पर इशारा किया कि जो दाखिल हुआ है वो सीमा रेखा से बाहर चले जाए। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, नौशद इस बार पैरों पर टकराई, और इस बार प्लम इन फ्रंट, शफलिंग अक्रॉस, और गेंद उनके फ्रंट लेग पर टकराई, उनका लेग बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा, और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। और सतीश, जहां तक सवाल है इस मैच का, तो 7 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। मैं समझता हूँ यहाँ पर कमबैक इस वक्त कर सकते हैं KFC कोडिकल के गेंदबाज, और मैं समझता हूँ 2 या 3 विकेटों का पतन निस्संदेह यंग फ्रेंड्स KFC कोडिकल को इस मैच में वापस ला सकता है। Exactly, Gopi. We are hoping that they can bounce back here. But question is rising, who is bouncing back here? Whether the players, the remaining players of KFC Kodigal, if they doesn't want to miss the performance, especially in the BK Champions Trophy, and the remaining players of KFC Kodigal, and which question raising here, which team they will go into play, because if they wanted to perform in this particular tournament. बिल्कुल सतीश आपने फरमाया, और यहाँ पर संभावना जरूर है। क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, एक कहावत है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और यहाँ पर KFC कोडिकल के रेगुलर प्लेयर्स जरूर नहीं है, लेकिन अन्य गेंदबाजों में भी वो क्षमता है कि वो यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को 25 रनों के अंदर रोक कर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें निस्संदेह कुछ चमत्कारी गेंदबाजी यहाँ पर अपनानी होगी। और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है, इम्तियाज का, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर। मुबारिश के लिए यह गेंद, पहली गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो 7 रनों पर एक विकेट गिर चुका है, और दूसरी गेंद इस वक्त लेकर तैयार दाहिने हाथों ओवर द विकेट। यह गेंद चिप किया, गेंद नॉट क्वाइट मिडल, 1 रन मिलेगा। पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, इम्तियाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अर्बन होम्स इनकी ओर से प्रदीप की अगली गेंद इम्तियाज के लिए, यह गेंद उछालना चाहा, और प्लम इन फ्रंट, 1 more विकेट फॉलन, इम्तियाज की पारी समाप्त, और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है लेग बिफोर यानी पग बाधा के रूप में। और यहाँ पर गेंद लगभग लाइन पर टिप्पा खाई थी, और इम्तियाज के पैर पर टकराई, और अंपायर विवेक को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है 8 रनों के योग पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 18 रन फार फ्रॉम देयर विक्ट्री। और यहाँ पर अजमल का आगमन होता हुआ, और देखते हैं यहाँ पर अजमल क्या करते हैं। कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तो अजमल सामना करने के लिए तैयार, और प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार चिप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए अजमल ने कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, इससे पहले कि डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड कर लिया गया। और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। प्रदीप एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए,
अजमल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, और ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई अजमल के, और ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर रन्स मिलेंगे और एक, तो 12 रन यहाँ पर बन चुके हैं, कोई बैकअप नहीं वहां पर। और इस ओवर की अंतिम गेंद अब बाकी, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड दिस इज द सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और अजमल प्रदीप की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार, लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन दिस ओवर। और इस बीच अंतिम गेंद लेकर प्रदीप तैयार अजमल के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार स्वीप करना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे। ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, 30 ओवर का फॉर्मेट, 45वां आर पई मेमोरियल ट्रॉफी, जो कि बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स वी हैव एवर सीन इन द 45 इन द हिस्ट्री, 45 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री इन यूएफसी कप। और अगर 30 ओवर के फॉर्मेट, जो कि अंडरआर्म क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहलाता है, अगर इतिहास के पन्नों को कुरेद कर देखा जाए तो कई बेहतरीन मैचेस हमें वहां पर मिलेंगे। और निस्संदेह यहां पर एक बेहतरीन मैच, मेगा फाइनल मैच, 45th आरआर मेमोरियल फाइनल मैच के अंतर्गत हमें यहां पर देखने को मिला। Exactly, Gopi. But even in this tournament also, Gopi, a lot of positive things happened in yesterday's match as well. One of the best sportsman spirit we are watched here. The NFC cricketers who was batsman Tilak, when umpire Roland Pinto just given a wide ball and appeal coming from wicketkeeper behind the stump is a caught behind. Umpire not really heard the sound, but Tilak himself is walking back to pavilion. This is one of the best the sportsman spirit, I must say, the true spirit of cricket shown there by Tilak of NFC Rua. बिल्कुल, क्रिकेट में सतीश ना सिर्फ क्रिकेटर बनना जरूरी है, बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी रखना जरूरी होता है। कोई बड़ा क्रिकेटर बनने से, कोई बेहतरीन बल्लेबाज या बेहतरीन गेंदबाज बनने से एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बनता है। निस्संदेह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसमें रहना जरूरी है। और कल निस्संदेह एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तिलक ने दिखाई थी एनएफसी रुआ की। तो इस तरीके का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सतीश हर खिलाड़ी को दिखाना चाहिए, चाहे मैच का किसी भी स्टेज हो, वहां पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को हर खिलाड़ी भूलना नहीं चाहिए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त एक्स्ट्रा क्विक कर रहा, और इस बार LBW नंबर 3 इन यंग फ्रेंड्स उर्वास इनिंग्स, और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 12 रनों के योग पर। ना सिर्फ सतीश अंडरआर्म क्रिकेट में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अगर इतिहास के पन्ने को कुरेदा जाए तो कई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के उदाहरण मिलेंगे। जैसा कि 1981 गोल्डन जुबिली टेस्ट भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, उसमें बॉब टेलर बेहतरीन तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे। जब वो आउट हुए तो आउट होकर पेविलियन वापस लौटते समय स्लिपर GR विश्वनाथ फील्डिंग कर रहे थे। उनसे उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं आउट नहीं हूं, ये आउट नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए GR विश्वनाथ ने उन्हें वापिस बुलाकर खिलाया, और वो मैच में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को विजय दिलाई थी 1980-81 गोल्डन जुबिली टेस्ट में। और उस GR विश्वनाथ को उस स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए बेस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द डिकेड का खिताब प्रदान किया गया था। तो यहां पर ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें अंडरआर्म क्रिकेट में भी देखने को कई बार मिली है, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी हमें और भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खिलाड़ियों से देखने को यहां पर और हर जगह अंडरआर्म क्रिकेट में मिलेगी। तो यहां पर यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, और लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हुए, और इस बीच 2 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, 3 रन मिलेगा। One more example for the best sportsman spirit, Gopi, that recently has happened. Nepal wicketkeeper Asif Sheikh gave an example of the spirit of cricket, isn't it? In T20 match against Ireland in Oman, the Sheikh had a chance to make a run out, and there was actually a collision that accidentally happened between batter and the bowler, and bowler accidentally hit the striker. That time I think he fell down, and bowler immediately released the ball and returns the ball into the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper Sheikh
is refused to make the run out because he knows that that was accidentally happened. That's one of the best true spirit of cricket, Gopi. बिल्कुल सतीश, वो मोबाइल की क्लिपिंग मैंने भी देखी है, मेरी मोबाइल पर वो क्लिपिंग भेजी गई थी। तो निस्संदेह जहां पर रन के लिए दौड़ पड़े थे गेंद बल्लेबाज, तो वहां पर उनके आड़े आ गए गेंदबाज और उनका पैर टकराने की वजह से बल्लेबाज गिर पड़े थे। जब वो खुद संभाल करके दौड़े स्ट्राइकर एंड किया, तब तक थ्रो पहुंच चुका था विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन विकेट कीपर ने सिर्फ एक्शन किया था, विकेट उन्होंने नहीं उड़ाए थे, गिल्लियां बेल्स नहीं उड़ाए थे। तो ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर जगह हमें देखने को मिलनी जरूरी है और इस उम्मीद अपेक्षा के साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं हमें और ज्यादा देखने को मिले, इस आशा के साथ हम इस मैच के अगले गेंद पर बढ़ते हैं। तो यहां पर 19 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और 1 रन जहां पर मिला और बिल्कुल सही बात, बहुत ही अर्थगर्भित बात आपने फरमाई थी सतीश, निस्संदेह काबिल तारीफ। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिए 1 रन के लिए। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. Absolutely, Gopi. You're just mentioning about a right point that if you want to become a complete cricketer, not only you have a talent of bowling and batting and fielding, but even the characters matters. The character of the players matters. Then only you become the complete cricketer. Just like Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, those who are really respecting the decision of the umpires. Even the some decision is going against the players like Sachin Tendulkar and Rahul Dravid. They always respect the decision of the umpires. Especially, I think I want to give an example. So many times Sachin Tendulkar got out because of bad decision from the West Indian umpire Steve Buckner. So many times, Gopi, so many times. Sometimes it looks like he's got a bat on to LBW decision, got a inside edge of the bat. But sometimes it's very difficult for the umpires to judge, isn't it? That time I think they're not having a DRS systems as well. So you need to respect the decision of umpires. But just imagine in underarm cricket, without having any technology, in the naked eye, they immediately, the fraction of second, they have to give the decision. That's why it's one of the very difficult field. As umpiring job is a very difficult field, Gopi. You need to give the respect for the decision of umpires. बिल्कुल, अंपायर के डिसीजन पर आपको विधेयता दिखाना जरूरी होता है, विनय दिखाना, कबूल करना जरूरी होता है उनके निर्धार को। और निस्संदेह सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे बेहतरीन उदाहरण आपने दिए सतीश। और डैरिल हार्पर इन 1999 सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, डैरिल हार्पर ने एक श्रृंखला में कम से कम 3 से 4 बार सचिन तेंदुलकर को लेग बिफोर विकेट और दूसरे कॉट बाइंड के रूप में 3-4 बार गलत आउट दिया था। एक बार तो सचिन तेंदुलकर बॉल गेंद चुकाने के लिए ऐसे घूम गए थे तो गेंद उनके बैक पर टकराई थी, तो उन्हें लेग बिफोर विकेट के बजाय बॉडी इन फ्रंट ऑफ द विकेट के रूप में आउट दिया गया था ऑस्ट्रेलियन अंपायर डैरिल हार्पर द्वारा। लेकिन सचिन टस से मस नहीं हुए और उस निर्धार को कबूल करते हुए उन्होंने पेविलियन की ओर अपने कदम बढ़ाए थे। तो ऐसे कई वाकयात, कई उदाहरण हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अंडरआर्म क्रिकेट का जहां तक सवाल है, तो अंडरआर्म क्रिकेट को के अंपायरों को ओवरआर्म क्रिकेट के अंपायरों के मुकाबले काफी चौकन्ने रखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर वक्त बहुत कम होता है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको निर्धार देना पड़ता है। और निस्संदेह मैं कहूंगा एक बेहतरीन अंपायरिंग यहां पर निभाते हुए श्रीमान रोलैंड पिंटो, श्रीमान हरीश पटेल और श्रीमान विवेक, और ऐसे कई अंपायर मंगलुरु के अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास में मौजूद हैं जो अपने छाप को जमाए हुए बेहतरीन अंपायर के जरिए। और इस बार अजमल का विकेट यहां पर गिर चुका है और निस्संदेह एक बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन बात आपने कही सतीश। Exactly, Gopi. If you look at the underarm cricket, the former cricketers, the players like Chetan of Reliance Cricketers, Jaipur, they are all the gentlemen. They never thought that it might be they are unhappy with the decision of the umpires. Every time they are showing their sportsman spirit. Even of course the same name Chetan of UFC Cricketers as also. They are fantastic. And even Kiran, the many names, Gopi, they are really gentlemen in the cricket is concerned in underarm. बिल्कुल सतीश, of course it's Santosh of Mangala Devi Cricketers, one more big name in a gentleman cricket. Of course it's Quresh of Reliance Cricketers. तो पहला दौर जब 25-26 साल बिफोर 26 ईयर्स मैंने कमेंट्री का करियर जब शुरू किया था, तब जो क्रिकेट था और आज के क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क है। तब क्रिकेट जो कि एक ट्रू स्पिरिट के साथ खेला जाता है, ये बात अलग है कि आज भी ट्रू स्पिरिट के साथ क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन जो टीम के ऊपर जो एक
प्रेम जो था खिलाड़ियों को, वो आज के दौर में कम हो चुका है। और पिछले क्रिकेटर्स में क्रिकेटर्स को एक आइडेंटिफिकेशन था, ये खिलाड़ी ये टीम का है। खासकर इकबाल जो कि गोरी का है, कुरेश रिलायंस का है, चेतन रिलायंस के हैं। तो जैसा कि सबसे बेहतर उदाहरण मैं दूंगा, छक्के के साथ इस मैच को फिनिश कर चुके हैं। और सबसे बेहतर मैं उदाहरण दूंगा सतीश हनुमान क्रिकेटर्स के हैं। तो ऐसे पहचान, ऐसी आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। और मैं समझता हूं आज कल के क्रिकेट में मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिना किसी धनराशि के, बिना किसी लालच में आकर अपने टीम के लिए एक सही क्रिकेट हर क्रिकेटर हर टीम के खेले। और यही मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में, आने वाले श्रृंखलाओं में। और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में अंडरआर्म क्रिकेट जो कि बुलंदियों पर पहुंचे और पूरे विश्व में नाम कमाए। क्यों सतीश?
So welcome back for the best match. I must say, NM Cricketers Jaipur takes on Sneh Malemar. After winning the toss, captain of Sneh Malemar, no hesitation in the mind of the captain that they're going to elect. They're going to field first here, and strategy is definitely going to be the right strategy. When you were playing the six over format of the games, each and every teams, most of the teams, they got a plan that they want to restrict the opposition for less score, so that may be a little bit easy for them to chase the total, and that was the main reason here. Whenever the small format of the games, most of the teams that loves to field first and wait and see how well that strategy will going to work out here for captain of Sneha Malemar. NM Cricketers Mangalore. Just like I'm mentioning about even that they didn't got a very good start for the season, especially the particular season 2021-22, but certainly they got a potential of bouncing back at any time. Maybe the reason, Gopi, the Sneha Malamar cricketers, NM cricketers Mangalore, may be having some deficit of experienced player, isn't it? Last season they got the player like Sadiq, one of the backbone of NM Cricketers Mangalore, is not really missing in this particular season. Even Tanvir is really one more experienced the player for the side of NM Cricketers Mangalore. He is also missing. But even Mansoor also, I think, is not regularly playing in this particular tournament. When you are missing that experienced player like Sadiq and Tanvir and Mansoor, all in sudden the young players. Even Abu is definitely going to be a big miss. Samir Abu, one of the really architect of NM Cricketers Mangalore as far as the performance is concerned. When you're missing that 3-4 figures for NM Cricketers Mangalore, it's not easy for the youngsters. Especially, of course, they got very talented players in the side like Atif, Riaz. Everyone is got a talent, but some match experience is very important, isn't it? Some have some mastermind. They need to have some mastermind. That was really missing in NM Cricketers Mangalore. Wait and see how they will going to bounce back in this particular match from the commentary box. And right now over the wicket, first delivery outside the run of off stamp. Nothing much to do with the delivery. The batters are watching the ball till the last moment and thought that it might be the delivery which is going to be wide. So he just left the batter out of the line and wide call by umpire. First one comes up here for NM Cricketers Mangalore. One without loss of any wicket. Here is second ball. Right arm over the wicket. Lofted that one. Chance here for the fielder. Jitesh is the safest fair of the hand. Just before the match, we are talking about the best sportsman spirit players in the present cricketer. Jitesh is the one who really always respecting the decision of umpires at any stage. And now he got the catch here from the deep extra coverage, charging in from the deep extra coverage and running to his front and taken a wonderful running catch. One for the loss of one wicket. So Gitesh has got a very good catch. Once it looks like that ball is going to land it very safely between extra cover and deep extra cover. But Gitesh was standing in deep extra cover, is running forward and complete a very good catch. Wicket number first is back into pavilion. Taufik, little bit disappointed. Taufik, I think he's got a very good tournament in the last season from the bat. That one in the particular cricket season, he couldn't manage to talk with his bat. This is really a big blow for NM Cricketers Mangalore. As the opening batters fails to contribute from the bat. And now Altaf, one more big name I must say. He's missed out 1 or 2 years, I think so, in the underarm cricketers, especially in South Kent district. As a search of his job, he's went to Gulf countries, so he missed out so many big tournaments. But it's nice to see him in NM Cricketers Mangalore, and wait and see how Altaf will going to contribute here. Bowling away from Srikanth, right arm over the wicket, beautifully bowled. Almost that ball is nipped back into the batsman, hurried on to the batter, and Altaf managed to send that one down to deep long. And Altaf is a very good striker of the ball, very decent player, very disciplined player. And now he off the mark with a single. 2 on the board for the loss of 1 wicket. Irfan, number 3 batter for NM Cricketers Mangalore. Srikanth bowls, right arm over the wicket, chip that one quite deliberately, uppishly in the air. You know exactly there is no mid off at all. That's why Irfan thought that it was a safe stroke to play. Even the ball is in the air, but very safely played down to deep long off region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Srikanth again, bowling away from us, right arm over the wicket, chip that one. Altaf, lovely catch. One more good catch has been taken in the widish long on region. Jersey number 666 taken a wonderful catch, very low down to him. Rakesh, the fielder there in the deep long on.
Ragesh, it is correction. The fielder in the wideish long on takes a very good catch. The two catches taken there by the fielder of Sneha Malamar, one by Gitesh, and now one from Ragesh. Rakesh, the fieldsman, takes the catch. Once Atif chipped that one, the wrist work comes into play. Helicopter shot there from Altaf, but he did got that much of placement what he's looking for. But suddenly it looks like ball is definitely going to falling short of that fielder. And Rakesh running hard from the deep wideish long on region and completes that wonderful running catch. And Sneha Malamar has got a very good start. Shrikant producing a two vital breakthrough here for Sneha Malamar. 3 for the loss of 2 wickets. NM Cricketers Bangalore struggling in the middle. This time again went for the cut shot. Chance of run out. Yatin is in the picture. If it is a direct hit, I think going to be a curtain of the innings of Irfan there. Yatin, look at the effort from him. Absolutely fantastic piece of fielding, I must say. After that, the batter struck that one down to cover point region. Look at the Yatin's effort. Pick the ball on action, releasing the ball, and the ball just missed the stump. If it is a direct hit, I think it's definitely the end of innings of Irfan. 4 for the loss of 2 wicket. Shrikant, the final time in this over. Away from us. Right arm over the wicket. Riaz drives that one. Little bit making room to play the shot. Lovely looking drive there from Riaz. Just opening a face with the full face of the bat. Moving towards his right. Moving towards his leg stump. And making a little bit room to play the shot. Gets the room. Gets the placement. Picked up a single. 5 runs came from that over. Excellent over there from Shrikant. I don't think the captain will be much bothered about that 5 runs because he picked up a 2 valuable wickets. That's very important in this particular over. Shrikant dismissed Dangerman, Tawfiq and Altaf back into pavilion. And NM Cricketers Bangalore, they got the shackling start in the first over. They 5 for the loss of 2 wicket. From the Urban Ohms and Gitesh brought into attack. One of the best all-rounder, I must say, in present cricket is concerned. Technically very sound player, the batsman. Even useful bowler as well, and excellent fielder. Altogether is a very complete cricketer. Gitesh will go into ball from Urban Ohms and represents Vishal Kodikal in a 30-over format of a game. Nice looking drive there from Riaz. He's so good in it. Perfect technique in the negation from Riaz. Just watching the ball till the last moment. Higher conditions, perfect in the negation. And front foot rightly coming to the pitch of the delivery. And he picked up a single. This time he lofted that one quite beautifully, Riaz, but didn't got enough bat onto that, enough power in that in fact. And that's why the fielder in the wideish long on managed to cut it off just inside the boundary line. And ample time for Riaz to complete that couple of runs. 8 for the loss of 2 wicket. Irfan will be correction. Riaz in the non-strikers and Irfan is a new pace, looks like, in the playing 11 of NM Cricketers Bangalore. I didn't watch him performing for NM Cricketers Bangalore in the previous season. This time lovely, absolutely perfect cricket there from Irfan in the negation, leaning into the drive and make the placement down to cover point region for a easy single. That's so really both the batters are now playing as per the condition required. They're rotating the strike, not taking that much of risk at all. They know that they lost the 2 wickets, losing 1 or 2 wickets here onwards, definitely putting them into trouble there. Gitesh this time looking for a delivery which is I wanted to ball outside the line of off time, but ball going away from the right-hander batter, wide call by umpire. This time beautiful shot there from Riaz. Look at the placement. Yatin chasing the ball just like the cat chasing a mouse, and he's just able to cut it off inside the boundary line. 3-4 yards inside the boundary line, and ample time for Riaz to complete that couple of runs. Excellent placement. Once again, quite intentionally chipped that one. If you see that it is a loose stroke, I don't think it's a loose stroke. He's deliberately played that one. You know exactly the fielder is inside the ring. There's no protection is given in the deep
for him. So he played that one deliberately down to deep cover point region for a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 12 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Gitesh from the far end, right arm over the wicket, went for the reverse sweep, missed it completely. One wicket keeper Pratap fails to collect the ball, but nothing much bothered about that. Kiran is a very good safe pair of hands in the short third man region, short final region. In fact, fields the ball, and there is no question of any run at all. Score remains on 12 for the loss of 2 wicket. Gitesh balls this time far outside and off time, but Riaz premeditated. He wanted to play the slog sweep shot in the legation. That's why Gitesh balled that line, but that ball going further away. The second wide of that over. Scoreboard now moves on to 13 for the loss of 2 wicket. Again, they're looking for the single. One more addition to total as a productive over, I must say, here for NM Cricketers Mangalore. In that particular over, they got some runs, and 14 means they got 8 runs in that particular over of Gitesh, and 2 wides as well. Altogether, good comeback there by NM Cricketers Mangalore in this particular over. Both the batters are really batted as for the condition required. Now, I think it's a better run rate. Even they lost the wicket number 2 in the first over, but they are very, very steady in the second over. Very much focused on the rotation of strike, and they got valuable runs in the second over of the power play. The 14 for the loss of 2 wickets. Just I'm mentioning about this one new face in the batting department of NM Cricketers Mangalore. Irfan is from Mallur. So the proud moment for of course our one more member of DK commentator group, Majid Mallur, the Kannada commentator, is from same area, Mallur. As Irfan is representing NM Cricketers Mangalore, definitely is a proud moment for the cricket followers of Mallur, representing one of the top teams. This time, lofted that one, Riaz. I don't think he'll go to get the distance right, but he got the distance. Can you believe this? This is an effortless stroke coming from the blade of Riaz. This is the beauty of this man, Riaz. Sometimes hits the ball effortlessly. And once I thought that when ball is left the bat of Riaz, I am just having a question, raising a question in mind. Will it go into clear the fence or not? But that ball really travels. That was effort-like cricketing stroke there from Kiran. Against the turning delivery of Kiran, hitting that kind of cricketing stroke, I think it was a fantastic technique here from Riaz. This time tipped that one upishly but quite safely down to deep along on region for an easy single. Scoreboard moves on to 21 on the board for the loss of 2 wickets. All in sudden, we can see that NM Cricketers Mangalore, they back very strongly. Kiran, right arm over the wicket, ball Irfan looking for the expansive off drive, but against the turning of delivery of Kiran, it's not that much of easy, and he missed it completely. Wicket-keeper behind the stump did the rest, and there's no chance of any run at all. Kiran bowls us. Oh, what a delivery! This is the one of the weapon. Gopi, it was a one of the weapon because the same bowler in a 30 over format game, I am also become the bowl. Is bowling the same line, same delivery. Even if you're having any technique of defending by putting his front foot, but still you need to be very careful to watching that turn of the delivery, because of that ball is a massive turn. That was a massive turn. That's one of the weapon of Kiran. Sometime for new players, they doesn't know the strength of this man Kiran. Sometimes he's bowler big off cutter. What a fantastic delivery that one. Riaz, Irfan did correction. He's back into pavilion. The beauty of the delivery from Kiran. One of the best off-cutter I have ever seen. Of course, in underarm cricket, there are a lot of off-cutters. There are a lot of the bowlers. Mahesh of Young Friends, and of course, Mohan Suvarna, one of the best bowler as far as underarm cricket is concerned. They got a lot of turn, the off-cutter, and even Chetan, the big off-cutter. They can bowl some big off-cutter as well. And a lot of names we can find. And here is Kiran again, bowling away from us. Right arm over the wicket. Lovely pedal shot there from Atif. One more big name, big A, must say, in the batting department of NM Cricketers Mangalore, Atif. And now all responsibility in the shoulder of these two, the batters. One of the most very, very talented players as far as NM Cricketers Mangalore is concerned. These two batters, the players have to play a big role here. Lofted at one, but not quite get hold of that one. Chance of run out in out. Ciao!
Now, umpire want to see that whether the ball hits the stump or the wicket keeper he got whether whether the wicket keeper had a hand onto that or not. That's what umpire want to see. If it is a direct hit, it is better definitely going to be a short of crease. If it is a ball is not involved before the ball hits the stump, if the wicket keeper hits the stumps, then it's a question raising whether it's out or not out. But umpire Roland Pinto will go into examine here through the technicians of V4 24/7 channel. Of course, throughout the 2 days, all the technicians of V4 24/7 they've done a great job, and they got a fantastic live telecast of this cricket tournament. Leading from the front, that the cameramans of V4 24/7, Pawan, Nishant, Nagesh are done a great job as a cameraman, because they got an angle, the two angle we can see the right and left of our cricket ground. This is not an easy job, because in this hot condition, having a camera in your hand and covering all activities of cricket in cricket, not an easy. And in the mixing department, Mani, one of the most experienced technicians of V4 24/7, done a great job in the mixing department, and as a computer scorer, Dhanraj done a great job. So altogether, it's a teamwork of V4 24/7. They got a very quality coverage of this fantastic BK Champions Trophy 2022, proudly organized by Ashok Nagar Women's Wing. Now, in a different angle, we are trying to get some good result, because everybody knows that the cricket is a gentleman's game. We want to give a fair decision as much as possible. Sometimes it's very difficult, isn't it? Sometimes it's very difficult. Even in international cricket, sometimes we are watching, there are a lot of example. There are a lot of errors. And under this condition, giving the decision, having a limited technology we are having here, and it's always going to be a challenge for third umpire and even for the technicians of V4 24/7 channel. Now, decision coming from umpire, third umpire, it's out. Direct hit. It's a direct hit, because the looks like the hands of Pratap are just behind the stump. When ball hits the stump, then it's then ball hits the stumps or hands of wicket keeper, and that was a great decision, absolutely great decision. I think a round of applause is required here for the technicians of V4 24/7 as well as for the third umpire. Excellent decision. So over number 3 completed. After completion of over number 3, NM Cricketers Mangalore, they are searching for the right track. 22 for the loss of 4 wicket. And Gopi, right time for you to call on Mike, because it's a very interesting game of cricket, isn't it? So far, it's looked like after that got a slow start, shackling start. They lost the wicket 2 in first over, NM Cricketers Mangalore. Then they got a recovery in the second over. They got some runs against the bowling of Geetesh. And in the third over, again, Sneha Malamar, they bounce back, because they got the wicket of Riaz, one of the most dangerous batsmen, and he got one magnificent 6 down to straight long on region. Looks like he's going to be he will go into very danger for the opposition. Sneha Malamar, his wicket definitely going to be a big blow for NM Cricketers Mangalore. एग्जैक्टली सतीश, रियाज का विकेट यहाँ पर गिर चुका है. रियाज कुछ हद तक डेंजरस नजर आ रहे थे, स्नेहा मलेमार के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, और उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है रनआउट के रूप में दुर्भाग्यवशात. और यहाँ पर स्नेहा मलेमार को बाउंस बैक करने का मौका जरूरी है. लेकिन पहले 3 ओवर में बराबर का टक्कर हमें यहाँ पर देखने को मिला है इन दोनों टीमों के बीच में. 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर एनएम मैंगलोर यहाँ पर बना चुका 3 ओवर की समाप्ति के बाद. और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त आतिफ, माफ कीजिए, बल्लेबाज आतिफ इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी प्रसाद इस वक्त शुरू करते हुए. पहले दौर का अंतिम मैच बी पूल का यहाँ पर खेला जाता हुआ बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत आतिफ ने गेंद को रिवर्स शॉट खेला है. गेंद पहुंचती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 23 रनों पर. इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट.
एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ओवर। और जहां तक सवाल है प्रसाद का, तो प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इरशाद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्पिन गेंदबाजी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 24 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एनएम क्रिकेटर्स को कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है। तो ये गेंद आतिफ के लिए, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, एक बार फिर से क्वाइट मिड विकेट। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज प्रसाद अगली गेंद लेकर तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद तक पहुंचे और गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप कर दिया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो पहुंचने से पहले बल्लेबाज अपना कदम क्रीज पर खींच चुके हैं। और 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक प्रसाद का सवाल है, इस श्रृंखला के पहले लेग स्पिनर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और एक बेहतर गेंद लेंथ ऑफ लाइन के साथ वो इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को उन्होंने फेंकी थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 26 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से प्रसाद की गेंद आतिफ के लिए, गेंद को ड्राइव किया, इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑन पर, नॉट मोर देन सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। तो एक बेहतर ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है प्रसाद का, जिसमें 5 रन उन्होंने प्रदान किए। और जहां तक सवाल है ओवर्स का, तो ओवर्स 4 यहां पर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच इस बी पूल का दूसरे दौर का पहला मैच है। द फर्स्ट मैच ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ the pool B will be played between Team Elegant versus Sri Mangala Devi cricketers, and because of that I request all the players of these two teams, one more good match is now coming up right after this match. Team Elegant will meet Mangala Devi cricketers in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहां तक इस मैच का सवाल है, गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए श्रीकांत नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए अपना दूसरा ओवर, और फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार आतिफ के लिए, गेंद को उछाला है उन्होंने, लेकिन गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। गेंद को उछाला जरूर और स्ट्रोक्स में भी ज्यादा दम नहीं, और लॉन्ग ऑन फील्डर पहले ही गेंद की ताक में थे, गेंद उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ ये विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है। 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रारंभ हो चुका है और धीरे धीरे स्नेहा मालेमार के गेंदबाज यहां पर अपनी सही पटरी को पकड़ते हुए और अपने सही पटरी से कुछ हद तक इस वक्त उतरता हुआ एनएम मैंगलोर। पहले 2 या 3 ओवर में उनकी रफ्तार काफी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए स्नेहा मालेमार ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में इस वक्त कर लिया है। और देखना यह है कि एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों का कि वो किस तरह इस संकटमय परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। श्रीकांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इरशाद सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद श्रीकांत दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, डिफ्लेक्शन और गेंद पहुंचती हुई डीप थर्ड बैटर, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। सिर्फ 1 रन मिलेगा। जैसे ही तिरछे बल्ले के सहारे रिवर्स शॉट खेला था बल्लेबाज ने, शॉर्ट टर्न फील्डर ने पीछे की ओर दौड़ना शुरू किया और अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचे 20 गज के दायरे के बाहर और एकमात्र रन इस गेंद पर बल्लेबाज और टीम को हासिल होता हुआ। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद चिप किया इस वक्त जायद ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में, इनटू द गैप, कम से कम 1 रन मिलेगा। 1 ही रन से बल्लेबाज को यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। गेंद के लाइन पर लाते हुए बल्ले को लाते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप किया था हल्के से लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे और 1 रन दोनों बल्लेबाज बटोर कर पूर्ण कर चुके हैं। रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और यहां पर एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज रन बटोरने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए। एक्स्ट्रा क्विक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेटर लाइन एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा।
V4 24/7 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं इसी श्रृंखला का यूट्यूब पर। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, पॉइंट पर गेंद पहुंची और कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने अपनी पीछे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया था जब बल्लेबाज ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए अपना बल्ला तिरछा अड़ाया था और फलस्वरूप एक रन मात्र बल्लेबाज को इस गेंद पर हासिल होता हुआ। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, थोड़ी सी मिसफील्ड, और इस बार विकेट कीपर चूक चुके हैं और बल्लेबाज, और इस बार यह विकेट गिर चुका है। फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय शॉर्ट फाइन लेग फील्डर किरण। जैसे ही विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, गेंद के पहुंच से बाहर निकली, किरण ने दौड़ना शुरू किया और अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से फील्ड करते हुए तुरंत गेंद को रिलीज किया और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ और आखिरकार इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत यह रनआउट यहां पर हो चुका है और विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है 31 रनों के योग पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 5 ओवर की समाप्ति, 31 रन बच चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा टीम एलिगेंट और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के सर्व सदस्यों को, कृपया स्टेज पर संपर्क करें और ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही दर्ज करें इस मैच के अंत से पहले और टॉस प्रक्रिया भी पूर्ण करें। और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ तो वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर बढ़ते हुए 09 नंबर जर्सी पहने हुए बल्लेबाज फैजल इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए प्रसाद फील्डिंग में जमावट करने के बाद तैयार, लेग स्पिन गेंदबाजी के जरिए अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, स्वीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप किया था, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। अंतिम ओवर होने के बावजूद रन से सिंगल्स के रूप में यहां पर बनते हुए और निस्संदेह कुछ करारे स्ट्रोक्स की एनएम मैंगलोर को सख्त जरूरत अपनी टीम के रन की गति को एक्सेलरेट करने के लिए। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर थोड़ी से पीछे मौजूद, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा और नहीं, थ्रो अभी भी नहीं पहुंचा है और बैकअप हो रहा है वहां पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करेगा। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए फील्डर को पहले ही भाप लिया था कि पीछे खड़े हुए हैं, हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया था इस वक्त और अंतिम क्षण में 2 रन बटोरने में सफल। बेहतरीन इंटेलिजेंट क्रिकेट अपनाते हुए बल्लेबाज इस गेंद पर और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रसाद हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त स्नेहा मलेमार के कप्तान और एक बार फिर से प्रसाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फैजल के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को खेला मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए। काफी ऊंचा थ्रो आया था और अंतिम क्षण में बल्लेबाज बच चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। और प्रसाद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इरशाद के लिए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। प्रसाद, ये गेंद रिवर्स शॉट डेलिकेट, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रन। अंतिम ओवर में एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज प्रसाद बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ प्रदान इस वक्त नहीं कर रहे कि वो खुलकर स्ट्रोक खेले, लेकिन इस बार स्ट्रोक खेला था लेकिन सीधे पहुंची लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में। इस बार छक्का या चौका लगाने का प्रयास किया था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर गेंद का इंतजार कर रहे थे सीधे उनके हाथों में गेंद पहुंची और इसी के साथ यहां पर एक विकेट गिर चुका है। तो यहां पर जायद इरशाद माफ कीजिए आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है। 37 for 7 नाउ, जस्ट 1 बॉल लेफ्ट इन दिस इनिंग्स फॉर एनएम मैंगलोर और अंतिम गेंद यहां पर बाकी और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम गेंद में एनएम के बल्लेबाज
कितने रन बटोर पाते हैं। तो प्रसाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फैसल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज मुजीब इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद, और प्रसाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फ्लाइटेड, पैरों पर टकराई, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ पारी के अंतिम गेंद पर उनका 8वां विकेट गिर चुका है और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर से समाप्त हो चुके। सो द इनिंग्स इज अप फॉर एनएम बैंगलोर, दे फिनिश्ड विद 38. 37. They finished with 37 for the loss of 8 wickets in their stipulated 6 overs, and they set a victory target. Welcome back. Thank you very much, Gopi. So, 38 is the target. It's just a competitive total here for Sneha Malamar to win the match against NM Cricketers Mangalore. 38 to win the match in the 36 deliveries. 6.33 runs per over is the required run rate of Sneha Malamar to win the match. Wait and see how well Sneha Malamar will going to chase this total. And NM Cricketers Mangalore even a little bit disappointment in the batting performance, and they have to bounce back with their bowling performance if they wanted to win the match. From the commentary box, and Mujib will go into start first over. Right arm over the wicket, bounce. Yatin drives that one right in the gap between bowler and short extra coverage, and there's a huge gap between that. That ball went towards the deep long off region for an easy single. With that single, first run comes up here for Sneha Malamar, and Yatin off the mark with that single. Left and right combination. Mustafa
The very useful cricketer Mustafa is a very busy customer as far as underarm cricket is concerned. A very good player and very good in the square of the wicket and behind the wicket. And wait and see along with Yatin how well they managed to give the start here for Sneha Malamar. Mujib bowling with a short run up, just 3-4 steps behind the umpire Vivek, bowling right arm over the wicket, wide of the crease. Improvisation quite nicely down to define leg region. There is a protection there in the deep. Riaz, the fieldsman there in the deep square leg region, quickly moving towards his right and fields the ball at the ample time for Mustafa to complete the single. So with that single, both the batters off the mark, 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. 6.33 runs per over is the required run rate. Mujib again bowling away from us to Yatin. Yatin paddled that one down to short fine leg region. Good running between the wicket. Just like I mentioned about Mustafa, he's a very good runner between the wicket. And immediately when Yatin went for the sweep shot, he started his run from the non-striker's end, so that he complete that quick single so easily. 3 without loss of any wicket in the over number first in progress. Mujib once again back to his bowling mark. Right arm. There's some lovely shot. Beautifully one right in the gap. No fielder in that region. And that ball went towards a deep backward square leg boundary for 4 runs. A lovely looking on drive here from Mustafa. Look at that the line which is on the middle end of stump, and you know exactly Mustafa where the fielder. One short fine leg is there, one deep mid wicket is there. Between that is a huge gap. Once he beat that infield, the square leg, and certainly it's no chance for the fielder and the deep fine leg to stop that boundary. Welcome boundary here for Sneha Malamar. Once again, he tried to repeat that one. Ball is in there. Ishad taken that one, but umpire says it's a leg bite. This is what you can, like what you say. There's a level of confidence here for the umpire. Everybody's up, but umpire knows that I am here to give the good decision, best decision, and lifting his leg, saying that ball missed the bat, and leg by call by umpire. Maybe that once it's asking for leg before first, but once the ball is in the air, then they're converting that appeal into catch, and both appeal is denied by umpire, rightly so. Driven straight to the hands of Medan. That's the wicket what NM Cricketers Mangalore wants. The wicket of Yatin is back into pavilion. Tried to go over the top of Medan fielder, but Yatin didn't got that much of elevation what he was looking for. Tried to go over the top, and the ball went straight to the hands of Medan region. NM Cricketers Mangalore, they got a very important breakthrough here, and Sneha Malamar have lost their very good wicket, the big wicket. Yatin is back into pavilion, 8 for the loss of 1 wicket after completion of over number first. Just coming back to the very disciplined team as far as underarm cricket is concerned, Gopi. And in our days, 90s and between the middle of the 90s and 2000, the Mangaladevi cricketers, one of the very disciplined team, and same like Mangaladevi cricketers in the present cricket, Sneha Malamar, Gopi. Each and every players, they really has got a very true spirit of cricket, and very decent, very disciplined. The body language, what we want to see in underarm cricket. And 8 for the loss of 1 wicket. Now the new batter just came into middle is Gitesh, one of the fantastic and fine all-rounder for the side of Sneha Malamar. Very cool customer, very cool and very calm customer as far as underarm cricket is concerned. And now his appearance is very important. His appearance for a little bit of at least 3 to 4 overs is very important here for Sneha Malamar. If they wanted to chase this 38 to win the match, seems to be it is a very small total to chase down. But NM Cricketers Mangalore, everybody knows the potential of NM Cricketers Mangalore. They can bounce back at any time, and that's why they brought Riaz into attack from the far end. He's a wicket-taking bowler for the side of NM Cricketers Mangalore. From the Urban Homes end, bowling from the far end. Bowling right arm around the wicket to Mustafa. Mustafa went for the, along with the stroke, he went for the single. This is what a beauty. The features of this man, Mustafa. No hesitation at all in a mind. Whenever he is looking for the run, he is running very confidently in the middle. Even the ball is went straight to the hands of that fielder, but you know exactly can complete the run because he is the one is running towards the danger end. He is taking initial risk.
and calling Gitesh for that single, and Gitesh responded for that single. 9 for the loss of 1 wicket. Short mid off, short cover point, backward point, short third man, and deep extra cover are the fielder for Gitesh in the offside region. Short fine leg, short square leg, short mid on and deep mid wicket in the onside region. Lovely delivery there from Riaz, but I think umpire taking his own time, seeing that ball is deviating, and getting an extra turn. Because of that, umpire Harish Patil seeing that line of that one and out of the reach of the batters. Scoreboard moves on to 10 on the board. 10 for the loss of 1 wicket. So over number 2 in progress. Riaz maybe not happy with the decision, but umpire Harish Patil know exactly. He's got a 25 years of experience in the field of umpiring. Lovely shot, even though he didn't time it one properly, but still he managed to get the single down to short extra cover region with that single. Gitesh he's off the mark, and scoreboard now moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket. The second and last over of the power play is going on here. Riaz from the Urban Homes end, searching for the wicket, searching for the dotted delivery. Right arm over the wicket. This time again, lovely shot that for Mustafa. Square of the wicket. Square driving that one. Ball running down to deep backward point region before the fielder to run back and fields that one. Ample time for the batter to complete the 3 runs. Lovely looking drive there from Mustafa. That was a really off volley. The width is offered. Off volley outside the run of off stump. Mustafa immediately square driving that one between backward point and cover point. Got the placement right, and even the boundary is restricted, but 3 valuable runs taken there by both the batters. 14 on the board for the loss of 1 wicket. NM Cricketers Mangalore chasing 38 to win this match. Riaz from the far end, changing his angle, now bowling over the wicket to the right-hander batter Gitesh. Gitesh once again square driving that one off stop by the fielder in the back short cover point region. But he couldn't manage to stop the single from 2 batters. Runs are coming very freely in this over for Sneha Cricketers. Sneha Malamar. 15 on the board for the loss of 1 wicket. 38 is going to be a target. 23 more runs required for the victory. The over number 2 in progress. Lot of changes in the field, as Mustafa is a very good field the player behind the wicket. That's why the Atif wanted that fielder to place in the fine leg region. That was improvisation. That was what he wanted to play that one. One of his favorite technique of getting the runs. Mustafa just moving to his towards off stump and try to get that one very fine to fine leg region. But this time he missed the ball completely from his bat. Riaz to Mustafa, went for the big shot, not quite getting hold of that properly. Good piece of fielding there, but he's on his follow through, try to make the run out. But again, Gitesh very quick between the wicket, completes the single run. So over number 2 completed. After completion of over number 2, chasing 48 to 38 to win this match. Sneha Malamar looking in a commanding position. They are in a driver's seat of winning this match. 16 on the board for the loss of 1 wicket. Just coming back to the equation, 22 more runs required for the victory in remaining 24 deliveries. So asking run rate almost coming down, and less than 6 runs per over. Once it's less than 6 runs per over the required run rate, looks like the chasing team always they are in the upper hand. That's why it's so important here for NM Cricketers Mangalore to have one good over. The wicket taking over, economical over is much required if they wanted to back into this game. But so far both the batters really playing as for the condition required, not really taking any risk for hitting a big shot. They knows that no need to panic at all. They're not chasing a 40 plus runs. They're only chasing 38 to win this match, and both the batters are looking for the rotation of strike, and they're getting the runs by placing the ball here and there. Atif fails to contribute from the bat, but he can contribute from the bowling. Very effective bowler for the side of NM Cricketers Mangalore. Wait and see how well he managed to give some breakthrough here for NM Cricketers Mangalore. 16 for the loss of 1 wicket. Atif bowling around the wicket. Right arm bowls, beautifully bowled, excellent delivery indeed. Misjudgment there for Mustafa. He thought that ball is a little bit get an extra turn there, but a little bit straighter one here for Atif. And Mustafa completely missed out that delivery from his bat. 16 for the loss of 1 wicket. Now he's calling one fielder from deeper third man region to come towards a deeper cover point region. But seeing that
the intention of the batter when in the previous delivery he wanted to play that down to cover point region, so that he is asked that fielder to come towards a deep cover point. Of course, that fielder is situated for the reverse sweep for Mustafa. Now Atif is very confident that he can prevent the reverse stroke from Mustafa. That's why he wanted that fielder from back point to deep cover point region. Slower one, absolutely very good change of pace, but wicket keepers not really up to the mark. They are overthrow. Good backup by the fielder there. So frustration time here for bowler and for the captain of NM Cricketers Mangalore, because that was a fantastic delivery, I must say. Lot of effort required when you wanted to bowl the slower one, and he managed to beat the bat. Wicketkeeper fails to collect the ball. Definitely will going to frustrate the bowler. 17 for the loss of 1 wicket. Now different field set for Geetesh, the right-handed batter. So the fielder from short mid wicket going back to deep mid wicket. One at deep backward square leg, one at deep extra cover, and one deep cover point region. Deep long off, in fact, actually, not deep extra cover. There is a short extra cover, in fact. Short third man and short fine again, short mid wicket. This time that was a good delivery there from Atif. Geetesh a little bit shuffled across the line of the delivery, tried to flick that one of his legs. Ball just passing around his legs. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. 17 on the board. So far it's a very good over from Atif. Drives that one, got outside edge of the bat. No problem whatsoever as far as the single is concerned in between. So with that single, scoreboard moves on to 18 on the board for the loss of 1 wicket. 18 in the sense, then another 20 runs required for the victory. This is the over number 3rd in progress. Now, very interesting equation. 20 balls remaining, 20 runs required for the victory. That's only because of this is a very good over from Atif so far. Right arm round the wicket. Again the slower one. This time Mustafa wanted to play the reverse sweep. As the fact that that is a slower one, he didn't got enough timing for that reverse sweep. One more addition. 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. 19. Half of the job is completed. And half of the job is required here for Sneha Malemar. 19 they got, and 19 they have to get in run 19 deliveries. Slower one again. Negotiated very well by Geetesh. Picking up that slower run. Look at the Mustafa. This is what the feature I already mentioned. Is a very good runner between the wicket. Once again he is running towards a danger run. Pushing Geetesh for the second run. He is running towards a danger run. No problem whatsoever as far as Geetesh is concerned. He is not really running towards a danger run, but Mustafa is running towards a danger run. He is taking the risk to come back for the second. Excellent running between the wickets. So 3 overs completed after completion of over number 3, chasing 38 to win the match. Sneha Malemar looks like, Gopi, they are on almost their driver's seat of winning this match, because they had lost only 1 wicket. And at the more than anything else, they got 9 wickets in hand. These two pair, the partnership is really growing very dangerously against NM Cricketers Mangalore. Now 17 to get, 18 balls remaining, Gopi. Still, I think the NM Cricketers Mangalore has got opportunity to bounce back. And if they wanted to bounce back, they have to break this partnership, isn't it? Once it started to break the partnership, once they break the partnership, they can bounce back, because whenever the new batter coming into the middle, I think the perfect time for the opposite team to tighten up the screws. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त उनके सामने, गेंदबाजों के सामने ये मुद्दा ठहरता है कि वो इस जोड़ी को तोड़ें, क्योंकि यहाँ पर मुस्तफ़ा और गीतेश की जोड़ी जम चुकी है, और ये जोड़ी जितने भी ज़्यादा ओवर्स तक बरकरार रहेगी, उतना खतरा एनएम क्रिकेटर्स के लिए बढ़ता रहेगा. तो यहाँ पर 17 रन चाहिए, 18 गेंदें. एनएम मैंगलोर को, जैसा कि आपने कहा, इस वक्त बाउंस बैक करने का मौका ज़रूर है, और देखना यह है कि वो बाउंस बैक करने के लिए किस तरीके की रणनीति उनके गेंदबाज यहाँ पर अपनाते हैं. और इस बीच नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं. फुल टॉस, लेकिन गेंद का फायदा उठाने में सफल, रन के लिए दौड़ पड़े. इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. और जहां तक सवाल है, ये गेंद काफी जूसी लॉलीपॉप गेंद थी. गेंद को इस वक्त चाहे तो डिस्पैच कर सकते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा बल्ला
थोड़े से पहले अड़ा गए, गेंद बाद में आई, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और इस बीच रन बल्लेबाज को मिले जरूर एक, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। गितेश एक बेहतर पारी यहां पर खेलते हुए, उनका अच्छा साथ यहां पर निभाते हुए मुस्तफा, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा दूसरे विकेट के लिए एक बेहतर साझेदारी यहां पर जमती हुई इसने माले मार के लिए। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। लिखित ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव करना चाहा ऑफ साइड पर, गेंद गई ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन के दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और इस बार मुस्तफा बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर वापस आ चुके हैं, स्ट्राइक पर आ चुके हैं। इस वक्त लिखित की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में, गेंद के लाइन से अपने बल्ले को हटाते हुए देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है। वाइड का इशारा, और वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। यह गेंद गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, लगभग ऑफ कटर गेंद थी। गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए गेंद को स्टीयर करना चाहा था, लेकिन दोनों प्रयत्न में सफलता उनके पक्ष में नहीं आए। और विकेट कीपर ने विकेट जरूर तेजी के साथ चटकाए, लेकिन बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। ये गेंद इस बार गेंद को डालना चाहा, पैरों पर टकराए, सर्टेनली गोइंग इट टू फॉर साथ ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है लिखित का, जिसमें सिर्फ 4 रन वो प्रदान कर चुके हैं पहले 4 गेंदों में। और गितेश इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त लिखित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गेंद गितेश के लिए, चूंकि शॉट फाइनल फील्डर के हाथों में गेंद हो, इस बार पहले प्रयत्न में गेंद को नहीं लगाया था उन्होंने, विकेट कीपर आतिफ ने। और दूसरे प्रयत्न में जब तक वो गेंद से विकेट चटकाते, बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे। और निस्संदेह अगर पहले प्रयत्न में देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, देखिए पहले प्रयत्न में टटोलते रह गए, बैकहैंड से गेंद को इस वक्त उन्होंने विकेट चटकाना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में वो चटका नहीं पाए। दोबारा उन्होंने गेंद को जब तक विकेटों पर लगाते, बेल्स उड़ाते, बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 26 रन 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 12 विकेट नाउ, 13 बॉल्स रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। अंपायर विकेटों को सही करने के बाद इस वक्त अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और बल्लेबाज इस वक्त तैयार मुस्तफा सामना करने के लिए। इस बीच लिखित की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई, गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा मुस्तफा ने, फील्डर काफी पीछे मौजूद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े तेजी के साथ डेंजर लाइन पर, और इस बार डाइविंग एफर्ट, और इस वक्त इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। हालांकि डाइविंग लगाते हुए उन्होंने अपना विकेट बचाने की कोशिश यहां पर की है। और यहां पर देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा, तब मुस्तफा का शरीर बल्ले के साथ क्रीज के अंदर पहुंच चुका था या नहीं। और यहां पर देखने वाली बात यह है, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ, पहला रन पूर्ण कर चुके हैं, दूसरे रन के लिए इस वक्त दौड़ पड़े हैं, थ्रो पहुंच रहा है स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स, और इट्स गोइंग टू वेरी टाइट। और इस बार यह विकेट गिर चुका है, सो ही इज गॉन। और यहां पर मुस्तफा का विकेट का पतन शायद टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मुस्तफा एक बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर कर रहे थे, और यहां पर उनका विकेट गिर जाने के बाद यहां पर मैं समझता हूं एक सही वक्त है इस वक्त एनएम मैंगलोर को बाउंस बैक करने का, वापसी करने का, कम बैक करने का कहना पड़ेगा। और कुल मिलाकर यहां पर यह चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है, 27 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और अब इक्वेशन की ओर एक बार नजर फिराते हैं, और 11 रन यहां पर बनाने हैं। गेंदे इस वक्त बाकी हैं 12, और इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए आतिफ, सामना करने के लिए तैयार गितेश, जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, एक और अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज नया मलेमार की ओर से प्रताप, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और इस बीच आतिफ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना हाथ ओवर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद, ये गेंद गितेश के लिए, गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में, गेंद पहुंचती हुई, इससे पहले कि सीली मिड ऑन के फील्डर मिड विकेट पर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 28 नाउ
10 रिक्वायर्ड ऑफ 11 डिलीवरीज। प्रताप नाउ ऑन स्ट्राइक, अंपायर से गार्ड लेते हुए फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त तैयार आतिफ की गेंदों का सामना करते हुए, और इस वक्त कुछ आगे बढ़े, कुछ वहां पर कंकड़ या पत्थर कुछ था उसे उन्होंने हटाया पिच के बीच से और वापस अपने स्थान पर तैयार। ये गेंद हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, हल्के से गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, मोड़ दिया इस वक्त, और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। और यही करनी चाहिए नए बल्लेबाज को इस वक्त, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्राइक गीतेश को मिलेगा जो कि वेल सेट बल्लेबाज है, उतना स्नेह मार के लिए बेहतर होगा। और इस बीच ये गेंद के लिए आसिफ की गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया 1 रन के लिए गीतेश ने, और स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। 8 रन बनाने हैं अब बचे 9 गेंदों पर। और जहां तक एनएम का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए डॉट गेंदे या विकेट इस मैच में वापस आने के लिए, एक बार फिर से सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। डॉट गेंदे और विकेटों के सख्त दरकार, जैसा कि मैंने एक गेंद पहले फरमाया था, एनएम मैंगलोर को इस मैच में कमबैक करने के लिए इस वक्त चाहिए, और आतिफ उन दोनों चीजों की तलाश में अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, धीमी गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती और गेंद को तिरछे बल्ले के सहारे हल्के से गेंद को खेल दिया था शॉर्ट कवर पर 1 रन के लिए गीतेश ने, और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 32 रनों पर। अंतिम बार इस ओवर में, फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर, आतिफ बॉलिंग टू प्रताप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार फिर से रिवर्स शॉट करना, इस बार डॉट गेंद, दैट इज एन डॉट डिलीवरी। सो 5 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, 5 सिंगल्स और एक बेहतर ओवर आतिफ ने पे किया। अब अंतिम ओवर बाकी और रन चाहिए 6 रिक्वायर्ड ऑफ 6 डिलीवरीज, और यहां पर मैं समझता हूं सतीश, मैच इज गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Exactly, Obai. That's the one thing they wanted to do. NM Cricketers Mangalore just they wanted to take the match till the last over, and they managed to do that. So last 2 overs, Gopi, they bowled very well, isn't it? They picked the wicket of Mustafa. It's been definitely just mentioned when Mustafa is become a run out. You just ask the question. Is just question is raising. Will it going to be a turning point of this match or not? Definitely, it's going to be a little bit turning point of the match because Mustafa is a very good runner between the wicket. We can rotate the strike quite easily. Whenever the new batsman came into middle, the one dotted delivery, then it's going to be a little bit under pressure situation for any batters. Even having a lot of experience, but sometimes the situation of the game is very difficult to tackle. The handle the pressure is very important. Now 6 balls 6 runs required, Gopi. The match is evenly poised. Exactly, Satish. 6 of 6 delivered. The match is now evenly poised. और देखते हैं अगर वो अंतिम गेंद आतिफ का डॉट नहीं होता तो निस्संदेह स्नेह मालवार के ऊपर से कुछ दबाव कम हो जाता, और यहाँ पर 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार लिखित गेंदबाजी संभालते हुए, मैच निर्धारित ओवर की पहली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार परफेक्ट इन कटर, लेकिन मैं समझता हूं गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है। अंपायर का इशारा यहां पर आ चुका है, शायद बोल्ड हो चुके हैं यहां पर, और गेंद इस बेहतरीन ऑफ कटर गेंद के जरिए ये इस वक्त गीतेश का विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद टिप्पा खाने के बाद अपनी दिशा को बदली, इट निप बैक अ लॉट देन द बैट्समैन एक्सपेक्टेड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और नीचे रहते हुए टिप्पा खाने के बाद, और अंतिम क्षण में गीतेश से गेंद को खेलना चाहते थे। थर्ड अंपायर की मांग इस वक्त की गई है, और यहां पर देखना यह है कि गीतेश बोल्ड आउट हो चुके हैं या फिर नहीं। तो बेहतरीन गेंद थी, क्यों सतीश? Absolutely, it's a very big off cutter, but the question is raising here, Gopi, whether the ball is hits the stump or not, because the wicketkeeper behind the stump uprooted the stumps, and the question is raising is before the bowler has got a ball in his hand, that ball hits the stump or not. Might be sometimes it's very difficult for umpire to see the batsman coming right across the line of the delivery. He can't see the what really happened behind the stumps, isn't it? And that's why sometimes it's very difficult for the umpires also, the field umpires also, to give the decision. The loud appeal, the confident appeal, there's no doubt at all. And now we have to see whether the ball is bowled or not. What I want to say, if it is not bowled out, maybe they're asking for the stump out. That one also we have to say whether the back leg of Gitesh is inside the line or not. That's what our umpire have to say. First, of course, they want to see whether the bowled out or not. If it is not bowled out, they have to see whether it is a stump out or not. नो डाउट द डिसीजन केम, और दोनों मौकों में यहां पर बच चुके हैं सतीश, और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। यहां पर गीतेश को जो गेंदबाज लिखित ने की थी, टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा अंदर की ओर आई टर्न लेते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में स्टंप्सों पर नहीं टकराए, और दोबारा तीसरे अंपायर ने देखा कि शायद स्टंप आउट हुआ रहेगा, ऑटोमेटिक स्टंप, लेकिन गेंद वहां पर भी नहीं टकराई थी। बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे,
और यहाँ पर ये नॉट आउट करार दिया गया, तो नितेश का विकेट बच चुका है और मैं समझता हूँ कुछ हद तक स्नेहा मल्लेमार के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर कोई नए बल्लेबाज सतीश अगले यहाँ पर मैदान पर उतरता तो पहली गेंद पर सहज रूप से उनके ऊपर दबाव होता, लेकिन यहाँ पर गितेश मौजूद है, वेल सेट बल्लेबाज, और देखना यह है कि वो अगली गेंद पर क्या करता है। अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित यहां पर किया जाएगा। इफ द मैच एंडेड इन टाई विनर्स विल बी डिसाइडेड बाय टॉस। और यहां पर गितेश, अब अंतिम दो गेंदें, पिछले ओवर की अंतिम गेंद आतिफ की डॉट रही थी, लिखित की ये पहली गेंद डॉट रही है। एक वक्त चाहिए था 6 रन 7 गेंदों पर, अब चाहिए 6 रन 5 गेंदों पर। और देखते हैं इस गेंद पर लिखित क्या करते हैं। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए गितेश के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, रन के लिए दौड़ पड़े आतिफ, ब्रिलियंट, और एक बार फिर से द वर्क फॉर द थर्ड अंपायर। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस ऑफ फ्लिकिंग द विकेट्स। मैं समझता हूं बेहतरीन तरीके से विकेट को उखाड़ा था आतिफ ने। इस वक्त जब विकेट उखाड़े गए थे सतीश, तो उनका संपूर्ण शरीर, द कंप्लीट बॉडी वाज इन द एयर, कंप्लीट संपूर्ण शरीर हवा में था, और निस्संदेह यहां पर एक बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग आतिफ ने की है। Absolutely, Gopi. But first, it's a fumble, isn't it? Because Gitesh is looking for the reverse stroke. Whenever the batters are looking for the reverse stroke, not that much of a easy for the wicket keeper to get the ball. The fumble, but after the fumble, he just wanted to get the wicket by making the run out. And out is a decision. Out is a decision coming from umpire, third umpire. And you're just right, Gopi. His whole body is floating on the air, isn't it? Just like Jonty Rhodes doing in the South Africans legend fielder in backward point. Whenever he's taking catches, his body is always floating on the air. Just like here is Atif behind the stump. When he made that stump, his whole body is floating on the air. He know exactly if he hits the stump, the opportunity ball miss the stump and the batsman survives. So he doesn't want to do that one. He wanted to hit the stump directly, and that was a fantastic walk. बिल्कुल सतीश, संपूर्ण शरीर उनका हवे में था, और निस्संदेह एक बेहतर उदाहरण आपने दिया। 1992 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के जो बीच मैच खेला जा रहा था, 232 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए जब इंजमाम बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, सिंगल जॉन्टी रोड्स की ओर जो कवर पर खड़े हुए थे उनकी ओर मारकर वो दौड़े थे। हालांकि इंजमाम भी दौड़ कर आए, जॉन्टी रोड्स भी दौड़ कर आए। जब जैसे ही अंतिम क्षण में जॉन्टी रोड्स ने भापा कि वो क्रीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, छलांग लगाते हुए उन्होंने विकेट उखाड़ दिए, और स्टंप्स पर जो माइक्रोफोन था वो भी स्टंप्स के साथ बाहर आ गया था, और विकेट उखाड़ते समय उनका संपूर्ण शरीर हवा में था, और उस बेहतरीन रनआउट को आज भी याद किया जाता है। और उसकी याद में विल्स कंपनी ने, आईटीसी विल्स कंपनी ने शेयर द मैजिक नाम पर एक बड़ा पोस्टर प्राप्त की थी। और देखते हैं, वो तो गतकाल का जमाना था। यहां पर क्या होता है ये देखते हैं। इस बीच गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची पॉइंट पर, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदे अब बाकी हैं कितने? 3, और रन चाहिए इस वक्त 5 of 3, और निस्संदेह इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। गेंद इस वक्त लिखित के हाथों में, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए गितेश। और इस बीच ये गेंद इस बार चूके, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली मार्वेलस पीस। और अंडर प्रेशर मैं समझता हूं सतीश, लिखित एनएम क्रिकेटर्स को ड्राइवर्स की सीट में लाकर ठहरा चुके हैं। And more than the effort from the bowler, I think I really not understand why Gitesh is feeling that much of pressure. Once the previous delivery also, he's trying for the reverse stroke, he fails, but he's not really learning from his mistakes. Still he's trying to play the reverse stroke, and he fails to make a contact with the batter, and that was a fantastic bowling performance, Gopi. Likit is something different bowler compared to last 4 bowlers introduced by the captain. The Likit is a bowler who can turn the ball around, so that's why it's really benefit. Now, do or die situation here for Gitesh. Have to get some runs, have to get 5 runs from 2 deliveries, otherwise his innings is definitely gone in vain. बिल्कुल सतीश, और 2 गेंदे 5 रन चाहिए। एक वक्त 7 गेंदों पर 6 रन चाहिए, तब 2 गेंदों पर 5 रन बनाने हैं। गितेश के हाथ में स्नेहा मल्लेमार का भविष्य। दाहिने हाथों पर विकेट, यह गेंद गितेश के लिए चूके, और गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है, एंड गितेश इज गॉन। तो मैं समझता हूं सतीश, गितेश पारी के आरंभ में श्रेष्ठ लय में थे, और अंतिम चंद गेंदों में, अंतिम ओवर, खासकर उनका ये स्ट्रगलनेस
पिछले ओवर से शुरू हुआ था, पिछले ओवर के अंतिम गेंद से, और इस ओवर में वो संपूर्ण अपने लय को खो चुके थे और यहां पर उनका विकेट गिर जाने के बाद अब अंतिम गेंद पर 5 रन बनाने, चौका अगर लगाते हैं तो मैच टाई होगा, अगर मैच टाई होगा तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित किया जाएगा। और मैं समझता हूं अगर एनएम क्रिकेटर्स इस मैच में विजय दर्ज करता है तो इस विजय का सही हकदार लिखित होंगे जिन्होंने इस अंतिम ओवर में अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है। Exactly, Gopi. It was a dramatical change in the game. Dramatical. No one thought that this match is going to be that much of nail-biting finish. And this is not a nail-biting finish now. Now it's only 5 required from last ball. And can you imagine how good this bowler is bowled the last over? When 6 required from last over, he bowled 5 fantastic deliveries and keeping the subtle batsman like Geetesh very quiet. I think it was a really match-winning performance from Likith. Now job is not yet over. Job is not yet over. If the batsman hit the boundary, the match will go into tie. If the match will go into tie, the toss will go into decide the winner. The 6 will go into win the match for Sneha Malamar, but one dotted delivery will go into win NM Cricketers Mangalore. बिल्कुल 5 रन अंतिम गेंद पर बनाने हैं, 4 रन अगर लगाते हैं, बाउंड्री लगाते हैं तो मैच टाई होगा। और नए बल्लेबाज राकेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद, ऐसा कहना पड़ेगा स्नेहा मालेमार का भविष्य राकेश के हाथ में, जबकि एनएम मैंगलोर का भविष्य लिखित के हाथ में। देखते हैं क्या होता है। 5 रिक्वायर्ड, 4 for tie, 5 for win of last delivery. Here we go, right arm over the wicket, लिखित तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना था, चूके, and thrilling 4 runs victory for NM Mangalore against Sneha Malamar. This is a fantastic match came to an end. So absolutely dramatical collapse इस अंतिम ओवर में हुआ सतीश, और निस्संदेह the 100% mark goes to the bowler लिखित। No doubt at all. No doubt at all, Gopi. It was a fantastic bowling performance from Likith. The last thing they want to do that the Likith ball some magical over, and here he produced a magical over, absolutely magical over. No doubt at all. He definitely takes a match away from the opposition. Where could be a easy victory for Sneha Malamar? What could be an easy victory for Sneha Malamar? They're putting themselves into trouble. Maybe the technique of hitting the ball, it must be wrong. The shot selection, I must say, Gopi, the shot selection is wrong in the final over. The 3 batters are trying for the reverse stroke, isn't it? Instead of, they wanted to get only 6 runs, Gopi. Rotation of strike is required. In that time, it is unorthodox batting is not required. And Geetesh twice fails to make a reverse stroke, and match is
Select your ball and get ready for the tossing ceremony. Thank you.
lofted and high and handsome. What a shot there from Santosh. An absolutely magnificent blow. What a great hit coming from the blade of Santosh. Just stand and delivered. And I think is more than the timing, the power behind the strokes. And standing very hard into the crease and lofted that one down to deep long off for a maximum. That was a big blow from Santosh. Wide outside the run of off temp. And Kiran a little bit expensive now. Scoreboard moves on to 10 now without loss of any wicket in the over number first in progress. Kiran from the commentary box and left arm over the wicket he bowls. Sensible batting, absolutely sensible. Look at Quresh there. It's absolutely fantastic. Now in the score point region, once again moving towards the right very quickly. Pick the ball in his right hand and fields the ball, returns the ball, and ample time for the batter to complete the single. 11 on the board without loss of any wicket. Quresh just joining Mangaladevi cricketers now. This time a long run going for the score, but Kiran missed the ball completely from his hand. At the same time, there is the opportunity of run out in the non-impacted strikers end because Riaz, after he struck very hard into short mid-off region, he is just calling his partner for the run. At the same time, Santosh is not really ready for that run and is slow to react that one. But Yatiraj is returns the ball into the non-strikers end. The certain chance of run out in the strikers end. So please note the 6 overs game, 6 over formidable games, 6 overs side to be played. The first over completed. After completion of first over, Team Elegant has got a very positive start, and they got 12 valuable runs, and especially Santosh who got 8 runs out of that 12, and 2 for Riaz and another 2 is extra. So Mangaladevi cricketers, they defeated Challenge Cricketers bowler in the first match of the morning. They came into the next round. Team Elegant has got a bye in the first round, and they playing their first match against Mangaladevi cricketers. Both the teams has got a very good players in the side. Riaz, one of the key players for Team Elegant, and wait and see how Riaz will going to contribute from the bat. Munna protected attack from the Harban Ohms end. There is no protection in the deep in the offside region for Riaz. Just ball him, clean him up. The Riaz is really running out of form. He continues in this match as well, as he was little bit early into the stroke. Tried to hit the ball down to extra cover. Little bit encouragement feels at here for Riaz. That's why he wanted to play the shot by making a room. And by making the room, he's left the gap between bat and bat. And Munna bowled that perfect off-cutter in the negation. And Riaz little bit disappointment for him. He's back into Pavilion Elegant. Lost their first wicket. So new batter, jersey number 77 came into middle. Samad will go into face Munna. Successful bowler. Picked a wicket off Riaz. Right arm over the wicket. Appeal for leg before wicket. And one more addition to total in the form of leg by. And with the addition of that, single scoreboard now moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. So much required. Good over here for Munna. So far 2 deliveries, 1 run and 1 wicket. And Santosh is a man in form. And one of the best hit, I must say, in this particular day. The stroke which is came from the bat of Santosh. The previous one, I think, the one of the biggest 6 of this tournament is came from the bat of Deepak of Goriyang Boys. And this time Santosh tried to play the reverse stroke in the negation, but good clever piece of bowling there from Munna, changing the line and the ball a little bit down the leg stump. So Santosh completely fails to make a contact with the bat. Munna again from the far end. Right arm over the wicket to Santosh. Santosh once again looking for the expansive drive. Try to hit one more 6 from this end.
but he didn't got that much of enough bat onto that. Mistimed that one, and he got a single down to deep long on. 14 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Munna from the far end. Right arm over the wicket he bowls. This time, that ball is landed very safely between the square leg and the far leg. It's going to be a 4 runs here. Somehow this time right across the line of the delivery, swinging that one, and slog sweep comes into play. He didn't time it properly, but still he's got enough bat onto that. Because of he's got a bat speed, that ball travels towards the deep backward square leg boundary for 4 runs, and with that bound, the score jumped into 18 now for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Munna from the far end again, bowling right arm over the wicket, wide of the crease is balls outside the line of off stamp. A fantastic finish for that bowler from Munna, but still Team Elegant has got some runs in this over as well. So after completion of over number 2, Team Elegant are looking pretty good. They are 18 for the loss of 1 wicket. 6 runs came from that over. Even the one boundary conceded, but Munna is able to complete this over with the 6 runs, and Team Elegant are 18 on the board for the loss of 1 wicket. So after this match, one more good match is coming up. Young Friends Suruva takes on NM Jaipur. It's one more big match, I must say. The match of the day, match of the tournament between 2 top performers of the South Kendra district. Young Friends Suruva will going to take NM Cricketers Jaipur. What a fantastic game NM Cricketers has. They just came from nowhere and they defeated Sneha Malamar in a close encounter, and Sneha Malamar, where could be a certain victory, they are ended with the losing side, unfortunately, against NM Jaipur. So fielding restriction is off now. Deep mid wicket, deep square leg, deep long on. There is a one fielder in the deep cow point, between cow point and backward point. Now one fielder is coming towards a deep long off, and mid off fielder going towards a short extra cover. Yatiraj. Kiran at short mid wicket. Ashwin Raj at short third man. And now Sumit will go into bowl a third over. Right arm over the wicket. Balls. Try to york the batsman. Almost that Santosh tried to take that one in the full. Might be a little bit unhappy with himself that he can hit the ball by taking that one a full. Missed it completely. Then wicketkeeper fails to collect the ball. And Rafiq now going towards a short fine leg region. And in his place Ashwin Raj coming in to keep the wickets. Because it's a different tactics required when you are keeping the wicket against the turning bowlers like Sumit. Needed some experienced wicketkeeper behind the stump. And down the leg stump, good collection there from Ashwin outside the line of leg stump. Wide call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 19 on the board for the loss of 1 wicket. Sumit bowls. Just a beautifully played on a square of the wicket in the negation off the back foot. Santosh is a very good player off the front foot and off the back foot, using his feet very well. Now he's just using the depthness of the crease, going back and square cutting that one. Picked up a single down to backward point, and the scoreboard moves on to 20 on the board for the loss of 1 wicket. Sumit again, right arm over the wicket to Sawad. Sawad misjudging the turn up delivery. He thought it might be a leg cutter. That ball, he thought it going to be a away going delivery, but just slightly that ball is coming into the batter, and he missed it completely. Again, oh, extra bounce. This time Ashwin trying for the run out in the non-striker's end, but he completed that single very quickly. And by call by umpire, with the addition of that single, scoreboard now moves on to 21 for the loss of 1 wicket. So far Sumit is bowling a very tidy line and length, and suddenly Bangladesh cricketers needed that such kind of overs. And Sumit again bowling away from us. Right arm over the wicket. Try to drag that one from outside the run of some chance of run out there, and Sumit missed the ball completely from his hand. Again, Santosh didn't got that much of timing. Tried to drag that one from outside the line of off stump. The intention is to get that one down to mid wicket region. Because of Sumit is getting a lot of turn in his bowling. Very difficult to play across the line. This time again that was a leg cutter. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. By call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 23 now for the loss of 1 wicket.
3 overs completed after completion of over number 3. Team Elegant 23 on the board for the loss of 1 wicket. So 3 overs completed after completion of over number 3. Team Elegant are looking pretty good, just under 8 runs for over the run rate progressing here. And wait and see how much runs they will go into score in the remaining 3 overs. And wait and see how Bangladesh cricketers will go into restrict Team Elegant from the big score. And before the next over will go into commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And welcome Gopi and good afternoon. गुड आफ्टरनून सतीश आफ्टर लंच और जहां तक सवाल है इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ बाएं हाथ राउंड द विकेट पहली गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त इनटू द विकेट गैप ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर जबकि चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है मैच इस वक्त प्रगति पर श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स और टीम एलिगेंट के बीच और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और टीम एलिगेंट की पारी का चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर यह गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप किया गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर निस्संदेह कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा टीम एलिगेंट को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो मंगला देवी क्रिकेटर्स के खिलाफ और जहां तक मंगला देवी क्रिकेटर्स का सवाल है 40 रनों के अंदर उन्हें रोक कर रखना होगा अगर उन्हें आसान सा लक्ष्य प्राप्त करना है तो यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे हेलॉन्ग द कार्पेट और संतोष गेंद को इस वक्त खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और एक बार फिर से गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और नॉट सो मिसिंग टू फॉर लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स इस बीच नहीं मिलेगा और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज यजू इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार संतोष के लिए दिस कुड बी गॉन यस इट डज इट्स गॉन फॉर अ बिगी गेंद को उछाला था इस वक्त और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे जस्ट आई वांट टू लुक एट दिस किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था देखिए टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है गेंद को इस वक्त उछाला था और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे निस्संदेह जीतोड़ कोशिश उन्होंने की थी ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए लेकिन अंतिम क्षण में वो गेंद को लपक नहीं पाया और गेंद उनके पहुंच से बाहर 6 रनों के लिए और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा बैक टू द बॉलर की दिशा में तेजी के साथ ये जो गेंद पर पहुंचे फॉलो थ्रू में लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और जहां तक का सवाल है रनों का तो रन इस गेंद पर मिला 1 4 ओवर की समाप्ति इट्स 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एग्जैक्टली 8.725 रन्स पर ओवर द प्रेजेंट रन रेट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर फॉर देम स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 2 ओवर्स रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स तो अब अगले मैच के बारे में अगर बात करें तो एक और बेहतर मैच द बिग मैच ऑफ द डे इज नाउ कमिंग अप द नेक्स्ट मैच यंग फ्रेंड्स सुरवा विल टेक्स ओवर एनएम जयपुर एंड that match is now coming up live exclusively right after this match and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart और जहां तक इस श्रृंखला के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो निस्संदेह एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरवेर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने और ये श्रृंखला जो कि एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता लेग कटर गेंद थी गेंदबाज ने थ्रो किया जरूर लेकिन बल्लेबाज बाल इस गेंद पर बसते हुए उनका निशाना चूकता हुआ और पहला रन इस ओवर का यहां पर जुड़ चुका है टीम एलिगेंट के खाते में और सुमित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त समत के पास दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा गेंद उनके पैरों के बीच से निकली इस वक्त विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया विकेटों के पीछे और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 35 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर संतोष बैक ऑन स्ट्राइक ऑलरेडी हिट 2 6 सोफा और इस बार
ये गेंद ड्राइव किया, बेहतरीन गेंद को पूरा इज्जत बख्शते हुए गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। फ्रंट फुट पर जाने के बाद बल्ले और पैर को एक साथ लाने के बाद रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी सुमित की, एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, ऑफ कटर गेंद प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है संतोष का। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लाइन पर गेंद टिप्पा खाई, मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कंसंट्रेट कर आते हुए, और यहां पर अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, सेकंड विकेट डाउन, और एक 19 रनों की बेहतरीन पारी यहां पर, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है लेग बिफोर विकेट के रूप में। इंदिನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿರ್ವೆಲ್ ಕುಡ್ಲ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। अभिलाष एक और बेहतर बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और इस बीच सुमित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर, 4 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी हैं, और सुमित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिलाष के लिए फील्डिंग में जमावट करने के बाद राउंड द विकेट सुमित इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अभिलाष के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद की उछाल को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के दिशा में, और एक रन, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, स्ट्राइक रन पर खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए, नॉन स्ट्राइक रन पर गेंदबाज, और इस बीच बल्लेबाज के पास दूसरा रन प्राप्त करने का मौका। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन पूर्ण करने के बाद समद दूसरे रन के लिए दौड़े, जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था, डेंजर एंड की ओर, लेकिन आखिरकार गेंद को ठीक तरह से न कलेक्ट करने की वजह से बल्लेबाज दूसरा रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, सुमित की गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में, और 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रन। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए, और निस्संदेह एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ टीम एलिगेंट, और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, सुमित दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद समत के लिए अच्छी गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा भी कर रहा, टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक अंदर की ओर आती हुई गेंद को खेलना चाहा ऑफ साइड पर, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, it's 39 for the loss of 2 wicket with the average of exactly 7.80 runs per over scored by Team Elegant, and still in our calculation its last over is remaining in their innings, and at this situation they are looking in a comfortable position. तो यंग फ्रेंड शुरू हुआ, और एनएम जप्पू के बीच एक और बेहतर मैच यहां पर होगा इस मैच के बाद, राइट आफ्टर दिस मैच, और मैं समझता हूं इस मैच में ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षक आने की उम्मीद है, और देखते हैं अगले मैच में प्रेक्षकों की संख्या में किस तरह वृद्धि होती है। तो यहां पर अगले गेंदबाज अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिलाष, लेफ्टी बैट्समैन अभिलाष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मिड विकेट, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पॉइंट कहना पड़ेगा, शॉर्ट थर्ड बैन, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ओवर की पहली गेंद अभिलाष के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुन्ना इस वक्त तैयार, और पहली गेंद लेकर अभिलाष के लिए, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को स्टीयर करना चाहा, गेंद उनके पहुंच से बाहर, शॉर्ट थर्ड बैन पर, आई थिंक नो इट्स अ बाय कॉल्ड बाय अंपायर, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th and the last over in fact, and just 5 balls now remaining in their innings, और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, मुन्ना गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार सफल होते हुए, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, उनके बल्ले पर नहीं आए, पैरों पर टकराई, और विकेट कीपर ले आगे की ओर आकर गेंद को कलेक्ट कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से मुन्ना, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ
ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर एक बार फिर से उछालना चाहता, चूंकि गेंद कुछ ज्यादा तक स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन नहीं मिलेगा। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में मुन्ना फेंक चुके हैं और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार चिट किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को सफलतम लपकने में सफल मेरे ख्याल से किरण थे फील्डर लॉन्ग ऑफ पर, जिन्होंने इस कैच को लपका और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड जस्ट अ लास्ट बॉल नाउ, लास्ट 2 balls in fact remaining in their innings. तो अंतिम 2 गेंदें यहां पर बाकी हैं और देखना यह है कि इन अंतिम 2 गेंदों में टीम एलिगेंट के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। अभिलाष स्ट्राइक पर आ चुके हैं, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है एज नंबर 5 बैट्समैन। द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, ही इज अ नॉन स्ट्राइकर एंड स्ट्राइकर इज अभिलाष। तो 2 गेंदें इस वक्त बाकी है और गेंदबाज मुन्ना इस वक्त तैयार अभिलाष के लिए। ठीक है, उसी तरह का क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और अगली गेंद के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया इस वक्त, स्वीप करना चाहा चूके लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिलेगा इस बीच। आई थिंक इज गॉट अ बैट ऑन दैट और गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 41 रनों पर। अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गेंदबाज मुन्ना तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज नासिर इस वक्त सामना करते हुए अपनी पहली गेंद और उनकी पारी की अंतिम गेंद का। मुन्ना दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहे एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी और यहां पर अभिलाष क्रीज पर पहुंच चुके हैं नहीं देखना पड़ेगा। अपील यहां पर जारी है स्क्वायर लेग अंपायर हरीश पटेल इस वक्त कुछ कहते हुए और इस बार उन्होंने तीसरे अंपायर के लिए यह निर्धार छोड़ा है। देखते हैं तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। Now it's going to be third umpire. तो यहां पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहां पर इस गेंद पर जो भी घटना घटी थी। देखिए गेंद को इस वक्त स्वीप करने का प्रयास किया था और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े। अंतिम क्षण में विकेट कीपर गेंद की ओर बढ़े, गेंद को उन्होंने फील्ड किया और वापस स्टंप्सों पर लगाते हुए गिल्लियां बेल्स उखाड़ते हुए। और देखने वाली बात यह है कि जब अभिलाष का बल्ला बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। नॉट आउट. So a single run added in the final delivery of their innings, and with that single run, the scoreboard moving up to 42 for the loss of 3 wickets. And the innings is up for Team Elegant. They finished with 42 for the loss of 3 wickets in the stipulated 6 overs, and they set a victory target of 43 now for Bangladesh cricketers, and 43. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.17 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं वो इस 43 रनों के 43 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं निर्धारित 6 ओवर में इन स्टिपुलेटेड 6 ओवर्स। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगली पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And I will be back right after the short break with my friend Satish. Thank you.
So thank you very much, Gopi. So Team Elegant at last they managed to score 43 runs in the stipulated 6 overs. And highlight of the innings is a fantastic fighting performance by the very experienced batter Santosh, who scored plenty of runs. He scored 19 valuable runs with the help of 2 massive sixes. And because of that, they got the 43 runs. Now 42 runs, a 43 target. Mangaladweep cricketers have to get in a stipulated 6 overs as Yatiraj facing first ball. Right arm over the wicket. He wanted to give the direction down to short third man region. He wanted to steer that one, missed it completely, and there is no chance of any run at all. Bowler, please turn. The jersey number, please. Bowler, please. Shabir, thank you very much. Shabir from the Urban Homes End, bowling right arm over the wicket to Yatiraj. Yatiraj in the previous match is batted very well for his team. Just tipped that run, straight to the hands of mid wicket. Good piece of fielding there by the short mid wicket. Fix the ball, release the ball in on action as well. So altogether fantastic cricket from that fielder at short mid wicket. So again, Shabir from the far end. Right arm over the wicket to Yatiraj. Yatiraj went for the big shot again. Didn't got that much of timing in the delegation. He wanted to play the extra cover drive. The fact that he mistimed that one, so that ball went straight to the hands of bowler on his follow through. He fields the ball and back to his polywork. Now Damodar is a very experienced campaigner for the side of Mangaladweep cricketers. Just walking towards the middle and gave some wide voice for Yatiraj. No need to panic. Just play your normal game, and so that this lovely shot. That's what I'm talking about. The square of the wicket. He got that one between backward point and cover point and got a couple of runs here. So 2 on the board without loss of any wicket. And that's what maybe the Damodar is just suggesting for Yatiraj to need to be a little bit cool and calm. He cannot hit each and every ball for the big shot. Sometimes he have to rotate the strike as well. This time he went for the safe shot, missed it completely. And so far it's outstanding over there from Shabir. He's just testing the temperament of Yatiraj in the relegation, bowling that very strong line outside the line of off stump, and there is no possibility of any run. 2 without loss of any wicket. Shabir again from the Urban Homes End, bowling with a short run up. Right arm over the wicket, he bowls, tries that one, lack of placement, straight to hands of short, extra cover, excellent over there from Shabir. One of the best over I must say is in this condition, and he's just containing the batter like Yatiraj is a very good striker of the ball. Just a couple of runs, chasing 43 to win this match. Mangaladweep cricketers has got a slow start, 2 without loss of any wicket. Mangaladweep cricketers in their opening match they scored 60 runs against Challenge Cricketers bowler. Now they have to get another. They have to get only 43 to win the match. But the opposition is different. That was the big difference here. The chasing is different. Batting first is different. Chasing is different. And in batting first, I think the batters always very relaxed and not that much of pressure at all, because they are batting first. They can bat freely. But when you're coming into the chasing, it's a different ball game. And even 43 is definitely going to be not that much of easy target to chase down. Once it's the quiet over, like the previous one is 2 runs, all in sudden the pressure is mounting up. And the asking run rate in the beginning is 7.17 runs per over. Because of the quiet over from Shabir, the asking run rate is now going higher and higher. Equation, 30 balls remaining, 41 runs required for the victory. So from the commentary box, and appeal for leg before wicket. Umpire saying that I'm not really very difficult for me to see the direction of the ball. Sumant is the bowler. There is a run out taken place in the strikers end anyhow. Yatiraj back into pavilion. I want to see that what really happened. Look at that one. He wanted to play the big shot on the onside region. Bowler coming right in front of umpire, asking for stump out, but LBW. But in the non-strikers end,
run out taken place. So little bit disaster here for Yatiraj. Not really looking very confident in the middle. Looks like he was just sacrificing his wicket. Look at that one in the replay. Went for the big shot. Ball deflected from the legs. That time Yatiraj wants a single, and wicketkeeper behind the stump quickly completes the job. So 2 for the loss of 1 wicket. 2 for the loss of 1 wicket. Mangaladevi cricket has got a shackling start here. Now, hero of the previous match. Rafiq came into middle. What innings he played against challenge bowler. The quick fired 20 runs in just 9 deliveries. And now once again the condition asked him to perform from the bat. Being the experienced campaigner, Rafiq. Very useful cricketer. Very strong square off the wicket and behind the wicket. And got a potential of hitting a big shots as well. And so far I think the bowlers of Team Elegant are looking pretty commanding. The both opening bowlers, Shabir bowled quite over now. Sumant starts very well. Now second time in this over with the different bowling action. Right arm around the wicket. Bowls and this time Rafiq drives that one right in the gap towards a deeper wideish long on region for a easy single. And with the single Rafiq opened his account. Scoreboard now 3 on the board for the loss of 1 wicket. So just I'm watching the bowling action of Sumant. This bowling action is similar to Tazuddin of KFC Kodikal. The same the bowling action, having a jerks 2 times before delivering the ball. Then he released the ball. This time lofted. Chance here for the one fielder at the, oh my goodness. The same thing has happened in the first match as well when the challenge cricketers bowler playing against the Mangaladevi cricketers. The same thing has happened. The mid-off and mid-on fielder trying to take the catch. Lack of communication. There is no loud calling and resulting in a drop in the catch. Look at that one. Just like they are not trying to take the catch, but they are just fighting for the catch to take. The competition between two fielders. I want to take the catch. I want to take the catch because the live telecast is there. Maybe the reason. So 7 for the loss of 1 wicket. That's all the funny things just I'm mentioning about. And that's what's very important in cricket, isn't it? The loud calling is very important. The communication, what you call. If you catch, you have to tell your partner, leave. It's my catch. The problem is over. Here is the same thing is happening between these two fielders, and the batter got a life here. Here is again the bowler bowls. Damo, one more very experienced campaigner for the side of Mangaladevi cricketers. Lot of responsibility now in the shoulder of Damodar, being the senior most campaigner. He has to perform from his bat. Need to get some partnership, and so far Sumant looking pretty good in this over. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Bowls. This time Damodar lofted that one right in the gap. It looks like one bounce over the row for 4 runs. Fantastic placement in the negation. Just the ball is dripping down the leg stump, and quickly Damodar is lofted that one right in the gap. Seeing that they are mid on inside the ring, there is no long on at all. Of course, one long on, but it's a wideish between mid wicket and long on. Once he got that one right from the middle of the bat, no chance at all for the fielder in the wideish long on to stop the boundary. Welcome boundary coming up here for Mangaladevi cricketers. 11 for the loss of 1 wicket. Damodar, certainly that boundary will going to give a lot of confidence for Damodar. Now field placement little bit changed here. One quick fielder is stationed down to deep long on. The fielder from the deep wideish long on is been taken off, and he was stationed down to short mid wicket. One quick fielder is going back to deep wideish long on. So once again from the commentary box, and bowling away from us with a different bowling action. Right arm over the wicket. Bowls to Damodar. No need to run for that. Ball is really rocketing towards the fence down to deep third man boundary for 4 runs. Just like I mentioning about the previous stroke, got a lot of confidence, gave a lot of confidence for Damodar. Immediately the very next ball he played as pitch it, and the timing is perfection, and even the better placement as well. And because of the 2 boundaries, Mangaladevi cricketers are really back into this game.
15 for the loss of 1 wicket. Chasing 43 to win this match. That 2 boundary definitely will going to release the pressure. Straight away coming back to the equation. 43 is the target. That means 27 more runs required for the 28 more runs required for the victory in remaining 24 deliveries. Now equation looks like the Mangala cricketers, if they bat well, they can chase that one. Look at that, how quickly the match is changed here. The complexion of the match is changed here because of only 2 hits. Just 2 hits out of that 12 deliveries of power play overs. Only 2 very good hits came from the bat of Damodar. The complexion of the game is really changed here. Now match is evenly poised. The first over looks like Team Elegant are looking pretty good. And second over also till the 4 delivery looks like Team Elegant are really upper hand. And the last 2 delivery of the previous over as Damodar picked up 2 valuable wickets, valuable boundaries, and they're strongly back into this game. Now experienced campaigner brought into attack, Abhilash, fantastic all-rounder. Now he's going to bowl a 3rd over of the innings of Mangaladevi cricketers. Restriction on the fielding is lifted off after that 2 overs, so that the 5 fielders sit away in the deep, in the boundary line. Deep long on, deep extra cover, deep backward square leg. In fact, it's almost in the deep fine leg and deep backward square leg. 1 fielder at deep mid wicket. In the onside region, only 1 protection has been given in the offside region. 2 protection in fact for Rafiq. Rafiq swept that one. A sensible batting here from Rafiq, seeing that Damodar is batting really very well in the middle, so that he just picked a single and rotate the strike. Damodar back on strike now. 16 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Very bright sunny afternoon out here in UCG cricket ground. Strong breeze. We can see that the dust is coming out of the pitch and ground, just giving the direction of the wind as well from west to east in the afternoon. Especially the direction of the wind is towards left side of our commentary box. Now again Abhilash just wanted 1 fielder. Wanted 1 fielder to be inside the ring for Damodar. We don't want to cover point fielder. He want that fielder in the extra cover. So that's a very interesting field set, because he got 1 fielder in the deep backward point for the reverse stroke for Damodar. Oh, that was a loose delivery. That was a loose delivery down the leg stump, and Damodar must be frustrated with himself that he can hit the ball towards the market. The direction of the wind is really helping for the batter like Damodar. The onside division is very strong, and lucky escape here for Abhilash. He just survived from that delivery, which is outside the line of flex them too far. He tried to reach that one, tried to hit the ball, but didn't got enough bat onto that. 17 on the board for the loss of 1 wicket. Short mid off, short extra cover, short third man, deep extra cover, short mid wicket, deep long on, and deep square leg. This time lovely shot, beautifully played that one down to deep wideish long off region for an easy single by Rafiq. Rafiq is a man in form. He's not seeing the ball like a football, and that was a good sign here for Mangaladevi cricketers. 18 on the board for the loss of 1 wicket. Now Damodar back on strike. Abhilash searching for the wicket, searching for the dotted delivery. Now mid wicket coming into short mid on, and deep long on coming into deep mid wicket. A lovely delivery. That is one of the best delivery, I must say, for Abhilash. Usually he bowl that deliveries. Slower one. Whenever he bowl that slower one, he gets a lot of turn in his delivery. And Damodar completely missed out that one from his bat. Again went for the big shot, didn't got contact with the bat, but certainly they will going to get a single here. 1 more addition to total in the form of leg by. With the addition of that leg by, scoreboard now moves on to 19 for the loss of 1 wicket. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Just like we had a very good match, the previous match, the match between Sneha Malamar versus NM Cricketers Mangalore. Once again, I request young friends Ruva as well as NM Japo. Those who are not signed, please sign here. But here is a wicket is falling. Abhilash got a very important breakthrough. The man in form, man in a terrific touch. Rafiq is back into pavilion, and he's cleaned him up by the beauty of the delivery. Look at the delivery, that one. Absolutely fantastic one there from Abhilash.
across the line. Rafiq tried to flick that on of his legs, missed it completely, and wicket number 2 is back into pavilion of Mangala Devi cricketers. They're 19 now for the loss of 2 wicket. Now the new batter coming into the middle is none other than the legend of Andram cricket, Quresh, is walking towards the middle. The morning we are talking about some players, we are talking about some teams in Andram cricket, the history of Andram cricket. The Reliance Cricketers Jaipur, the team which is dominated very much the era of Quresh and their brothers are playing, along with some fantastic performer like Charan, Chetan, and this man Quresh, Bunaya, Javed, Bashir. Oh my goodness, they all are a fantastic performer. Even Puneet, a very good player as well. The Siddiq is one of our brother of Quresh. And now we can see that it's really nice to see that for the cricket lovers, the one of the player out of Reliance Cricket is still engaged in cricket. It's a legend cricketer. That's why he's called legend, Quresh. With the jersey number 6 now, he came into middle. And wait and see how well he will going to contribute from the bat. Meanwhile, 3 overs completed. Time to ask Gopi to take over the microphone. And 19 for the loss of 2 wicket. And still this match is evenly poised, Gopi, because the 2 wickets fell. And in 3 overs, they have to get another 24 runs to win this match. 6 runs difference. I think it's manageable if they bat well. बिल्कुल सतीश, मैनेजेबल है अगर वो सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हैं. और जहाँ तक सवाल है टीम एलिगेंट का, तो इस वक्त चाहिए उन्हें टाइडी गेंदबाजी. दिस इज नॉट द वे ऑफ राइट बॉलिंग. इस बार कुल मिलाकर 2 रनों के खाते में जोड़ेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर. और 2 रनों के साथ 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और 22 रन और चाहिए. 22 रन स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज. और जैसा कि मेरे दोस्त सतीश ने कहा था, मैच इज नाउ स्टिल इवनली पॉइज्ड. और यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए भवित अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार टिप किया कुरैश से खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे. लेग कटर गेंद की लाइन को समझते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट. और कुरैश देखिए सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ी यहां पर, लेकिन फिजिकल फिटनेस इस तरह बरकरार रख चुके हैं जैसे कि 18 से 20 साल के हो. और यहां पर देखिए किस तरीके से उन्होंने गेंद को स्कूप किया था. रनिंग बिटवीन द विकेट एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट. जैसा कि मेरे दोस्त सतीश ने फरमाया था, अभी भी फिजिकल फिटनेस बरकरार रखना उतना आसान नहीं है इसे ढलते हुए उम्र में. और कुरैश यहां पर देखिए किस तरीके से नौजवानों की तरह बल्लेबाजी करते हैं. रक्षात्मक, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. सिंगल रन एडेड. और जिस तरीके से गेंद को वहां पर उन्होंने दबा दिया था, काबिले तारीफ है. और गेंद लगभग लुढ़कती हुई आई थी इस वक्त शॉर्ट कवर पर. और जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर स्वयं गेंदबाज अपनी बाईं ओर जाकर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. बराबर का टक्कर यहां पर जारी. और यहां पर इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दामो इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. भवित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. कुरैश और दामो कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और इस बीच भवित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा. गेंद निकल चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन पर. फील्डर पहुंचे. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सेंसिबल क्रिकेट की इस वक्त जरूरत है बल्लेबाजों को. मंगला देवी क्रिकेटर्स के अगर उन्हें मंजिल तक पहुंचना है तो और एक बेहतरीन गेंदबाजी की दरकार इस वक्त टीम एलिगेंट की गेंदबाजों को अगर उन्हें इस मैच में वापसी करना है. गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला स्क्वायर ऑफ द विकेट. फील्डर थोड़े से पीछे लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर. जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. 17 रन और चाहिए विजय के लिए. 14 गेंदें बाकी. 14 बॉल्स टू गो एंड 17 रन्स मोर. नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. और अगली गेंद के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार गॉन फॉर अ माइटी हिट दिस टाइम. मिसिंग द लाइन कंप्लीटली. बिल्कुल सही सीधी रफ्तार के साथ गेंद और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो बेहतर गेंद थी गेंदबाज भवित की. और अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार लेग से बाहर स्कूप कर दिया और गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ मैं कहूंगा मंगला देवी क्रिकेटर्स आर नाउ बैक इन द गेम.
ऑफ द टोज, देखिए किस तरीके से गेंद को स्कूप किया था ऑफ द टोज। देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे, काफी स्क्वायर रन, लेकिन गेंद निकली इस वक्त फाइन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और अब इक्वेशन 13 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी, 13 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। द मैच इज नाउ ಈವನ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸ್ಡ್। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎರಡು ತಂಡದವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ದಿಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. तो यहां पर अंतिम 2 ओवर बाकी, 13 रन चाहिए। और निस्संदेह पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जो चौका झड़ा था दामू ने, वो चौका यहां पर पूरी तरह मंगला देवी क्रिकेटर्स की मैच में वापस ला चुका है। और यहां पर टीम एलिगेंट को चाहिए इस वक्त एक ऐसी गेंदबाजी जो मैच के तख्ते को उनकी ओर पलट कर रख दे। और उस बेहतरीन गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाजी पर उतरते हुए इस वक्त गेंदबाज अभिलाष ओपन होम्स एंड की ओर से। और अभिलाष ने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ओ बॉल, इस बार बेहतरीन, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन। कुरैश गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए, काफी ढीली गेंद थी और कुछ हद तक मैं कहूंगा अंदर की ओर आती हुई, डिविएट होती हुई, और बल्ले और पैर के बीच में लंबा अंतर इस वक्त उन्होंने छोड़ा और गेंद सीधे जा टकराई मिड लेग स्टंप पर। तीसरा विकेट गिर चुका है, कुरैश की पारी समाप्त है। लेकिन मैं समझता हूं सतीश कुरैश अपना किरदार यहां पर निभा चुके। अब 11 गेंदों पर 13 रन चाहिए और अभी भी मैं कहना चाहूंगा मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। I think Gopi, the Quraish is dismissed in a wrong time because he's a so experienced batter, isn't it? He can take the match away from the opposition. His wicket definitely going to be team elegant. They got opportunity to bounce back. And look at the delivery from Abhilash. Once again, he's getting the ball a lot of turn in the occasion. He just missed out because of the used turn of the delivery. He tried to play that one on the offside region. Because of that, ball is taken an extra turn and Quraish completely cleaned him up. Now I think team elegant has got opportunity to bounce back because new batter is coming into middle. Then pressure is always be there. And wait and see how Ashwin Raj will how well we going to contribute from the bat. बिल्कुल सतीश, इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, अंतिम क्षण में गेंद को रोकने में तो सफल रहे, डाइविंग स्टॉप करते हुए थ्रो को अभिलाष, लेकिन गेंद स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई। और इस बीच वाइड का इशारा, 1+1 2 runs now added to the total. अब equation seems to be easier now. 11 balls remaining and 11 runs now they have to score for victory. और मैं समझता हूं मैच के मुख्य क्षणों में जो वाइड्स टीम एलिगेंट के गेंदबाजों ने फेंके हैं वो इस वक्त उनके लिए काफी महंगे साबित होते हुए। और यहां पर गेंदबाज इस वक्त तैयार, अभिलाष डॉट गेंदों की सख्त दरकार एलिगेंट को इस मैच में वापस आने के लिए। अश्विन के लिए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा और इस बीच गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और एक और वाइड। तो अभिलाष अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तराशते हुए, जब आप विकेट उखाड़ते हैं और अगली गेंद पर अगर आप नए बल्लेबाज को 2 वाइड लगातार फेंकेंगे तो सहज रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और यहां पर 2 वाइड अभिलाष ने फेंके, 3 अतिरिक्त रन प्रदान किए सामने वाले टीम को। और यहां पर देखना यह है कि अब वो अगली गेंद पर क्या करते हैं। तो 33 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 10 runs now they have to score for victory and 11 balls remaining in their innings. तो 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर अभिलाष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और बाएं हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद है इस बार बेहतरीन गेंदबाजी थी और डॉट गेंद यहां पर जुड़ती हुई, ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से अंदर की ओर आती हुई, कुछ हद तक टर्न लेते हुए गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अब गेंदे और रन से एक बार फिर से बराबर, 10 रन चाहिए 10 गेंदों पर। और यहां पर तो जहां तक का सवाल है, पिछला मैच जो कि खेला गया था एनएम और स्नेहा मालेमार के बीच, इस मैच में भी 10 गेंदों पर 10 रन बनाने थे स्नेहा मालेमार का और अंतिम आखिरकार वो 5 रनों से इस मैच को हार गया था, 4 रनों से कहना पड़ेगा। इस बार इस गेंद को इस वक्त अजीब और गरीब ढंग से खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देना सिंगल। और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 9 रन चाहिए
गेंदे बाकी है 9 और इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं अश्विन ना सामना करने के लिए तैयार। अभिलाष की गेंदों का दबाव इस वक्त गेंदबाज के ऊपर भी है, बल्लेबाज के ऊपर भी है और फील्डर के ऊपर भी है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा विजय के लिए कड़ा संघर्ष इस मैदान पर जारी है। और अभिलाष एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया, खूबसूरती के साथ गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, फील्डर काफी पीछे मौजूद, क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि अपने आगे की ओर आकर जब तक गेंद को फील्ड करे स्क्वायर लेग पर फील्डर। और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 35 for the loss of 3 wickets, 8 runs to get from 8 deliveries। और अभिलाष इस वक्त दामोदर को गेंदबाजी करेंगे। दामोदर एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए 4 चौके अब तक वो झड़ चुके हैं और क्रीज के एक छोड़ पर वो डटे हुए। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, फील्ड और इस बार बल्लेबाज को दूसरा रन नहीं मिलेगा। दोबारा जल्दी से गेंद को बैकअप करते हुए खुद वही फील्डर रियाज थे शॉर्ट फाइन लेग पर और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 7 मात्र रन चाहिए और गेंदें बाकी है 7। तो बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन एक साथ इस वक्त चलते हुए 7 गेंदों पर 7 रन चाहिए। 7 नंबर जर्सी पहने हुए बल्लेबाज अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज की ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर, अश्विन दौड़ पड़े काफी तेजी के साथ, थ्रो पहुंचा, निशाना इस वक्त टकराया लेकिन इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो यहां पर देखना यह है कि निशाना सीधा टकराया था या फिर गेंदबाज के हाथों पर टकराने के बाद गेंद स्टंप्सों को टकराई थी और तब तक क्या हुआ था, क्या बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या फिर नहीं, यह देखने वाली बात है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ और तीसरे अंपायर यहां पर उस रनआउट का परिशीलन यहां पर करते हुए तो बाई का इशारा इस वक्त हो चुका है। तो निर्धार का अभी भी परिशीलन करते हुए तो यहां पर कुछ ऐसे हस्तियों के नाम मैं लेना चाहूंगा जो कि इस श्रृंखला के लिए अपना योगदान वो दे चुके हैं। श्रीमान वेदव्यास कामत, उदय पुजारी, गणेश कॉर्पोरेटर, राधाकृष्ण नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर, तिलक गुरु, यंग फ्रेंड्स उरुआ, संपत शेट्टी, प्रणव बिल्डर्स, कद्री मनोहर शेट्टी, अनिल कुमार कॉर्पोरेटर कुलूर, किरण पई, साहूकार बाबा पई, पेट्रोल पंप लेडील, कर्नाटका बैंक लिमिटेड। और इस श्रृंखला के महिला बिरवेर कुडला के महिला विभाग के कुछ सदस्य जिन्होंने इस श्रृंखला के सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत की है। और एक और 3 मेन पिलर के बारे में सबसे मैं जिक्र करना चाहूंगा। त्रिशांत अशोक नगर, चरण एसके और सुनील कुमार बिरवेर कुडला और बिरवेर कुडला के महिला संगठन के सदस्य सुमंगला सी कोटियान और एक और मुख्य सूत्रधार निशांत सी कोटियान। और इन सबको हम सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर निर्धार थर्ड अंपायर का भी नहीं आया है और श्रीमान गौतम बोलूर ये भी हमारे साथ मौजूद है कमेंटेटर बॉक्स पर और इनको भी हम हार्दिक हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर काफी नजदीकी मामला लगता है। एंड इज गॉन। और अब ये रन नहीं जुड़ेगा तो अब रन चाहिए 7 और
गेंदें बाकी है 6। तो इस ओवर में मैं समझता हूं तख्ता कुछ हद तक पलट चुका है और पलट चुके हैं अभिलाष। अब अंतिम ओवर में चाहिए 7 रन और देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या होता है। तो गेंद इस वक्त लिए हुए इस अंतिम ओवर में गेंदबाज कौन गेंदबाजी पर उतरते हैं ये देखने वाली बात है। पहली गेंद, अंतिम ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए कौन गेंदबाज यहां पर उतरते हैं देखना पड़ेगा। और इस बीच गेंदबाजी पर उतरते हुए शबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और मैच निर्धारित ओवर यहां पर शुरू होता हुआ 7 to get फ्रॉम लास्ट ओवर। और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है किरण राज और वो इस वक्त सामना करेंगे शबीर की गेंदों का। रनों की सख्त दरकार श्री मंगलादेवी क्रिकेटर्स को, जबकि डॉट गेंदों की सख्त दरकार टीम एलिगेंट को। और देखते हैं इस अंतिम ओवर में विजय किसके पक्ष में जाता है। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। 7 to get फ्रॉम 60 लेवल्स। हियर वी गो। पहली गेंद, ये गेंद स्वीप करना चाहा, शॉट फाइनल की दिशा में दामोदर दौड़ पड़े स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। अंतिम क्षण में गेंद लेग से बाहर की ओर निकली थी, बल्ला आया था चूके और इससे पहले की गेंद शॉट फाइनल लेग फील्डर के हाथों में पहुंचे और फील्डर गेंद को थ्रो करे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 6 रन चाहिए 5 गेंदों पर। दामोदर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और दामोदर आरंभकार की हैसियत से उतरे थे, अभी भी मैदान पर डटे हुए 20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों की मदद से। और निस्संदेह जहां तक विजय का सवाल है श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स का, मैं कहूंगा उनकी सारी उम्मीदें सारी आशाएं अब दामोदर के ऊपर निर्भर। और देखते हैं वो अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। दर्शकों से मैदान लगभग यहां पर भरता हुआ दोपहर से दिन ढलती हुई शाम की ओर इस वक्त ढलती हुई। और जहां तक सवाल है वक्त का तो 3:40 यहां पर बच चुके हैं और यहां पर संघर्ष की तीव्रता दोनों टीमों के बीच साफ बढ़ती नजर आती हुई। और ये गेंद इस बार एक बेहतरीन गेंद थी, दामोदर के पैर पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चुका, बैकअप होता हुआ और 1 रन बल्लेबाज इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके 38। 5 to get नाउ फ्रॉम 4 डिलीवरीज। तो यहां पर मैच में कशिश अभी भी बरकरार और इस बीच किरण राज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। किरण राज इस गेंद पर क्या करते हैं देखना पड़ेगा। क्या वो सिंगल्स लेकर दामोदर को स्ट्राइक देंगे, क्या आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न करेंगे, देखना पड़ेगा इस अगली गेंद पर। और 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज शबीर फेंक चुके हैं। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स और इसी के साथ ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं शबीर। और यहां पर विकेट गिर चुका है। इस विकेट के पतन के साथ अब मैं कहूंगा टीम एलिगेंट आर नाउ बैक इन द मैच। 5 रन अब चाहिए, 3 गेंदें बाकी और निस्संदेह मैं कहना चाहूंगा इस अंतिम ओवर में काबिल तारीफ गेंदबाजी की है गेंदबाज शबीर ने। तो नए बल्लेबाज का यहां पर इंतजार है और देखते हैं नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर क्या करते हैं अगली गेंद पर। विकेटें इस वक्त गिर चुके हैं 5 विकेटें यहां पर सुरक्षित है। और नंबर 44 की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज धनु इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। अगर इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बनता है तो निस्संदेह श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस गेंद में कम से कम सिंगल बनाना जरूरी बन चुका है। शायद ज्यादा भी रन बने तो बेहतर होगा उनके लिए। और जहां तक टीम एलिगेंट का सवाल है इस वक्त उन्हें इस गेंद पर रन रोकना होगा अगर उन्हें इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत और करनी है। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए दर्शक मैदान पर लगभग भर चुके हैं, खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए। 5 रन चाहिए 3 गेंदों पर। 5 to get फ्रॉम 3 डिलीवरीज। और शबीर गेंदबाजी तैयार, गेंदबाजी के लिए तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट धनु के लिए। यह गेंद इस बार रिवर्स शॉट, फाइन शॉट जस्ट ओवर द गली फील्डर्स हेड एंड इट कैन बी गॉन ऑल द वे। यस इट डज।
और गेंद के साथ साथ खुद भी सीमा रेखा से बाहर चले गए फील्डर, और इस चौके के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त विद ट्विस्टेड बैट उछाला था, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गली फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकली इस वक्त, और एक लंबा दौड़ लगाने के बावजूद इस गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और बल्लेबाज धनु इस चौके के जरिए मैच को पूरी तरह मंगला देवी की ओर पलट कर रख दिया है। अब सिर्फ 1 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 2, और अब ऐसा कहना पड़ेगा शबीर की चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच को बराबर में समाप्ति यहां पर कर सकती है। अगर 2 डॉट गेंदें वो लगातार फेंकते तो मैच टाई हो सकता है, और अगर मैच टाई होगा तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित यहां पर किया जाएगा। तो लगभग सारे खिलाड़ी इस वक्त सर्कल के अंदर मौजूद, सिंगल से रोकने के प्रयास में, और शबीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धनु सामना करने के लिए तैयार। 1 ऑफ 2 बॉल्स, और फील्डर को इस वक्त कुछ हद तक जमाते हुए सराउंडिंग फील्डिंग, और शबीर इस वक्त तैयार धनु के लिए। 1 ऑफ 2, हियर वी गो। ये गेंद इस बार चूके विकेट कीपर चूके, इस बार गेंद को टटोलते रह गए, और इसी के साथ श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स registered a thrilling victory against Team Elegant with just 1 ball to spare, and they won the match by 5 wickets, and with that thrilling victory they are through to the next round of this competition. So what a fantastic performance from both teams in this match. और अब अगला मैच यहां पर खेला जाएगा। One more big match is now coming up. Young Friends Ulva will takes over NM Jappu, और वो मैच यहां पर शुरू होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और एक छोटा सा ब्रेक अब हम लेते हैं।
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂದೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. So once again, welcome back for the high voltage match of the day number final, the day number 2 of this most prestigious BK Champions Trophy 2022. All set now for the big match. So two arch rivals of Andram cricket in the South Kenda district. Young Friends Ruwa takes on NM Cricketers Mangalore. The news here, after winning the toss, the captain of NM Cricketers Mangalore and rightly elected to field first. What a game they got against Sneha Malamar. The victory will going to give a lot of confidence for NM Cricketers Mangalore. That was a hard-fought victory, I must say, against Sneha Malamar, and they came into this quarter-finals prestigious cricket tournament. So coming back to these two teams, of course, NM Cricketers Mangalore, they came into this tournament as a favorite, just like what Young Friends Ruwa came into this tournament as a favorite of winning the titles of this BK Champions Trophy 2022. NM Cricketers Mangalore, even though they didn't got a very good start in the season, but Young Friends Ruwa quite a different one. They got a very good season. They clinched some prestigious cricket tournament. They won the Gladiators Trophy. They won one tournament which is played at Vamadapadavu as well. They become the runners of UFC Trophy, RRP Memorial Trophy, and now they came into this BK Champions Trophy. So UCC cricket ground, they're witnessing a lot of high voltage matches, and in this particular BK Champions Trophy, there is one more big match between NM Cricketers Mangalore versus Young Friends Ruwa. The opening batters came into middle here for Young Friends Ruwa, Santosh and Santosh Bantwal, along with him. Very destructive left hand, the batter Ashok is in non-strikers end. A little bit change in the opening over. Riaz straight away is in picture, and certainly wanted the Riaz to bowl, because they're playing against Young Friends Ruwa. They need to have some bowler who can restrict the run flow of Young Friends Ruwa, because everybody knows the strength of this man Santosh Bantwal, and even the strength of Ashok as well. They need to get some good start from the bowling, NM Cricketers Mangalore, and at the same time Young Friends have to get some good start from the bat. First ball just slipping out of his hands, so straight away umpire Roland Pinto has called it's a dead ball. So Riaz might be ball is slipping out of his hand, and that's time of he is just releasing the ball slipped out of the hands, and there is no delivery bowled in that first over. So coming back to the fielding set here for Santosh, as seeing that he is a very strong hitter of the ball in front of wicket, so that the protection has been given for him just in front of wicket. Deep long off and deep long on, wideish long off and deep long off, and there is a backward point, short cover point, mid off, short fine leg, square leg. The next ball for beautifully bowled, excellent delivery. That ball is not too far from the up stump, I must say, as Santosh wanted to play his favorite stroke towards the extra cover region. They missed it completely, and wicketkeeper behind the stump Ishad did the rest back to bowler. Now umpires just having a word with the Riaz. Maybe they're talking about the return crease as he wanted to see, and Riaz again back to his bowling mark, bowling with a short run up with away from us. Right arm over the wicket, passes umpire Roland Pinto, bowls Santosh, drives it and powerfully down to deep long on. Just like I mentioned about, the protection has been given for Santosh in the deep long on, so he has to satisfied with a single, and Santosh is off the mark with a single. Scoreboard now 1 without loss of any wicket.
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೂಲೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಕ್ಷಿತ್ CS ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೂಲೂರು, Mr. Dikshit CS, for this wonderful cricket tournament. This time, oh, loved it! Oh, that was a sailing! Oh my goodness! Oh my goodness! That ball really went like a tracer bullet. Can you believe this? It's unbelievable struck, I must say. What I must say for this cricketing stroke, I have no word at all for that such kind of cricketing stroke, I must say. There's nothing wrong with the line of the delivery, I must say. The Riaz, everybody knows the strength is his face. Against his face, hitting like that, I think just imagine the speed of the bat from this man. The speed of the bat, I think I must say, this is a stroke is came just stroke coming from the cannon. And that was really one of the best sixer, I must say. Oh, beats everyone, beats everyone. The wide call by umpire, straight away pressure is on. The pressure is on, the wicketkeeper fails, short third man fielder, short fine leg fielder, Atibi also fails. And ball running down to deep third man boundary for 4 runs. Now pressure is on now for the bowler. After that 10 runs in 2 balls and Riaz again. Right arm round the wickety ball, slower one, change of face, quickly realizing Riaz that bowling with the face is no use here for this man Arshad. Just he bowled a slower one and negotiated very well by Arshad in the occasion, seeing that it's a slower one, and he just picked up a single down to square leg region. 2 balls remaining in this over of Riaz. 13 already on the board for young friends Urva. Santosh back on strike, he's batting on 1. Riaz searching for the dotted delivery, searching for the wicket, bowling away from us. Right arm over the wicket, Santosh drives a run beautifully down to deep extra cover region. Ball running down to deep extra cover. They're looking for the second. In comes the throw. Excellent fielding there by the fielder in the deep. So batter have to settle for the single. Once again, promising looking extra cover drive there from Santosh. And he picked up a single for that. 14 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Riaz once again did a little bit changing his angle, coming round the wicket, just testing the direction of the wind, checking the direction of the wind. Now bowling right arm round the wicket, bowls Ashad, improvisation, appeal for leg before wicket. That's definitely that ball is going to miss the leg stump as he's coming a little bit across, little bit angling round the wicket. So that ball definitely going to miss the leg stump. First over completed. After completion of first over, young Prince Hurwa has got a flying start, 15 without loss of any wicket. And Gopi just coming back to the first over. Once it looks like the first 2 deliveries, with Riaz is bowled excellent deliveries. And after that, Ashad came into strike. And what a stroke that, Gopi. It was unbelievable stroke, isn't it? The bat speed, I think, the features of that stroke. Because Riaz is bowling in such a face. Against his face, hitting that kind of cricketing stroke, it's unbelievable. Only Ashad can hit that kind of cricketing stroke. Exactly, Satish. जिस तरीके से उन्होंने एक्सक्विजिट फुटवर्क के जरिए गेंद को उछाला था ऑन साइड पर, लगभग गोली की रफ्तार में, काबिल तारीफ है. और ऐसे स्ट्रोक से जैसा कि आपने फरमाया सिर्फ अरशद ही खेल सकते हैं. और यहाँ पर पहले ओवर में 15 रन जोड़ने के बाद मैं कहूँगा जो दोनों आरंभिक विध्वंसक बल्लेबाजों को आरंभिक तौर पर इस वक्त प्रमोट किया गया है, एक सही निर्णय ले चुके हैं इस वक्त यंग फ्रेंड्स के कप्तान. और ये विध्वंसक जोड़ी जितनी ज्यादा ओवर यहां पर टिकेगी उतना ज्यादा यहां पर मुश्किलें बढ़ेगी एनएम बेंगलुरु को. तो एनएम बेंगलुरु के सामने ये मुद्दा इस वक्त ठहरता है कि सबसे पहले इस जोड़ी को उन्हें तोड़ना होगा. Exactly, Gopi. They wanted to break this partnership because this is a game plan, Gopi. All about the game plan. They know exactly how important going to be the first two of the power play. They wanted to get some runs in the first two over of the power play. That's why these 2 batters is been promoted. And Santosh and Ashad, just they are winning the first over by hitting some big shots, especially Ashad. Now wait and see how Mujib will go into contribute from the far end. Right arm balls again. It was not a good bowling. It is not a good bowling here from Mujib. A ball down the leg stump, going to be a wide. 1+1. He's not impressed with the wicket keeper because of course that was a wide ball. But he's just having a high contact with the wicket keeper. Why you are not collecting the ball? Because the extra run
is allowed to the batters. So 17 on the board without loss of any wicket. Mujib from the far end. From the urban Oms end, right arm over the wicket, deep long off, deep wideish long, another two fielders in the deep, short third man, backward point, short cover point, there is a short mid on, short square leg, short fine leg, the fielder for Santosh, Mujib from the far end, right arm over the wicket, improvisation, wicket gone, this time again, I think Santosh couldn't manage to find that one from the right, from the middle of the bat, the intention of the batter to play that one very fine, that because he can get past that infields and get the boundary for that, but this time he didn't got enough bat onto that. 18 on the board. Look at the crowd here. Jam-packed stadium out here in UCG cricket ground. Electrifying atmosphere. They knows that two top teams are having a battle for the next round. This time direct hit required. If it's a direct hit, might be that was a curtain for the innings of Santosh Bantwal. The valiant effort there from Atif. He's tried his level best. Picked the ball. Look at that one in replay. Tried to sweep that one. Ball just going away from the batter. The wicketkeeper fails to collect the ball. If it is a direct hit, I think it's going to be a very close call. So all kind of battle we can expecting from these two teams. They desperately wanted to be in the semi-final of this most prestigious BK Champions Trophy 2022. Proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla, Friends Bolalbag. The day number 2. Decider day of cricket. We are really expecting some great contests from these 9 teams already. The 4 teams are qualified to quarter final, and this we are watching the quarter final number 3 of BK Champions Trophy 2022. From the far end, Mujib, right arm over the wicket. Santosh going for the off drive, missed it completely. Ishad missed it completely. Ashad wants a single. Santosh not interested because he don't know where the ball is. That's why he's not interested. Ashad know exactly ball is away from the wicket keeper, but seeing that Santosh is not interested, he's going back. The much required dotted delivery there from Mujib. Needed such kind of ball, such kind of line for a batter like Santosh. This time a top edge straight to the hands of a wideish long on. The NM cricketers Mangalore wanted that wicket if they wanted to restrict the flow of the runs of young friends Silva. Little bit disappointment here for Santosh because he's got a top edge. We can see that it was clearly the top edge. Just he wanted to play a wrist of, just a flick of the wrist comes into play. He's got a top edge, but ball is really traveling in the irrigation. Even that top edge ball went towards a deeper, wideish long on region, and the fielder making no mistake at all. 20 for the loss of 1 wicket. Laid the foundation. Of course, Santosh's contribution is just 3 runs, but he is one responsible for the partnership of 20 runs in just 1.3 deliveries. 9 balls, 20 runs partnership is comes to an end between Santosh and Ashad. The new batter, Imtiaz, the very important and key player for the side of young friends Surva, always coming in the number 3 position. Very important place for good batters, the number 3 position. Now I think there is no pressure at all for Imtiaz because they got 20 runs on the board. The wait and see the kind of strategy will going to implement to get some runs here. Mujib, successful bowler from the far end. Right arm over the wicket, he bowls. This time ball is in there. Chance of run out. Riaz trying at the stump. Appeal for the run out. Umpire says not out. Now Roland Pinto, just seeing the body languages of all the fielders of NM Cricketers Mangalore. Why not? Why not? I am not going to disappoint you. I want to call for the third umpire and the wait and see will it going to be out or not. So wait and see what could be the decision. Of course, the fans of NM Cricketers Mangalore wanted that the third umpire will going to give the out, but the followers, the fans of young friends doesn't want to see the danger man back into pavilion. Ashad looks like he's a confident. Gopi, just look at the body language. The body language will tells you the result of this decision. Look at that Ashad. He looks very relaxed. Maybe he's thinking about I am in. But at the same time, look at the body language of NM Cricketers Mangalore. They knows that how important the wicket of Ashad. If they're able to get the result in their favor, definitely they can bounce back this match. Now, disappointment for NM Cricketers Mangalore. Not out is the signal. Not out is a signal coming from umpire, third umpire, and Ashad has got a big smile in his face. You know exactly. Even Roland Pinto knows that the batsman is in, but he's just called for the third umpire to see. And
21 for the loss of 1 wicket. Now Ashok back on strike. This is a very good contest between one good bowler against one good batter. Mujib from the far end. Bowling right arm. Over the wicket he balls. Ashok drives that one. You can't stop this man. You can't stop this man from the beginnings. What a great shot once again there from Ashok. Again the timing is a perfection in that occasion. Picking up the line and length. The placement is so good in that occasion. Lofted that one. Such a fantastic stroke to watch. Whenever the batter hitting the ball straight down the ground. And got that one right from the middle of the bat. Long off boundary for 4 runs. The score jumped into quarter century. 25 now on the board for the loss of 1 wicket. Mujib desperately wanted the wicket here. Right arm over the wicket. This time, wow, beautifully played one. What a gentle flick of the wrist. Down to deep backward square leg region. They're running hard, looking for the third. Imtiaz denying. You know exactly that the throw is coming from the deep, so that they doesn't want to take a risk. One more fantastic over here for young friends Biruver. So over number 2 completed. Completion of over number 2. Young friends who are looking towards the big score. They're cruising towards a big score. 27 for the loss of 1 wicket. What a fantastic flick shot, Gobi. We are watching some big shots from this man Ashok. Is going for the big expansive cricketing strokes, but last one, it was a fantastic flick shot, isn't it? बिल्कुल गेंद को हल्के से तेज गेंद में पेस थी और इस पेस को समझते हुए हल्के से गेंद को जस्ट रोलिंग ऑफ हिज रिस्ट गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त फ्लिक कर दिया था. ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में उन्होंने बल्ला उड़ाया था और रिस्ट वर्क के जरिए गेंद को इस वक्त फ्लिक कर दिया था. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अरशद ने 2 रन बटोर चुके हैं. 2 ओवर में बन चुके हैं 27 रन. सिर्फ 1 विकेट गिर चुका है और निस्संदेह यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा बुलंदियों पर नजर आता हुआ और उनके पास जो बल्लेबाजी में गहराई है, द डेप्थनेस इन बैटिंग लाइनअप, उस गहराई का वो सही तरीके से इस वक्त इस्तेमाल करते हुए. हालांकि संतोष का विकेट जरूर गिरा है, लेकिन यहां पर अरशद पूरी पारी की भागदौड़ को संभाले हुए एक विस्फोटक पारी यहां पर खेलते हुए और इम्तियाज का आगमन इस वक्त हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में. और देखना यह है कि इम्तियाज अरशद का किस तरह साथ निभाते हैं. लेकिन मैं कहूंगा सतीश, द फर्स्ट 2 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बॉलर्स बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ यंग फ्रेंड्स Biruver. Exactly, Gopi. The first 2 overs belongs to young friends Biruver. This time, so nicely bowled. Change of phase. Atif bowled a slower one, and Imtiaz not really picked that one. Slower one. Thought that it might be the ball. He wanted to flick that one instead of he wanted to hit the ball. And the much required dotted delivery from Atif. Atif bowling away from us. Right arm over the wicket. Bowls to Imtiaz. One more slow delivery. This time Imtiaz well behind the line of the delivery. Swept that one quite nicely down to short square leg region for a easy single. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So warm welcome to all chief guests for this wonderful cricket tournament, BK Champions Trophy 2022, and we are back to this match now. Atif coming now round the wicket to Ashok. This time missed that one completely. Wicket keeper not really up to the mark. They're going for the extra run now. No, they're going against it. By call by umpire. Look at Atif. You can see that angry face of Atif. Why not? Because he's really beaten Ashok. But wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, and the frustration for the bowler. 29 for the loss of 1 wicket. Atif is a key player. Very good all-rounder for the side of NM Cricketers Mangalore. Of course, in the last season he's represented Young Friends Biruver, and last 2 seasons he's representing for NM Cricketers Mangalore. Swept that one down to square leg region. There is a certain single for Imtiaz. Imtiaz quickly realizing that he's a very intelligent cricketer. You know exactly the situation and the condition of the game. They got a plenty of runs in the board. His job is to rotate the strike and give the strike as much as possible to Ashok. But Ashok looks like he's not in a hurry. He's just choosing the wrong deliveries. He's choosing the loose delivery for the big shot. That was a good sign of the very good batters, as he was not really looking for the each and every ball for the big hits. And so far it's been outstanding innings. He's batting on 14 now. This time lofted. I don't think he will going to get the distance. He will get the fielder than the deep long on. And that's the 1 wicket NM cricketers wanted in this situation. And Atif produced a very important breakthrough. And danger man
Ashok departs. The danger man Ashok departs. This is a slower one once again there from Atif. That was really working out here. And you know exactly the Ashok is a kind of batsman. He loves to see that ball is coming to the bat very quickly. Whenever there is a slow ball, he's a little bit struggling. And that's why Atif is just bowled at a slower one, the previous one. And taking the invitation, Ashok went for the big shot. Didn't got enough bat, didn't got enough timing. And he faced the penalty for that. But he's played an entertainment innings. Played some enterprising cricketing strokes as well, and really got entertained all spectators out here in UCG Cricket Ground. Of course, he won the viewers in YouTube through V4 24/7 channel. 30 for the loss of 2 wicket. Now, the new batter Ajmal. The very stylish right-hand batters came into middle. Lovely slower one, negotiated very well by Ajmal, just waiting for that slower delivery. Tried to york the batsman in the negation there by Atif. Atif doing a fantastic job in this over, just like he wanted to do in this situation for NM Cricketers Bangalore. He tried his level best. He got the wicket of Dangerman Ashok as well. So 3 overs completed. After completion of over number 3, it's a 31 for the loss of 2 wicket. And Gopi, once again welcome back here. And the 3 overs which is really belongs to young friends Urva, but more than 3 overs I must say, 2 overs which is belongs to young friends Urva. The last over which is belongs to NM Cricketers Bangalore. In that particular over, Atif conceded just 4 runs, and he picked up a wicket of very danger man Ashok back into pavilion. And because of that, I think NM Cricketers Bangalore now they got an opportunity to restrict young friends Urva from the big score, isn't it? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, अंतिम 1 ओवर आतिफ का बेहतर रहा, सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किया और अरशद का बेशकीमती विकेट उन्होंने प्राप्त किया। और मैं समझता हूं इसी तरीके की गेंदबाजी अगले 3 ओवर में एनएम क्रिकेटर्स के गेंदबाज बरकरार रखते हैं तो कम से कम 50 रनों के अंदर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों को रोक कर रख सकते हैं। लेकिन यंग फ्रेंड्स उर्वा के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, उस बल्लेबाजी पर अगर अंकुश लगाना है तो निस्संदेह कुछ विशेष रणनीति के साथ उन्हें यहां पर गेंदबाजी करनी होगी। और खासकर इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा का पलड़ा भारी लगता हुआ 3 ओवर के बाद 31 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। और लिखित इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लिखित जिन्होंने पिछले मैच में स्नेहा मालेमार के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, जब अंतिम ओवर में 6 रन बनाने थे तब उन्होंने एक घातक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 2 या 3 विकेट अंतिम ओवर में उखाड़े थे और एनएम जप्पू को यहां पर विजय दिलाई थी। और यहां पर देखिए किस तरीके से लेग स्टंप से बाहर किया और उन्होंने गेंद को फेंकी है। इस वक्त 2 रन मिलेंगे और बल्लेबाजों पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के अगर अंकुश लगाना है तो यहां पर उनके रन के बहाव को रोकना है तो यहां पर इस डिपार्टमेंट पर यहां पर उन्हें नियंत्रण प्राप्त करना होगा। वाइड के डिपार्टमेंट पर यह गेंद स्वीप किया इस वक्त अजमल ने, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर। और कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है और अरशद जो विध्वंसक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो उस विध्वंसक बल्लेबाजी को वहां पर दिखा चुके हैं और इस बार गेंद मुश्किल सा मौका और गेंद इस वक्त निकल चुकी है कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर। बड़ी मुश्किल के साथ जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर तीसरा रन यशस्वीतम पूर्ण कर चुके हैं। और मुश्किल सा मौका जरूर था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो लपक नहीं पाए, 3 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। सब कुछ इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के पक्ष में चलता हुआ और निस्संदेह यहां पर वापसी करने के लिए एक घातक गेंदबाजी की जरूरत एनएम के गेंदबाजों को। और इस बीच लिखित गेंदबाज इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद को बल्ले पर नहीं ला पाए और गेंद वहीं पर गिर गई उनके हाथों पर टकराने के बाद और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। और एक बार फिर से गेंदबाज लिखित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बेहतर ऑफ कॉर्नर, इस बार विकेट गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में। जैसे ही गेंद पर स्ट्रोक खेलने में चूके क्रीज से आगे निकल पड़े अजमल और इसे देखते हुए तेजी के साथ जैसे ही गेंद को विकेटों के पीछे कलेक्ट किया, विकेट कीपर ने विकेट चटका दिए। देखिए यहां पर किस तरीके से होता है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स। और यहां पर इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट
गिर चुका है अजमल का, और तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है 38 रन के योग पर यंग फ्रेंड्स उर्वा, जबकि उनकी पारी का चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर। तो पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस श्रृंखला का पूल बी का यहां पर खेला जाता हुआ, दूसरा मैच यहां पर खेला जाएगा गोरी यंग बॉयज, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच गोरी यंग बॉयज और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में इस मैच के बाद, राइट आफ्टर दिस मैच। और इस मैच में इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज प्राबल्य स्थापित कर चुके हैं और गेंदबाजी में वापसी करने की तलाश में इस वक्त एनएम मैंगलोर के गेंदबाज। 3 विकेटें जरूर गिर चुके हैं, लेकिन 38 रन इस वक्त जोड़ने में सफल 3.5 ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज। नए बल्लेबाज एक और बल्लेबाज अजहर रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और जिस तरीके से वो बल्ला बैट पकड़ते हैं, देखने वाली बात यह है कि देखिए किस तरीके से बल्ला पकड़ते हैं। हालांकि आमतौर पर बैट को पकड़ा जाता है दाहिने हाथ नीचे और बाएं हाथ से ऊपर लेकर पकड़ा जाता है, और यहां पर तद्विरुद्ध बल्कि बाएं हाथ नीचे और दाहिने हाथ ऊपर इस वक्त तरीके से पकड़ते हुए, और यहां पर देखिए किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन पहली गेंद को उन्होंने उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, और उनका यह तकनीक यहां पर काम नहीं आया और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर इस कैच को लपक चुके हैं, और यह विकेट यहां पर गिर चुका है। पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में अजहर का विकेट गिर चुका है। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 कंप्लीटेड। इनफैक्ट 4th ओवर कंप्लीटेड, 4 ओवर के समाप्ति 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। Exactly 9.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ 2 ओवर का खेल यहां पर बाकी उनकी पारी में, और अंतिम 2 ओवर में एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों ने दिया है। आतिफ और लिखित ने सिर्फ 11 रन इन दोनों ने मिलाकर अंतिम 2 ओवर में प्रदान किए हैं। आतिफ ने 4 रन प्रदान किए थे, अब लिखित ने 7 रन प्रदान किए हैं, और अंतिम 2 ओवर में, बचे हुए 2 ओवर में अगर इसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं तो 50 रनों के आंकड़े के अंदर वो यंग फ्रेंड्स उर्वा को रोक कर रख सकते हैं, और 50 के आंकड़े के अंदर वो रोक कर रखने में सफल होते हैं तो निस्संदेह उन्हें भी इस मैच में विजय दर्ज करने का मौका है अगर वो बेहतर बल्लेबाजी करते हैं जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले उन्हें इन 2 ओवर में बल्लेबाजों को नियंत्रित करना है, और देखते हैं अपने इस प्रयत्न में वो किस हद तक यश प्राप्त करते हैं। आतिफ ओवर की पहली गेंद, ये गेंद अश्विन के लिए, गेंद को ड्राइव किया सीने में डाउन पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 40 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि पांचवा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और आतिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 11 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। ओनली 11 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन द रिंग्स। आतिफ अगली गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप के जरिए खूबसूरती के साथ निकाला है, बैकवर्ड स्कोर, लेग फील्डर काफी पीछे। एब्सोल्युटली सेंसिबल रनिंग, एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट एंड ब्रिलियंट पीस ऑफ रनिंग, बट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर था, लेकिन देखना यह है कि दूसरा रन वहां पर पूर्ण कर चुके हैं या नहीं इम्तियाज। थर्ड अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है, और थर्ड अंपायर इस वक्त देखने वाले हैं इस गेंद पर क्या हुआ था। ये देखिए किस तरीके से पहला रन पूर्ण करने के लिए बाद दूसरे रन के लिए दौड़े, और इम्तियाज थ्रो पहुंचता हुआ, और अंतिम क्षण में गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेट चटका चुके हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि इम्तियाज पहुंच चुके हैं या नहीं। तो निर्धार का परिशीलन अभी भी जारी है थर्ड अंपायर द्वारा।
So no doubt the decision came from third umpire. और इस गेंद पर इम्तियाज यहाँ पर बच चुके हैं और 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 41 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और इम्तियाज एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। आतिफ की गेंदों का एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए आतिफ अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला। थोड़े कवर पॉइंट फील्डर के बाईं ओर से गेंद निकली कवर पॉइंट पर, डीप कवर पॉइंट पर। इससे पहले कि एक रन इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करते स्टंप्सों पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए ये गेंद इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट अश्विन ने और गेंद को वहां पर लपक लिया गया है सफलतम। फील्डर जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर तैनात थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। अश्विन ने गेंद को उछाला था जरूर लेकिन गेंद में उतना रफ्तार नहीं और देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को बेहतर जजमेंट के साथ लपक लिया। एक और विकेट गिर चुका है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और धीरे धीरे मैं समझता हूं एनएम के गेंदबाज वापसी करते हैं। पहले 2 ओवर में जब 27 रन बने थे तब ऐसा लग रहा था यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज पूरी तरह छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद के 2 ओवर और 2 गेंदों में 2 ओवर और 3 गेंदों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एनएम के गेंदबाजों ने सिर्फ 15 रन प्रदान करते हुए 4 बहुमूल्य सफलताओं को वो अर्जित करने में सफल। और इसकी बदौलत इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा इस मैच में वो लगभग वापस आ चुके हैं। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 9 गेंदें उनकी पारी में बाकी और इन 9 गेंदों में उन्हें इस वक्त नियंत्रित गेंदबाजी करनी है, बल्लेबाजों को बांध कर रखना है और तब जाकर लक्ष्य उनके लिए कुछ हद तक आसान होगा। और जहां तक यंग फ्रेंड्स उर्वा का सवाल है, उनके पास बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है, सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है। हालांकि मेरे ख्याल से मंसूर यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके अनुपस्थिति में भी उनकी बल्लेबाजी काफी सशक्त यहां पर दिखाई देती हुई। एक और बेहतरीन बल्लेबाज मनोहर इस वक्त बल्लेबाजी पर उतर चुके हैं जो बेहतरीन स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, जस्ट 2 बॉल्स नाउ लेफ्ट इन दिस ओवर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, हल्के से गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रनों पर 4 विकेट के नुकसान और 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग इन दिस ओवर। इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। आतिफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा क्विकर। ऑफ कटर गेंद थी और गेंद को इस वक्त रक्षात्मक तरीके से पुश करके सिंगल चुराने का प्रयास किया था, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और एक बेहतरीन गेंद के जरिए यहां पर ये ओवर समाप्त कर चुके हैं आतिफ। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति, 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर में 27 रन बने थे 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर पर 43 रन बने, यानी 2 और 5 ओवर के दरमियान 3 ओवर में सिर्फ 15 रन प्रदान करते हुए 16 रन प्रदान करते हुए 4 बहुमूल्य सफलताओं को एनएम मैंगलोर के गेंदबाज अर्जित करने में सफल। और निस्संदेह ये एक बेहतरीन वापसी यहां पर कही जाएगी। अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। अर्बन होम्स एंड की ओर से लिखित जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, हालांकि 6 रन उन्होंने प्रदान किए थे लेकिन 2 विकेटें भी उन्होंने प्राप्त किया था। और यहां पर देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में वो क्या करते हैं। छठा और अंतिम ओवर यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी का यहां पर शुरू होता हुआ 43 5 विकेट के नुकसान, 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम, दर्शकों से खचाखच ये मैदान यहां पर भर चुका है और निस्संदेह मैंगलोर के टॉप सीडेड 2 टीमों का मुकाबला यहां पर होता हुआ। पहली गेंद ऑन साइड पर उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। डीप मिड विकेट पर गेंद को जब तक फील्ड करके फील्डर लौटाए बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने के। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। छठा और अंतिम ओवर शुरू हो चुका है उनकी पारी में। लिखित एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज सामना करने के लिए तैयार। लिखित की गेंदों का और दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इम्तियाज के लिए, गॉन फॉर अ माइटी स्विंग दिस टाइम, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली। आई थिंक he is out for bowled, in fact dragged down to the stumps, I think so। और इस बीच ये विकेट यहां पर इम्तियाज का गिर चुका है। बोल्ड आउट हुए थे लेकिन किस तरीके से आउट हुए थे ये ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ा। शायद गेंद उनके बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद स्टंप्सों पर टकराई, अपने गेंद को स्टंप्सों पर खींच लिया था शायद, और इस वजह से ये विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 6, 44 रनों पर। सिर्फ गेंदें बाकी हैं इस ओवर में 4।
और नए बल्लेबाज जुबैर इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. It's 44 for the loss of 6 wicket with just now 4 balls remaining in the innings. सिर्फ 4 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस वक्त लिखित तैयार. बेहतर गेंदबाजी इस ओवर में अब तक वो कर चुके हैं. बेहतर 2 गेंदें फेंक चुके हैं. अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जुबैर के लिए ये गेंद उछालना चाहा, पूरी तरह सफल होकर. हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा उन्हें लेग बाई के रूप में और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 45 रनों पर. सिर्फ 2 रन इस ओवर में पहले 3 गेंदों में लिखित दे चुके हैं. इस वक्त कंसीड कर चुके हैं और एक बेहतरीन ओवर उनका साबित होता हुआ अब तक. दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद उछालना चाहा. बेहतरीन गेंदबाजी जुबैर का भी सही करंट पर निकला है और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर. आसान सा रन आउट होता हुआ एक और विकेट गिर चुका है. इट्स 45 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड नाउ जस्ट अ कपल ऑफ बॉल्स रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. तो नंबर 9 बल्लेबाज का यहां पर इंतजार है. तो यहां पर आउट होने वाले बल्लेबाज मनोहर. जब जुबैर दौड़ कर आए थे तब शायद मनोहर क्रीज से बाहर खड़े हुए थे और सबसे पहले क्रीज पर पहुंचे. वहां पर जुबैर और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज इस वक्त मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर और शफल होकर इस वक्त खड़े हुए स्टंप्स को कवर करते हुए पूरी तरह जुबैर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. लिखित दाहिने हाथ तो ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. डॉट गेंद बेहतरीन गेंदबाजी और तो अंतिम गेंद अब सिर्फ बाकी और अंतिम गेंद का सामना करेंगे इस वक्त जुबैर. The last ball of their innings is now coming up. अंपायर विकेटों को यहां पर सही करते हुए और पारी की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज लिखित तैयार. बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए विकेट कीपर आतिफ इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और लिखित पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार जुबैर के लिए और दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल किया एंड ही फिनिश द इनिंग्स इन स्टाइल विद 6. अंतिम गेंद पर छक्का जड़ चुके हैं जुबैर और इस छक्के के साथ 50 के आंकड़े को पार कर चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा अपनी पारी की अंतिम गेंद पर. 51 रन उन्होंने जोड़े 7 विकेट के नुकसान पर. दे फिनिश्ड विद 51 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड दे सेट अ विकेट टारगेट ऑफ 52 नाउ फॉर एनएम जप्पू in the stipulated 6 overs, and as far as the required run rate is concerned 8.66 runs per over they have to score for victory. Quite difficult but not impossible. और मैं समझता हूँ अंतिम 4 ओवर में बेहतरीन कमबैक किया है कि एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों ने. अगर उस एक छक्के को एक्सक्लूड करके देखा जाए जो जुबैर ने पारी के अंतिम गेंद पर लगाया था और यहाँ पर 52 रनों का लक्ष्य. और देखते हैं एनएम मैंगलोर के ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೂಲೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಕ್ಷಿತ್ CS ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜಿಪೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ತಂಡದ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಬ್ರಾಂಚ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಯಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ BK Champions Trophy 2022. Now all set now for the chasing. 52 is going to be a target for NM Cricketers Mangalore to register victory to get the place in the big semi-final of this prestigious BK Champions Trophy 2022, proudly organized by Ashok Nagar Women's Wing, Biruver Kudla, registered. So everything set here, and Satya is set here, and our scorer so far is done a great job today in the day number 2, and now just is receiving the signal from umpire Roland Pinto. Satya ready, everyone is ready. Here is the first ball. Zubair right arm over the wicket, drives. Oh my goodness, Ajmal, I think is it the need of diving here? Might be that was straightforward catch as Ajmal, one of the safest pair of hands, but he's a little bit misjudging. He thought that the ball is falling short of him, but ball really not falling short of him. Ball is just came into his hand. He's just tried to take that one by diving to his left. By doing that, ball is just slipped out his hand, and straight away Taufik is got a life. Here is Zubair, right above the wicket. Appeal for leg before wicket. Loud appeal here from Zubair, and umpire Roland Pinto is not interested, rightly so, because he's bowling a wide of the crease. The angle of the delivery suddenly will go into miss the leg stump. 2 without loss of any wicket, but it's a good shout there from Zubair, the man who's got a very good season from the bowling. Zubair, they wanted some wicket here, bowling right arm over the wicket. To Taufik, Taufik drives it, and again lack of placement, straight to the answer field, a chance of run out is a non-striker. Yeah, I might say that Arshad thinking about the wicket of Sajid rather than the wicket of Taufik, because Sajid, everybody knows that his strength is a very good striker of the ball. I still remember his innings for Team Elegant in the 30 over format of games. What a great innings he played. This time going for the sweep shot, wicketkeeper missed it, and they got a single here. Everything is going on here, every drama out here in this first over itself, and the batters are trying for the big shot. Zubair not letting the batters to settle for the big shot. Altogether is a very good cricket is going on here. The 4 runs conceded in 4 deliveries by Zubair. That brings Taufik into strike now. Zubair bowling away from us, right arm over the wicket, lofted, and that got the distance. Yes, it does. That's what random cricketers wanted in the beginning. They're chasing 52 to win the match. They really wanted that kind of cricketing stroke in the beginning. This time Taufik just using his feet, absolutely fantastic shot, just using his feet, just coming into the pitch of the delivery, and just effortlessly, and the timing of that stroke is perfection in the negation, so that he got the distance what he was looking for. Very straight as an arrow. Ball is just landing in front of a commentator box, and score straight away jumped into 10 now. Zubair away from us, right arm over the wicket. Once again fantastic delivery from Zubair, and the first over completed. NM Cricketers Mangalore chasing 52 to win this match. They got a good start, they got a positive start, they got a 10 in the first over. I request Team Elegant as well as Sri Mangaladevi Cricketers ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಲೀಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್
ಲಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The match will be played after this match immediately. The second quarter final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. So what a start. 10 runs from the first over. Looks like the gate is just opened here for NM Cricketers Mangle because of that 6 came from the bat of Taufik against the bowling of Zubair. NM Young Friends Surwa didn't got the full strength. They're not having the regular playing 11, I must say. They're missing the service of their one of the best wicket keeper, Mansoor. That was struggling the first over itself for some extras in the form of bye. And that shows the absence of some good players definitely will going to reflect the deficit here for Young Friends Surwa. Now from the far end, Sharan brought into attack. 10 runs in the first over. How many runs in the second over? Wait and see. From the far end, Urban Ohm's end, bowling Sharan, one of the really the good bowler, the very economical bowler for the side of Young Friends Surwa, came into attack to Sajid. Sajid this time seeing that line of the delivery outside the run of off stump too far. Nothing much to do with the delivery. Wide signal by umpire. 1+1. 2 gifted runs here for NM Cricketers Mangalore. 12 on the board already. Now Manohar left his place behind the stump. You don't want to be in the behind the stump, so that Santosh coming to keep the wickets. And wait and see from the far end. Sharan again 12 already on the board. 52 is the target. That means 40 runs required for the victory for NM Cricketers Mangalore. The over number second in progress. This time lofted. Oh my goodness, that was a huge one. This is a huge one. What a great struck there from coming from the blade of Taufik. Just like the kind of stroke Ashok is played, Gopi, the similar kind of cricketing stroke, isn't it? Against the face of Sharan, hitting that kind of cricketing stroke has been unbelievable. What a great shot. I want to see it in the replay again and again. The kind of technique is implemented, little bit shuffled across the line of the delivery. Maybe he's 1 or 2 steps coming down the track. Look at that one. And across the line of the delivery, swinging his bat. And that ball is really went like a tracer bullet towards a deeper square leg boundary for a maximum. Ball is out of the park. When Taufik is in arc, ball will going to disappear out of the park. 18 without loss of any wicket. Here is Sharan from the far end, right arm over the wicket. This time ball is in the air. This time a wicket. They're going for the second as well for the overthrow, and they completed. Not a good thinking there by the short-term fielder, I must say. By call by umpire. Ball is just deflected from the hands of wicket keeper, went to the hands of short-third man. And look at that, we can see the body language, disappointment for Young Friends Surwa, seeing that runs are started to flow here just like a fast flowing waters of the rivers. 20 on the board now, 32 required for the victory. All in sudden, 1 big shot, 2 big shots came from the bat, really changed the complexion of the match. Sharan from the far end, right arm over the wicket, bowls to Taufik. Taufik went for the big shot, ball is in there. Ashwin completes the catch. And look at that one. The celebration is not there. Celebration is not there because Taufik already did the damage. Taufik already did the damage before he's back into pavilion. He hit 2 massive sixes. And it takes the match into their side now. Now all up to the incoming batsmen. How well they managed to continue the start which is given by the 2 opening batters of NM Cricketers Mangalore. 20 for the loss of 1 wicket. 32 more runs required for the victory. This is just over number 2 in progress. 27 balls remaining. 32 more runs required for the victory. The equation looks like it's the same. Both the teams are battling hard for the victory. They know that how important it's going to become the champions of this BK Champions Trophy 2022, one of the most prestigious cricket tournament. Look at the crowd here at jam-packed stadium. Absolutely a pin drop silent out here. They're really enjoying the game of cricket here between these two performers of the South Kendra district. And both the teams are really playing with the true spirit. That was a really good sign to see. They're only looking for the victory. And they desperately wanted to be in the semi-final.
both the teams. The battle is on for the place of the semi-final. Sharan is got a wicket. Now he's bowling right arm over the wicket to Sajid. Sajid reaching for the delivery. Oh, misjudgment. Misjudgment there by the fielder there, and they got a couple of runs. Sandesh, the fieldsman there in the short third man region. Of course, he's not getting a chance regularly in a Young Friends Rua, so that is very difficult to straight away when you are going to play the big matches like this. That might be a little under pressure situation. He's one of the best fielder, I must say, Sandesh. But handling the pressure is so important in this situation. So 22 on the board for the loss of 1 wicket. Sharan from the far end with a short run up, right arm over the wicket to Sajid. Sajid drives it on over the top, down to the apex cover boundary. Ashwin behind the ball, just gathered on inside the fence. Excellent piece of fielding by Ashwin there. Just a couple of runs. Altogether, fantastic cricket here. Look at the round of applause coming from the crowds. They're appreciating the stroke of Sajid. Even they're appreciating the effort of Ashwin. That's what we call the true spirit of game. 24 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. 2 in progress celebration as Sharan right arm over the wicket. Ball Sajid again. Oh, beautifully played. Beautifully played. Once again, Ashwin is behind the ball. Again, excellent work and very good teamwork. They're looking for the third as well, and they completed. They completed 3 valuable runs. Excellent chasing here from Ashwin, but unfortunately, they couldn't manage to stop the 3 valuable runs here from Sajid. 27 for the loss of 1 wicket. 2 overs completed. 13.5 runs per over now run rate progressing here for NM Cricketers Mangalore. What could be a certain chance here for Young Friends? Everybody thought that when it's going to be a 52 to win the match for NM Cricketers Mangalore, it looks like the NM Cricketers Mangalore is definitely it's very difficult for them to chase this total. But what an outstanding comeback here by the batters of NM Cricketers Mangalore. Just comparison, Gopi, not much big difference in this situation. The same time, Young Friends has also got a 27 runs in 2 overs. Here, NM Cricketers Mangalore also got a 27 runs in 2 overs. That shows the battle here, the competition, the level of competition, the equal battle is on. Equal battle is on between these 2 teams. Now, the magician is came into middle, and Ashwin. And wait to see how Ashwin will going to contribute. Definitely wanted something special from this man if Young Prince Urva wanted to back into this game. Ashwin right arm. Balls going for the big shot. Quicker one there from Ashwin. Shuffled across the line of the delivery. Shahji did too much in the negation. Quicker one there from Ashwin. Really wanted to disturb the concentration of the bowler. Sajid just moving towards the offside. Looking for some reverse sweep as well. This time lovely off cutter. Lovely leg cutter in negation. Sajid almost stuck in the crease. And just watching the ball goes into the hands of wicketkeeper behind the stump. 2 dotted deliveries to start with Ashwin. Now Sajid might be a little bit going in his mind. And it's not an easy, I must say. Especially when you playing against a turning delivery of Ashwin, who can bowl some different deliveries and varieties in his bowling. And wait and see how Sajid will going to tackle with this man. Ashwin bowling away from us. Right arm over the wicket. Using his feet. Got outside edge of the bat. Unfortunately, that ball not really landed to the hands of Ajmal, who is standing at short cover point region. Well short of him. 1 more run added to total. Sajid out of the strike. Scoreboard now moves on to 28 for the loss of 1 wicket. 52 is a target. Another 24 more runs required for the victory. Ashwin from the committee box end. Right arm over the wicket, he bowls. This time looking for the reverse sweep. Chance of run out in the striker's end. Umpire Vivek asking for the third umpire to give the decision, and wait and see how the decision will going to come here. And just like the drama is out here in the UCG ground, and Gopi, certainly 1 wicket might be a little bit a chance here for Young Friends, especially the wicket of Sajid. But altogether, I think the man who changed the complexion of the match is none other than the Taufik. Just like what Ashadis did for Young Friends, the same thing, the same kind of batting performance from Taufik as well, and because of that this match is evenly poised. बिल्कुल सतीश, तौफीक ने एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर दी 2 छक्कों की मदद से। वो पारी की शुरुआत में गरजे जैसे अरशद ने बल्लेबाजी की थी यंग फ्रेंड्स शुरुआत की शुरुआत में, और 2 ओवर के कंपैरिजन के बाद 27 रन दोनों टीमों ने बनाए 1 विकेट खोने के बाद। तो निस्संदेह मैं कहूंगा अपने सामर्थ्य के अनुसार इस वक्त
प्रदर्शन देते हुए बल्लेबाज एनएम मैंगलोर के 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सशक्त गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ जिस तरीके की बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाजों ने की है एनएम मैंगलोर के, खासकर तौफीक ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है निस्संदेह काबिल तारीफ है और उनकी इस मदद से यहां पर मैच बराबरी पर आकर रुक चुका है। और पिछले गेंद पर जो रनआउट की अपील की गई थी तीसरे अंपायर के लिए दी गई है, तो देखना यह है कि यहां पर अंपायर क्या निर्धार रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं एनएम मैंगलोर ने अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा इस मैच में प्रदर्शन दिया है यंग फ्रेंड्स उरुआ के बलाढ्य टीम के खिलाफ इस मैच में। सतीश Absolutely, Gopi, no doubt at all, because really they're playing out of the skin, isn't it? They knows that winning this match is so important here. Of course, they're not really bowled very well, but they're really making a bounce back from their batting department and outstanding. This is a it's a very audacious batting performance, especially from Tawfiq. And both the batsmen, Gopi, the Ashok has scored 14 runs in 7 balls, and here Tawfiq also has got 14 runs in 7 balls. That shows that the equal battle is on between these two teams. Now, everybody's eyes on the decision of the third umpire. Will it going to be out? Will it going to be a not out? Like a lot of angle we are observing a third umpire to get the very good decision here. And altogether, look at that crowd. Is absolutely fantastic to see that. That's the beauty of UCG cricket ground. Every time where there was a prestigious cricket tournament, crowd is really backing up. And one of the most decent and colorful crowd here in the UCG cricket ground. Not out is a decision coming from third umpire. So Sajid is safe here, and Ashwin might be thinking about how can I able to break this partnership. 29 for the loss of 1 wicket. Ashwin back on his bowling mark. So far he is so good in this over. Sajid is on strike now. Bowling facing Ashwin. This time lofted, but straight to the hands of Sharan. Oh my goodness, nothing much wrong with the stroke, but something wrong with the placement, Gopi. What a shot that one. Once it looks like the batter is hoisting it over, looks like it's going to be maximum, but look at the fielder, he's not really moved at all. Where he was standing, ball is coming to him, and he's just saying thank you very much, Sajid, and giving for the catching practice here. And one more wicket is back into pavilion. 29 for the loss of 2 wicket. And Gopi, Sajid might be thinking about why I'm not really able to play a little bit squarely. If you get the little bit squarely, the dimension of this cricket ground is concerned, it might be the little bit shorter part of the ground, and hitting that one of the longest part of the ground. That's why that ball didn't travels over the deep mid wicket. Exactly, Satish. सीधे गेंद पहुंची शरण के हाथ में, और मैं समझता हूं यहाँ पर अश्विन की इंटेलिजेंस ही काम आए। गेंद लेग कटर गेंद फेंकी थी और साजिद को ललचाया था कि उस तरीके का स्ट्रोक को खेले, क्योंकि साजिद के पास वक्त था गेंद की लाइन को परख कर खेलने के लिए। और यहाँ पर जो गेंद को लेग कटर के जरिए ललचाया था स्ट्रोक खेलने पर, उस लालच में साजिद इस वक्त आ गए। गेंद को उन्होंने खेला, लेग कटर गेंद को डीप मिड विकेट पर उछाला, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था। अगर थोड़ा सा स्क्वायर उछाते तो शायद चौका या छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन अश्विन की चतुरता की वजह से यहाँ पर ये साजिद का विकेट गिर चुका और मैच एक बार फिर से बराबरी पर आकर रुक चुका है। Exactly, Gopi. It was a really intelligent bowling there from Ashwin. He knows that he's a very efficient and intelligent bowler, and that's why he's just inviting the batsman to go for the big shot, and he got a big wicket off Sajid. Now due batter Riaz came into middle. This time paddling that one quite nicely down to deep for fine leg region for an easy single. Looking for the second. In comes the chance of run out. The throw is not good enough. And Santosh, I think, fails to collect the ball. It might be a close call, Gopi, because of course the throw coming from the deep fine leg region, and Santosh fails to collect the ball. If he able to collect the ball neatly, it's going to be a chance of run out. And if he able to do that, it's a wicket of Atif. It might be the big blow for NM Cricketers Bangalore, but Atif just survived from that run out. So over number 3 completed. After completion of over number 3, 31 for the loss of 2 wickets. Now 3 overs remaining, Gopi. Out of 18 deliveries, they have to get another 21 runs to win this match. 21 runs and 18 balls remaining in this game. But match looks like maybe the NM Cricketers Mangalore need to be the upper hand. They got 8 wickets in hand, and at the same time you cannot underestimate the potential of young friends. They got a potential of bouncing back at any time. And now I think it's going to be all eyes now for the new bowler who will go into bowl that 4th over. And that's none other than the man with the golden hand. Ashok brought into attack, and wait and see how well these 2 batsmen will go into contribute. And matches looks like, Gopi, it's evenly poised.
बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर इस ओवर में सिर्फ 4 रन अश्विन ने प्रदान किया और अपनी काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी की, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। और 3 ओवर का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 3 ओवर में यंग फ्रेंड्स ने भी 31 रन बनाए थे, जबकि यहाँ पर एनएम ने भी 31 रन बनाए। तीसरे ओवर में आतिफ ने 4 रन दिए थे, जबकि अश्विन ने भी इस बार 4 रन दिए हैं। तो यहाँ पर 21 रन चाहिए 18 गेंदों पर, और मैं समझता हूं मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। तो यहाँ पर 3 ओवर का खेल बाकी है, और मेरे ख्याल से अश्विन का 1 ओवर बाकी है, जुबैर का 1 ओवर बाकी है। यहाँ पर अरशद गेंदबाजी के लिए शुरू हो रहे हैं, और देखते हैं अंतिम 2 ओवर यंग फ्रेंड्स उरुआ के कप्तान किसको सौंपते हैं। और यहाँ पर मैच 18 गेंदों पर 21 रन चाहिए। देखिए किस तरीके का मैदान इस वक्त नजर आता हुआ, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम, रविवार की शाम को रंगीन यहाँ पर करते हुए ये प्रेक्षक और निस्संदेह बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 यहाँ पर एक शानदार प्रगति करता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरवर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने। और यहाँ पर एक हाई वोल्टेज मैच प्रगति पर, पहली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, गेंद पहुंचती हुई कवर पॉइंट पर, गेंद को वहां पर फील्ड किया गया फील्ड, और यहाँ पर आतिफ अपना विकेट बचा चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा। थर्ड अंपायर की मांग की गई है, और यहाँ पर काफी करीबी मामला हो सकता है। तो आतिफ पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरा रन चुराने का प्रयास किया था, और जैसे ही वो 3-4 कदम आगे बढ़ा है, उन्होंने देखा कि थ्रो वहां से पहुंच रहा है विकेट कीपर के हाथों में, अपने कदमों को उन्होंने वापस खींचने की कोशिश की, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने विकेट चटका दिए। और यहां पर देखना यह है कि तब आतिफ का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं, और ये आउट हो चुके हैं। यहां पर आतिफ का विकेट गिर चुका है, और अब मैं समझता हूं सतीश ये आतिफ का विकेट का पतन, दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। Absolutely, Gopi. Just survived the last delivery of the previous over from the run out. When the throw is came from the deep, Sandesh returns the ball very quickly to the hands of Santosh, and Santosh missed the ball complete. But this time, Atif is not having a luck here, because the throw coming from the fielder, and very quickly Santosh completes the job, and Atif finding himself short of his. Why not, Gopi? It might be the turning point of this game, because Atif is such kind of batter who really required in the situation for NM Cricketers Bangalore, because whenever the new batter is coming into the middle, handling the pressure is not easy, Gopi, because the fresh legs, you have to take a 1 or 2 deliveries to settle down to see the ball, and that time I think young Prince has got an opportunity to tighten up the screws here, and wait and see how well Ashok will going to tighten up here for young Prince Rua. बिल्कुल नए पैरों को क्रीज पर जमने में कुछ देर लगती है सतीश, बिल्कुल। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, और वो इस वक्त सामना करेंगे अरशद की गेंदों का। और जहां तक इक्वेशन का सवाल है, 20 रन और बनाने हैं, 17 गेंदें और बाकी हैं, और अरशद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी फ्रॉम इन फ्रंट, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। अल्ताफ आउट होकर पेविलियन वापस लौटता हुए, प्लम इन फ्रंट, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहता, गेंद लाइन पर टिप्पा का है, उनके बैक लेग पर टकराई, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ, और एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट, और पहली गेंद पर अल्ताफ का विकेट गिर चुका है। अब सतीश 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, और मैं समझता अरशद एक बार फिर से यंग फ्रेंड्स उरुआ की भटकी हुई गाड़ी को वापस सही पटरी पर लाकर ठहरा चुके हैं। Exactly, Gopi, and just I mentioned, isn't it? The wicket of Atif might be the turning point of this match, because I already mentioned the fresh legs coming to the middle, and handling the pressure is not important. The pressure in the sense, they not only they handle the pressure in the situation of the game, but you can look at the crowd here. Against this much of a big crowd, performing is not easy, isn't it? It is definitely going to be under pressure game, Gopi, and that's why it's so important. A settled batsman have to handle the pressure. Once the settled batsman back into pavilion, then it's not so easy for the new batsman. So experienced batsman really required in this situation for NM Cricketers Bangalore. बिल्कुल सतीश, और बिल्कुल एक बार सही बात आपने फरमाया, भरे हुए मैदान, प्रेक्षकों से भरे हुए मैदान में, खचाखच भरे हुए मैदान में आपको सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन देना उतना आसान नहीं है। अंडर प्रेशर आपको बल्लेबाजी या गेंदबाजी करनी होती है, और खासकर दबाव को झेलना पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 विकेट गिर जाने के बाद दबाव इस वक्त एनएम बैंगलोर के सामने जरूर है, लेकिन इक्वेशन बिल्कुल साफ उनके सामने। 20 रन चाहिए 16 गेंदों पर, और नए बल्लेबाज इरफान का आगमन यहाँ पर होता हुआ 6 विकेट सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ एनएम बैंगलोर के पास अभी भी सशक्त बल्लेबाजी में कुछ बल्लेबाज अभी भी बाकी हैं, जो मैच के लक्ष्य को पलट कर रखने की क्षमता रखते हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और
इस बीच अर्शद तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार उछलना चाहा, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। यहां पर फील्डर जब तक गेंद को पहुंचे शॉर्ट फाइन लेग से, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। ही इज गॉट अ बैट ऑन दैट आई थिंक, और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाज रियाज बैक ऑन स्ट्राइक, और रियाज का जहां तक सवाल है तो इन दिनों में उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में वो जाने जाते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर आज के दिनों में वो जाने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। और मैं समझता हूं उनके पास वो क्षमता सामर्थ्य है कि वो मैच को, वो टीम को, अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और जहां तक यंग फ्रेंड शुरुआ का सवाल है, मैं कहूंगा यहां पर अरशद इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी अब तक कर चुके हैं, और इस बेहतरीन गेंदबाजी के सिलसिले को इस ओवर के अंत तक उन्हें बरकरार रखना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। 19 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 15। अरशद तैयार इस वक्त, दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट सटते हुए स्कोर ऑफ द विकेट गेंद को खेलना चाहा, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 19 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 14, और अब मैं कहूंगा कुछ हद तक दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ चुका है डॉट गेंद खेलने की वजह से। और अरशद इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, क्लीन कलेक्शन, थ्रो पहुंचा इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर दबाव को हर कोई इस वक्त झेलता हुआ। और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो यहां पर क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी इस वक्त निभानी है। और जहां तक गेंदबाज का सवाल है तो एक बेहतरीन गेंदबाजी उन्हें इस वक्त करनी है। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा, तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में एक रन यहां पर वो प्रदान कर चुके हैं। 35 रन, 17 रन और चाहिए विजय के लिए। 17 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। व्हाट अ मैच इज नाउ गोइंग ऑन हियर। अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार, ये गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद, चूके और अंतिम क्षण में गेंद को विकेट कीपर लागे की ओर आकर फील्ड कर लिया। तो एक बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। 17 रन यहां पर बनाने हैं 12 गेंदों पर। और मैं समझता हूं इस ओवर में अरशद ने कितने रन बनाए, कितने रन प्रदान किए? 4 रन सिर्फ सतीश, 4 रन अरशद ने प्रदान किए। पिछले ओवर में 4 रन अश्विन ने प्रदान किए, और अंतिम 2 ओवर की बदौलत अब मैं समझता हूं यंग फ्रेंड्स हुआ आर नाउ बैक इन द गेम। Absolutely, Gopi. They're back in the game because of two excellent bowlers, experienced campaigner on the side of Young Friends. They're handling the pressure. That's what I'm talking about, Gopi. The experience always working out here in this situation, isn't it? Being the experience is not important, but converting that experience into performance is so important. And these two bowlers are really converting that experience into performance. And 2 magnificent overs. Definitely, it's a very good over for Young Friends because one stage looks like NM cricketers really cruising towards the victory. And once the wicket of Atif is back into play, look at the body language. But I think, Gopi, the match is not yet over. Match is not yet over because Riaz is still there in the middle. One more new face. I think this man who can Irfan maybe the new face, but I think he's got a potential of getting some partnership and taking the match away from the opposition. But the question raising here, how well they tackle this man Ashwin. Exactly सतीश, देखते हैं क्या होता है। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद पहली गेंद ऑप्शन से बाहर और वाइड का इशारा, और 1 रन मिलेगा। रन इस वक्त चाहिए एनएम जप्पू को, किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और अंतिम 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी यंग फ्रेंड्स हुआ के गेंदबाजों ने की है। अश्विन और अरशद ने न सिर्फ 8 रन उन्होंने प्रदान किया, बल्कि 3 बहुमूल्य सफलताओं को भी उन्होंने अर्जित किया। और यहां पर अश्विन की पहली गेंद वाइड थी, अब 16 रन बनाने 12 गेंदों पर। और रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्विन की गेंदों का। दाहिना तो ओवर द विकेट, अश्विन क्रीज के कोने से गेंद इस बार गेंद थी बेहतरीन, लगभग स्टंप से 1 या 2 इंच, मैं समझता हूं गेंद ऑफ स्टंप को छूकर निकल चुकी थी अंतिम क्षण में। और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। क्यों सतीश? I think Santosh has missed the bails, I think so. He wanted to make the stump out, but bails are not off. He just missed the bails, I think so. बिल्कुल सतीश, स्टंपिंग करना चाहते थे लेकिन थोड़े अंतर में वो मिस कर गए। और यहां पर 36 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। 11 गेंदे बाकी, 16 रन चाहिए। 16 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। हियर वी गो। अश्विन इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, रियाज के लिए ये गेंद, रियाज के लिए ऑप्शन से बाहर, एक और वाइड डॉट और वाइड। और यहां पर परिस्थिति ये बयान करता है इस वक्त कि 15 रन और चाहिए 10 गेंदों पर, 11 गेंदों पर 15 रन और चाहिए एनएम जप्पू को, और मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है। अश्विन इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया, लेग कटर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद थी, हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करते मनोहर,
मनोहर बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट B424x7 चैनल के द्वारा इस वक्त की जा रही है और एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम, बिल्कुल दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है। दबाव हर एक पर इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ, दबाव खिलाड़ियों के ऊपर, दबाव दर्शकों के ऊपर, दबाव हम सब के ऊपर और निस्संदेह यहां पर कहना पड़ेगा मैदान में खिलाड़ी जो है उनमें से कौन से टीम के खिलाड़ी दबाव को झेलेंगे वही इस मैच में विजय दर्ज कर पाएंगे। और यहां पर गेंदबाज तैयार, अश्विन दाहिना ओवर द विकेट, गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा और बॉल ऑफ हिज लेग्स। इरफान की पारी समाप्त, सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा और आखिरकार अश्विन ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो इसकी वजह से एक बार फिर से वो साबित कर चुके हैं अश्विन कि वो क्यों मैच टर्निंग बॉलर है मैच के अंतिम क्षणों में। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. Maybe there's a game plan here in this particular over because the previous delivery you can see that Ashwin desperately wanted to Riaz out of the strike because he knows that the new batsman doesn't know anything about Ashwin. He's not really played many matches against Ashwin. So Ashwin knows that if I get this man, I will going to get the wicket here. And he got the fantastic leg cutter. That was unplayable delivery. Shuffled across the line of the delivery. But still, that ball did the trick. Now, one more wicket is back on the pavilion, Gopi. NM cricketers mangle. Once again, they have to be a little bit careful here. No need to panic at all. Have to little bit self-confidence is very important here. They need to believe that they can win the match. I can win the match. I can do that one. That's what really required in the situation. The mindset, the strong mindset is required here for the batters of NM cricketers Mangalore. But here is Ashwin has got a strong mindset. बिल्कुल यहां पर मानसिक दृढ़ता की जरूरत है जैसा कि आपने फरमाया। 9 गेंदों पर 14 रन चाहिए और अश्विन एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो द विकेट, गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता है। और यहां पर रियाज बैक ऑन स्ट्राइक और सतीश आपने फरमाया था रियाज को अश्विन ऑफ द स्ट्राइक रखना चाहते थे इस ओवर में और उस प्रयत्न में उन्होंने ऑप्शन से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी कि शायद रियाज बल्ला अड़ाए और सिंगल लेकर इस तरफ आ जाए, ऑफ द स्ट्राइक हो जाए, लेकिन यहां पर स्ट्राइक रियाज के पास वापस आ चुका है। अब देखना यह है कि अश्विन रियाज के खिलाफ गेंदबाजी किस तरीके की करते हैं। अब 13 रन चाहिए विजय के लिए, 8 गेंदें बाकी, 13 रन स्कोर, 8 बॉल्स रिमेनिंग और अश्विन इस वक्त तैयार, दाहिना तो द विकेट, गेंदबाजी करते हुए रियाज के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पर कोई नहीं, गली से फील्डर दौड़ कर रहा है, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 40 रनों पर। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर, इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अश्विन अपनी काबिलियत क्षमता के अनुसार यहां पर वो गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो द विकेट, यह गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि एक्स्ट्रा बाउंस, मत स्ट्रेट लाइन, डॉट गेंद और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति अश्विन की। अब 12 गेंदों में बनाने थे, कितने बनाने थे 12 गेंदों में? 17 और यहां पर 17 बनाने के बावजूद 17 रन जब बनाने थे, जब जो खतरा मंडरा था उनके सर के ऊपर, अब वो खतरा कुछ ज्यादा मंडराता हुआ अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए 6 गेंदों पर और मैं समझता हूं यहां पर अब कम से कम 1 या 2 करारे स्ट्रोक्स, चौके या छक्के अंतिम ओवर में लगाने होंगे एनएम मैंगलोर को यहां पर वापसी करने के लिए। Absolutely, Gopi. And just I'm thinking about, I want to take you to back into the innings of young friend Surwa. Just thinking about the last delivery of young friend Surwa. Zubair hit 1-6. I think it's going to be a massive difference difference in this game, isn't it? Zubair is just waiting for the ball. Last 2 balls he played a dotted. Still he's got a what he thinking that I can deliver 1-6, and that 6 will going to be a massive difference in this particular game. Just imagine the 6, just deduct 6 from that 12 runs. It's just 6 required for the victory. But still, game is on, Gopi. The game is on because this man can deliver. This man can deliver any big shots, any condition. He can handle the pressure. That's why the 12 to get from last over, I think the match is evenly poised. Both the team has got an opportunity to win the match, but he's got a good tournament. This man has got a good man from the bat, and it's a good game as well. The wait and see how Ashok will going to deliver that last over. बिल्कुल सतीश, अंतिम गेंद पर जुबैर ने जो छक्का लगाया था जैसा कि आपने फरमाया, वो छक्का इस वक्त कुछ हद तक महंगा पड़ता हुआ है मैंगलोर के, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है। एक छक्का मैच को उनकी ओर पलट सकता है। देखते हैं पहली गेंद, इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंची स्क्वायर पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, इम्तियाज गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इम्तियाज खुद गेंद को
को उन्होंने थ्रो नहीं किया, खुद गेंद के साथ वो दौड़कर आते हुए, और यहाँ पर एक रन जुड़ चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर। 11 रन चाहिए 5 गेंदों पर। स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं बल्लेबाज इरशाद, और देखना यह है यहाँ पर इरशाद इस गेंद पर क्या करते हैं। फिलहाल अरशद का जहां तक सवाल है, अब तक उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है। 1.1 ओवर में सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 2 बहुमूल्य विकेटों को वो अब तक चटका चुके हैं। सिर्फ 5 गेंदें इस मैच में बाकी, 11 रन चाहिए। इरशाद इस वक्त करारे स्ट्रोक्स की तलाश में, सामना करने के लिए तैयार अरशद की गेंदों का, और अंपायर गेंद की परीक्षा इस वक्त करते हुए, शायद कुछ हद तक मिट्टी उसमें मिली हुई थी, तो उस मिट्टी को वहां पर वो घिस कर गेंद को लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में, और इस बार अगली गेंद लेकर अरशद तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन पर, फील्ड काफी पीछे, एक रन मिलेगा। क्लीन कलेक्शन हो मिसफील्ड, लेकिन दूसरा रन ले सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं सतीश रियाज स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं, और सही सोच इस वक्त, इंटेलिजेंट थिंकिंग, और यहां पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रन, और मैं समझता हूं एनएम क्रिकेटर्स के लिए इस वक्त रियाज उम्मीद की आखिरी किरण नजर आते हुए, और अब चाहिए 10 रन, गेंदें बाकी हैं 4, 9 फॉर टाई, 10 फॉर विन, और यहां पर बातचीत चलती हुई अरशद और दूसरे खिलाड़ी के बीच में, और निस्संदेह यहां पर एक बेहतरीन मैच प्रगति पर। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. I want to take you back to the yesterday's semi-final, Gopi. Sarvagni cricketers versus Rooftech cricketers. The same situation when Tanveer tried to hit one boundary and he wanted to keep the strike in his favor. Just like that only. Here he knows that I can deliver one big shot. That's why he doesn't want a second run. The wait and see how well we're going to deliver here. Now, how many runs required? 10 required from 4 deliveries. बिल्कुल, देखते हैं यहाँ पर रियाज अगली गेंद पर क्या करते हैं। ये गेंद इस बार लक्ष्य से बाहर, गेंद को सिर्फ लेग पर चूके, और इस बार रन न मिलेगा, एक सिर्फ बाई, और अब द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 43, 9 runs to get from 3 balls, और बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए अरशद, अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही एनएम जप्पू को इस मैच में मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल यहां पर अरशद एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए, और अब इरशाद सामना करने के लिए तैयार। तो अरशद अपने टीम के अन्य खिलाड़ियों से कुछ इस वक्त सलाह मशवरा करते हुए, कुछ बातचीत करते हुए कि किस तरीके की रणनीति अगली गेंद पर अपनानी चाहिए, और यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और तैयार इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए। तो अरशद इरशाद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। 9 to get from 3 deliveries, 8 for tie, 9 for win. Here we go. अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए इरशाद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाह चुके, विकेट बचा चुके हैं, लेकिन अपना विकेट नॉन स्ट्राइक रन पर खो चुके हैं, और इस बीच यह विकेट यहां पर गिर चुका है 6। अब 9 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी, और सतीश रियाज यहां पर स्ट्राइक पर आ चुके। तो मैं समझता हूं this could be the last chance for NM Mangalore to get back into this match. Exactly, Gopi. Do or die situation, isn't it? Do or die situation. Have to hit some 2 big shots. No other option at all. No other option at all for Riaz to get to win the match for NM Cricketers Mangalore, and wait and see. But so far, Gopi, you should appreciate the effort of the 2 bowlers. I would like to notice. One is Ashwin and another one is Ashad. The way they handle the pressure here, absolutely fantastic. Because just like what the NM cricketers bounce back when the innings of Young Prince Uro, when Young Prince Uro is really cruising towards a big total, the 2 bowlers did a good job, and the same thing is happening here for Young Prince Uro as well. When they got almost to the end, till the 3 overs, the equal battle is on, Gopi. The 2 overs 27, both the teams are the same run they got. Even after completion of 3 overs also, both the teams are they got a same situation, but the complexion of the match is changed when Atif is back into pavilion, when Ashwin brought into attack. This is a big difference, Gopi, and wait and see now. 2 deliveries remaining. They have to get 2 big shots if they want to win the match, but this is a decider delivery. This is a decider delivery. In this particular delivery, Riaz desperately wanted to send that one out of the park. बिल्कुल, ये डिसाइडेड डिलीवरी है, जैसा कि आपने कहा। यहां पर कम से कम एक चौका जरूर लगाना होगा रियाज को, अगर उनके टीम को इस मैच में उनके विजय के आशाओं को बरकरार रखना। और टर्निंग पॉइंट, जैसा कि आपने कहा सतीश, एक
आतिफ का डिसमिसल रन आउट, क्योंकि आतिफ बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर कर रहे थे। उनका विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव आने वाले बल्लेबाजों पर पड़ा, उस दबाव को वो आने वाले बल्लेबाज झेल नहीं पाए और विकेटों के ऊपर विकेट देते रहे। और बेहतरीन गेंदबाजी अश्विन और अरशद की। इन तमाम बातों के बाद, इन तमाम घटनाओं के बाद इस वक्त तख्ता यंग फ्रेंड्स उरुआ का भारी लगता हुआ, चौके और छक्कों की सख्त दरकार एनएम मैंगलोर को। और अरशद तैयार रियाज के लिए, ये गेंद इस बार उछालो, हेलीकॉप्टर शॉट लंगोफ पर और गेंद सीधे लंगोफ फील्डर के हाथों में। लंगोफ फील्डर ने कोई गलती नहीं की और हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए इस गेंद को उछाला था, लेकिन गेंद लगभग डोलती हुई, अपने रुख को बदलती हुई सीधे पहुंची लंगोफ पर फील्डर खड़े हुए थे। और यहां पर रियाज का फाइटिंग इनिंग्स यहां पर समाप्त हो चुका है। और मैं समझता हूं इस विकेट के पतन के साथ एनएम मैंगलोर के विजय के द्वार बंद हो चुके हैं, अगर अंतिम गेंद में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हो तो। Exactly, Gopi. Everybody has got a heart in their mouth when Riaz got a helicopter shot. Of course, the supporters of NM Cricketers Mangalore wanted to see that ball will going to travel over the deep long off. At the same time, the supporters of Young Friends who wanted to see that deep long off will going to take the catch. But all in sudden, we can see that both the teams has really got played like a champions, isn't it? So they played like a champion. The winning and losing a part of the cricket, but now I think Young Friends deserve this victory. बिल्कुल सतीश, अंतिम गेंद, ये गेंद चिपकिया, इस वक्त हवा में एक और विकेट हो सकता है एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए। और इसी के साथ 8 runs thrilling victory for Young Friends Urwa defeating NM Jaipur, and with that victory they are through to the semi-final of this competition. लेकिन मैं समझता हूं सतीश, काबिले तारीफ बल्लेबाजी, ट्रमेंडस फाइट बैक इस मैच में दी है NM Jaipur के गेंदबाज और बल्लेबाजों ने। Absolutely, especially the innings of Taufik. And it's definitely he's the one to really open the gate for NM Cricketers Mangalore to win the match. But unfortunately, after his dismissal, then experienced batters of NM Cricketers Mangalore really not able to perform against disciplined bowling performance by the Young Friends. They really defeated in all department. Whether it's a batting, whether it's a bowling, or whether it's a fielding, I think Young Friends were looking much better team than the NM Cricketers Mangalore. That's why they're into the semi-final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. Now we're heading towards the second.
Welcome back for the last and final quarter final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. And after winning the toss, Mangaladevi cricketers they elected to field first against Team Elegant. Look at Gori Young Boys, little bit correction. Gori Young Boys now they're batting first, and wait and see how Gori Young Boys will going to get some runs here. And the first match they got a good score, Gori Young Boys against KCCR Kadri. They scored a 60 valuable runs. They scored a 60 runs against KCCR Kadri registered, and now they are playing against Mangaladevi cricketers. And once again they got opportunity to bat first here. The captain of Mangaladevi cricketers won the toss, elected to field first, and destructive two opening batters are came into middle. Left-handed combination. Deepak is on strike, and Naufal is in non-strikers, and Kiran is got a ball in his hand. He will go into ball left arm over the wicket to Deepak. First ball. Ball there, this time right on the money. I think is the LBW. I thought the ball is hits the stump, but it doesn't. But certainly there is a back foot is right in front of off stump, and no doubt at all in the mind of umpire Vivek. That was a very good slower one there from Kiran. Absolutely change of pace. You know exactly. Deepak is a kind of batter who really wanted to go after the bowler in the first ball itself. We know how destructive he's been. Then Kiran is bowled a slower one, and Deepak little bit early into the stroke, and that ball is did the trick here. Deepak back into pavilion. So Tilak is a little bit correction now. Deepak is back into pavilion. The change of phase in the first ball itself, Kiran is a little bit experimenting, and he got a big wicket of the batter Deepak. The danger man departs. Mohsin is a new batter, facing next delivery from Kiran. Got a wicket in the first ball. Left arm on the wicket, balls beautifully bowled over the wicket, in fact, and outside and off stump. And Tarun behind the stump, and the safest pair of ants behind the stump for Mangaladevi cricketers. So gathers the ball and back to bowler. Two very good deliveries there from Kiran with a short run up. Left arm over the wicket, he bowls, and this time he wanted to try to bring the ball around the legs of the batter Mohsin, but this time his ball is not really getting that much of turn what Kiran is looking for, and rightly so. Umpire Vivek, no hesitation to call that one wide. First run comes off here for Gori Young Boys. Kiran Bowles went for the big shot, expansive try here. Looks like ball got inside edge of the bat. Might be the ball hits the stump, but bills are not off. That means Mohsin has got a really luck here for him. So looks like we can see the replay as well. That ball is almost looks like after having an inside edge of the bat, and a little bit ball is just might be kiss the stumps, but bills are not off. Kiran this time lofted, but in the second area, the fielders, I don't think they will going to get there. The fielder in the mid wicket, fielder in the long one, try to take the catch, but ball is landed very safely between the two fielders. Not quite getting hold of that one properly by Mohsin. Looking for big shot on the mid wicket region, but he got a couple of runs. Lucky here for Mohsin. Once again he survived. 3 on the board without loss of any wicket. Kiran again from the commentary box, and left arm over the wicket, balls once again the wide ball, wide down the leg stamp. One more addition to total, the second wide of this over. Kiran need to be very careful. He got a very good start with the first 2 deliveries, and scoreboard now is a 4 on the board for the loss of 1 wicket, Gori Young Boys. Kiran again away from us, balls this time better line, absolutely perfect line. This is angling across the right-handed batsman, because he's bowling round the wicket. Bowling round the wicket left hand means it's definitely is a confusing line here for the right-handed batter. So many times Kiran doing that job. He's bowled that line, and the batter really getting confused with that line. This time again top edge, and ball is landed again safely. The 1 more addition to total. So with the addition of that single, scoreboard now moves on to 5 on the board. The first over completed, tidy over there from Kiran. Then compared to his previous performance, I think he's bowled well in this particular match. The first over is a good over for Mangaladevi cricketers. They won the toss, elected to field first,
and Kiran bowled a very good first over, the power play over, and 5 runs and 1 big wicket of Deepak is back into pavilion. That was really big blow for Gori Young Boys, losing the promising promising left-hand batters back into pavilion. The first ball of the match. Then all in sudden we can see the Mangala cricketers are looking pretty good. After that, Kiran is bowled well. And now from the commentary box end, it's going to be the second over from the Urban Homes end. Yaju brought into attack. Yaju with the jersey number 13. Mohsin is the batter. For him, one is a deep long on. One fielder in a deep mid-wicket, between mid-wicket and square leg. Damodar stationed there in the mid-wicket. Sumit in the deep long on. Kiran in the short mid-wicket. Dhanu in the short square leg. And Ashwin in the short third man region. This time hits that one firmly down to deep long on region. Little bit fumble from the fielder, but no question of second run in the negation. Mohsin settled for the single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Yaju is a young talented bowler, the new face in the bowling department of Mangaladevi cricketers. So far he's got a very good tournament for Mangaladevi. And just coming back to the field set, short third man, it's Ashwin Raj, Quresh in backward point region, Yatiraj at cover point region, going for the expansive off drive. Mr. Klein completely, and there is no possibility of any run. Little bit encouragement. I think Naufal is not impressed with himself, because he knows that there is no protection has been given in the offside region. So he just missed the opportunity to deliver that one into the deep cover boundary. And again Yaju bowls across the line of the Naufal, swinging his bat, looking for run. Then again Ashwin, so good behind the wicket, quickly moving towards his left, gathers the ball, and both the batters are not interested for any run at all. Again, the score remains at 6 on the board for the loss of 1 wicket. Yaju from the far end, left arm bowls this time, lofted, fielder going back, and he not really reached there. One bounce over the row for 4 runs. It was a very good effort, I must say, from the fielder. Rafiq is just going back, and really not getting that ball. Ball is just going out of the reach of trying hands of Rafiq, but that after one bounce, that ball is going over the row for 4 runs. A welcome boundary for Gori Young Boys, and even for Naufal. And every time when batter getting boundary, then of course that will give a lot of confidence for the batter. I already mentioned, when you're bowling that line outside the line of off stump, you need to see that there is no protection has been given for you in the offside region. You need to be very careful. Yaju bowling from the far end, left arm round the wicket, swings that one, beats the infield, down to the fine leg boundary for 4 runs. It's a lucky. Absolutely lucky, I must say. That ball is not really got right from the middle of the bat, but he's got enough bat to defeat the fine leg fielder. And ball is running down to the fine leg boundary for 4 runs, and score jumped into 14 now for the loss of 1 wicket. 2 very important boundaries here for Naufal. One towards the deep extra cover region, the second towards the deep fine leg region. Yaji balls, improvisation, straight to the hands of fielder, chance of run out there, but wide throw coming from the fielders. Good backup there by the fielder there, Quresh, wearing danger in the sense red color hat. Absolutely, he is a very danger man as far as the opposition is concerned. 15 for the loss of 1 wicket, 2 overs completed, 7.5 runs per over now for Gori Young Boys. Even though they got a slow start in the first over, they lost the wicket of Deepak, then they got a 5 runs. Now it's a 15, means 10 runs came from that over of Yaju. On the board. Look at the crowd now. The number of crowds a little bit decreased. The kind of crowd we are witnessed the match between Young Friends versus NM Cricketers Mangalore. Looks like now
Of course, it's a very good crowd, no doubt at all. But as far as the number of crowds is concerned, comparison between the previous match and this match is concerned, might be that the crowd is a little bit lesser than the previous match. So now Sumit is came into attack. The tall man can bowl both in and out going delivery in one action. This time extra bounce, extra bounce. This is only because of his height. When you are having a very good height, you can get some extra bounce as well from this pitch. And because of that extra bounce, now fall completely beaten. And there's no chance of any run. Good collection behind the stump by Tarun. Again, look at that bounce again. Again, now fall completely missed out. Direct it. Umpire now asking for the third umpire. Mohsin thought that he is in, but we have to wait for the umpire signal. Roll on Pinto. Third umpire will going to decide here. Now, when there is a direct hit, you can see that umpire doesn't want to take any risk. Because even in international cricket as well, even umpires are very confident about that decision, but they doesn't want to take any risk. When there is a provision has been given for the third umpire, why not? To get the help from the third umpire. So Mohsin looks like he is home, but wait for the third umpire's decision here. So far it's a very good cricket is going on here. 15 already on the board here. Meanwhile, it takes a lot of time, a little bit time to get the judgment here, whether it's out or not. And in that time, I would like to announce some the names of the dignitaries who was really giving a helping hand for the success of this cricket tournament. And our beloved MLA of South Constituency, Divedavas Kamath, Uday Pujari, the founder president of Biruver Kudla, Ganesh Kulal Corporator is the one who really from the day one, from the day two, they really gave a lot of cooperation for the success of this cricket tournament, giving all the provision in this particular cricket ground. Thank you very much, Ganesh Kulal, for your cooperations. And Radhakrishna, the nominated corporator, Tilak Guru of Young Friends Urva, Sampath Shetty of Pranav Builders, Manohar Shetty, corporator of Kadri Ward, Anil Kumar, corporator of Kulur Ward, Kiran Pai, Saukar M. Baba Pai, Petrol Pump, Lady Hill, Karnataka Bank Limited. So thank you very much each and everyone for your cooperation for the success of this cricket tournament, BK Champions Trophy 2022, and proudly organized by Ashok Nagar Women's Wing in this most beautiful venue, UCG Cricket Ground, Biruver Kudla, Friends Palalbag, registered. Still, lot of angle is providing here to get the result of this run out. The time is exactly 5:30 in the evening. Almost sun is going towards west, towards the sea, and might be there is opportunity for cricket lovers to watch two matches under floodlight. Maybe they get the opportunity to watch two matches under floodlight, semi-final and final. And wait and see who will going to be the finalist here. Already Young Friends who are qualified for the semi-final. Now winner of this two teams will going to qualify for the semi-final. They will going to meet Young Friends who are in the semi-final. The one team yesterday, it's a really unbelievable performance from Sarvagni Urva. They came into the tournament in that Group A as underdogs, but they played a magnificent game of cricket. Surprised everyone, and they came into the semi-final. What a game they had yesterday against NFC Urva and against Roof Tech as well. Now, decision coming here. How it is the decision? The Mohsin is the short of his crease when direct is taken place. That was a very good decision there from Harish Padil. You know exactly this is directed, so you just desperately wanted to see what the third umpire decision is going to be. When there is a close call, then umpires really don't want to take any risk at all. Now, Mohsin back into pavilion. The new batter, Shushant.
walking towards the middle. Sushant slowly walking towards the middle. Didn't got opportunity to showcase his talent in the previous match. But now he's a very talented player, I must say. Very well talented. He got a potential. He got a varieties of strokes. And maybe I want to see him a little bit early in the innings of Goryang boys. Maybe the number 3 position is better for him. Because he's got a potential of playing a long innings, Sushant. He's got experience playing opening innings, and he's a kind of batter who can bat at any number of batting order. Now he's coming as a number 4 for Goryang boys, and wait and see how he will going to contribute along with Naufal. Sumit balls. This time outside the run of off stump. Wicketkeeper behind the stump. Little pumble, but well within the reach of the batter. Sushant misjudging that one because that was a line little bit confusion for the batter to whether it's a ball is a wide or inside the line or not. But that ball definitely it was a fair delivery from Sushant. This time outside the line of off stump too far because that ball is going away from the left-hander. Off cutter, and it's a leg cutter for left-hand batter. That's why that ball going away from the left-hand batter. So one more addition to the total. 16 on the board for the loss of 2 wicket. One more wide. It's not a good bowling there from Sushant. This is a really difficult, isn't it? Whenever the left and right combination, it's a very good delivery sometime for the right-hander batsman. And they wanted to change the line for the left-hander. And by doing that, big in cutter. Absolutely perfect one here from Sushant. Sushant really lucky in that occasion. Almost it looks like the ball is going to hit the leg stump, and Sushant the last moment he's got a bat onto that. Beautifully bowled there by bowler Sumit. 18 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Sumit bowling away from us. Balls this time again. This time Naufal wanted to play inside out cricketing stroke. Tried to make a little bit room to play lofted extra cover drive. But Sumit is not really settling the batsman, just following the batsman, bowling around the legs of Naufal, and just a single is conceded. 19 for the loss of 2 wicket. Sumit again bowling away from us. Balls going for the off drive, missed it completely. He's not happy. Sushant knows that was a short pitch delivery. Ball is not really moving from the good length spot. He can drive that one down to extra cover region, and good over there from Sumit. Good over. So 3 overs completed after completion of over number 3. Goryang boys are searching for the right track. They're 19 for the loss of 2 wicket, and wait and see how well the Goryang boys will go to finish their innings. The 3 overs remaining, they got to 8 wickets in hand, and Mangala cricketers must be really pleased with the performance of Sumit in the previous over. But job is not yet over. They have to bowl another 3 good overs if they wanted to restrict the Goryang boys for the less score. So time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के गेंदबाज सिर्फ 19 रन गोरियांग बॉयज के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर दबाव डालते हुए इस वक्त प्रदान कर चुके हैं और 2 विकेटें भी प्राप्त कर चुके हैं। और निस्संदेह अगर 40 रनों के आंकड़े के अंदर वो गोरियांग बॉयज के बल्लेबाजों को रोक कर रखते हैं तो निस्संदेह उन्हें भी इस मैच में विजय दर्ज करने का मौका है जब उनके बल्लेबाज एक बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। और देखना यह है कि यहाँ पर उनके गेंदबाज अपने इस योजना को किस हद तक कार्यगत करते हैं। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, ये जो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए नौफल और ओवर की पहली गेंद लेकर ये जो तैयार इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक वो पहुंचने के बावजूद गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। चौथा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 2 विकेट्स इन एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये जो गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और स्ट्राइक इस वक्त लेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज सुशांत ये जो की गेंदों का। और ये जो इस वक्त
बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद जगह बनाते हुए गेंद को खेला इस वक्त लॉन्ग आउट की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और यहाँ पर करार स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज के, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई। हालांकि 2 चौका नौफल ने जरूर लगाया, लेकिन इसके बावजूद नियंत्रण प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं इस वक्त मंगला देवी क्रिकेटर्स के गेंदबाज। गेंद को रिवर्स शॉट इस वक्त खेला बैकवर्ड थर्ड बैन पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। सिर्फ नौफल अब तक बेहतर बल्लेबाजी दिखा पाए हैं गोरी यंग बॉयज के लिए, और जहां तक सवाल है इस वक्त नौफल को चाहिए एक साथी की जो दूसरे छोर पर उनका साथ निभाए, और उस साथी की तलाश में वो इस वक्त नॉर्थ स्ट्राइक पर मौजूद। फिलहाल सुशांत इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर एक्स्ट्रा क्विकर एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। बेहतरीन गेंदबाजी, मच स्ट्रेट लाइन, और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, फील्डर काफी पीछे, नौफल दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, डेंजर रन पर आते हुए इस वक्त सुशांत, लेकिन अंतिम क्षण में दूसरा रन पूर्ण करने में सफल। फील्डर थोड़े से स्क्वायर तैनात है, अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त ऑफ द टोस फ्लिक कर दिया था, और जब तक गेंद को फील्ड करे थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था लो रन यहाँ पर प्राप्त करने का। 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अर्बन होम्स एंड की ओर से एक बार फिर से यज्जू गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुशांत के लिए फील्डिंग का मुआयना करने के बाद सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद वहीं पर उनके पैरों पर टकरा कर रुक गई, और डॉट गेंद और एक बेहतर गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुकी यज्जू। 4 ओवर की समाप्ति, 5 रन सिर्फ इस ओवर में यज्जू ने प्रदान किए, और 4 ओवर के बाद परिस्थिति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ला चुके हैं इस वक्त मंगला देवी क्रिकेटर्स के गेंदबाज। सिर्फ 24 रन यहां पर प्रदान कर चुके हैं पहले 4 ओवर में, और 2 ओवर का खेल बाकी, और मैं समझता हूं 2 ओवर में अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है गोरी यंग बॉयज को, तो कुछ करारे स्ट्रोक्स चौके और छक्के के रूप में उन्हें जरूर लगाने होंगे। कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर उन्हें पार करना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो मंगला देवी क्रिकेटर्स के खिलाफ। और 5वां ओवर इस वक्त लेकर लंबे कद के खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और टीम के अन्य खिलाड़ी रफीक और एक अन्य खिलाड़ी उन्हें कुछ समझाते हुए, कुरैश जो कि अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए इस वक्त कुछ समझाने के बाद गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। नौफल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में सजावट इस वक्त कर चुके हैं, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछाला है लॉन्ग ऑन पर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और गेंद इस वक्त लपक ली गई है लॉन्ग ऑन पर। ऐसा कहना पड़ेगा, the bowler gets some extra bounce at the last moment, and because of that Naufal got his stoppage and the ball went high in the air, and the catch was taken just inside the fence in between long off and long on at straight hit area, and that is the end of Naufal. तो बेहतरीन पारी नौफल की समाप्त हो चुकी है। 11 रन उन्होंने बनाए 2 चौकों की मदद से, और तीसरा विकेट यहां पर गोरी यंग बॉयज खो चुका 24 रनों के ऊपर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट फॉर गोरी यंग बॉयज। और जहां तक सवाल है अगले मैच का, तो इस मैच की विजेता टीम का सामना होगा अगले मैच में इस श्रृंखला के दूसरे सेमीफाइनल मैच में, और इस श्रृंखला के दूसरे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है यहाँ पर गोरी यंग बॉयज और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में यंग फ्रेंड्स उर्वा का सामना करने के लिए द्वितीय सेमीफाइनल मैच में। और यहाँ पर फील्डिंग में जमावट करते हुए शाम के 6 यहाँ पर बजते हुए, इट्स ऑलरेडी 5:45। धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद है, लेकिन धूप का प्रकोप इस मैदान पर काफी हद तक कम हो चुका है। घने वृक्षों की परछाइयां मैदान को लगभग इस वक्त ढकते हुए, और सूरज मैदान के दाईं ओर अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ इस मैदान पर रोशनी भी कम होती हुई, और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। सवाद है इस वक्त, सुशांत है बल्लेबाज, सवाद नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुमित
दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया था, ये जानते हुए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है बल्लेबाज ने। और एक बार फिर से सुमित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया हवे में, लेकिन फील्डर काफी पीछे। इस वक्त गली क्षेत्र पर सिर्फ एकमात्र रन यहां पर मिलेगा, ऐसा कहना पड़ेगा। अपने स्ट्रोक्स को चेक किया था आखिरी मौके पर और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सुमित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सवाद इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए सुमित की गेंदों का। और सुमित की ओवर की अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। गेंद कम से कम 2 रन मिलेंगे। डीप थर्ड मैन पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे, फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 28 नाउ। और कुल मिलाकर सुमित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज सवाद के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा। शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता और जैसे ही बल्लेबाज शफल हो गए, गेंदबाज ने पहले ही भांप लिया था कि बल्लेबाज शफल हो रहे, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंक दी, लेकिन दुर्भाग्यवशात वो गेंद वाइड रही क्योंकि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी। और एक बार फिर से सवाद, ये गेंद अच्छी गेंद और इस बार रिवर्स शॉट खेलने में चूके और भाग्य इस वक्त बल्लेबाज का साथ देता हुआ गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई, लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गई और यहां पर अपना संतुलन भी खो बैठे, गिर पड़े, लेकिन आखिरकार उनका विकेट यहां पर बचता हुआ और स्कोर रुक चुका है 29 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस बीच गेंदबाज अगली गेंद के लिए तैयार। इस बार गेंद को रन के लिए दौड़ पड़े, रन इस बीच निशाना और नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो यहां पर डायरेक्ट हिट लग चुका है स्टंप्सों पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और देखने वाली बात यह है कि जब निशाना स्टंप्सों पर टकराया था, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज के अंदर लैंड हो चुका था या फिर बल्ला हवे में था। और यहां पर तीसरे अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त इस रनआउट को देखते हुए टीवी मॉनिटर पर और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं। तो यहां पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है 29 रनों पर। तो द्वितीय क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर चलता हुआ गोरी यंग बॉयज और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में। और इस मैच के विजेता का मुकाबला होगा इस श्रृंखला के द्वितीय सेमीफाइनल मैच में यंग फ्रेंड्स उरुवा के साथ। और वो मैच इस मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा। और यहां पर जो कि डिसीजन बाकी है और तृतीय अंपायर इस वक्त यहां पर चेक करते हुए कि बल्लेबाज आउट है या नहीं।
नॉट आउट। तो यहाँ पर बल्लेबाज बच चुके हैं, तो मेरे ख्याल से रन यहाँ पर जोड़े जाएंगे। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक गेंद का सवाल है तो 5 ओवर की समाप्ति, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स एंड नाउ जस्ट लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम ओवर का खेल यहां पर बाकी। और यहां पर हमसे दूर वाले छोर से अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज अश्विन राज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस बार दाहिना हाथ के बल्लेबाज सवाद। और अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। शाम के 6 यहां पर बचते हुए सिर्फ 5 मिनट का फासला यहां पर रह गया है। 5:55 अगर ठीक तरह से कहा जाए तो। दाहिना तो द विकेट ऑफ से बाहर। और इस बीच विकेट कीपर चूके और इस बार निशाना टकरा चुका है और मैं समझता हूं इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तो जहां तक सवाल है वाइड का, तो वाइड इस वक्त दे चुके हैं अंपायर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 31 रन 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और एक बार फिर से गेंदबाज अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा। बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद थी और स्लॉग स्वीप इस वक्त खेलना चाहते थे। अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और पैरों पर टकराकर वहीं पर गिर गए। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से ये गेंद बेहतरीन गेंदबाजी। विकेट कीपर चुके इस बार गेंद पहुंची गली की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। खुरेश जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाए विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन अभी भी सिंगल्स में बनते हुए इस अंतिम ओवर में। और एक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर बरकरार रखते हुए गेंदबाज श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद समसो पर जा टकराए और इसी के साथ ये पारी सुशांत की समाप्त हो चुकी है। विकेट से हटते हुए जगह बनाकर गेंद को खेलना चाहा था लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेती, पैर और बल्ले को चीरती हुई निकली, सीधे मिडल लेग स्टंप पर जा टकराए। गिल्लियां बेल्स ऑफ होते हुए और एक और विकेट का पतन यहां पर हो चुका है और सुशांत की पारी समाप्त 32 पर 4। इट्स 32 for 4. It's 32 for the loss of 4 wicket and now just 3 balls remaining in their innings. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ 27 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए। अंतिम 3 गेंदें गोरियंग बॉयज की पारी में बाकी और अश्विन एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात है। ठीक सीमा रेखा के पास 5 खिलाड़ी लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में और अश्विन ने इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, स्लोअर लेग कटर, गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड एंड आफ्टर collecting the ball, wicket keeper just giving the ball to the hands of bowler. Next one, अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद चिप गया। इस बार गेंद जाते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान और इस बार दोनों खिलाड़ी यहां पर टकरा गए। मैं समझता हूं वहां पर उनको चोट आई है दोनों खिलाड़ियों को, बैठे हुए हैं और जब तक दूसरे खिलाड़ी वहां पर जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रेट पर, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। मैं समझता हूं दोनों खिलाड़ियों के सिर शायद टकरा गए थे और इस वजह से वहां पर दोनों खिलाड़ी तुरंत गिर गए और आखिरकार मैं समझता हूं कुछ हद तक चोट उन्हें जरूर आई है। खेल कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। 36 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 1 गेंद अब बाकी उनके बारे में। जस्ट 1 बॉल नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। सुमित और किरण फील्डर्स थे जो आपस में टकरा गए थे गेंद को फील्ड करते समय और यहां पर सारे खिलाड़ी और प्रेक्षक उनको गिरे हुए और यहां पर खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है।
माइनिंग इन देयर इनिंग्स और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार अर्बन होम्स एंड की ओर से और इस वक्त सामना करते हुए सवाद। तो अश्विन इस वक्त उनकी पारी का अंतिम गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और दोनों खिलाड़ी यहां पर पेविलियन वापस लौट चुके हैं चोटिल होने के बाद और खेल एक बार फिर से आगे यहां पर बढ़ता हुआ। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अश्विन इस वक्त सवाद के लिए अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट कीपर चुके, रनआउट का खतरा इस वक्त और आसान सा रनआउट होता हुआ और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर गोरियांग बॉयज। दे फिनिश्ड विद 36 for the loss of 5 wickets in the stipulated 6 overs. Thanks to the fantastic piece of bowling performance given by the bowlers of Sri Mangala Devi Cricketers. एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया और सिर्फ 36 रनों पर गोरियांग बॉयज के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप को उन्होंने रोक कर रखा और यहां पर गेंदबाजों ने उनका किरदार बाखूबी अदा किया। अब सवाल है उनके बल्लेबाजों का और देखना यह है कि उनके बल्लेबाज क्या इस 37 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे और देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है। 37 द टारगेट फॉर देम एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब मंगला देवी क्रिकेटर्स की पारी की शुरुआत यहाँ। Last ball dot. Fifth ball, the bowler conceded 3 runs, 32 to 35, and the last ball dot, and the final score is 35 in 6 overs, 36 the target. सही आते So 36 is the target and 5 runs which is came from the last over and fifth over completion it's a 30, then 30 plus 5 it's going to be 35 and 36 is going to be a target for Mangala Devi Cricketers against Goryang Boys and everything is ready here as Yatiraj came into middle along with Damodar
The fantastic bowling performance from Mangaladevi cricketers. They won the toss, selected to field first, and all bowlers, each and every bowlers, they really give their 100% in their bowling department, and they are really restricting the opposition for just 35 runs. And now they can feel that if they bat well, if they bat sensibly, they can be the one can get the place in the semi-final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. But you cannot underestimate Gori young boys, the bowling department. They got a potential of bouncing back in their bowling department. Wait and see how well these two teams will go into fight here for the victory. Harish Padil umpires to signaling towards our scorer Satya, and from the far end it's going to be the first delivery from Fayaz. A pass ball a little bit down the leg stamp, but going to be a wide. First run comes up here for Mangaladevi cricketers in the form of wide. Little bit the ball is going down the leg stamp and going further away as he balls off cutter, and certainly it's a wide ball. The first run comes up. One without loss of any wicket. Faisal from the far end. Right arm over the wicket he bowls. This time Yatiraj went for the cover drive. This time, oh, direct, it might be very close here. Direct, it might be close here as it looks like Sawad, the fieldsman there in the short cover point region, tried to hit the stumps in the relegation. Ball missed the stump. Yatiraj survived from that run out. Yatiraj is off the mark with a single. Two without loss of any wicket. Damodar, man who really played an excellent innings in the previous match for Mangaladevi cricketers. Now against Team Elegant, he played a very good innings. Now this is a quarter final, and wait and see how Damodar will going to perform from the far end. Right arm, this time bowler, of course the batters shuffled across the line of delivery. Fayaz, seeing that ball is the batter is shuffling across the line of delivery, he bowled a little bit quicker one in the relegation around the legs of Damodar, and there is no chance of any run. Much required dotted delivery there from Fayaz. Balls went for the reverse sweep, and ball just has got a bat onto that last moment, and that's why Fayaz is a little bit frustrated. He knows that if the ball missed the bat, he can get the wicket, can hit the ball, it just stumps off stump in the relegation, but the batter picked up a single then. 3 on the board without loss of any wicket. Fayaz balls. This time Yatiraj drives that one, and with the drive they went for the single, right off short mid off region. He picked up a single, so with the single scoreboard was on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Fayaz searching for the dotted delivery. Right arm over the wicket balls. Damodar across the line of the delivery, swinging his bat. Lucky again, that ball missed the off stump. Wicket keeper behind the stump collects the ball, uprooted the stumps, removes the bails, and asking for umpire for the stump out, but no damage done, and the score remains on 4 on the board without loss of any wicket in the over number 4 in first in progress. So no need to panic at all for Mangaladevi cricketers. They know exactly the condition of the game is here is to just rotate the strike as much as possible. This time again, little bit down the leg stamp. Damodar not quite able to take the advantage of that delivery. He completely missed out from the bat. Leg by call by umpire. One more addition to total. So 5 runs coming from that over of Fayaz. After the completion of over number first, chasing 36 to win this match. Mangaladevi cricketers has got a very steady start here. 5 without loss of any wicket. BH Champions Trophy 2022 proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver, Kudla, Friends Balalbag, and all we can see that after that successful day number 1, almost we are inching towards the quarter final of this cricket tournament, and one semi-final is remaining after this, then one final, and opportunity for the spectators to watch the 2 matches under the floodlight. Yesterday also 2 matches played under the floodlight, and wait and see who will going to become the champions of this cricket tournament. Once again, thanks to all the members of Ashok Nagar Women's Wings that they are organizing such a wonderful, very disciplined and successful cricket tournament in this most beautiful venue, UCG Cricket Ground. And special thanks to Sunil Kumar of Biruver Kudla, Trishant of Ashok Nagar, Charan SK, Sumangala Sikotian, and Nishant Sikotian, and each and every members of Ashok Nagar Women's Wings are done hard work to make this possible, this prestigious BK Champions Trophy 2022, and you are watching the last quarter final of this cricket tournament.
from the commentary box end. Answer brought into attack. Right arm over the wicket. Damodar looking for the off drive. Missed time that one, but all along the stroke he went for the single. Good response coming from his partner Yatiraj as well, so that they completed that quick single. So with that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. This match is similarly looks like the match between Sneha Malamar versus NM cricketers Jaipur. And in that match, NM Jaipur won the match against Sneha Malamar, the low scoring game. And same here in this quarter final is a low scoring game. Mangaladevi cricketers chasing 36 to win this match. Answer again. Away from us, right arm over the wicket, balls. This was really not required. When you are depending a total like us 36 to win the match for the opposition, these each and extra runs will go into help the opposition to get that 36 quite easily. You need to be very strict with the line and length as Ansar again back to his bowling mark. Away from us, wide of the crease is balls. Beautifully driven right on the over the top, down to deep, long of boundary for 4 runs. That was a fantastic cricketing stroke there from Yatiraj. He's a master of playing that straight drive. One of his favorite shot. The previous and I think the first match also he's played such kind of cricketing stroke. When the ball is on the middle and off stump, ball is almost on the slot, but he has to pick that line and net very quickly. And placement is so good. Whenever they're going over the top of the bowlers, it's going to be very straight and very difficult for the deep wideish long on fielder to stop the boundary. A welcome boundary for Mangaladevi cricketers. 11 on the board now. Again going for the off drive and outside the line of off stump. Yatiraj tried to reach the pitch of the delivery, tried to reach that one outside the line of off stump, missed it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest. Answer again. Right arm over the wicket, balls. One more dotted delivery, back to back, 2 dotted delivery. Good comeback there by Ansar after he conceded boundary. Then Yatiraj just wanted to play the offside edge, and that was a good thinking there by the bowler's point of view. He quickly realizing that the bowling around the bat of Yatiraj, he will going to hit some big shots straight down the ground. So he's bowling away from his bat, outside the line of off stump, and testing the temperament and technique of Yatiraj. This time he went for the safe shot. This time ball is going outside the line of off stump, far away. The white signal umpire Ansar is not impressed with that addition. With that addition of that single, scoreboard moves on to 12 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Yatiraj so far is looking very cool here. 6 runs came from his bat with the help of 1 boundary, and other end his partner Damodar is batting on 2. Yatiraj get ready to face the next delivery. Ansar bowling away from us. Right arm over the wicket once again, beautifully bowled. Extra bounce and is caught behind. Look at the Yatiraj here. Is that caught behind or stump out? It's caught behind, I think so. Stump out. Exactly. Of course, Yatiraj is nicked that one. He thought wicketkeeper got the catch, but wicketkeeper drops the catch, and he made a stump out. And that was a little bit confusion here because Yatiraj straight away is walking towards the pavilion. This is not the first time I am watching Yatiraj. So many times in this particular cricket, in VCG cricket ground, he is showing his sportsman spirit. But this time he is not really absence of mind. He thought wicketkeeper behind the stump is got the catch. But here is a wicketkeeper drops the catch and he made a stump out. So wicket number 1 is back into pavilion of Yatiraj. Little bit frustration actually after he playing back-to-back 2-3 dotted deliveries. So that after hitting boundary, he played a 2-3 dotted deliveries. So that something is going in his mind, and that was the result of frustration as he left the crease, coming down the track and tried to hit a big shot on the offside region. But good comeback there by Ansar in this particular over. 12 for the loss of 1 wicket. Rafiq is a left-hander batsman. The new batsman bowlers back dry, but no question of any run at all. Good piece of fielding there by the fielder. Shishant, who is standing at mid-off region, quickly moving towards his front, and there is no possibility of any run. So 2 overs completed. After completion of 2 overs, chasing 36 to win this match. Mangaladevi cricketers very much in the required run rate.
6 runs per over is the required run rate, and they got 12 runs in 2 overs. Now coming back to the equation, 24 deliveries remaining. Mangaladevi cricketers have to get another 24 runs to win this match, having all 9 wickets in hand. The equal battle is on. 24 deliveries remaining and 24 runs required for the victory. You cannot underestimate this total, especially in this condition. We can see that already sun is going to complete its duty from east to west, and in a little time the light will go into on here in UCG ground. Under this condition, even 24 runs in 24 deliveries is not that much of easy. This time off the back foot, Damodar picked up a single down to short extra cover region. Didn't quite middle that one. His intention is to play that one over the extra cover region, but he picked up a single. That's very important. Strikes are rotated here. 13 on the board. Now Rafiq is on strike now. He's a very good player, very key player. The first match he batted really very well. Quick fire 20 runs. Second match he fails to contribute from the bat. Now it's a big quarter final, and he has to show his experience in this particular match. A beautifully driven wrong line to ball to this man, down to deep backward square leg region. They're running hard. Rafiq is a very good runner between the wicket. Even Damodar, both the batters are a very good runner between the wicket, so that no question of missing that opportunity to come back for the second. That was ball is going down the leg stump, so Rafiq picked that one quite beautifully off his legs, and 2 runs added to total. 15 on the board for the loss of 1 wicket. This time swept that one, not quite able to play that one properly, but still he managed to get the single. Rafiq with that single scoreboard moves on to 16 on the board. Now Fall is bowling a bit different bowling action, just like what he is doing in a 30 overs format of the games, giving some flight in this delivery, not really bowling along the carpet, and just like that again that ball little bit going down the leg stump, so that wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. One more addition to total in the form of extra by call by umpire, and with that extra scoreboard was on to 17 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. 17 for the loss of 1 wicket. This time slower one, but Rafiq waiting for that slow delivery, waiting for the turn of the delivery off the back foot, punches that one into deep extra cover region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 18 on the board for the loss of 1 wicket. Again, lot of time to read the turn of the delivery. This time going back off the back foot, Damodar again gets the placement quite right towards a deeper wideish long off. So good over here for Mangaladevi cricketers. They got 7 runs from that over. So after completion of over number 3, then chasing 36 to win this match, Mangaladevi cricketers looking in a commanding position. 19 for the loss of 1 wicket. Now in remaining 18 balls, they have to get 17 runs to win this match, and it looks like as Mangaladevi cricketers, they are really upper hand, but you cannot say anything in cricket. The cricket, everybody knows that it is an unpredictable game, and if Gori young boys wanted to back into this game, they need to get 1 good over here, and then only they can back into this game. Wait and see the strategy from both the teams to win this match, and meanwhile the change in commentary box as well. Here in commentary box, I would like to call upon Gopi to take over the microphone. शुक्रिया सतीश। और जहां तक सवाल है, धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू तीनों को मैं देता हूं, सतीश को और संदीप को भी। और यहां पर स्कोर 19 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद, और 17 रन चाहिए 18 गेंदों पर, और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। मंगलादेवी क्रिकेटर्स अपनी सही राह पर इस वक्त जाता हुआ। जहां तक गोरी यंग बॉयज का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी इस मैच में वापस आने के लिए। डॉट गेंदे और विकेटों की उन्हें सख्त दरकार, और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाईं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, रिवर्स शॉट, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड हो, डीप थर्ड मैन पर बेहतर फील्डिंग, वहां पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन सिर्फ प्राप्त करने का। विद ट्विस्टेड बैट खूबसूरती के साथ गेंद को फाइन निकाला था, लेकिन 20 गज के दायरे
पर गेंद टिप्पा खाने के बाद अपना रफ्तार को खोकर कुछ उछाल ली और इस वजह से गेंद अपने रफ्तार को खो चुकी थी और बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ एक रन प्राप्त करने का। रफीक का इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। रफीक ने इस श्रृंखला के पहले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, सिर्फ 8 गेंदों में 20 रन उन्होंने बनाए थे और यहां पर वो जानते हैं इस वक्त उन्हें जरूरत है एक सेंसिबल बल्लेबाजी की जो उन्हें अपने सही मंजिल की ओर, सही लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सके और उसकी तलाश में वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। और गेंदबाज फयाज और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक के लिए ये गेंद इस वक्त हल्के से गेंद को पैडल स्वीप किया, खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची शॉर्ट डीप फाइनल की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। नो नीड टू पैनिक एट ऑल, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश अंग्रेजी में कहा करते हैं, इस वक्त कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सकते हैं। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर, 1 रन फिर से मिलेगा और यहाँ पर दामोदर और रफीक पारी की भागदौड़ को संभाले हुए एकमात्र विकेट गिरा है यतिराज के रूप में, चौके के मदद से 6 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौट चुके हैं और यहाँ पर फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर फयाज और हर गेंद पर सिंगल्स बटोरते हुए और अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए ये क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज, इनमें अनुभव है, अपार अनुभव है और इस अपार अनुभव का यहाँ पर सही तरीके से वो अनावरण करते हुए और एक बार फिर से गेंदबाज फयाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट दामोदर के लिए लेग स्टंप पर बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन विकेट कीपिंग, लेकिन मैं समझता हूं बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित है। तो यहां पर डॉट गेंद गिरा तो ऐसे ही चंद डॉट गेंदे और चाहिए गोरी यंग बॉयज को इस मैच में कम बैक करने के लिए और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर कर चुके हैं। 1 गेंद बाकी है इस ओवर में, यानी कुल मिलाकर 13 गेंदें बाकी हैं और 13 रन चाहिए विजय के लिए। 13 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज एंड एज फार द विक्ट्री ऑफ दिस मैच इज कंसर्न, दिस मैच इज नाउ स्टिल इन बैलेंस। तो इस वक्त अंपायर विकेटों को सही करते हुए गिल्लियां बेल्स को रखते हुए विकेटों के ऊपर और रख चुके हैं और यहां पर अपने स्वस्थान पर जाते हुए गेंदबाज फयाज इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दामोदर के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया मिड ऑफ पर, फील्डर चुके लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दौड़ कर आए काफी पीछे, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति और जहां तक का सवाल है, पहले ओवर में 6 रन बने थे, दूसरे ओवर में 6 रन बने, तीसरे ओवर में 7 रन बने, चौथे ओवर में सिर्फ 5 रन बना और कुल मिलाकर अब 12 गेंदें बाकी है और रन से चाहिए 12 विजय के लिए और निस्संदेह परिस्थिति के अनुगुण यहां पर बल्लेबाजी करते हुए श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के बल्लेबाज। तो फ्लड लाइट्स इस वक्त ऑन हो चुके हैं मैदान के और जहां तक वक्त का सवाल है तो शाम के 6:30 बजते हुए 5 मिनट बाकी हैं, यानी 6:25 यहां पर बच चुके हैं और फ्लड लाइट्स इस वक्त मैदान पर फ्लड लाइट्स के खंबे पर जो फ्लड लाइट्स डाले गए हैं वो फ्लड लाइट्स इस वक्त जल चुके हैं और अंडर फ्लड लाइट्स इस वक्त मैच होगा चंद लम्हों बाद। लगभग अंधेरा सा मैदान पर छाता हुआ और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो देखते हैं गेंदबाजी पर कौन उतरते हैं अर्बन होम्स एंड की ओर से। इस श्रृंखला का चतुर्थ क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ कुल मिलाकर गोरी यंग बॉयज और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में और इस श्रृंखला के द्वितीय सेमीफाइनल मैच में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष यहां पर जारी है। 12 of 12 डिलीवरीज, स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। नौफल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए डॉट गेंदों की सख्त दरकार, विकेटों की सख्त दरकार इस वक्त गोरी यंग बॉयज को इस मैच में वापस आने के लिए। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज दामोदर और पहली गेंद लेकर इस वक्त नौफल तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार दामोदर के लिए चिप किया, स्कोर ऑफ द विकेट, फील्डर थोड़े से स्कोर तैनात, 1 रन मिलेगा, थोड़ी सी मिस फील्ड और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए यहां पर दौड़ पड़े
गेंद तक पहुंच गए थे और गेंद को फील्ड करने के हड़बड़ाहट में गेंद से उन्होंने अपनी नजरें हटा ली और गेंद उनके हाथों से छिटकी और इस छिटकपन का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की गेंद और हल्के से गेंद बैक टू दैट इज एन सुसाइडर। अगर गेंद रन के लिए और आगे जाते तो निस्संदेह यहां पर विकेट उनका गिर सकता था क्योंकि गेंद को सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में उन्होंने ढकेला था और आखिरकार यहां पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित दामोदर और अब रन से चाहिए 10, गेंदें बाकी हैं 10 और लगभग बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त स्पिन होती हुई पहुंच चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और 9 गेंदें बाकी हैं, 9 रन चाहिए और ऐसा कहना पड़ेगा मंगला देवी क्रिकेटर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हुआ और कमबैक करने के लिए इस वक्त चाहिए गोरियंग बॉयज के गेंदबाजों को डॉट गेंदे और विकेटें, चंद डॉट गेंदे और विकेटें। और यहां पर फील्डिंग में जमावट नौफल करते हुए अगली गेंद के लिए तैयार, रफीक सामना करते हुए इस वक्त 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और नौफल अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा। अंसार फील्डर वहां पर थ्रो पहुंचा और इस बार विकेट उखाड़ चुके हैं एंड नाउ वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो विकेट कीपर के हाथों में थ्रो पहुंचा था और विकेट कीपर ने विकेट चटकाए और देखने वाली बात यह है कि जब विकेट चटकाए गए थे बल्लेबाज का बल्ला हवा में था या फिर बैट बल्ला लैंड हो चुका था क्रीज के अंदर। तो तृतीय अंपायर, थर्ड अंपायर इस वक्त उस रनआउट की जांच यहां पर करते हुए और इस बार ही इज गॉन, आउट हो चुके हैं यहां पर। दूसरा रन पूर्ण करते समय जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा तब बल्लेबाज रफीक का बल्ला क्रीज से बाहर था, कुछ इंच बाहर था और इस वजह से उन्हें आउट घोषित किया गया है और रनआउट के रूप में यहां पर विकेट गिर चुका है और ऐन वक्त पर गोरियंग बॉयज विकेट प्राप्त कर चुका है क्योंकि यह साझेदारी यहां पर लगभग जम चुकी थी दामोदर और रफीक के बीच और यहां पर रफीक का विकेट गिर चुका है और शायद ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है क्योंकि बल्लेबाज जो नए उतर रहे हैं उनको थोड़ा कुछ हद तक दबाव यहां पर जरूर है और मैं समझता हूं यहां पर नए बल्लेबाज के ऊपर आमतौर पर ऐसे इन हालातों में जो दबाव होता है वो दबाव कुरैश के ऊपर उतना नहीं होगा क्योंकि उनको कम से कम 25 से 30 सालों का क्रिकेट का अनुभव है। कई बार इन हालातों में उन्होंने बल्लेबाजी की है क्रीज पर उतरकर और मैं समझता हूं यहां पर वो पहले ही अपनी रणनीति के बारे में सोचकर मैदान पर उतर चुके होंगे कि किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करनी चाहिए और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी वो यहां पर करेंगे। कुल मिलाकर इस ओवर में गेंदें बाकी है 2, 8 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए और इस बीच गेंदबाज तैयार, इस बार कुरैश के लिए स्वीप किया इनटू द गैप और गेंद सीमा रेखा के अंदर रोकी गई है इस वक्त बेहतरीन तरीके से 2 रनों के लिए। इस बार तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और बल्लेबाज इस बीच बच नहीं पाएंगे तो कुरैश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। कुरैश तीसरा रन लेना चाहते थे, वो जानते थे तीसरा रन मिल सकता है लेकिन दूसरा रन पूर्ण करने के बाद उस छोर पर बल्लेबाज कुछ हद तक धीमे रहे और बाद में उन्होंने दौड़ना शुरू किया और इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे बल्लेबाज विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट चटका दिए और यहां पर कुरैश ने अपना अनुभव का अनावरण किया। पहली गेंद पर मिड लेग स्टंप पर गेंद पर हल्के से गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में इनटू द गैप और 2 रन बटोरने में सफल और विकेट जरूर गिर चुका है दामोदर का वेल सेट बल्लेबाज और यहां पर अब चाहिए रन 6 जबकि गेंदें बाकी हैं 7। 6 to get from 7 deliveries. Still the match is now equally balanced. और यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ अश्विन राज जो कि इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और जहां तक अश्विन राज का सवाल है अश्विन राज भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं और इन हालातों में वो टीम को मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे और देखना यह है कि वे अपने इस प्रयत्न में किस हद तक यश पाते हैं। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्वीप किया, पहले स्वीप फाइन लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड 5 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर और मैं समझता हूं यहां पर अंतिम ओवर में तख्ता कुछ हद तक भारी जरूर है।
मंगला देवी क्रिकेटर्स का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है गोरी यंग बॉयज को। और जहां तक सवाल है, और ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, देखने वाली बात यह है कि कुरैश ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं और स्ट्राइक इस वक्त अश्विन राज के पास है। और मैं समझता हूं 6 गेंदों में 5 रन बनाने हैं। इस मोड़ पर अगर कुछ गेंदे डॉट करते, जो गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं गोरी यंग बॉयज इस मैच में वापस आ सकता है। लेकिन इस वक्त गोरी यंग बॉयज के सामने मुद्दा यह ठहरता है कि कुरैश को स्ट्राइक पर आने से उन्हें रोकना चाहिए। Exactly, Gopi, but you cannot underestimate this man as well. Ashwin Raj is a very good, intelligent cricketer. More than the cricketer, is a very intelligent cricketer. Just like what Quresh. The both batters are very intelligent. They know exactly the situation. The 5 runs to get to win the match. But I want to take you to the match between NM Cricketers Bangalore versus Sneha Malamar. The same situation, 6 to get from 6 deliveries. Then even Geet is having that much of experience, that much of potential, but he is also fails to produce when the situation like that. That's what Gopi, it's a mind game, especially when it's going to be the final over, when each and every ball requires some runs. Then the condition is totally different. It's totally different because they daily with the final overs, they know that 1 or 2 dotted delivery, then all in sudden they definitely going into the trouble. And that's why it's important here for the holding the nerve is very important, Gopi. They need to hold the nerve. They have to think that of course we have to rotate the strike, but at the same time, you can finish the match early. You don't wait for the last delivery. Don't wait for the last delivery. If any odd delivery is offered, you need to go for the big shot and wait and see how Gory Young Boys will go into ball here, and wait and see how these two batter will go into bat here in the middle. बिल्कुल सतीश, अश्विन आक्रामक स्ट्रोक लगाने की, करारे स्ट्रोक लगाने की क्षमता रखते हैं और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। अंतिम गेंद तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ढीली गेंद बीच में मिलती है तो उस गेंद का फायदा इस वक्त उठाना चाहिए। मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर। और इसका बेहतर उदाहरण हमने देखा एनएम और स्नेहा मालेमार के बीच के मैच को। 6 गेंदों में 6 रन बनाने, तब हर गेंद पर सिंगल्स बनाने के चक्कर में उस मैच को खो चुका था स्नेहा मालेमार 4 रनों से। पहली गेंद तैयार स्टीयर किया पॉइंट की दिशा में, 1 रन मिलेगा तो पहुंचा, निशाना और टकरा चुका है। लेकिन मैं समझता हूं यहां पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं विवेक इस वक्त देखते हुए, लेकिन यहां पर दूसरा रन मैं समझता हूं पूरा कर चुके हैं। निशाना लग चुका था, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके थे। 2 रन मिल चुके हैं, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 रन चाहिए विजय के लिए 5 गेंदों पर। तो यहां पर गेंदबाज अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट सुशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्विन राज सामना करने के लिए तैयार। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत गोरी यंग बॉयज की इस मैच में वापसी करने के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके कुरैश दौड़ पर इस रन से थ्रो पहुंचता और इस बार थ्रो को गवा चुके हैं। थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए और इस बीच बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। तो थ्रो काफी नीचा रहा था और यहां पर थ्रो को अगर कुछ टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती तो शायद थ्रो को कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन थ्रो काफी नीचे रहने की वजह से उनके दोनों पैरों के बीच से, टांगों के बीच से गेंद निकल गई और इस बीच 2 रन अब चाहिए बचे हुए 4 गेंदों पर। और कुरैश इस बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं और सुशांत कुरैश के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। क्रीज के कोने से गेंद कुरैश के लिए चिप किया, लेकिन सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथों में। थोड़ा सा वाइडर लेकिन उछाला थोड़ा सा स्ट्रेटर और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑन फील्डर के हाथों में और कुरैश अपने टीम को सही मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए और मंजिल के अति निकट लाकर खड़ा कर वो यहां पर मैदान से गुजरते हुए पेविलियन की ओर और अब चाहिए रन 2 और गेंदें बाकी है 3। तो एक और डॉट गेंद मैं समझता हूं सतीश गोरी यंग बॉयज को इस मैच में वापस ला सकता है और मंगला देवी क्रिकेटर्स के ऊपर के दबाव को बढ़ा सकता है। Exactly, Gopi. Just like I think Quresh heard my commentary that don't wait for till the last ball. That's why you want to finish the match a little bit early. Try to go over the top, but little bit the power is not enough in that half-hearted stroke, Gopi. Otherwise, you can clear that fielder in the mid-on. And just he wanted to finish the match early and pays the penalty for that. Now 2 runs to get, 3 balls remaining, 1 dot delivery. Definitely going to be a more interesting game of cricket. बिल्कुल सतीश, और उस डॉट गेंद की तलाश में अगली गेंद लेकर सुशांत तैयार। दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा और गेंद पहुंची इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग पर। रन यहां पर मिलेगा। मैं समझता हूं विकेट कीपर की गलती थी, वहां पर गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए विकेटों के पीछे और यहां पर 1 रन मिल चुका है। इस 1 रन के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड। 1 रन चाहिए 2 गेंदों में और अगर गोरी यंग बॉयज को इस मैच में हार को बचाना है तो दोनों गेंदों को डॉट करने होंगे।
उनके गेंदबाज सुशांत को दोनों गेंदें डॉट फेंकने होंगे और मंगला देवी को चाहिए सिर्फ एक रन इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए चाहिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा, विकेट कीपर पहुंचे, थ्रो टटोलते रहे और इस बीच मंगला देवी क्रिकेटर्स रन पूरा कर चुका है, उनके बल्लेबाज रन पूरा कर चुके हैं और इसी के साथ श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स entered into the semi-final of this competition, defeating one of the strong contender of this tournament for title, Goryang boys, and with that victory they are through to the semi-final of this competition. तो मैं समझता हूँ खिताब के प्रबल दावेदार टीमों में से एक गोरियंग बॉयज को इस वक्त श्रृंखला से बाहर करके मंगला देवी
I request the two teams players please complete your signatures as soon as possible. Mangaladevi cricketers takes on Young Friends Suru in the semi-final. Those who are not signed official chart yet, please complete your formality of signatures as soon as possible. Please get ready for the next match. Mangaladevi cricketers, Sri Mangaladevi cricketers takes on Young Friends Suru. I request once again the both the teams players, please note those who are not signed official chart, please sign immediately. Mangaladevi cricketers ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Within 5 minutes we're going to start the semi-final, last and final semi-final of this prestigious cricket tournament. ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So toss is won by Young Friends. Young Friends won the toss, huh?
So news is here from the center that the captain of Young Friends Urva, after won the toss, he elected to field first. And the second semi-final match of BK Champions Trophy 2022 is now coming up live exclusively right in front of you. And we'll be back within a moment with my friend Mr. Satish in English when the first semi-final match will going to begin within just a short while. Thank you. Copy. Okay. 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 Manvara, Gopi. Tosanda. So welcome back after that short break. We are back into this game and the semi-final. Mangaladevi Cricketers takes on Young Friends Surva in this last and second semi-final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. And meanwhile, here is some announcement upcoming tournaments. Especially the first one I would like to announce MFC Sports Mulara Patna, as they're celebrating their 5th year anniversary, and on behalf of that they're organizing the cricket tournament in the name of MFC Trophy 2022, and the winners will going to get MFC Trophy along with the cash prize of rupees 44,444, and the runners will going to get MFC Trophy along with the cash prize rupees 22,222 rupees. The interested team can enroll their name by paying entry fees of rupees 5,000. 24 teams invited cricket team will going to participate in this cricket tournament, and that tournament will organize in coming 12th and 13th of March. The place Mular Patna, Bantwal. So I request each and every the cricket teams please cooperate with the organizer MFC Sports Mular Patna, and so Young Friends who are on the toss elected to field first, and here also Yuratna Trophy will go into commence in coming March 3rd and 4th and 6th of next month. Yuratna Trophy, the loving memory of power star Punit Rajkumar. So that one more big tournament coming up. The big cash prize of rupees 1,50,000 for the runners up with the Yuratna Trophy. A lot of cricketing action for the cricket lovers, not only in UCG cricket ground and in other part of South Kendra district as well. So everything set now for the semi-final. So umpire Arish Padil signaling towards our scorer Satya. So under floodlight, semi-final will going to start here. Mangaladevi Cricketers against Young Friends Surva. After winning the toss, captain of Young Friends Surva, no hesitation at all to the field first. And most interesting to see that Gopi, Young Friends Surva has got one player at extra cover region, is none other than Shakir of KFC Kodikal. Will going to strengthen the bowling and batting department of Young Friends Surva. But Bangladesh Cricketers, they are in a winning run. This time again, lovely shot, almost drags that one drags that
delivery from outside the non-off stump by Yatiraj to pick the single down to square leg region. Intention of Yatiraj to clear that infield. There is no protection has been given for Yatiraj in the deep backward square leg and fine leg, but very difficult sometime when Zubair bowls that line. But still he managed to rotate the strike. First run comes up here for Mangaladevi cricketers. One without loss of any wicket. No change in opening pair. Damodar and Yatiraj, the two opening batters, are in the middle. Now Damodar will going to take the strike. Now little bit change in the field set now. One fielder from the square leg going back to deep backward square leg for Damodar. Here is Zubair balls straight to the hands of Ajmal. Ajmal misfielded it. Different ball game, I must say. It's not an easy under floodlight to field the ball, to shite the ball. It's not that much of easy, and that's why even Ajmal is a very good safe pair of hands. Missed the ball completely, and even Damodar is off the mark with a single. Zubair right arm over the wicket this time. Lofted that one. It is going to be a huge one. Yatiraj got a fantastic start from the bat, and punishment here for Zubair in this match also. The previous match also against NM Cricketers Bangalore, I think Taufik hit 1-6. Here Yatiraj, that ball is in the slot, I must say. That ball definitely in the slot, and the batsman like Yatiraj who loves to play the stroke straight down the ground, and he got that one right from the middle of the bat, and the Mangaladevi cricketers has really got a positive start from Yatiraj. 8 on the board again, tried to hit that one down to square leg region, missed it completely. Slower one there from Zubair. Good comeback here by Zubair. 8 runs already on the board for Mangaladevi cricketers. Young friends, they came into this tournament as a favorite of winning this. Oh, what a delivery that one. Really lucky. Look at Yatiraj. He's surprised. Not only he got extra bounce, but he's got an extra turn as well. Now Yatiraj just watching, just like in international cricket, have to see whether anything is there in the pitch. The small stones in the pitch, because that much of turn and bounce is taken place in the occasion there from Zubair. And Yatiraj was really surprised with that delivery, but luckily that ball just missed the stumps. Good comeback there by Zubair. Again away from us, right arm over the wicket, going for the big slog sweep shot, missed it completely. So nothing much worried about that. Mangaladevi cricketers, they definitely got what they wanted in the power play over. 8 runs, but much little bit intelligent cricket required in that occasion, because after hitting 6 he played 2 dotted deliveries and 3 dotted deliveries. If he rotate the strike in the 3 delivery, definitely the scoreboard is going to be more than 11 runs in that over. But after getting the 6, it's very difficult to control your emotion, isn't it? When you are in aggressive frame of mind, and very difficult to change your frame of mind towards defensive one, and that's what had really happened to Yatiraj, as he missed a 2 ball, but nothing worry about that. He got a 1-6, and because of that 6, Mangaladevi cricketers has got 8 valuable runs in the first over. Now, just we are talking about Shakir. He's not represented KFC Kodikal in the morning when they played against young friends Ruva. Maybe he's having the tournament in other area. After completing that tournament, he's now just joining young friends Ruva. And young friends Ruva suddenly will going to enjoy his appearance. Will going to be the plus point in both department, bowling, batting, and even in the fielding department as well. A lot of changes in field now. Square leg fielder going back deep backward square leg for Damodar. Shakir bowling from the Urban Ohms end, bowling with a short run off, right arm over the wicket. Balls to Damodar. Damodar went for the big shot. Santosh this time not really able to gather the ball, and they got a single here. No signal coming from the umpire. That means Damodar has got a little bit bad indication. So that's why Santosh fails to collect the ball from his hand. The firework begins here. Not for the match, I must say. Maybe the lot of dogs out here in the cricket ground, but that cracker will not going to affect the dogs. They are really enjoying more than the dogs. The puppies there in the deep long off region, enjoying the light here in UCG cricket ground. Nice looking drive there from Yatiraj. Again straight down the ground. He's a very strong player in front of wicket. Again he tried to clear the infield, but mid off fielder quickly moving towards his left hand, fields the ball. Just a single for Yatiraj. 10 on the board without loss of any wicket. Shakir balls ball him, clean him up.
Damodar playing a wrong stroke. Across the line of the delivery, wanted to swing that one. Maybe that intention that he wanted to clear the ground. He wanted to get 106 in this particular over. By doing that, he missed the ball line completely. Then Shakir strikes. The strikes with the wicket. 10 for the loss of 1 wicket. The over number 2 in progress. So Damodar departs. Replacing him is Rafiq, promising left-hand batter, slowly walking towards the middle. Got a very good tournament from the bat. This is a big semi-final against young Fransurva. Of course, opportunity for Rafiq to show his talent, and takes his team into very good total against young Fransurva. Short third man for him. There is a short cover point, short extra cover mid-off. No protection in the deep in the offside region for Rafiq, but there is a protection in the deep long on. Deep mid wicket, in fact. Very difficult to see the fielder, especially in the long on region. This time, nice looking drive. Good piece of fielding there by the fielder. This time, Zubair picking a ball in a right hand and tried to hit the stumps in the non-strike and missed the stump anyway, and both the batters are not missing to complete the single here. To 11 on the board for the loss of 1 wicket. So far, Shakir bowled a very tidy line. Line and length is so impressive in dedication from Shakir, and already conceded 3 runs in that particular over. Now, Yatin back on strike now. Yatin. Yatiraj, little correction. Right, this time Shakir bowls right arm over the wicket. Beautifully bowled. Excellent line in the negation. That's a very intelligent bowling there from Shakir. He know exactly the potential of this man, Yatiraj. And he bowled that one a little bit outside the line of off stump. And Yatiraj completely missed out that delivery. One more dotted delivery. Shakir from the far end. Right arm over the wicket, bowls across the line of the delivery. Appeal for leg before wicket. Chance of run out in the strikers end as well. Both the occasion. Umpire not interested. But here is the wicket keeper missed the stumps completely. Altogether, the very good over there from Shakir. Very quiet over. Completion of over number 2. Mangala cricketers are 12 for the loss of 1 wicket. A very tidy over there from Shakir. Just 4 runs came from that over. And Mangala cricketers are after lost the toss and asked by the opposition to bat first. They are 12 on the board for the loss of 1 wicket. Third over going to begin. The first 2 over of the power play is completed here. Equal start for both the team. Mangala cricketers has got 12 runs. Young Fransurva has got 1 wicket of Damodar. And even though the first over is a little bit expensive, but second over is going in favor of young Fransurva. Ashwin, the hero of the previous match. What a great performance from him against NM Cricketers Bangalore. When NM Cricketers looking towards, cruising towards a victory, he and his partner Ashok did the trick. Beautifully bowled. Leg cutter in the negation. Quicker one as well. Not a slow leg cutter. It's a quicker one in the negation. When he was bowling a quicker leg cutter, he's not really getting that much of turn, but he knows exactly the kind of line you need to bowl to Yatiraj. Ashwin again. Right arm over the wicket. This time chipped that one right in the gap. Not really controlled over that stroke there from Yatiraj. Maybe he's looking for a little bit short pitch delivery to hit that one down to long off region. But he didn't got enough bat onto that because of the turn, extra turn for Ashwin. So with that single, scoreboard now moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket. Outstanding performance from Mangala cricketers in this particular tournament. And they desperately wanted to reach into the finals of this prestigious BK Champions Trophy 2022. Excellent journey here for Mangala cricketers. Not an easy journey, I must say. They defeated Challenge Cricketers Bowler. They defeated Team Elegant. Then they defeated Gori Young Boys. This time across the line after delivery, swinging his bat towards the square leg region. Protection has been given in the deep backward square leg. And Rafiq picked up a single. Then 14 on the board for the loss of 1 wicket. Not that much of a problem for the left-hander batter to face Ashwin's leg cutter, because that ball is coming into the batsman. That leg cutter for the left-hander batsman.
Ashwin bowls. This time top edge again. The ball is in there. Will it go into a chance here for the fielder? Yes, he taken the catch. This time Bashit is came into the playing 11 of Young Friends Urva. Some players are missed out for Young Friends Urva. The Bashit is the one who missed out 2 matches in this particular tournament. Now Young Friends Urva looking complete the playing 11s here along with the Sakir. It looks like the very formidable team here. And fantastic running catch taken there by Bashit down at deep extra coverage. And again the top edge. Yatiraj tried to play against the turn of the delivery. Just closing the face of the bat too early. And he got at bottom edge. And that ball is ballooning up in there. And the long off fielder making no mistake at all. Very good catch finished there by the fielder. 14 on the board for the loss of 2 wickets. New batter. Slowly walking towards the middle. Kiran. One more so experienced campaigner for the side. Still remember, it's not the present cricket time. I want to say, the 5 to 10 years back is one of the best striker of the ball, of the cricket ball. Kiran, especially as the slog shape is concerned, is really good. Got a very good eye, and loves to play across the line of delivery. And wait and see how Kiran will going to contribute from his bat. Now Ashwin bowls to again for Rafiq. Rafiq quite neatly pedaled that one. He's so good in that particular cricketing stroke. The technique is perfect in that occasion, and something learned from this kind of technique. Whenever the batter wanted to play the sweep shot, pedal shot, the front foot is really key. Coming right in front, right into the pitch of the delivery, and he just closing the face of the bat and just allow the ball coming into his bat and gives the direction. And it's a very safe stroke to play, even a little bit across the line of the delivery, but he's very confident by playing that stroke. He got the single, 15 on the board for the loss of 2 wickets. Ashwin again, bowling away from us. Right about the wicket, clever, absolutely clever. That's what I'm mentioning about. He's a very intelligent bowler. Seeing that Kiran just changing his position, try to play the reverse stroke, he's changed the line of the delivery as well. So one more over completed. So completion of over number 3. Mangaladevi cricketers are searching for the right track. They have 15 for the loss of 2 wickets. Now 3 overs remaining, and wait and see how Mangaladevi cricketers will go into accelerate the run rate. Acceleration is much important, and before the next over will go into commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone. Gopi, once it's first over, it's 8 runs because Zubair 1-6 came from the bat of Yatiraj of the bowling of Zubair. Looks like it's going to be a little bit the run started to flow for Mangaladevi cricketers, but after that 2 overs which belongs to Young Friends Urva. Especially the enter of Shakir is make the big difference in the bowling department as well. Shakir bowled very good over. After that Ashwin bowls one more good over. Altogether now 5 runs per over is the run rate, Gopi, but I think it's not enough. They have to look for some acceleration of run rate, Mangaladevi cricketers, if they wanted to get some good score. बिल्कुल ये रन रेट इस वक्त काफी नहीं है मंगलादेवी क्रिकेटर्स के लिए, जैसा कि आपने फरमाया सतीश। पहले ओवर में 8 रन बने थे जब यतिराज ने छक्का जड़ा था जुबैर की गेंद पर, तब ऐसा लग रहा था मंगलादेवी क्रिकेटर्स के बल्लेबाज छा जाएंगे यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों पर, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में शाकिर ने काफी किफायती गेंदबाजी की और शाकिर की इंक्लूजन से यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गहराई और बढ़ गई है, डेप्थनेस और बढ़ गई है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। और उसके बाद अश्विन ने अपनी काबिलियत क्षमता के अनुसार तीसरे ओवर में गेंदबाजी की। अब रन की गति में काफी हद तक कमी यहां पर नजर आती हुई, और यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद शाकिर अपना दूसरा ओवर प्रारंभ कर चुके हैं और इस बीच रफीक को गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कम से कम मैं समझता हूं सतीश 40 का आंकड़ा इस वक्त पार करना होगा मंगलादेवी क्रिकेटर्स का, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। लेग से बाहर लॉन्ग द कार्पेट गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद अंडर फ्लड लाइट्स इस मैदान का नजारा काफी खूबसूरत यहाँ पर नजर आता हुआ। और यहाँ पर अंडर फ्लड लाइट्स तले इस श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल मैच एक शानदार प्रगति करता हुआ। ये गेंद स्वीप करना चाहा, रफीक दौड़ पड़े, गेंद पहुंची इस वक्त पिच के बीच और इससे पहले की गेंद को वहां पर फीड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्लोवर प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर श्री मंगलादेवी क्रिकेटर्स। और जहां तक मंगलादेवी क्रिकेटर्स का सवाल है और निस्संदेह जहां तक मंगलादेवी क्रिकेटर्स का सफर है अब तक सेमीफाइनल का, तो इस श्रृंखला में उन्होंने उनके खिलाड़ियों ने अपने काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन दिया। पहले उन्होंने चैलेंज बॉलर को परास्त किया, उसके बाद टीम एलिगेंट को उन्होंने हार बाहर का रास्ता दिखाया था और उसके बाद अंतिम गोरी यंग बॉयज
और मैं समझता हूँ इन तीनों विजय में से गोरी यंग बॉयज के खिलाफ जो विजय उन्होंने दर्ज किया है बेहतर विजय माना जाएगा, क्योंकि गोरी यंग बॉयज इस श्रृंखला के खिताब के प्रबल दावेदार टीमों में से एक थी और उनके खिलाफ सर्वांगीण प्रदर्शन न देते हुए मंगला देवी ने एक बेहतरीन विजय यहां पर दर्ज किया और सेमीफाइनल में पहुंचना उनके लिए यहां पर बिग अचीवमेंट कहलाएगा, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका। और इस बार यहां पर विकेट गिर चुका है रफीक का। मत स्टेटर लाइन शाकिर की गेंद थी और मैं समझता हूं ये गेंद बल्लेबाज के लेग पर टकराई, लाइन पर टिप्पा खाने के बाद और प्लम इन फ्रंट इस वक्त घोषित होते हुए रफीक और यहां पर विकेट नंबर 3 गिर चुका है। 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। द बॉलर्स ऑफ यंग फ्रेंड्स उर्वा आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। तो जहां तक जिसके बारे में फरमा रहा था मैंने और मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, मंगला देवी भले ही सेमीफाइनल तक पहुंची है, लेकिन मैं समझता हूं हमारे हिसाब से ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट यहां पर कहलाएगा, क्योंकि मंगला देवी रेगुलर हर टूर्नामेंट में वो हिस्सा नहीं लेती है और यहां पर उनके कुछ मुख्य खिलाड़ी जो गतकाल के मुख्य खिलाड़ी संतोष जैसे खिलाड़ी अब उनके लिए नहीं खेल रहे, तो लगभग ज्यादातर खिलाड़ी नए हैं। तो उसके खिलाफ उसके अलावा यहां पर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन देकर इस उर्वा क्रिकेट मैदान पर सेमीफाइनल पर प्रवेश दर्ज किया है। ये निस्संदेह काबिल तारीफ प्रदर्शन है और यहां पर अगर वो इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश करेगा तो इनके लिए ये सबसे बड़ा यहां पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर कहलाएगा। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई, नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है अश्विन का और इस वक्त अश्विन सामना करने के लिए तैयार। शाकिर एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अश्विन के लिए चूका। इस वक्त गेंद को इस वक्त चूके स्विंग करने के प्रयास में गेंद पैरों पर टकराई और अपील को अंपायर ने नकार दिया और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 8 रन बने, दूसरे ओवर में 4 रन बने, तीसरे ओवर में 3 रन बने और चौथे ओवर में भी 3 रन बने। तो धीरे धीरे अपने श्रेष्ठ लय को, श्रेष्ठ रिदम को यहां पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज प्राप्त करते हुए और रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के बल्लेबाज 2 ओवर का खेल बाकी, जस्ट 2 ओवर्स नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और यहां पर 5वां ओवर लेकर अश्विन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, गेंदबाज अश्विन और बल्लेबाज अश्विन, तो गेंदबाज भी अश्विन और बल्लेबाज भी अश्विन। तो अश्विन के लिए यहां पर नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है, घने अंधेरों को चीरकर ये रोशनी मैदान पर गिरती हुई और यहां पर निस्संदेह इस अंडर फ्लडलाइट्स के तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत एक शानदार प्रगति करती हुई इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच में अश्विन की गेंद, ये गेंद लेग कटर गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया अश्विन ने, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर बल्लेबाज अश्विन ने अपनाया, गेंदबाज अश्विन की गेंद पर और 1 रन के साथ स्ट्राइक यहां पर रोटेट कर चुके हैं। तो स्ट्राइक इस वक्त किरण राज के पास, कुछ करारे स्ट्रोक्स चौके और छक्के के रूप में इस वक्त लगाने होंगे मंगला देवी क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें अपनी टीम की रन की गति को बढ़ाना है, एक्सेलरेट करना है। और इस बीच ये गेंद इस बार बेहतर लेग कटर, परफेक्ट लेग कटर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा और वाइड का इशारा अंपायर का और ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी और वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद ऑफ कटर गेंद, इस बार अंदर की ओर आती हुई, ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, थोड़े से सफल होते हुए किरण राज ने, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इस वक्त अश्विन गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त लेग स्टंप से बाहर, इस बार गेंद पैरों पर टकराई, सर्टेनली प्लम इन फ्रंट, शफल होकर गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहता, धीमी लेग कटर गेंद लाइन पर टिप्पा खाई, मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कंसंट्रेट कर आते हुए उनके बैक लेग पिछले पैर पर टकराई और अंपायर हरीश पटेल को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। सही निर्णय और इसी के साथ विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है 20 रनों के योग पर और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स। समस्याएं और बढ़ती हुई और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 9 गेंदें बाकी, जस्ट 9 balls now left in their innings and still they got 6 wickets kept intact, 6 wickets they got in their hand। और देखना यह है कि इन बचे हुए 9 गेंदों में उनके बल्लेबाज बचे हुए
6 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ द न्यू बैट्समैन, द नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल वेयरिंग नंबर 44 जर्सी। धनु इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करेंगे अश्विन की गेंदों का। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात। इस श्रृंखला के नियमानुसार ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, मच स्ट्रेटर लाइन, कुछ ज्यादा हद तक गेंद टर्न नहीं रही थी। एक्स्ट्रा विकेट टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 20 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। अश्विन एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट ये गेंद एक बार फिर से लेग कटर और एक बार फिर से गेंद को स्विंग करने का प्रयास किया, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए। और यहां पर यही तो अश्विन की खासियत है, कभी कभी गेंद को अंदर की ओर लाते हैं तो कभी कभी बाहर की ओर निकालते हैं, और कभी कभी तेज गेंद फेंकते हैं लेग कटर ऑफ कटर के रूप में, तो कभी कभी धीमी गेंद कर देते हैं। और इस वेरिएशन, इस वैविध्यता की बदौलत यहां पर बल्लेबाज हैरान रह जाते हैं कि उनकी गेंदों को किस तरह खेला जाए। अगर एक्सक्विजिट फुटवर्क हो तो गेंद को खेला जा सकता है, लेकिन यहां पर एक्सक्विजिट फुटवर्क के साथ अगर आपको स्ट्रोक खेलना है तो निस्संदेह कुछ विशेष रणनीति के साथ आपको बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी। और इस बीच अश्विन गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते आगे निकले, गेंद को खेला, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन है, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया शाकिर द्वारा। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एक और सफल ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन स्पेल अश्विन का समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ उन्होंने 6 रन दिए, 2 overs, no maiden, 6 runs and he conceded and he captured 2 wickets. This is an absolutely fantastic piece of bowling performance and both शाकिर भी 2 ओवर फेंक चुके हैं, 6 रन दे चुके हैं और 2 विकेटें वो प्रदान कर चुके हैं। तो शाकिर और अश्विन दोनों 4 ओवर फेंक चुके हैं और इन 4 ओवर में सिर्फ 12 रन प्रदान करते हुए 4 बहुमूल्य सफलताओं को वो दोनों बांट चुके हैं। और निस्संदेह इन दोनों की गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा इस मैच में प्राबल्य स्थापित करता हुआ और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ और अरशद इस वक्त अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामना इस वक्त करते हुए अश्विन राज, ओवर की पहली गेंद और गेंदबाज धनु इस वक्त सामना करने के लिए, माफ कीजिए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को खेलना चाहा, चूंकि विकेट कीपर संतोष ने विकेटों पर गेंद को लगाना चाहा, हालांकि गिल्ली भी उड़ा दिए थे उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद था और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद एक्स्ट्रा विकेट शॉट टर्बान पर निशाना दागा और निशाना टकरा चुका है। अश्विन का थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और अश्विन की थ्रो पर अश्विन का विकेट यहां पर गिर चुका है, बल्लेबाज अश्विन का, और विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है 21 रनों के योग पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर लास्ट इन प्रोग्रेस। सो डिजास्टर कंटिन्यूइंग नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स। और बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के दर्शकों से लगभग ये मैदान भर चुका है आज रविवार की शाम, और इस रविवार की शाम को दर्शक और भी रंगीन यहां पर बनाते हुए मैदान पर भरकर, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरवर कुडला रजिस्टर्ड ने, अशोक नगर वुमेन्स विंग की ओर से इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 इस सुंदर से लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट उरुआ के क्रिकेट मैदान पर यूसीजी पर, और इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहां पर प्रगति पर, और द्वितीय सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ। अरशद की गेंद फिल्टर्स, लेकिन इस गेंद को फायदा उठाने में असफल और गेंद को उछालना चाहता, ऐसा कहना पड़ेगा, धीमी गेंद थी, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, काफी वाइड थ्रो और बैकअप होता हुआ और बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं लेकिन पहुंच चुके हैं यहां पर। तो 3 रन यहां पर प्राप्त होंगे ओवर थ्रो की बदौलत, जहां पर मिलने चाहिए थे सिर्फ 1 लेकिन रन मिले 3, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर
6 and last in progress in their innings. Long on deep mid wicket, backward square leg, long off deep extra cover इस वक्त तैनात, और अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज के दाईं से गेंद निकली, दूसरा रन लेना चाहते, दौड़ पड़े और रुक गए. हालांकि स्ट्राइकर रन पर पहला रन पूर्ण करने के बाद भी बल्लेबाज दौड़कर रुक चुके थे, और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर रन पर रन आउट होता हुआ बल्लेबाज को वापस लौटने का अपने क्रीज पर कोई मौका नहीं. छठा विकेट गिर चुका है. इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. एंड नाउ हाउ मेनी बॉल्स रिमेनिंग? जस्ट 2 बॉल्स नाउ रिमेनिंग इन द रिंग. सिर्फ 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी. और यहां पर नए बल्लेबाज नंबर 8 बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, और इस बीच गेंदबाज अरशद गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज के लिए, जो कि 06 नंबर की जर्सी यहां पर पहने हुए तरुण कुरेश, माफ कीजिए, स्ट्राइकर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज मंगला देवी क्रिकेटर्स की ओर से इस वक्त सामना करते हुए. ये गेंद टॉप एज, इस बार फील्डर गेंद के नीचे आते हुए विकेट कीपर. लेकिन जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा, मैं समझता हूं गेंद उनके लगभग पैर पर टकराई थी या फिर हाथ के ऊपरी भाग पर टकराई थी. लेग बाय का इशारा, 1 रन का इशारा हो चुका है, 1 रन का इजाफा हो चुका है. 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद उनके बारे का. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अरशद तैयार और तरुण सामना करने के लिए इस वक्त अरशद की गेंदों का अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया. इस वक्त गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट की दिशा में. 1 रन मिलेगा. ओ मिसफील्ड, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. डीप मिड विकेट पर जो फील्डर थे, अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद से अपनी नजरें हटा ली, और आखिरी मौके पर गेंद को फील्ड करने के हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के सीढ़ियों पर गेंद टकरा चुकी है. 4 रन तोहफे के रूप में 4 रन प्रदान करते हुए, और इसी के साथ पारी के निर्धारित ओवर्स यहां पर मंगला देवी क्रिकेटर्स के समाप्त हो चुके हैं. तो मंगला देवी क्रिकेटर्स ने अपने 6 ओवर में बनाए 30 रन. कुल मिलाकर 6 विकेट के नुकसान पर मंगला देवी cricketers scored 30 runs, exactly 30 runs they scored for losing 6 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 31 for young friends Urva to qualify for the grand finale, mega final of this competition. 31 runs they have to score for victory with the required run rate of just over 5 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 5.17 runs per over. With the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. तो 31 रनों का लक्ष्य, और cricketers not really performed well, and just if they manage to rotate the strike, they can get at least 35 to 40 runs. Definitely in this condition, it's a very good score. Under floodlight, the 35 to 40 is going to be a very good score. But still, Gopi, just you are mentioning about that cricket unpredictable game. You can't say anything in cricket, and especially in UCG cricket ground, there's a lot of example you can get here, and that's why some Mangala cricketers now, they need to believe that they can depend the total. Even of course they are depending a small total, but they can depend the total, just like what young friends who are the bowled, the way they bowled, and line and length what they bowled. They need to bowl the same line and length. They have to restrict the batsmen of young friends who are, of course, young friends who are no doubt at all, they are really having a formidable batting department. But
See, even though I think if they're able to pick the wickets in first 2-3 overs, if they're able to pick the wickets of Young Friends, they can put some pressure onto the batters of Young Friends. Let us wait and see how the strategy will going to work out here. Meanwhile, here's one more announcement. A lot of cricket tournament, not only UCG cricket ground, but in outside UCG cricket ground as well. There is an announcement. Bellurians Trophy 2022, which is proudly organized by Team Bellurians Kannur in coming this 27th and 28th and 1st of the March, and that is a huge cash prize, 70,000 for the winners, along with the Bellurians Trophy, 50,000 cash prize for the runners, along with the Bellurians Trophy 2022. The interested team can enroll their name by paying rupees 8,000. That tournament will go into organize in Mazda Kannur cricket ground. And once again, on behalf of organizers, Team Bellurians Kannur, inviting each and every the cricket lovers for that cricket tournament, Bellurians Trophy 2022. So signal is just coming from umpire Arish Padil, and Munna, quite surprisingly, as usually is coming in the second over of the power play. But now Mangala cricket is quickly realizing that they are depending a small total. Why can't we bring very experienced Munna to ball a first over of the power play so that they can get some wickets in early? That's a good strategy, good thinking by captain of Bangladesh cricketers. They have to get some wickets desperately if they wanted to put some pressure onto the batters of Young Friends Urva. No change in the opening pair. The same, the left and right combination here. Santosh Bantwal, and so far is not really able to talk with his bat. And now it's a big semi-final. Along with him, Arshad has got a really very good tournament from the bat, from the ball, and even in the fielding as well. Munna, right arm over the wickets. First ball, wanted to play the reverse sweep in the negation. Ball is a little bit in the air. No signal coming from umpire. That means definitely the bat is involved, and opportunity for the fielder to take the catch. First run comes up here for Young Friends Surva and Santosh Bantwal, and open the account as well. One more big tournament we are talking about. JD Boys Bantwal will going to organize one more big tournament in SVS College. That is coming 5th and 6th of March. One more big tournament, very prestigious cricket tournament in the region of Bantwal. One more big miss there by Tarun. I think it's a very good wicket keeper, Tarun. It's a rare miss, but sometimes it's happening. It's not an easy under floodlight to judge the line, to sight the ball. It's very difficult. That's why the Tarun completely missed out that delivery. Now Tarun is himself and sacrifices his place to Ashwin Raj to keep the wickets. Now he's coming towards a short square leg region, right of square leg umpire Roland Pinto. There is two fielder. One is right of square leg umpire, one is left of square leg umpire Roland Pinto. And very close fielding set. Very interesting field set. The three fielders very close together. Short mid wicket, short square leg, short fine leg. And here is Munna, right arm over the wicket to Santosh. Santosh following the stroke, they went for the single. Kiran is not a quick fielder, and he knows that. Santosh knows that you can get the single, and responded very well by his partner Ashad. Now Ashad back on strike. 3 balls, 3 singles. I request Sarvagni cricketers, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ದ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ entered into the finals yesterday in the local group. Fantastic performance from local team Sarvagni cricketers. Big achievement. And they will go into play against the winners of this match. This time again going for the sweep shot, half-hearted shout, chance of run out as well. Ashwin is not interested. He is not interested. I think he need to try for that because they are not depending a big total. And if you want to win the match, they have to take all kind of risk here. And one more run is added to total. 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. No need to panic at all in this particular match for Young Friends Surva. 36 ball and 30 run required for the victory. And Munna balls. This is a really big mistake. Absolutely big mistake. There's no excuse at all. There's no excuse, isn't it? When you're depending a small total like a 30 to win the match, if you bowl that line of the wide and extra deliveries, and it's definitely give a lot of opportunity for the opposition to back into this game. 6 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress.
Short fine like square like deep mid wicket and short mid on. The fielders in the onside region. Munna balls. This time slash that one over the top of Kiran down at extra cover, and before he run back to field the ball, ample time for the batters to complete a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 8 on the board without loss of any wicket. Young friend Surva, looking in the top, came into this tournament as one of the favorite of winning, lifting this prestigious BK Champions Trophy, and they're played like a champion so far. Munna, away from us, lofted. This time a fielder is going back, and Rafiq looks like almost under the ball. He's almost under the ball. Looks like it's a difficult catch, I must say. Not an easy catch. When you are running back to take the catch, is not easy. But look at it in a replay. In that replay, you can the batters slash. Oh, lofted that one over the top. Look at Rafiq then, where he was. He's inside the 20-yard circle, running back, and couldn't manage to judge that one when ball is going to fall in front of him. He just misjudged that one ball, just having the fingertips of the fielder, and a couple of runs here for Ashad. So first over completed. Nothing much worried about that first over for young friends Sirva, but worried factor for Mangala cricketers is that they not only they conceded 10 runs, but they failed to pick the wickets. Now 21 more runs required for the victory. 10 runs completed in the first over. From the far end, Yaju brought into attack. So far, Mangala cricketers has really got a very good tournament. Just like my friend Gopi is mentioning about, it's a really great achievement. Coming to the semi-final is not an easy. Going for the off-try, not quite getting that one right from the middle of the bat. Yatiraj trying. Oh my goodness, Yatiraj. Already there was 2 injuries for Mangala cricketers. They doesn't want to see one more here, as Yatiraj is trying his level best to make the run out. Looks like he will go into fell. It lost his grip, and fortunately nothing has happened here. And Kiran Naik is injured, so that's why he's not really playing in this particular match. After that collision between Sumit and him in the previous match, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮಗಿದು 2ನೇ ಕರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 11 on the board. Arshad back on strike, facing Yaju. Right, look at the stroke. Look at the dust coming out of the strokes. This shows that how powerfully he hits the ball. Really fantastic to watch. All along the ground, hits that one, powerfully driven. Fantastic cricketer. In the Gladiator Trophy, which is played in Uppala, Manamguji cricket ground, he's really entertained the crowd of Kerala by his batting, powerful batting. One more single is added to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 13 now. Great player. After Deepak, one of the promising left-hand batter. Appeal for leg before wicket, but ball pitched outside the line of leg stump. He's a young man, Yaju. He is actually doesn't know anything about that line, why it's not given out, because the ball pitched outside the line of leg stump, then ball is coming in, and that's why umpire called not out. We are talking about the left-hand batters. So many left-hand batters Anram cricket has seen, but Deepak, I think, is always going to be in the top of Jugul Sports Club, one of the fantastic destructive left-hand batsmen. And after that, I think this man, after a long time, Anram cricket has got one more powerful striker of the ball. This man, Ashad. And one more thing I want to say, one more powerful striker of the ball, but he's not played for many years, and he played for just 1, 3, 4, 5 years. The out is a signal, and the wide is a call from umpires. So one more wicket is back into pavilion. 16 on the board for the loss of 1 wicket. We are talking about the left-hand batsman now. Left-hand batter is back into pavilion. We are talking about Dinesh BG.
The one more fantastic left-hand batter. He's a very big hitter. I think is my time. He's playing for UFC cricketers. I saw him. He's hitting the huge sixes here in UCG cricket ground. And a lot of us, the balls are travels into the markets. When he hits the ball, hits the ball powerfully. And Munna of Jugul is also one more powerful striker of the ball. And Anif also. Anif. Hanif of Torpedoes Khana. Then he is represented for UFC cricketers. He is also one more very good striker of the ball. And so many we can get. Now it's a Deepak, one more Deepak in the Gori Young Boys, the present cricketer. He is also very good left-hand batter. Oh, this is a really unusual thing. We can see that the bowler himself, the fielder himself pushed the ball and gave opportunity for the batters to come back for the second. Two more to the total. So with the addition of that runs, scoreboard now moves on to 18 on the board. Now 12 runs required for the victory. 2 overs completed. And 4 overs, 24 deliveries remaining. Young Prince Urva needed 13 runs to win this match. Lot of example we can get in under-arm cricket history. Of course, now and we are talking about so many left-hand batter, but I am talking about the powerful striker of the ball. Powerful striker is concerned. I think these are all names we can see, we can get in under-arm cricket history. Munna of Jugul, Deepak of Jugul, Anif, Dinesh BG, all are powerful striker of the ball. Even Shaukat Ali also during 2000 also is been a fantastic striker of the ball. Now Sumit brought into attack. If it is a 35 to 40 runs, it's a different ball game, I must say, because they got a very good bowling department. Mangala cricketers, they got a Sumit. Of course, they lost Kiran in this match because of injury. But again, this time chance of run out there. White throw coming from the field. They're going for the extra run. It's not a good cricket from Mangala cricketers. By looking at the body language of Mangala cricketers, looks like they've already given up this match. This is not a good thing to see. Of course, you are playing against one of the top team of the South Kent district, but at least you have to put your 100%. You have to send the message for the spectators that not we are simply coming to the semi-final. We fought hard. We defeated big teams. We defeated Team Elegant. We defeated Gori Young Boys. Then why can't defeat this Young Friends Urva? 20 on the board. Again, nice looking sweep shot there from Shakir. Down to square leg region for a easy single. Scoreboard moves on to 21 for the loss of 1 wicket. Now just 9 more runs required for the victory. So 22 for the loss of 1 wicket. Still the 8 more runs required for the victory. Santosh Bantwal still there in the middle. Again, right arm over the wicket. Went for the big shot. Going to be at the delivery, which is well within the reach of the batter. Santosh thought it might be a wide, but not. Right call from umpire Arish Padil. Sumit again bowling away from us. Right arm over the wicket to Santosh. Santosh once again almost tried to drag that one from outside the line of leg stump. Clever piece of bowling there from Sumit. Not really settling the batsman for the reverse stroke in 3 times in this particular over. Now again Sumit back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Santosh. Santosh not really given up. At least he managed to get the bat onto that. Picked up a single then. Scoreboard moves on to 23 on the boards. 8 more runs required for the victory. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು BK ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲಾ
ಬಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬಿರೂರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಟೀಮ್ 3 ಚಿಲಿಂಬಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ Manoj Kumar Shetty for this prestigious BK Champions Trophy 2022. The 24. Just 7 required for the victory. Shakir is on strike. Bowled very well in this the innings of Mangala cricketers. He starts well when the first over becomes. Oh, what a delivery! What a delivery there from. Oh, look at that one. Look at that one. Is that necessary here? Damodar trying for the run out, but not seeing that whether the batter is out of the crease or not. That is a fantastic leg cutter there from Ashwin Rajivan. Shakir is surprised with that delivery. He tried to reach the pitch of the delivery, but ball is almost missing. It's deviating from the woodland spot, and a fantastic delivery. But unfortunately, the batter has got a run in the form of extra. 25 comes up. Now 6 required for the victory. 6 required for the victory. Santosh back on strike now. Ashwin balls going for the off Ashwin balls and Santosh drives that one down to deep long off region for a easy single. With that single, scoreboard now moves on to 26 on the board for the loss of 1 wicket. Nicely driven down to deep long on region for a easy single. Now they're coming very close to the victory target. Looks like just a 4 minutes left in this game for young Prince to enter into the finals of this prestigious cricket tournament. Again, Santosh tried to beat the infield because there is no defects to cover, but Yatiraj not settling for that. This time again going for the expansive drive, not quite getting hold of that one properly, and once again they have to wait for another over. 27 for the loss of 1 wicket. 4 overs completed. Now 4 runs required in remaining 2 overs. 12 balls, 4 runs required for the victory for young friends. The Mangala cricketers might be thinking about now, if they are able to get another extra 5 or 10 runs, then it's probably the opportunity for Mangala cricketers to win this match. That's why I mentioned about early. After getting 8 runs in the first over, the Mangala cricketers might be thinking about the run score around 40. If they bat sensibly, and they might be thinking about their shot of at least 10 to 12 runs in this particular big semi-final. What a fantastic cricket tournament. The first time in the history of under-arm cricket, the women's organizing cricket tournament for the men's. Once again, hats off to all members of Ashok Nagar women's wings. This time one more wicket is going here. Shakir tried to play down to final leg region, but he doesn't know anything about where the ball is. Ball is in the hands of wicket keeper, but he is out of the crease. The one more wicket is back into pavilion of young Prince Surua. 27 for the loss of 2 wicket. So under floodlight is not a easy game for the batters, I must say. That's why Mangala cricketers are really short of 10 runs. I just mentioning about how difficult it's going to be batting here. Once again, young Prince Surua justifying why they are one of the top teams in the South Kenda district by performing here in this BK Champions Trophy as well. Now Sumit is trying his level best. That was really required. Need not give up. Need to fight for each and every run for the opposition. Not allow runs quite cheaply. Down the leg stump, they're going for the run. Chance of run out here, but the fielder missed the stumps completely.
so that the batter survives. One more run is added to totals. 28 on the board for the loss of 2 wickets. Now 3 runs required for the victory. 10 balls remaining. 3 runs required for the victory. Now fielder from short gully region going back to deep gully for Santosh. Sumit bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls. There's some chip that one. Ball is in there, but ball definitely going to land it very safely between Quresh and deep backward point fielder Yaju. And just single for Santosh. Then scoreboard moves on to 29 for the loss of 2 wickets. Ajmal got a chance here to get the winning runs here for young friends Biruver. Going for the cut shot. And good piece of fielding there by Damodar. Just a single. The scores are level. And the scores are level. Just a single run required for young friends Biruver to celebrate their entry into the final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. This time went for the big shot. Missed it completely. And Santosh wanted to finish the match in a style by hitting a big shot. But against the turning delivery of Sumit, it's definitely going to be not easy. Again, unorthodox kind of cricketing stroke. And again, it takes the match into the last over. He takes this match into the last over. Now, last over remaining. 1 run required for the victory. The Mangaladevi cricketers, if they're not able to win the match, they can tie the match. They can tie the match and they can take this match into super over. So 30 for the loss of 2 wickets. Still 1 more run required for the victory. After this match, there will be a 10 minutes of break for the final. Please note. 10 minutes of break. Then the final will go into commence between the winner of this match versus Sarvagni cricketers. Fantastic performance by the Sarvagni cricketers yesterday. They deserve the victory, deserve the praise in this BK Champions Trophy by their fantastic performance. And wait and see how well they're going to play in final between the winners of this match. All we can see that test fielding scenario here. The field set we can see that looks like the test match is going on here in UCG cricket ground. We can see all the closing fielder try to save the singles. One fielder in the mid on unorthodox. There is a mid off unorthodox and short cover. First ball, dotted delivery. Needed another 5. The first step is completed there by Ashwin Raj. Now they have to complete another 5 steps to bowling a dot delivery. This is what body language I want to see from Mangaladevi cricketers. Looks like the dead ball and it's not subtle. Ajmal, so just is getting away from the line of the delivery, and quickly umpire Roland Pinto says that the dead ball, rightly so. Ashwin Raj once again going back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Ajmal. Ajmal swept that one straight to the hands of Quresh. Chance of run out in the last seconds, and not a good throw from Quresh. That's it. Young friends Biruver are entering into the finals of this BK Champions Trophy 2022, defeating Mangaladevi cricketers by 8 wickets, and they're once again deserve this place. Now final of this BK Champions Trophy 2022 will be played between young friends Biruver versus Sarvagni cricketers Urva. So 2 teams from Urva will go into clash for the title of BK Champions Trophy 2022, wonderfully organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla, Friends Balalbag registered. We'll take a 10 minutes break, and right after 10 minutes break, that means exactly 8:10, we'll go into start a big final, the mega final of this BK Champions Trophy 2022.
Hello, Chief. Chief, hello. Hello. So welcome back once again for this prestigious cricket tournament. We are into the mega final of this prestigious BK Champions Trophy 2022, proudly organized by Ashok Nagar Women's Wing, Biruver Kudla, Friends Balalbag registered. What a fantastic 2 days of cricket. At last, out of 19 teams, in fact 21 teams, the 2 teams are qualified for the final. From the local group, Sarvagni cricketers, they played a magnificent game of cricket. They enter into the finals of this prestigious Champions Trophy. In the ranking group, young friends once again, they're justifying why they're the top teams in South Kent district. They're also entering into the finals of the prestigious cricket tournament. So they have the chief guest for this mega final. We're having Kiran Kumar, the corporator of City Corporation. We have Ganesh Kulal. ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಅತಿತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೋಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ Manoj Kumar, also the corporator of City Corporation, is present in this mega final. 2 captains out here, and even all the members of Ashok Nagar Women Wings. A big hand for Ashok Nagar Women's Wings for organizing such a fantastic cricket tournament. The first time in the history of cricket, the women are organizing cricket tournament for the men's. A round of applause is required for the women's here. Now it's a time for the toss, I think so. It's going to be a special thing here is the toss will be of a silver coin. The winning captain will going to get a silver coin. And wait and see who will going to be the lucky captain here. Will it go into Imtiaz? Will it go into a captain of Sarvagni? Shawan. And now, Roland Pinto, the call from Imtiaz, and Shawan will go into toss the coin. What is the call? Head is the call. And now, it's head. I think the captain of Imtiaz won the toss, and Imtiaz, you won the toss. What are you going to do here? Engineer Mankonullar. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ So very shy man, because he doesn't want to talk, but he want to talk with his bat. Thank you very much, Imtiaz. Better luck. Now, I think captain of Sarvagni cricketers, Shawan, please come. Toss ಸೋದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ 8 ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಲ್ 10 ಬಾಲ್ 10 ರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದಿಲ್ಲ ಬೌಲರ್ದು 10 ರನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ 6 overs ಮ್ಯಾಚ್ 30 ಬಾಲ್ಡ್ 40 ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದದ್ದು 35 ಬಾಲ್ಡ್ 45 ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಂಚ ಅವನ ದಯಪಂಡ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಯುವರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾರ ಹೌದಾ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅದು ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಫೈನಲ್ ಬೈದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಐಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಟು ವಿನ್ನಾರೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆತೆ absolutely team effort because team effort baka irna 2 tops players I think Jayant baka Ajay akul head performance mandidare encha vanganirege ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದನ್ನು same performance you are looking forward from Jayant and Ajay in the big final but all 11 players congratulations for young friends as well. This is all about the tossing ceremony here. The captain of young friends won the toss and elected to field first. Now it's the time for the national anthem. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು
ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್. Not ready. 2 minutes, okay? Ashwin, please come forward because I want to know about your opinion. Ashwin, please come forward. Because one of the already Savagri cricketers, the captain is got opinion here, but we want opinion from you. You want the toss selected to field first, and they're telling that they wanted to get 40 runs, 46 runs in the 36 balls. ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇದಾಗ 46 ಉಂತಾವಲಿಯ ಏತ್ ರನ್ ಉಂತಾವಡು ಬಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು 30 ರನ್ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪಗು 30 ರನ್ಸ್ ಅಟ್ಲು ಉಂತೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಯ್ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾನು ಮೈನ್ ವಿಕೆಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ 6 overs 7 overs ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಜಯ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಸೊ ಅರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂತಾರ ಅರ್ಗೋಬದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂತ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತುಪ್ಪಾರು ವಾ ಟೈಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಅರೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಅಜಯ್ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಯ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then you know each other very well, so that going to be the game plan. You want to get the wicket of Ajay first, then Jayant. 100%. Thank you very much. Now time for the national anthem. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की जय cricket. Thank you. Now it's the introduction of the players from our chief guest. First of all, I would like to invite all the chief guests for the introduction of young friends. We have Kiran Kumar, he is also cricketer, the fantastic performer from the bat and ball. And even Ganesh Kulal is a former cricketer. So it's a very interesting to see that the cricket players and even Manoj Kumar also, the very good cricketer, and Prasad Tilak of Young Friends Urva, the president of Biruver Kudla Central, Rakesh Salyan, will be the chief guest, and one more, Sunil Kumar of Biruver Kudla, the chief guest, and all the members of Ashok Nagar Women's Wings. Chinnu, Amin, Vaishu, Dachu, Nitya, Suma, all of them hard work to make this possible, this cricket tournament. Thank you very much once again, Ashok Nagar Women Wings, Biruver Kudla, for organizing such a wonderful and successful cricket tournament in this most historical cricket ground, UCG Urva Cricket Ground. So that's it in the center. The news here is the captain of Young Friends Urva winning the toss, they elected to field first. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು I request all the chief guests, please take your seat and enjoy the big final between Sarvagni cricketers versus Young Friends Urva. And Gopi, once again back to this game. Of course, as like international cricket, there is no need of a pitch report. More than the pitch, I think so. It's
the condition of the ball is going to play a big role. But still, I must say that, Gopi, coming back to this pitch, it's not the pitch like what we watched in the morning. It was a very fine surface, so that the bowlers, the ball is not really coming to the bat. But now I think that there's a lot of dust, because 2 days of continued cricket, day-night cricket is played in this cricket ground, so that we can see a lot of dust is coming from the ground. I think as a bowler definitely will going to get advantage. The bowler like those who are getting a lot of the spin will going to get a lot of advantage. And we are witnessing some bowlers who bowled both in and outgoing deliveries, got a lot of benefit from this pitch. And now coming back to these teams, young friends who wanted to select the field first, they're telling that they wanted to restrict the opposition Sarvagni cricketers for just 30 runs. But Sarvagni cricketers, look at the level of confidence after defeating KFC, after defeating team Rooftech in the semi-final. The level of confidence definitely going to be very high of Sarvagni cricket. That was really required, isn't it? Of course, you not to see which team is going to be our opponent, but you have to believe with your strength. You want to play this, I want to perform. Any team it will be, but we want to win the match. That was a really positive frame of mind there from the captain of Sarvagni cricketers, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सर्वाग्नि उरुआ हालांकि टॉस जरूर हार चुका है, यंग फेस उरुआ टॉस जरूर जीत चुका है, लेकिन सर्वाग्नि उरुआ का गेम प्लान ये है, उनके कप्तान ने खुलकर बयान किया 36 गेंदों पर कम से कम 46 रन बनाने हैं, और यंग फेंस उरुआ के कप्तान ने कहा 30 रनों के अंदर रोक कर रखना है। हालांकि यंग फेंस उरुआ के पास सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है, बल्लेबाजी का लाइनअप है, लेकिन सर्वाग्नि उरुआ ने इस श्रृंखला में जिस तरीके का सफर तय किया है, काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं सेमीफाइनल मैच में इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन, और एक बेहतरीन क्रिकेट का हर पहलू हमें यहां पर देखने को मिलेगा इस मेगा फाइनल मैच में, ग्रैंड फिनाले। वी आर वाचिंग द grand finale and we are looking for great cricket in this grand finale, और मैं समझता हूं यहां पर क्रिकेट का हर पहलू में देखने को मिलेगा, और हमको नहीं सारे दर्शकों को। और जहां तक इस श्रृंखला के बारे में कहा जाए, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट, व्हाट अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट, बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 which proudly organized by Biruver Kudla, Ballalbagh registered अशोक नगर वुमेन्स विंग, जिन्होंने इतना बेहतरीन श्रृंखला यहाँ पर आयोजन किया। और हम एक बार फिर से शुक्रगुजार हैं उनका कि हमें भी इसी श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया, बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और इसके साथ ही देखते हैं इस मेगा फाइनल मैच में क्या होता है। और स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू आवर कमेंटेटर बॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन, एंड दैट इज द कंक्लूजन ऑफ टॉस सेरेमनी, एंड वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू आवर कमेंटेटर बॉक्स। थैंक यू। So welcome back for the mega final of this BK Champions Trophy 2022, and proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings. We are into the last and final match. The last 2 days we have witnessed some fantastic game of cricket from 13 teams, the 13 local teams, and of course the 9 top teams in day number 2 as well. And altogether I must say this is one of the best and successful cricket tournament which is organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla, Friends Ballalbagh registered. We are into the big final. Young Friends Surva takes on Sarvagni cricketers. After winning the toss, captain of Young Friends Surva, they elected to field first. Imtiaz is just mentioning about the opposition because they are not really taking that lightly. Even Sarvagni cricketers, they watched their game yesterday. That their 3-4 batsmen are really good in their the batting and bowling department, so that we are not taking it lightly. That was really required. Of course, the young friends, they know that cricket is unpredictable game. You cannot underestimate any team. I request the opening batsman of Sarvagni, please enter the ground immediately. Umpires are waiting for you. Now here you go, the 2 opening batters are walking towards the middle. The successful opening pair is slowly walking towards the middle for Sarvagni cricketers. Sujit is the opener.
Looks like the captain himself is walking towards the middle here. And just like what Shravan is mentioning about after winning the toss, they wanted to get the 46th runs. Out of 36 balls, they wanted to get 46 runs. If they're able to get that one, I think it's a very good score, Gopi. Under floodlights, 46 is always going to be a good score. But question raising here, how? Against the formidable bowling department of young friends Urva, will it going to be possible? I must say, yes, definitely it's possible. Definitely it's possible. Just watching the performance of Sarvagni cricketers yesterday, they really got some excellent players in the side. And more than anything else, Gopi, they're playing in the home condition. They're practicing in this particular cricket ground. They know exactly the kind of batting required here. And now, the first ball of the big final. Zubair bowling from the commentary box, and first delivery of the final, right on the money interrogation from Zubair, and the batsman just searching for the ball to push the ball down to a cover point region, missed it completely. The ball just passing between his bat and pad. The wicketkeeper missed the ball. There is no chance of any run. Zubair bowling from the commentary box, and right arm over the wicket, bowls to Sujit. Sujit this time once again beautifully bowled, sharp incoming delivery, nip back into the batsman. And again, Sujit not really understand the kind of line which is bowled by Zubair, and especially is beaten by the turn of the delivery, and there is no chance of any run at all. Zubair again bowling away from us, right arm over the wicket, went for the big shot and is gone. Zubair strikes with his first over and third delivery of the first over. The danger man Sujit is departs. So just like in IPL, we are having cheer girls in the ground, but here we can see that cheers babies out here. The big round of applause here for the small babies out here. They're entertaining the crowd here with their dancing ability. So looks like it's a drone camera is on here. Umpire, just a minute. So new batsman is walking towards the middle after dismissal of Sujit. Sarvagni cricketers, this a little bit they got a shackling start. Now Zubair bowling from the committee box, and right above the wicket, went for the big shot, appeal for leg before wicket. Umpire says not out. Certainly that ball going to miss off stamp in the wicket. The impact of the line outside the line of off stamp, so that no question of leg before wicket. But there is a question of a single run here for Sarvagni cricketers, and they got a first run of the final in the form of leg by for Sarvagni cricketers. One for the loss of one wicket. That brings Shravan into strike now, captain of the side. Here is the next one now. That was away going delivery, but definitely going to be a wide. Yes, it is. Umpire Roland Pinto, no hesitation, seeing that ball is getting an extra deviation, extra turn, and off cutter, but certainly it's going away from the left-hander batsman, and rightly so. Wide call by umpire. 2 on the board for the loss of 1 wicket. This time again going down the leg stamp, going for the stroke on the onside region. Again, Shravan missed the ball completely from his bat. One more addition to the total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 3 on the board. Rakshak is one more very good striker of the ball. Rakshak will go into face Zubair. Zubair bounces some drives and powerfully down to wideish long on long on division. They're hunting hard, looking for the second. Misfield by the fielder. There will go into be a boundary. The welcome boundary here for young friend Surwa. Because Sarvagni cricketers and young friend Surwa, the fielder in the deep mid wicket region, misfielded that one. Since mobile data is turned off, you'll have... So it was really the lucky boundary for Rakshak. Rakshak, of course, he not really played any matches in the yesterday's, but his appearance in the big final
will definitely going to strengthen the batting department of young of Sarvagni cricketers. And Gopi, after that 3 deliveries, shackling start, that one boundary definitely will go a lot of oxygen here for Sarvagni cricketers, which is a stroke which came from the bat of Rakshak. बिल्कुल, और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सतीश वहां पर सिर्फ 1 रन बन सकता था और चौका यहाँ पर मिला फील्डर के मिसफील्ड की वजह से, तो निस्संदेह ये चौका बल्लेबाज के आत्मविश्वास को कुछ हद तक बढ़ा चुका है। और देखना यह है कि बच्चे वे आने वाले 5 ओवर में सर्वाग्नि उरुआ के बल्लेबाज पहले विकेट गिर जाने के बाद जो प्रेशर इस वक्त दबाव उनके ऊपर क्रिएट हो चुका है, उस दबाव को किस तरीके से मिटा पाते हैं। और मैं समझता हूं जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, सर्वाग्नि उरुआ के बल्लेबाजों को एक बेहतर साझेदारी पार्टनरशिप यहां पर निभानी होगी। Exactly, Gopi, the partnership much required again across the line of the dead swinging is bad, but lack of placement. Ball went straight to the hands of short square leg region. Ajmal, the fieldsman, there in the short square leg region, fields the ball, and there is no possibility of any run at all. Shakir from the urban homes and right arm from the wicket, he bowls, going for the big shot again, missed it completely. 2 dotted deliveries, ball there by Shakir. Shravan is captain of the side of Sarvagni cricketers, know exactly the kind of total, he knows that the 46 what he wanted to get, and for that he need to bat very well. Again down the leg stump, going to be a wide, one more wide, already the 3 extras out of that 8 runs for Sarvagni cricketers, 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Shakir once again back to his bowling mark. Right arm bowls round the wicket, wicketkeeper Santosh fails to collect the ball. Each and every run going to be very important in this mega final. By call by umpire, and the frustration for bowler Shakir that wicketkeeper fails to collect the ball, Santosh. Now Rakshak back on strike now. He's a very good striker of the ball. He's a 1D1 player from Mangalore who played baseball, Gopi, and that's why he's hitting. We can see that he's hitting the ball very hard. And again from the far end, Shakir wanted one fielder, extra fielder in the onside region. From the backward point region, he's called that one fielder in the square leg region. And from the far end, Shakir bowls. This time helicopter shot, he wanted to play that they can flick off the wrist, this comes into play, but that ball is really hurried out to the batter, and Rakshak couldn't manage to take any kind of such cricketing strokes. He managed to get a single anyhow down to square leg, and with that single scoreboard moves on to 10 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Shakir again bowling right arm over the wicket, going for the big shot, missed it completely. The one more dotted ball, Shravan need to be very careful, seeing that the partner is there in other end. This is a power play is going on. Playing as much as dotted delivery is going to be very difficult to get some good score against young friends Ruva, as Shravan once again facing Shakir. This time across the line of the delivery, hit that one quite firmly down to mid-wicket region, but not more than a single in the occasion for Shravan, and he keeps a strike for the next over. It's completion of over number 2, and Sarvagni cricketers, after the lost the toss asked by the opposition, 11 for the loss of 1 wicket. So 11 for the loss of 1 wicket, and Gopi, the 11, 5.5 runs per over, much better over as far as young friends is concerned. This time ball by Shakir, isn't it? बिल्कुल 11 रन 2 ओवर में एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी के जरिए कहलाएगी सतीश। और यहाँ पर दोनों गेंदबाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, जुबैर और शाकिर, अपने अपने काबिलियत के अनुसार उन्होंने गेंदबाजी की। और जुबैर के गेंद पर जो चौका लगा था, इसमें जुबैर की कोई गलती नहीं थी, फील्डर की गलती थी। और 2 ओवर में 11 रन यहाँ पर जोड़ चुका है सर्वाग्नि उरुआ। और अब यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उरुआ के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज यहाँ पर अश्विन गेंदबाजी पर उतरते हुए, और देखना यह है कि उनकी गेंदबाजी का इस वक्त बल्लेबाज सर्वाग्नि उरुआ का किस तरह यहाँ पर सामना करते हैं। तो इस वक्त काफी ऐसा कहना पड़ेगा त्योहार भरा माहौल यहाँ पर छा चुका है, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, और दर्शकों से मैदान लगभग यहाँ पर भर चुका है। और इस बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का मेगा फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले यहाँ पर खेला जाता हुआ। और पहले सर्वाग्नि उरुआ क्रिकेटर्स यहाँ पर बल्लेबाजी करता हुआ। ओवर की पहली गेंद, यह बेहतर गेंद थी, लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाई, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था चूके, और गेंद सीधे पहुंची, विकेट कीपर ने गेंदबाज ने आके की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस बीच अश्विन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद सीधे टकराई ऑफ स्टंप पर, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। तो अश्विन की खासियत वो यहां पर दिखाते हुए, स्पेशलिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं,
टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद सीधे स्टंप से ऊपर टकराई और वहां पर स्टेज पर देखिए जिस तरह मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था आईपीएल में जैसे चीयर गर्ल्स होते हैं यहाँ वैसे यहाँ पर चीयर बेबीज जो कि अपना हुनर टैलेंट यहाँ पर दिखाते हुए और निस्संदेह इस श्रृंखला को और भी रौनक यहाँ पर पहुंचाते हुए और रौनक बढ़ाते हुए कहना पड़ेगा और यहाँ पर ये ग्रैंड फिनाले मैच एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ इस जाम पैक स्टेडियम में। तो विकेट यहां पर गिर चुका है, बल्लेबाज आउट होने वाले शरण जो कि दूसरे विकेट के रूप में पेविलियन वापस जा चुके हैं। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए, तो इस वक्त सचिन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर क्रीज पर पहुंचते हुए और देखना यह है कि सचिन किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अगेंस्ट दी बॉलिंग ऑफ अश्विन यहां पर करते हैं। तो अश्विन विकेट प्राप्त करने के बाद सहज रूप से उनका दबाव उनका आत्मविश्वास यहां पर बढ़ चुका है और देखना यह है कि आने वाले गेंदों में वो अपने आत्मविश्वास को किस हद तक बढ़ा पाते हैं। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पैरल स्वीप कर दिया, लेग कटर गेंद थी, गेंद की टर्न को भागते गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है सर्वाग्नि उर्वा को और अश्विन की गेंद लेग स्टंप से बाहर दैट इज एन एक्स्ट्रा क्विकर एक्स्ट्रा बाउंस लेती हुई गेंद लेग कटर गेंद, हालांकि कुछ ज्यादा गेंद घुमाव नहीं ली थी लेकिन उछाल लेती हुई बाउंस लेती हुई गेंद सीधे बल्लेबाज के लगभग आई थिंक इज गॉट अ बैट ऑन दैट। तो 1 रन इस बीच मिलेगा और लेग बाई का इशारा हो चुका था तो 1 रन मिलेगा, बल्लेबाज के पैर पर टकराई थी, 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। अश्विन एक बार फिर से तैयार, इस बार गेंद को हल्के से स्वीप करना चाहा, अंतिम क्षण में विकेट कीपर संतोष चुके जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर इम्तियाज गेंद को बैकअप करें बल्लेबाज के पास मौका 1 रन न प्राप्त करने का। और इस वक्त क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हैं। वो जानते हैं जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट यंग फ्रेंड्स उर्वा के पास है, जो बलाढ्य गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, उसके खिलाफ अगर बल्लेबाजी करनी है तो कुछ विशेष रणनीति डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ उन्हें बल्लेबाजी करनी है और कम से कम जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है मैं समझता हूं कम से कम जैसा कि उनके कप्तान ने कहा था 45 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा निर्धारित 6 ओवर में और देखना यह है कि वे अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद स्पेक्ट्रा वाइड और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद लेकर इस वक्त अश्विन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और आखिरी मौके पर नीचे रहते टिप्पा खाने के बाद और वाइड स्विंग इस वक्त करना चाहते थे गेंद पर चूके और एक और सफल ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। तो इस ओवर में कुल मिलाकर रन्स बने 4, पहले ओवर में सतीश 7 रन बने, उसके बाद दूसरे ओवर में 4 रन बने, तीसरे ओवर में भी 4 रन बने और यहां पर मैं समझता हूं पहले 3 ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के तीनों गेंदबाज जो इस्तेमाल किए गए हैं अपने क्षमता काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी यहां पर कर चुके हैं। Exactly, Gopi. You won the first over. Is might be little bit expensive compared to that to 2 overs, but they're a good comeback. Just like what they're knowing for Young Friends, they got a fantastic bowling department, and the 2 overs which is belongs to the last 2 overs which belongs to Young Friends, especially the Ashwin. And as for his reputation, he's bowled that line and length and restricting the batsman from the big shot. But still, they have to play another 3 overs, Gopi. And in these 3 overs, at least they have to get 20 to 25 runs. And definitely, then it's going to be a very good game of cricket, the final of this prestigious BK Champions Trophy. बिल्कुल जैसा कि आपने फरमाया कम से कम मैंने कहा था 45 का आंकड़ा पार करना होगा और सर्वाग्नि उर्वा के कप्तान ने कहा था भी 45 या 46 रन उन्हें बनाने हैं और यहां पर अभी के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम 40 का आंकड़ा अगर पार करेगा सर्वाग्नि उर्वा अंडर दिस कंडीशन तो एक चुनौती भरा स्कोर कहला सकता है अगर उनके गेंदबाज विद अ परफेक्ट लेंथेड लाइन के साथ गेंदबाजी करें। तो चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ अर्बन होमसेन की ओर से पहली गेंद शाकिर की गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ गेंद की लाइन पर अपने बल्ले को लाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को जब तक वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और शाकिर एक बार फिर से फील्डिंग में यहां पर जमावट करते हुए और डीप मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है। लॉन्ग ऑन मौजूद इस वक्त लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात और जहां तक का सवाल है अगली गेंद का शाकिर तैयार ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद 1 रन मिलेगा दूसरा रन नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं।
तो सचिन इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए रक्षक ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कुछ करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत इस वक्त। बल्लेबाजों को यह गेंद इस वक्त उछाला है, गेंद हवे में फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाएंगे और जब तक इनको फील्ड करे थ्रो करे, सीधा थ्रो फ्लैट वर्जन पर डाइविंग एफर्ट इस वक्त लगाते हुए। और देखना यह है कि अंपायर क्या निर्धार देते हैं और अंपायर ने कहा है नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो सीधा थ्रो यहां पर एक्स्ट्रा कवर फील्डर का पहुंचा था, सीधे विकेट कीपर के हाथों में, स्टंप से कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं था और अंतिम क्षण में जैसे ही थ्रो को रिसीव किया विकेट कीपर ने विकेट यहां पर चटका दिए और बल्लेबाज ने डाइविंग लगाते हुए अपने विकेट को बचाने का प्रयास जरूर किया है। देखना यह है कि जब विकेट यहां पर उखाड़े गए तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर पहुंच पाया था या नहीं। और इस बार जहां तक सवाल है, अंतिम क्षण में डाइविंग लगाई थी और जिस तरीके से देखिए किस तरीके से इस स्ट्रोक को उन्होंने खेला था और पहला रन देखिए यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, दूसरे रन के लिए अपना कदम यहां पर बढ़ा चुके हैं। अब थ्रो पहुंच रहा है विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर गेंद को इस वक्त लगाते हुए और यहां पर ये आउट घोषित हो चुका है। तो अपना विकेट से लगभग 1 या 2 इंच बाहर उनका बल्ला बैट था और यहां पर ये विकेट गिर चुका। तो आउट होने वाले बल्लेबाज सचिन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 18 रनों के ऊपर तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है सर्वाग्नि उर्वा का। और मैं समझता हूं तीसरा विकेट गिरने के बाद कुछ हद तक दबाव उनके ऊपर इस वक्त नजर आता हुआ। एंड नाउ द मैन कमिंग आउट टू द मिडल एज अ नंबर 5 बैट्समैन, पिछले 2 मैचेस के हीरो अजय, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था और अपने टीम को इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में पहुंचाने के लिए पहुंचा पाए हैं सिर्फ उनके बल्लेबाजी की काबिलियत पर। गेंदबाजी भी अच्छी खासी उन्होंने की है, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस। और न सिर्फ अजय बल्कि जयंत भी एक बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए अपने टीम को इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में पहुंचाने में सफल रहे हैं। और यहां पर देखना है कि सिर्फ एक पड़ाव पार करना है इस वक्त, 1 लैप, एक पड़ाव पार करना है इस श्रृंखला के ट्रॉफी के हकदार बनने के लिए। और देखते हैं यहां पर अजय किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं इस फाइनल मैच में। यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, गेंद शॉट लेग पर इम्तियाज का थ्रो पहुंचा इस बार नॉन स्ट्राइकर एंड पर और यहां पर इस बीच ये विकेट गिर चुका है। जस्ट लुक एट दिस, इम्तियाज का जो बॉडी लैंग्वेज था सतीश, जिस तरीके से उन्होंने गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, एक्यूरेट थ्रो स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और विकेट को उछाला गया। तो यही एक खासियत है यंग प्रिंस शुरुआ की, न सिर्फ बैटिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट बल्कि फील्डिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग यूनिट भी इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि बल्लेबाज को रन लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। Exactly, Gopi, but it is a disaster for Sarvagni cricketers losing Ajay very cheaply, isn't it? Because just look at that run out, Gopi. Ball is going down the leg stump. At that time, actually, Ajay doesn't know where the ball is. That's why he's not ready to go for the single. For that time, Rakshak already they start the run. He was almost in the middle of the pitch. Then Ajay started run. But you just noticed a very good thing here. That Imtiaz, seeing that, Ajay very late to react to that run. He quickly released the ball towards the non-striker's hand. That was the speciality of young friends Gopi. One throw which came from the hands of Ajmal over the top, Bills becomes a run out. One more good throw coming from the hands of Imtiaz. One more run out taken place. बिल्कुल सतीश, यही तो खासियत है यंग फ्रेंड्स की। ये गेंद उछाला है straight down the ground and it's gone over the fence for a maximum. It's a biggie. रक्षक के बल्ले से यह छक्का लग चुका है और इस ग्रैंड फिनाले का पहले छक्के के हकदार रक्षक बन चुके हैं। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, जस्ट लुक एट दिस, गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड इट इन ए स्टाइल बिटवीन द लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन फेंस इनटू द स्ट्रेट हिट एरिया। गेंद सीधे स्ट्रेट हिट एरिया पर जो वृक्ष है उस वृक्ष के शायद उस वृक्ष पर जाकर टकराई थी प्रेक्षकों को के सिर के ऊपर से निकलते हुए। और इस छक्के के साथ काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं रक्षक। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन मिलेगा उन्हें। इस बार गेंद को उछालना चाहते थे उसी तरीके से, लेकिन गेंद कुछ मिडल लेग स्टंप पर आए थे। हेलीकॉप्टर के शॉट के जरिए पूरी तरह बल्ले को हवा में घुमाते हुए उन्होंने इस स्ट्रोक को खेला, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार नहीं। और एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंड जब तक गेंदबाज फील्डर जो कि लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो यहां पर
चौथा ओवर समाप्त हो चुका है सतीश, और ये ओवर अब बेहतर रहा। हालांकि इस ओवर में 2 विकेट जरूर गिरे रनआउट के रूप में, लेकिन रक्षित के बल्ले से जो छक्का यहां पर लग चुका है, मैं समझता हूं कुछ हद तक लिटिल बिट इस मैच में सर्वाग्नि उर्वा को वापस ला चुका है। अब 2 ओवर का खेल बाकी, और जैसा कि हमने और आपने जिक्र किया था, कम से कम 40 का आंकड़ा पार करना होगा। 40 का आंकड़ा पार करने के बाद जितने भी रन वो बनाएंगे वो उनके लिए बोनस कहलाएगा। और 2 ओवर का खेल बाकी, और मैं समझता हूं इन 2 ओवर में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। कम से कम 18 से 20 रन 2 ओवर में बटोरते हैं तो यहां पर एक चुनौती भरा लक्ष्य कहलाएगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। Exactly, Gopi. Having Rakshak in the middle, why not? It can be possible. It can be possible for Sarvagni cricketers to get 20 plus runs in the remaining 2 overs. The way that Rakshak hit the ball in the previous over, absolutely, it was a fantastic strike coming from the blade of Rakshak. He got the distance as well. In under light, hitting the big six, definitely going to be very difficult. And Rakshak got that 6. Now Ashwin brought in the attack. Right above the wicket, beautifully ball. Not just like hitting the ball of Shakir, which is ball coming in a straighter version and not that much of a deviation. But here Ashwin is bowling a speciality of his bowling is sometime bowling incoming and outgoing delivery and picking up his line, and that is so important here for Rakshak. This time ball him, clean him up. That ball passed between the legs of Rakshak, and Ashwin got a vital breakthrough here for young Prince Urwa. Thank you very much for the entertainment. It was definitely, Gopi, one of the special attraction of this big final. And cheer babies performing very well. And look at the energy level of that babies. Absolutely fantastic, isn't it? That will going to lift the spirit of the cricket players as well here in the big final. And intelligent bowling, Gopi. Absolutely intelligent bowling, isn't it? You know exactly what Rakshak will going to do here. And not really letting the batsman to go for the big shot by bowling a little bit. Ball is going from the good line spot, and Rakshak is nowhere near the pitch of the delivery. Now new batter Pradeep came into middle, placed the ball quite nicely down to deep cover region now for an easy single. Pradeep also played an excellent role for his team into the into the finals of this cricket tournament, and then it's going one important match. He hit 1-6 when his team is required some runs. He hit one beautiful 6 down to mid wicket region, Pradeep. So totally it's a teamwork from Sarvagni cricketers take them into the finals of this prestigious BK Champions Trophy. Oh, what a delivery! What a pitch of delivery from Ashwin there. The appeal coming behind the stump from Santosh. Might be they asking for the stump out, and now Vivek actually not satisfied, but seeing the appeal of wicketkeeper behind the stump, at last Vivek just asking for the third umpire to decide whether it's out or not out. Altogether, it's a fantastic game of cricket out here in this most beautiful UCG cricket ground by Ashok Nagar Women's Wings in the name of BK Champions Trophy 2020 to Biruver Kudla Balalbag. The friends registered. So what lot of dignitaries were really sending their messages, best wishes for the cricket tournament. Once again, I would like to give special thanks to those who are really gave a helping hand to make this cricket tournament possible. First of all, I would like to give special thanks to our beloved MLA of South Constituency, Mangalore, Vedabas Kamath. Not out is a signal here from a third umpire. Not out is a signal. Uday Pujari, the founder president of Biruver Kudla. And special thanks to Ganesh Kulal, corporator, and Radhakrishna, nominated corporator, Tilak Guru of Young Friends Urva, Sampath Shetty of Pranav Builders. We are coming back the more names after this over as Ashwin continues from the committee box end. Right arm over the wicket he bows. This time again the slower ones. Different delivery in the negation. Batter completely missed out. If it is a direct, it's going to be one more wicket. The leg by call by umpire in the negation. That ball is little bit going down the leg stump, and batter tried to hit that one, but really it is a very difficult one. And different in the sense it's a ball off cutter in the negation there by Ashwin. Right arm over the wicket, balls. It's a lovely shot. That ball is really, that was a lightning fast boundary coming from the blade of Pradeep.
And Gopi, that boundary not only surprised the spectators, not only surprised the commentators, but even Ashwin really surprised because he's not really expecting that the Pradeep will going to play that unorthodox cricketing stroke. Reverse strokes comes into play, and lightning past that ball because that was timing, and the footwork is exquisite in the indication there from the batter Pradeep. बिल्कुल अश्विन खुद आश्चर्यचकित रह गए कि इतने तेज गेंद पर कितने एक्सक्विजिट फुटवर्क के साथ उन्होंने गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए बैकवर्ड थर्ड मैन के सीमा रेखा से बाहर भेजा। निस्संदेह काबिल तारीफ, और अश्विन की गेंदों पर चौका या छक्का लगाना उतना आसान नहीं है, इतने चतुर गेंदबाज अश्विन जाने जाते हैं। और यहाँ पर मैं समझता हूँ एक्सक्विजिट फुटवर्क और बेहतरीन टाइमिंग्स के जरिए ये चौका इस वक्त जड़ चुके हैं प्रदीप। निस्संदेह सतीश काबिल तारीफ है। Absolutely, the appreciation and a round of applause came from the crowds, isn't it? Immediately the ball is went towards a deep backward point region like a bullet, and we can see that the crowds really enjoying, acknowledging that stroke from Pradeep. 31 for the loss of 1 wicket. Ashok brought into attack. Straight away he's on the money. Straight away he's on the money. He picked a wicket here. The wicket number 6 is back into pavilion of Sarvagni cricketers. Now here, I think Sarvagni cricketers need to be a little bit intelligent, Gopi. And that intelligent sense, this batsman need to see that my partner already hit one boundary, so my job is to pick the single and give the strike as much as possible to Pradeep, not to lose the deliveries. So many deliveries, not so many deliveries left, only 6 deliveries left in this game. His job is to pick the single and give the strike as much as possible to his partner Pradeep. बिल्कुल बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में गए थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था जैसा कि आपने फरमाया सती, क्योंकि प्रदीप पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जिस तरीके का चौका उन्होंने लगाया था, काफी आत्मविश्वास उस चौके के बाद वो प्राप्त कर चुके हैं और वो अपने लय को लगभग प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वक्त अंतिम ओवर भले ही शुरू हो, उन्हें स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर करना चाहिए था और अंतिम ओवर में जितने भी ज्यादा गेंद प्रदीप को खेलने को मिलेंगे उतना सर्वग्नि उर्वा के लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर विकेट गिर चुका है और 5 गेंदें बाकी है और देखते हैं इन बचे हुए 5 गेंदों में क्या होता है। नए बल्लेबाज यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर इस अंतिम ओवर में करते हैं अर्शद की गेंदों पर। Absolutely, Ashok is right on the money. In the first ball itself, he picked a wicket. Here he's bowling to Prashant, the new batsman. That was a sensible batting, absolutely sensible batting. Even good fielding there by Shakir, picking a ball in his right hand and release the ball immediately towards striker's end. But in that time, I think ample time for Pradeep to cross off for a single. Now Pradeep back on strike now. 32 for the loss of 1 wicket. 4 deliveries remaining. Will it go into be a one more boundary? Will it go into be one more big shot here from Pradeep? 32 is a very good score. You cannot underestimate that score in under floodlight. Here is again Ashok bowls beautifully bowled, slower one, chance of run out in the non-striker's end, and that's the end of Pradeep's innings. Might be the Pradeep is thinking about to get 4 singles in 4 deliveries. That's why he wanted to pick the single by pushing the ball down to a point, but it's too late for him. Ball is not really coming to his bat. A slower one there from Ashok, and Ashok completes the job. The new batsman Sustan is coming to the middle. Pradeep a little bit disappointment as he back into pavilion in the form of run out, and now Prashant will going to take the strike off, and Ashok is the bowler. This time again the slower one, beautifully bowled, a change of phase, and Prashant completely missed out. Even a wicket keeper behind the stump missed out by call by umpire. One more addition to total. With that addition of that single scoreboard now moves on to 33 on the board for the loss of 7 wickets. 33 for the loss of 7 wickets. Now last 2 deliveries left in the innings of Sarvagni, and now Sustan will go into face next delivery from Ashok. Quicker one, absolutely quicker one. Ball little bit ahead down to the batters. Now they're going for the second as well. They are directed. Look at the fielding effort from young friend Surva. Look at Ashwin. How accurate he's been. Just shooting that one towards the strikers and hits the stump. One more wicket is back into pavilion. So Sustan is back into pavilion once again. Brilliant work there from Ashwin. Picks the ball, returns the ball. Not only he returns the ball, but he hits the stumps, and
The batter is not in the picture at all. Sistan is back into pavilion. 8 wicket of Sarwag Nikikidus Urwa are back into pavilion. 34 for the loss of 8 wicket. Vijay is a new batter. Brother of Ajay. The Vijay coming to the middle. Both the brothers are contributed for Sarwag Nikikidus. Vijay maybe is coming in the number 9, number 10 batsman, but he's got a potential. He's a very good striker of the ball. And now from the far end, Ashad, left arm, over the wicket. That was a really slow over one in the dedication there from Ashad. And wait for the umpire's signal. It's a bye. It's a bye. The right decision because Vijay misjudged that one. And that's the end of the 6 overs quota of Sarwag Nikikidus. And they managed to score 35 runs and set a target of 36 to win the match for young friends who are to lift this prestigious BK Champions Trophy 2022. And Gopi, 36 is the target, but captain. उतरेंगे संतोष और अरशद उन पर अगर इन्हें प्रतिबंध लगाना है, उनको रोक कर रखना है, तो मैं समझता हूं यहाँ पर पहले ओवर से ही उन्हें घातक गेंदबाजी करने की। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीयर बेबीज हम सबका मनोरंजन यहाँ पर करते हुए चीयर बेबीज और इस श्रृंखला के रौनक को और बढ़ाते हुए। और जहां तक इस मैच के पॉसिबिलिटी का सवाल, तो डीजे के रुकने के बाद मैं कहूंगा सतीश यहाँ पर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक घातक गेंदबाजी करने की। लेकिन विध्वंसक बल्लेबाज, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, विध्वंसक जोड़ी इस वक्त उतरेगी अरशद और संतोष के रूप में। और उस जोड़ी के ऊपर अगर अंकुश लगाना है तो निस्संदेह यहाँ पर उन्हें एक ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी जो लोग आने वाले दिनों में याद रख सके। तो यहाँ पर 36 रनों का लक्ष्य, एग्जैक्टली 6 रन्स द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम इन द स्टिपुलेटेड 6 ओवर्स। और देखते हैं इस लक्ष्य तक यंग फ्रेंड्स उर्वा पहुंच पाता है या नहीं। और अगले आधे घंटे में पता लग जाएगा कि इस बीके चैंपियंस ट्रॉफी का सही हकदार यहां पर कौन होगा। और यहां पर हम वापसी करेंगे। वी विल बी बैक राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक व्हेन द इनिंग्स ऑफ young friends Urva will going to commence. And now it's time for DJ. Thank you. Right, once again welcome back to the last session of BK Champions Trophy 2022, which proudly organized by Friends Ballal Bagh, Biruver, Kudla, registered अशोक नगर वुमेन्स विंग। और जहां तक सवाल है इस अंतिम सत्र का, तो देखते हैं यहां पर इस खिताब का हकदार यहां पर कौन होता है। अगले आधे घंटे में पता यहां पर लग जाएगा। और 36 रनों का लक्ष्य इस वक्त है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। और उनके दो आरंभिक विध्वंसक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उतर चुके हैं, संतोष और अरशद, जबकि गेंदबाजी यहां पर इस वक्त संभालते हुए सुस्तान। और जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया, इस वक्त पहली ओवर से उन्हें एक ऐसी गेंदबाजी करनी होगी जो आने वाले दिनों में याद रख सके। तो यहां पर उस मेमोरेबल बॉलिंग और
उस यादगार गेंदबाजी की तलाश में यहां पर गेंदबाजी शुरू करते हुए सुस्तान और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार संतोष। 36 द टारगेट एंड द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। हियर वी गो। पहली गेंद लेकर इस वक्त सुस्तान तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष के लिए गेंद को ड्राइव किया, कॉटन बॉल का मौका। इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटी थी और गेंद सीलिंग डाउन पर फील्ड कर ली गई है और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। एक रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर में। निस्संदेह जहां तक हमने पॉसिबिलिटीज के बारे में बात किया था सर्वाग्नि उर्वा का, लेकिन जहां तक संभावनीयता का सवाल है यंग फ्रेंड्स उर्वा का, तो मैं कहूंगा एक बेहतरीन शुरुआत उन्हें करनी होगी अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತರೆ. और यहाँ पर जहां तक सवाल है इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज सुस्तान और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त अरशद सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए गेंदबाज लेकर तैयार सुस्तान। अगली गेंद, ये गेंद अरशद के लिए, गेंद को उछाल दिया इस वक्त फील्ड क्लियर करते हुए और गेंद इस वक्त लपक ली गई है बॉडी स्लम बॉल पर और इसी के साथ दैट इज एन एंड ऑफ अरशद और एक बहुत ही बड़ी सफलता यहां पर प्राप्त कर चुके हैं यंग फ्रेंड्स के खिलाफ सर्वाग्नि उर्वा। तो सतीश यहां पर एक बहुत ही बड़ा शिकार इस वक्त कर चुके हैं, एक बब्बर शेर का कहना पड़ेगा। अरशद जो कि खासकर पावर प्ले ओवर्स में विध्वंसक एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी करने में माहिर हैं और यहां पर पहली गेंद पर उनकी पहली गेंद पर उनका विकेट उखाड़ने में सफल, मैच की दूसरी गेंद पर वो विकेट प्राप्त कर चुके हैं और मैं समझता हूं ये एक बहुत ही बड़ी बूस्ट उनके लिए इस वक्त साबित हो सकती है। Absolutely, Gopi. It was really a big fish in the net, isn't it? The big fish in the net. And look at the field placement, Gopi. That was very important. The bowler need to bowl as per your field, and that's what is just little bit short pitch delivery, inviting the batter to go for the big shot, and he got a big wicket of Ashok. बिल्कुल सतीश। अगली गेंद के लिए तैयार संतोष, आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, रन के लिए दौड़ पर सीलिंग डाउन पर मिस फील्ड इस वक्त और अंतिम क्षण में एक रन बल्लेबाज पूर्ण करते हुए और जैसा कि आपने फरमाया बिग फिश इन द नेट, बिल्कुल बड़ी मछली इस वक्त जाल में फंस चुकी है और यहां पर उस बड़ी मछली इस वक्त को ले जाया गया है और अब गेंद नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर शाकिर इस वक्त आ चुके हैं, एक और प्रमुख बल्लेबाज और देखते हैं यहां पर शाकिर के खिलाफ गेंदबाज सुस्तान यहां पर किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल शाकिर के लिए पावर प्ले ओवर्स में 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। इस श्रृंखला के नियमानुसार लगभग यहां पर बातचीत करते हुए गेंदबाज सुस्तान से टीम के अन्य खिलाड़ी फील्डिंग के व्यू के बारे में अब एक खिलाड़ी को पीछे भेज दिया जा रहा है स्क्वायर लेग से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और जहां तक सवाल है केवल 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात और सुस्तान इस वक्त काफी बातचीत करने के बाद टीम के अन्य खिलाड़ियों से अगली गेंद लेकर तैयार। शाकिर इंटेलिजेंट क्रिकेटर, चतुर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, यहां पर सामना करने के लिए तैयार और सुस्तान फील्डिंग में अभी भी जमावट करते हुए। कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर 7 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं शाकिर के लिए, चिप किया इस वक्त इनफील्ड क्लियर करते हुए मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकली इस वक्त और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। शाकिर जानते हैं इस वक्त इनफील्ड अगर क्लियर किया जाए तो कम से कम 2 रन वो प्राप्त कर सकते हैं, शायद चौका भी उनको मिल सकता है और यहां पर गेंद की लाइन को भापते हुए गेंद को स्कूप किया था इस वक्त मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से 2 रनों के लिए।
4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सुस्तान, ये गेंद इस बार इन दी एयर, लेकिन फील्डर काफी पीछे एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, वो जानते हैं यहां पर चंद विकेटें अगर पहले 1-2 ओवर में 3-4 विकेटें उखाड़ते हैं यंग फ्रेंड्स हुआ के, तो नेचुरली सहज रूप से दबाव उनके ऊपर आएगा, और यहां पर इसलिए विकेट उखाड़ने की कोशिश में वो बिल्कुल स्टंप्स टू स्टंप इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिना हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है। और निस्संदेह जो शुरुआत इस वक्त उम्मीद की थी, जो शुरुआत की उम्मीद की थी सर्वाग्नि उरा के कप्तान ने, वो शुरुआत में समझता हूं सुस्तान पहले ओवर में दे चुके हैं, और अरशद का बड़ा विकेट गिर चुका है। और मैं समझता हूं आने वाले ओवर्स में बाकी के गेंदबाज अगर इस सफलता के सिलसिले को बरकरार रखते हैं, कम अंतराल में विकेट उखाड़ते हैं, तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उरा के बल्लेबाजों पर दबाव आ सकता है। क्यों सतीश? Absolutely, Gopi, no doubt at all. The first over certainly belongs to Sarvagni cricketers, and after picking up a wicket of Ashok, look at the body language of Sarvagni cricketers. Slowly they're realizing that if they're able to pick another 2-3 wickets in a quick session, they can become the champions of this BK Champions Trophy 2022. And first over completed, Gopi. Job is not yet over. The consistency is very important here. The bowling, the economical overs, bowling some wicket taking over is a more important year for Sarvagni cricketers. They wanted to win the match. That's why they brought Ajay into attack now. So far he's put a wonderful tournament from the ball, from the bat. He's the man look out for. Of course, fails to contribute from the bat is unfortunately is run out, but now he can contribute from the ball as well. Wait and see how Ajay will go into ball here. बिल्कुल बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे पाया था, लेकिन गेंदबाजी में वो क्या करते हैं देखना पड़ेगा। जस्ट ओवर दी मिडल फील्डर सेट, और गेंद को इस वक्त उछाला, बेहतरीन तरीके की फील्डिंग वहां पर, और काबिल तारीफ फील्डिंग, और सारे दर्शकों ने तालियों के जरिए यहां पर उनका अभिवादन किया। टीम के अन्य खिलाड़ी भी उनका अभिवादन करते हुए, और निस्संदेह एक बेहतरीन फील्डिंग यहां पर उन्होंने की है। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को उछाला था इनफील्ड क्लियर करते हुए इस वक्त शाकिर ने, और आखिरकार गेंद को बेहतरीन तरीके से रोका गया। और अजय को इस वक्त, हालांकि इस मेगा फाइनल मैच में बल्लेबाजी में वो कुछ नहीं कर पाए थे, पहली गेंद पर रन आउट हो गए थे। गेंदबाजी में उन्हें इस वक्त कुछ कर दिखाना है अपने टीम के लिए, और देखते हैं गेंदबाजी में वो यहां पर क्या करते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार शाकिर के लिए धीमी गेंद पर, विकेट कीपर विकेट चटका चुके हैं। और देखने वाली बात यह है कि क्या इससे पहले शाकिर अपना बल्ला क्रीज पर लैंड कर चुके हैं या नहीं, और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त कॉल किया गया है, और मैं समझता हूं काफी नजदीकी मामला यह हो सकता है। क्यों सतीश? Absolutely, Gopi. Whether it's out or not out, but that's a different thing. But look at the effort from wicketkeeper behind the stump, Sachin. Absolutely, it was an electrifying work from a wicketkeeper behind the stump. Just in a blink of eyes, he completes the job and he got the result as well. Now out is a call from a third umpire. तो आउट इस वक्त घोषित कर चुके हैं, और शाकिर का विकेट गिर चुका है, and that is an absolutely fantastic piece of work behind the stumps made by wicketkeeper. और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 7 रनों के योग पर। शाकिर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और देखना यह है कि अब कौन सा बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी पर उतरते हैं। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर। जैसे ही सचिन, जैसे ही शाकिर रन के लिए आगे बढ़े एक कदम, तुरंत गेंद उनके हाथों में थी और तुरंत उन्होंने विकेट यहां पर चटका दिए, और शाकिर का बल्ला हवा में रहा, और इस बेहतरीन वर्क की बदौलत, विकेटों के पीछे जो विकेट कीपर ने किया बेहतरीन काम की बदौलत यह विकेट गिर चुका है। दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दबाव कुछ हद तक यंग फ्रेंड्स शुरू के नजर आता हुआ, और कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर, और यहां पर 1 या 2 विकेटों का और पतन अगर होते हैं, 1 या 2 और विकेट पतन होते हैं, तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उरुवा के ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा। और यहां पर जहां तक सर्वाग्नि उरुवा का सवाल है, इस वक्त अजय विकेटों की तलाश में, और जहां तक यंग फ्रेंड्स उरुवा का सवाल है, इस वक्त उनको चाहिए एक पार्टनरशिप, साझेदारी इस मुश्किल के परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद, ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, धीमी लेग कटरती, हल्के से स्टंप को कवर किया, स्वीप कर दिया, और खासकर ऐसे स्ट्रोक्स के लिए इम्तियाज जाने जाते हैं स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, और यहां पर 1 रन के साथ वो अपना स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं एक और आक्रामक बल्लेबाज संतोष, और खासकर इस श्रृंखला में उनका प्रदर्शन 1 या 2 मैचेस में
बेहतर बल्लेबाजी उन्होंने की थी, उसके बाद में अंतिम में क्या 2 मैचेस में खासकर बल्लेबाजी वो ठीक तरह से कर नहीं पाए थे। और देखना यह है कि इस मैच में वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनके पास काबिलियत क्षमता है कि वो लंबी पारी यहां पर विध्वंसक आक्रामक पारी खेल सकते हैं, और इसका उदाहरण हमने इसी मैदान में इससे पहले भी कई बार देखा है। और यहां पर गेंद को ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 9 रन 2 विकेट के लिए 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, 36 द टारगेट इन 6 ओवर्स। और अजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हल्के से गेंद को स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद ऑप्शन से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी, लेग कटर गेंद थी, और जब तक गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है, और विकेटों की सख्त दरकार इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा को, रनों की सख्त जरूरत इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा को। और यहां पर अजय अगली गेंद लेकर तैयार संतोष के लिए, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद सीधा कवर पॉइंट पर, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। संतोष इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन, so this is one more big wicket and now Sarvagni Urva looking right on top. सुस्तान नेक्स्ट कवर पर फील्डर थे जिन्होंने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को लपका, ज्यादा ऊपर की ओर छलांग लगाना नहीं पड़ा, लेकिन कैच को बेहतरीन जजमेंट के साथ यहां पर लपकते हुए, और संतोष का विकेट गिर चुका है सतीश। और यहां पर मैं समझता हूं अब यंग फ्रेंड्स उरुआ के ऊपर पहली बार परेशानियों के बादल मंडराते हुए। अब लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 4 ओवर्स रिमेनिंग, 26 टू गेट, 24 बॉल्स रिमेनिंग, 24 गेंदों पर 26 रन चाहिए, 7 विकेट सुरक्षित। और मैं समझता हूं यहां पर 1 या 2 बेहतर ओवर और सर्वाग्नि उरुआ के गेंदबाज करते हैं, चंद विकेट और उखाड़ते तो यंग फ्रेंड्स उरुआ के ऊपर परेशानियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन यंग फ्रेंड्स उरुआ के पास जो बलाढ्य बैटिंग का लाइनअप है, उनके पास और भी कई घटानुघटी बल्लेबाज मौजूद है, अजमल, अजहर, जुबैर, और ये सब बल्लेबाज अगर अपनी काबिलियत के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उरुआ अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है। और यहां पर सर्वाग्नि उरुआ के सामने इस वक्त ये मुद्दा ठहरता है कि विकेटें वो जल्द से जल्द उखाड़े कम अंतराल में, और एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर हो दे आने वाले ओवर्स में। Exactly, Gopi, but 2 dismissal, Gopi, in the previous over, the fantastic one by one wicket keeper, then Sustan taken a very quick catch, very quick reflected catch, because the ball went very quickly to that fielder. You need to react to that catch very quickly, and under the floodlight, taking that kind of catch is definitely going to be one of the fantastic performance by the fielder Sustan to dismiss the wicket of Santosh. From the commentary box, and Rakshak brought into attack, right arm balls, Imtiaz pedal that one down to short fine leg region for an easy single. Imtiaz is now key player, being the captain of the side of young Prince Irva. You know exactly the kind of batting required in this situation. He's a cool customer, and wait and see how this man Imtiaz and then Ajmal just came into middle, how well they managed to take the match away from the opposition. So far it was a wonderful performance from Sarvagni cricketers, really not letting the young Prince Irva to get that runs very cheaply. They are really fighting hard, giving a lot of competition for each and every run. This time wicketkeeper behind, Mr. Stamp, chance of run out, appeal for the run out, direct it comes into play. Now question is rising, will it go into be out or not? So what a fantastic piece of fielding there by the fieldsmen of Sarvagni cricketers. More than that, Gopi, is the electrifying atmosphere out in UCG cricket ground. Not only the electrifying atmosphere, the festival atmosphere out in UCG cricket ground. Not only we're hearing the sound of DJ, but even we can see that the band is ringing here. Looks like it's some festival is going on here in the UCG cricket ground. निस्संदेह सतीश त्योहार का माहौल यहां पर छा चुका है, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ मेगा फाइनल मैच, न सिर्फ जैसा कि आपने फरमाया डीजे की धुन यहां पर सुनाई देती हुई, बल्कि नासिक बैंड की भी धुन हमें यहां पर हमारे कानों को ठंडक पहुंचा रही है। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध कर चुकी है, घने अंधेरे को चीरती हुई ये रोशनी मैदान पर गिरती हुई, और निस्संदेह इस मैदान की शोभा को और बढ़ाती हुई। चीयर बेबीज यहां पर नृत्य करते हुए, और निस्संदेह यहां पर इस शाम को और रंगीन, इस रात को और रंगीन करते हुए। और यहां पर तीसरे अंपायर के लिए निर्धार
लेना है। देखना यह है कि जब स्टंप्सों पर गेंद टकराया था तब बल्लेबाज का बल्ला बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। और मैं समझता हूं सतीश, अगर यह विकेट गिरता है तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उर्वा के ऊपर दबाव बिल्कुल और बढ़ जाएगा। Absolutely, Gopi. And if it is going to be out, definitely Sarvagni cricket supports will going to enjoy more than the young friend Surva, because young friend Surva knows that how important the Imtiaz is, the captain of the side, how important going to be the appearance of Imtiaz in this particular big final. And more than anything else, Gopi, and they're performing against the big crowd. It's definitely going to be a big moment here for Sarvagni cricket. If able to make this final, the counting for young fans to each and every run, they are really putting 100% in this game. If they're able to beat young friends Surva, Gopi, it's definitely going to be one of the milestone. Definitely going to be one of the big milestone for Sarvagni cricketers defeating young friends Surva in this BK Champions Trophy. But still, the decision is pending here. And once again, on behalf of cricket lovers, I would like to invite our beloved. The out is the call from third umpire. So look at the crowd here. Look at the crowd here. Now they knows that the match is still alive. What a fantastic game of cricket, Gopi. Absolutely magnificent, isn't it? And just like I'm mentioning about more than anything else, and our beloved MLA Biruver Kamath certainly is proud of this particular cricket tournament, because he is the reason for the cricket under floodlight. And that's what we would like to give special thanks to the Biruver Kamath for this wonderful opportunity provided by giving a floodlight for this UCG cricket ground. So what a fantastic game of cricket is having here. Once again, the match is now evenly poised. It's going to be anybody's game. The new batters just came into middle here. Mubarish. It's a new face for young friends Surva. Wait and see how Mubarish along with Ajmal can they build a partnership for young friends Surva. Rakshak, right arm over the wicket, balls this time straight to the hands of fielder. Chance of one more run out here, but fielding effort from that short mid of fielder, not that much of enough to stop the single to make the run out here. And fortunately the batter complete the single here. With that single, 11 for the loss of 4 wicket. 11 for the loss of 4 wicket. Absolutely fantastic mega final of this BK Champions Trophy 2022. 12 on the board. 12 for the loss of 4 wicket in the over number third in progress. Again, Rakshak balls this time again. Wicket keeper behind the stump. Fails to collect the ball. Again, they complete the single. Very quick single indeed. Frustration for the bowler, but no signal coming from umpire. That means definitely it's going to be a bat here. That's why Sachin missed out that ball from his hand. So one more addition to total. 13 for the loss of 4 wicket. Another 23 more runs required for the victory for young friends. This is the over number 3 in progress. Rakshak, so far it's been outstanding performance here for Sarvagni cricketers. Of course, they're really playing like a tigers in their home ground against young friends as Rakshak bowling away from us. Right arm over the wicket. This time again, lovely cricket there from Mubarish. Even though he's a very young cricketer, but still is playing like a very experienced cricketer here for young friends. Picked up a single, handling the pressure. You know exactly that the kind of batting is required in this situation. The consolidation is much required here for young friends. No need to panic at all. Of course, the run is now going over. The ball is lesser than the run in that occasion for young friends, but still it's manageable. 14 for the loss of 4 wicket. Rakshak again bowling away from us. Right arm over the wicket to Ajmal. Ajmal once again. That was a really good thinking cricket. Just I wanted to rotate the strike. It doesn't want to lose the wicket here. An excellent over there from Rakshak. One more good over is comes to an end. After completion of over number 3, chasing 36 to win this match. 15 for the loss of 4 wicket. Now Gopi, 3 overs remaining, 18 balls remaining,
and out of 18 they have to get another 21 runs. That means 7 runs per over is the required run rate. The first time I was seeing that the run rate is going higher and higher in each and every one. That's what the Sarvagni cricketers want to do in this condition. They have to bowl some economical over, they have to bowl some wicket taking ball, and now another 3 good overs required for the victory. बिल्कुल यहाँ पर आस्किंग रन रेट 7 पर जा पहुंचा है सतीश, और पहले 3 ओवर में मैं कहूंगा द फर्स्ट 3 ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ सर्वाग्नि उरुवा, और यहाँ पर 4 विकेट गिर चुके हैं. अब यंग फ्रेंड्स उरुवा के बल्लेबाजी, बचे हुए बल्लेबाजों के बारे में अगर देखा जाए तो अजहर बल्लेबाजी पर उतरना बाकी है, उसके बाद आएंगे बाशित, या फिर बाशित पहले आ सकते हैं, उसके बाद अश्विन, उसके बाद जुबैर. तो यहां पर बासित और अजहर का जहां तक सवाल है, बेहतरीन बल्लेबाजों में से जाने जाते हैं. जुबैर और अश्विन भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और यहां पर विकेट अगर यहां पर तुरंत इस ओवर में 1-2 विकेट गिरता है तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स के ऊपर दबाव और बढ़ सकता है. और जहां तक सवाल है यंग फ्रेंड्स उरुवा का, तो इस वक्त साझेदारी उन्हें निभानी है. Absolutely, Gopet. So now that was a juicy full toss here from Ajay, and taking a full advantage of that one there by Ajmal by slashing that one outside and of the off stamp. Got a couple of runs. Might be the ball is just slipping out of the hands of Ajay, so that Ajmal got to freeze his arm to get a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 17. 17 for the loss of 1 wicket. 19 more runs required for the victory from 17 balls. Slower one, negotiated very well by Ajmal in the dedication, waiting for the turn of the delivery. Pedal that one down to short fine leg and they're looking for the second. Very difficult to get, just a single in the dedication. With that single, scoreboard now moves on to